जनरली कसा का है मुंबई, जब भी हम मुंबई की क्राउड के सामने बोलते हैं, वी कैन एक्चुअली फील द एंटायर अरीना ट्रेम्बलिंग। लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा सा सुबह का वक्त है, नाश्ता नहीं करके आए, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। कसा का है मुंबई आएगा। चलो शुरू हुआ। Yes. Meanwhile, ladies and gentlemen, मेरा नाम है स्पीरो, मेरे साथ है इनसेन अरेना एंड हम दोनों आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहते हैं इंडियाज ईयर लॉन्ग ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज में। इनसेन, वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हम ऑलरेडी अपने तीसरे वर्ष में आ चुके हैं। दिस इज ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का 3rd एडिशन एंड हर साल के साथ साथ ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज भी बेहतर होता जा रहा है। स्पीरो, अक्सर हम बहुत सारे इवेंट्स देखते हैं, बहुत सारे इवेंट्स को होस्ट करने का मौका मिलता है, बट ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज एक ऐसा इवेंट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सबसे पहली चीज, इट्स एन ईयर लॉन्ग आईपी। साल में मल्टीपल क्वार्टर्स में अमेजिंग गेम्स होते हैं और उसके बाद फाइनली जाके आई ऑलवेज वेट फॉर द न्यू ईयर, जनवरी। लास्ट ईयर भी हम थे, इस साल भी हम हैं। लास्ट ईयर सिर्फ आप थे यहाँ पे एज अ होस्ट, बट दिस ईयर आई एम ऑल्सो हियर। आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है। एक्चुअली आई बीन वेटिंग फॉर इट कि कब हमारा शो स्टार्ट हो, कब हम अपनी जनता से बात कर पाए, कब इस अमेजिंग ग्रैंड फाइनल्स को किक स्टार्ट कर पाए। देखिए, आप ग्रैंड फाइनल्स को शुरू तो करना चाहते हैं इनसेन, बट उसको शुरू करने से पहले थोड़ा बात कर लेते हैं ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज के बारे में। जैसा आपने बताया, पूरा साल यहाँ पे एक मौका मिलता है एक कंपटीशन में आने का, डेडिकेशन दिखाने का, अपने आप को प्रूव करने का, बिकॉज ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अंडरडॉग्स आते हैं चैंपियन बनने के लिए, एक गेमर्स आते हैं ताकि वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स बन पाए। एंड बहुत सारे प्लेयर्स को हमने बनते हुए देखा है पिछले 2 सालों में, और इस साल भी ग्रैंड फाइनल्स के अंदर वी विल सी सम चैंपियंस जो ये ट्रॉफी उठा के घर लेके जाएंगे। द अरीना वेयर द राइजिंग स्टार्स मीट द सुपरस्टार्स, और जब दोनों जो पार्टीज हैं, सारे के सारे प्लेयर्स एक ग्राउंड पे आके जब फाइट करते हैं ताकि वो और ज्यादा लेवल अप कर सके, ताकि वो जो स्टार स्टडेड चमक धमक की जो दुनिया है हमारी प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स की, उसको ज्वाइन कर सके। इसी के लिए हमारा ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज है, सीजन 3 चल रहा है। बहुत अमेजिंग गेम्स है, लेकिन उससे भी ज्यादा अमेजिंग मुझे लगता है हमारे राइजिंग स्टार्स होने वाले हैं आज के दिन पे। राइजिंग स्टार्स की आपने बात करी तो इस कंपटीशन में पूरे साल भर में 20,000 से ज्यादा गेमर्स ने हिस्सा लिया। 30 मिलियन से ज्यादा लोगों ने पूरा साल ये कंपटीशन देखा है एंड अब हम आ चुके हैं ग्रैंड फाइनल्स में। आई कैन फील इट। एक बार फिर से हो जाए मुंबई, जब मैं आपको पुकारूंगा मुझे चाहिए कि आप रोर करें, आप शोर करें। तो शुरू करें इनसेन। बिल्कुल। इन 3, 2, 1, मुंबई, हाउ आर यू? आ रहा वाइब आ रहा है, वो वाइब आ रहा है, वो मुंबई का वाइब आ रहा है। बट मुझे लगता है कि हमारे ऑनलाइन माध्यम से भी बहुत सारी जनता देख रही है, वहां पे तो अलग चैट सेक्शन में स्पैम चल रहे होंगे और वो स्पैम बढ़ते जाएंगे, बट मुंबई का जो वाइब है धीरे धीरे वो आ जाएगा। वी आर नॉट देयर येट, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अभी तो शुरुआत हुई है हमारे दिन की। हम लोग एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, हमारी जनता भी एनर्जेटिक फील कर रही है, और बहुत जल्दी व्हेन वी हिट दैट स्पॉट, जब हम एकदम टॉप नॉच कंपटीशन में बढ़ेंगे ना, तब मुझे लगता है यहाँ से फ्रॉम हियर अंटिल द वेरी एंड हमको हर जगह ना हिलता हुआ फील होगा, पूरा स्टेज, पूरा अरीना हिलता हुआ फील होगा। एब्सोल्युटली। बट गेम्स की बात की जाए, ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग गेम्स हैं, अलग अलग कैटेगरी की गेम्स हैं। आपको मोबाइल गेम्स मिल जाएंगी, कंसोल गेम्स मिल जाएंगी, और इस साल एक नया एडिशन हुआ है, हम सिमुलेटर गेम्स की तरफ भी जा रहे हैं। वी हैव अ न्यू गेम विद अस। बिल्कुल सही कहा, एसीसी की बात कर रहे हैं दोस्तों। बताना चाहूंगा आज के दिन की शुरुआत हम जरूर एसीसी से करेंगे, लेकिन स्पीरो आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। यप। सिमुलेशन रेसिंग, आपका एक्सपीरियंस, आप आई एम प्रीटी श्योर सारे के सारे आप गेम्स खेलते ही हो, तो सिमुलेशन रेसिंग गेम्स कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी जनता को इसके बारे में? देखिए इनसेन, जैसे नेम सजेस्ट करता है सिमुलेशन, बिल्कुल असली गाड़ी जो रेसिंग करते हैं आप, वो फील आती है आपको। बाहर आपने देखा होगा पूरा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत सारे इंडिया के बेहतरीन रेसर्स जो सिमुलेटर गेम्स खेलते हैं वो आए हैं और वो compete करने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि गाड़ी वीडियो गेम के अंदर वो कैसे चलाते हैं। मैं ट्राई कर रहा था, और ऑफ कोर्स हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं दे आर ऑल सेट, हमारे अमेजिंग कास्टर सेट है। लेकिन गाइज ये तो सिर्फ शुरुआत है, दिस इज जस्ट वन गेम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन अभी आई थिंक और बाकी गेम्स के बारे में भी बात करेंगे। हमारे पास एक तो रहा सबसे पहले एसीसी, देन वी हैव पोकेमॉन यूनाइट, वी हैव सो मेनी पोकेमॉन फैंस,
हमारे साथ अरीना में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ चैट सेक्शन में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बाद के गेम्स पीरो प्लीज डू दी ऑनर्स। यार पोकेमॉन यूनाइट तो है, उसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, बट यू नो व्हाट, मुझे फुटबॉल का भी बहुत शौक है एंड EAFC 24 वो भी यहाँ पे खेला जाएगा, तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों अब इसके बाद स्पीरो जरूर मुझे डांटने वाले, लेकिन मैं आपको स्टेज पे बता रहा हूँ, लास्ट टाइम आई हैड अ मैच विद स्पीरो, मैं काफी भारी मार्जिन से जीता था। Yep. लेकिन आफ्टर द गेम गेट्स ओवर, आज का दिन जब अंत होगा या बीच में जब भी टाइम मिलेगा, विल अगेन हैव अ ब्रॉल, हम दोबारा से जाएंगे EAFC 24, विल हैव अ कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन यहाँ पे गाइस नाम नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन इतना जरूर बताने वाला हूँ कि EAFC 24 में हमारे देश के जो टॉपेस्ट ऑफ ऑल है वो दो खिलाड़ी भिड़ने वाले हैं। देखिए वो दोनों खिलाड़ी भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और वो इस अरीना में लाइव आपकी आंखों के सामने अपने टैलेंट को दिखाते नजर आएंगे। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और उसके बाद जो आज के दिन का हमारा आखिरी गेम होगा वो भी बहुत ही कमाल का होगा, एक मोबाइल गेम, अभी रिवील नहीं करूंगा, काफी जल्दी आपके सामने आएगा। ये पूरा स्टेज उसके लिए सजा हुआ है और उस गेम के लिए मैं जानता हूँ आप सब बेकरार हैं। इन टोटल 5 गेम्स हैं दोस्तों, 5 गेम्स का सफर आज का और कल का। लेकिन कहने के लिए ये 2 दिन हमारे ग्रैंड फाइनल के बहुत छोटे हैं, क्योंकि साल भर का हमारा ये IP चला था, पूरे साल फ्रॉम जनवरी लास्ट ईयर हम लोगों ने esports प्रीमियर सीरीज सीजन 2 ग्रैंड फाइनल विटनेस किया था। राइट आफ्टर दैट हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हर महीने अमेजिंग प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, अमेजिंग गेमर्स निकल के आए, बहुत सारे चैंपियन प्लेयर्स देखे हमने और बहुत सारे चैंपियन प्लेयर्स को हारते हुए भी देखा है स्पीरो। यार मैंने भी एक ऐसा एनवायरनमेंट महसूस किया है ना कि जहाँ पे जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो जो राइजिंग स्टार्स हैं, आप में से ही कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अब खेलने वाले हैं। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बाहर हो चुकी हैं, काफ़ी नई टीम सामने आई हैं, काफ़ी नए प्लेयर्स सामने आए हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए चीयर ज़्यादा होगा इस बार। बिल्कुल सही कहा। जनता, आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, आप लोग अपना चेयर्स बनाए रखें और हमारे साथ जितनी भी ऑडियंस चैट सेक्शन के माध्यम से जुड़ी हुई है गाइस, आप लोग भी ना स्पैम करते रहो। लेकिन फिलहाल के लिए फिर मुझे लगता है हमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए अपनी जनता का, बिकॉज दे आर एक्साइटेड। ACC का एक्शन एक्साइटेड है देखने के लिए वो लोग। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हम अपने एक अमेजिंग टैलेंट के पास। द नेम इज सिंपली, लेकिन बंदा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपली, प्लीज टेक इट अवे। Thank you so much, Insane Arena and Spiro. We are here for Esports Premier Series Grand Finale brought to you by esports.in, sim racing partner Logitech G in association with Rapoo V, streaming partner Router, smart lock screen partner Glance, broadcast partner JioGames Watch, strategic partner Capital Group, and this is produced by GIGWORK. So on the common stage today, it is me, Swagger Turbo, and Simply White, yeah. So yeah, we are gathered here for ACC. Would you like to take us through a bit of, what's going on with ACC and with the drivers that we have today? Absolutely. I mean, we have had multiple months of hard work by the drivers. I mean, hundreds of hours of practice has gone into this, and it clearly shows. I mean, we have the 10 best sim racers of India taking part in ACC today, and they will be putting up a very, very big performance. ACC is not something that you can get used to quite, as easily as other games perhaps, but they have put in hundreds of hours. I mean, I've seen quite a few drivers like Davlish Singh, Sai Prithvi, FIFA Kanak, all of them have put over 1,000 hours into this game, and they will be putting that on display today. And it is going to be a very, very fun set of events, because we are going to be starting our qualifying in Bathurst, Mount Panorama, the hardest track possibly in all of history of racing. It's not going to be a full-fledged qualifying just the Super Bowl, but that is something that the drivers absolutely love, listening to their feedback from the qualifiers as well as the semifinals. They absolutely love the challenge that Super Bowl put up to them, and they will be doing it at possibly the hardest track to master, and that is Mount Panorama. Race 1 will also be the 20-minute race, and it's going to be dry. If we look at Silverstone, which is going to be race 2, it is going to be full wets. And Silverstone, though easy to get used to, extremely hard to master, and I'm pretty sure you know that with your experience. Yeah, of course. We have corners like Maggots and Beckett's, going into even Cops Corner, one of the fastest turns that you can take in Silverstone. So yeah, we'll be carrying a lot of Gs, and of course,
ACC is a game where you have pretty realistic BOP. So it's going to be interesting to see how these guys can adapt to maybe a different rig and a completely LAN environment as well. So it's a completely new environment for them. And will anyone crack under pressure? Of course, we've seen a lot of drivers going into different tournaments as well and performing really well there. Yep. So it's going to be interesting to see what those guys do today, and if they can keep their nerves under control, and of course, the biggest part, which is the car. I mean, yeah, it is, as Swagger mentioned, BOP, or also known as balance of power, is going to be quite important, especially in these tracks, because there are cars such as the Porsche, which is extremely quick, hard to master, but when you do get used to it, it is quite quick. But if you look at tracks like Silverstone, which will be wet, it will be really hard to drive for someone like even Gaurav Arora, who has shown a lot of talent, a lot of pace in these last couple of months. So talking about tracks, once again, the final race will be at Hungary. Here's the catch. It's a 45-minute race with a pit stop mandatory. No pit window to, of course, leave it up to the drivers for them to mix up the strategies, which we'll discuss about later on. But it is going to add a very big curveball into it, because it does kind of help you the fact that the race is quite long, which gives them the opportunity that if they do end up getting any sort of damage on the first couple of laps, they can just pit, get the pit window cleared, fuel up for the rest of the race. If required, perhaps maybe even change tires, although I don't think that will be necessary. But they'll pretty much finish the race on that, and they will go ahead and, yeah, basically throw a very big curveball at Hungaroring. Of course, the first two tracks, as you mentioned, is only a 20-minute race. So they don't really need to go into the pits for either fuel or even tires for that matter. Yep. But yeah, coming to the last and final race, pit stop is going to be a very important part of the race. And we have to make sure, that, also more like the drivers have to make sure that they have to time the pit stop right. They can either go for a gamble, maybe make a late pit and come out, or maybe even go for a mid-race pit, try and maybe refuel, because you can obviously go half and half. So there are a lot of strategies lingering around in the air. Of course, it's up to the drivers to make sure what needs to be done. And sure, very soon we will be in the Super Bowl, and of course, it's going to be an interesting race for sure. Absolutely, and we do have the absolute beasts like Davli Singh that's here. I mean, where can I even get started on his accolades? I mean, he has represented India in ESFI, for ACC. Yep. He has taken part in multiple international competitions and even won them against, other talented, international people. Not just in Asia, Europe, America, pretty much all over the world. And that does put a bit of pressure on him, because he has to also have to, live up to his accolades, live up to his name. So that could be a bit of a curveball that gets thrown in, because I'm not sure if you remember in the semifinals in Japan, or Suzuka, whatever you like to call it, we did see people like Deepak, who's an absolute beast himself, get completely lost under pressure. I mean, literally on the first lap, first corner, he made a grave mistake, causing a lot of driver's damage, and which, of course, it was a bit hard for him to qualify and get through. Of course, he pulled back in the other races as well, but that was one thing that did show signs of him cracking under that pressure. And we've seen pretty much every driver crack under pressure. Of course, they have recovered afterwards, because, their skill, their mindset completely changes when they do make a mistake. They don't sit there and get pissed off about it, but rather they look at, how they can recover. Imagine all of those laps as they're happening while they're driving, and that is how they kind of want to play it out. But yeah, those are things that we could see cashing drivers out today. Especially, we have to keep an eye on, obviously, Davli Singh, see if he cracks under pressure or not, because he is arguably the best sim racer in ACC around the world, right? So if he does crack under pressure, which, of course, diamonds are made under pressure, but he already is a diamond himself, I guess you can say it that way. So it is going to be quite hard for all of the drivers in general, but especially for Davlish and the top performers like Sai Prithvi, Deepak Raj, and even Shivam Das to, see what they can put out here, and of course, make it a very interesting race for you guys to see and for us to commentate over as well. But yeah, of course, we have so many talented drivers on the track, and yeah, it's going to be a very, very hard battle for Davlish as well to try and keep that lead
compared to where, you know, he's in an open lobby or just chilling at home. So obviously the environment and all the three tracks, to be very honest, are completely, you know, there's a lot of skill involved. There are a lot of very highly skilled tracks, I mean, highly skilled turns in all the tracks. And you have to make sure your braking is right. And of course, they are completely new over here. They have to get used to the weather as well. So a lot of components which is going to affect them during the race. But whoever can manage the whole race is probably going to have a better chance of winning. Of course, you have a lot of things going into it. You'll have the pits, especially in Hungary. So yeah, a lot of different variables to play for. And of course, we have seen Davlesh just winning the semi-finals, or actually, you know, going Qualifiers into one yeah, and the qualifiers. semi-finals. Yeah. So getting into the qualifiers, a lot of good drivers, but yeah, they all reach here because of their skills. So it's even playing field. Everyone has a proper set provided by, of course, our sponsor Logitech. And yeah, we'll just have to wait and watch what kind of performance these guys can put up. Yeah, that's actually a good point you brought up. We have 10 sim rigs, of course, for all of the 10 drivers that are here. And it was a very equal playing field because, yes, they have come from, you know, multiple different inputs. They've had their own wheels, their own rigs. Yeah. But it has completely equalized the field. The fact that now they have to sit there and, yes, they're all on the amazing G29, right? But then again, as I said earlier, a lot of drivers aren't used to the G29. Some of them directly went to other wheels or something. So it has completely equalized the playing field. And it could also be that, you know, Davlesh, maybe he can make a mistake because he's not used to the wheel. He's not used to the rig. Yeah, to be fair, anyone can make a mistake because most of them are not used to the wheels. They are, you know, they're sitting at home in their own setups and they're comfortable with that. Whereas right now, they are in a kind of environment where they're not really used to it, but then they'll surely, you know, they'll have to get up to speed and up to pace, get warmed up, and make sure that they are putting in some good laps in. Absolutely. I mean, as I said, as we've said multiple times by now, actually, the whole playing field at this point has been equalized, and that has obviously put a very big curveball into this whole thing. But yeah, any driver can fall under pressure, but then again, we will see what that is about. And on a screen, while we are talking about great things, is the prize pool. 3 lakh total prize pool. First place winning 75,000 rupees. Second place 50,000. Third place 25, along with fourth. 5th, 6th, 7th, and 8th, both, all of them get 10K. 9th and 10th get 5K. So they're all winning something. There's an incentive for every position. There is absolutely no reason for them to retire from the race. Pick up damage, go into the pits, retire, don't retire, and fix your damage, go out and race because you're still guaranteed points. Of course, the prize pool will be decided based upon the points from all of the 3 races. Exactly. Even if the drivers do mess up in one of the races, they still have 2 other races to recover. And yeah, it's pretty much an incentive to not retire at all because it doesn't make sense to. I mean, everyone's winning something, everyone's going home happy at the end of the day. All right, so here are the results from all the qualifiers that we've had so far. And yeah, as you can see, from our first qualifier, we had Davlesh, Deepak, Tegazwan, and Ajit, who had, you know, qualified and did well. And of course, these are all the players as well. And out of all of them, we have the best 10 on, you know, in the event right now. They're sitting on their rigs, all set up. And yeah, overall, an amazing journey from these guys. There were so many different qualifiers. And then, of course, you can see that from the semifinals to the finals, not everyone has been able to, you know, get over here. So yeah, we even have a few drivers who have been called upon of late. And yeah, it's all about just getting used to the car, getting used to the tracks, and overall, just trying to put your best. And as you can see, everyone is going to get something out of this. So it's a very, very intense race that we're going to have. And we're just going to have to, you know, wait and watch. Absolutely. And of course, as you said, a few drivers, particularly 2 drivers, have
of course, have had to been swapped out because of the drivers having their own personal commitments. But let's not take anything away from other drivers that are here today, because all of them were pretty much within half a second of each other. Yep. So there's not really a lot of gap between them. So I'm pretty sure whatever gap that we do think might have been left out has definitely been filled with completely equally competent people who will put on a very, very good show. And of course, try and put their hands on the amazing prize pool that we do have coming, and of course, become the Esports Premier Series champion for ACC of 2023. And of course, we have had this, for the first time, Esports is organizing an ACC event in India. And yeah, it's going to be exciting. Of course, it's going to be the first Esports event of maybe 2024. And yeah, we'll just have to see what kind of a performance these guys are able to put up, and who will crack under pressure and who won't. Because of course, all 3 races we have points, and if someone messes up race 1, let's say, they'll have to make sure that it will be added pressure to try and perform better in race 2 and 3 to try and get those points back. So you have to make sure you're keeping your race clean and your head completely, focused on the race. Absolutely. And talking about the race itself, of course, all of the drivers have a free choice between all of the GT3 cars that are available to them. And I do have a list of the drivers who, of course, have selected their favorite car, which they think will be competent through all 3 of the tracks that can help them perhaps get them to that P1 spot and help them win the championship. The Panshu and Sai Prithvi both have gone for the McLaren. Of course, joining them is also Kanak Satam. We have a few guys in the Audi, also a very interesting car, very quick, but also very, very nimble. Tricky to drive. Very hard to control, but then again, probably easy work for these guys. We have Deepak and Sarthak Ray along with Shubham Das who have taken the Audi. I believe only Axel Sam or Ajish Sam is the only one in the BMW. So that is going to be a bit of a, I guess, challenge for him, because the rest of the grid has been divided in McLarens and the Audis. We do have a few curveballs as well. Of course, we have Cora Aurora in the Porsche, which is of course a very, very hard car to drive, extremely bad on the rear tires, not as suitable for endurance races. So I believe that we'll have to keep an eye out for him, especially for the Hungary race, because he will definitely have to swap his tires out if he wants to make it to the end. And we have W. Singh in his classic Lambo Evo. He's been a fan of the Lambo cars in ACC for quite a long time, has been using those cars for a very, very long time, all of the generations of the Lambo cars. And of course, he's here with the latest Lambo Evo 2. And that car, I've driven it myself. It is an absolutely amazing car to drive. Slightly on the underseries side, but that should definitely not be a big issue for them, because of course, they're going to be having their own custom setups for the cars that will perform well for those particular tracks, and of course, according to their driving style as well. But then again, ACC is more about the driver adapting to the car rather than the car adapting to the driver. So they'll have to drive along with it, in complete control of the car, keeping it at its limit, not beyond it. But yeah, we will have to see what lap times these guys do put in Mount Panorama, because they only have one chance of doing it. And of course, these guys had completely, free choice of which car they want. So yeah, most of them going for a bit of, let's say Audi or McLaren or whichever car that they like. So yeah, of course, it's completely up to them, whatever car they are comfortable in, and that's what they have been choosing. So overall, I feel like all of them are confident with their car choices at least. Absolutely. And yeah, that's the main part, because till the time you're not comfortable with the car, you won't be able to push it to the limits and, get better laps in. But yeah, let's quickly get into the player introductions, and we'll get back to you soon.
try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, if we try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Negative bull, 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 yeah, we could be taking control. And of course, all of them looking very good in those yellow esports jerseys. Absolutely. So yeah, all of them are ready as well for the race. Of course, they are doing a bit of practice right now, so we're not directly jumping into the race just yet. So once that's done, we'll just, surely get into a bit of racing action, and yeah, we'll just see what they are up to as well. Absolutely. And while they are, of course, doing their practice, in the meantime, of course, the pressure does start building up because, the time for the Super Bowl is getting closer. And for the Super Bowl, for the people that don't know, they have just one shot at the qualifying, one out lap or a warm-up lap, whatever you want to call it, and one shot at their hot lap. So a lot of pressure is, of course, going to be mounting on them, especially the person that will go out last. Yep. Because they'll be seeing everyone else putting these very, very quick lap times, and then it's upon them because everyone at that point will be watching them. Yep. And of course, everyone will be like, what can this driver do? I don't think we know who the last driver is, but I'm going to assume it's Davlish. But yeah, it's like, I would say it's going to be a little different as well because there are two perspectives to it. Of course, the last person might have a bit more pressure because he's going to be the last person out on track. He has to make sure that, he puts a good lap in and, of course, not invalidate the lap. But one thing that they have to, they can use is look at the other people's lines and maybe, just gain those 2 or 3 tenths over them and use that against them. So yeah, you get a lot of time. You can just calm down your nerves, make sure you're completely focused for your race, and then put in your best Super Bowl lap because that's the whole starting grid. That's how the whole grid is going to be for at least the first race. So yeah, so they'll have to make sure that they have a good starting position because from then they can just carry that position, maybe even defend from other people and just hold it down so that they can get maybe, in the top 5 at least. Absolutely. Well, if we are talking about the Super Bowl, while we are at it, one thing that will also benefit the drivers that are going outside, over the ending of the grid is that they'll have the track evolution of the cars behind. It's not going to be much because it's just going to be maximum of 2 laps per driver because they're just going to RTG or return to garage after the laps are done. Yep. But it will still be some sort of track evolution. It's better than having a green track or a fast track because by the time all of those drivers have gone around them, they will have the optimum track to them. So the grip level of the track will be on its optimum. And of course, that means 100% of the grip will be available to them. So they can push just that bit harder and, perhaps extract those few tenths or even a few hundreds in those few corners. And of course, over a whole lap, especially at Bathurst, it will, amount to a lot of lap gain, which of course they will absolutely love to have. And yeah, it just depends upon who goes last because, as you said, both sides of a coin to it. Of course, the pressure will be there, but then also, they'll be like, as you said, look at the driver's lines, try and implement it into your driving style and try and get those few hundreds, plus the track evolution. So there is benefits and, cons, I guess, to going first and last. And, talking about benefits and losses, it's like the way the rigs are set up. Of course, the drivers were able to customize it a little bit according to, their heights and their liking. Yeah. So, of course, we saw when they were making their own, setups and how they were setting up their whole wheel compared to, the
just sitting on the seat. Of course, there's an incline. So yeah, all that comes into play as well. Of course, every driver has a different driving style. Someone likes the car a little understeery, whereas someone likes it a bit oversteery. And of course, the best part is to have a perfect setup where you don't have, either understeer or oversteer. So yeah, most of them are getting comfortable with their rigs, with their wheels, just their setups, getting used to the car, because of course, this is the finale of the esports, series. So yeah, it's a lot of nerves, a lot of opportunities, as well as it's a very, very good thing to have. You can be the first ACC esports.in champion. Absolutely. So, yeah. I mean, if you do win, it's obviously a very, very big thing, because your name gets etched in esports history, right? Exactly. I mean, you're winning ACC. Of course, we have the other games as well. We have returning champions for those games as well. Indeed. But ACC, of course, since it is our first, season of ACC, being in the Esports Premier Series, being the first winner is just a whole different feeling, because I was there. I set the stepping stones for the drivers afterwards to come and try and beat what I did or try and match what I did, So a lot of pressure on the drivers to, of course, get there and get their names etched in history of Esports Premier Series. And yeah, I genuinely cannot wait for the races to go, to be honest, because a lot of action definitely coming up ahead of us, a lot of chaos as well. And hopefully we can get going soon, because I'm pretty sure, as much as we are excited to go ahead, I'm pretty sure you guys watching are as well. But in the meantime, Swagger, what would you say? What are your predictions? Oh yeah, talking about the drivers, they're right here. But yeah, what are your predictions for the race that's coming up? Do you think there will be some sort of odd curveball that perhaps someone like Shan7 or FIFA Connect can throw right into the mix there, dominating the midfield or even challenging Tavlish for the win? Do you think, someone who we wouldn't really expect to be there, in the top 3 be there, or do you think the people who you expect to be in the top 3 will not be there? People like Tavlish, who you can see just in the background right there, Ajish, Sam as well, great drivers, these guys, and even Cyprithvi is there. So of course, all the drivers are, on screen right now. We have a lot of them just, doing some practice laps, getting used to the car as well. And this is the rig that we were talking about as well. Esports has done an amazing job to, set these up. And yeah, you can see that the drivers are ready. We can see Ninja wearing the gloves, and you can see that these guys are completely serious about this. So yeah, as you were talking about, earlier, these guys are completely, focused on what they want to do. They are top 10 drivers as of now in ACC because they have qualified for it. So yeah, they've tried the shot. They've got till here. Now all they have to do is perform today. And yeah, the reward is also as good as, the hard work that they've put in. So overall, I feel like, of course, Tavlish right there, he did, just demolish everyone in the qualifiers as well. Even coming into semi-finals, he had a pretty good lead. So everyone's, favorite is probably Tavlish, whereas we even have, other drivers. Those 10 didn't just come here without any skill. So yeah, all the hard work might just pay off. And of course, it's a race. Anything can happen going into the turn 1, lap 1. So anything can happen. We just have to wait and watch how, they just go through the whole first lap. Because first lap, mostly, even in real life for that matter, is pretty, it has a lot of carnage, a lot of cars just taking each other out. And of course, you even have cars going wide, cars coming back into the track. So you have to make sure you have a clean first lap and then continue your momentum from there. And yeah, just try and keep your car on track. That's, the biggest thing, because you don't want to go off track, spin out, and lose out on time. Absolutely. And I'm not sure if you watch races at Mount Panorama or Bathurst, whatever you want to call it. Throughout the history, not only of just, F1, but like other series as well, going into turn 1, that pressure mounts on everyone, regardless of who you are. And we're going to the track. That is amazing. We can see Tavlish Singh, of course, they are in their practice sessions, but absolutely amazing liveries out once again. But coming back to my point, that turn 1, you have to break somewhere around the 50-meter board or the 100.
you know, they get through turn one safely, because it is in everyone's best interest to do that, because we also have live stewarding right here. Yep. Stewards are, of course, also present here, who will be looking at any incidents that do happen, and of course, a lot of hard works are going to go in by the stewards as well, of giving out penalties for, of course, the person who does cause the incident. But let's just hope stewards have a really boring day, because we genuinely do not want any incidents here, do we? But again, it's like if there are incidents, you will get penalized for it. So this is not like, you know, some random arcade race where you can just hit someone off the track or even cut a corner and get away with it. So you will get penalized if you're unfair and unjust, or, you know, try and gain a competitive advantage by cutting a corner, if you want to say. So yeah, overall, we just saw a slight glimpse of the track. Talking about the track, we have, it's a very, very intricate track. You know, you have a downhill section, you have the S's, which is very, very hard on the braking as well, because if you don't get your braking right, you're probably going into a wall at over 100 kilometers per hour, and saving your car there will be a bit hard. So, of course, you even have almost 3 longest straights. You have the mountain straight, you even have the main straight, of course. Yeah. And yeah, overall, 3 straights, and it's going to be a match of fast, speed, corners, as well as slow speed corners. Absolutely. So yeah, it's going to be interesting to say the least. It is going to be interesting to see the Super Bowl as well that we're about to just get into. I've just got news that we are starting the Super Bowl. Of course, very excited. No place where they can cut the track other than in the last sector where it does open up a little bit. But it depends. Can they even get there in the first place? Exactly. Because the first 2 sectors are pretty much just about wide enough for 1 car and a half. Not 2 cars, a car and a half. So very hard to go side by side there. Basically, my point is very, very tight corners. A lot of braking action, which you have to be exact with, because a few meters here or there could result in absolute disaster for these guys. So yeah, we'll just have to see what these guys can do, and hopefully they don't screw up the first 2 sectors, because the 3rd sector is the fastest sector in this whole track. And this is the sort of downhill that Swagger was talking about. Might look easy on the camera, but as you are going downhill, there is a lot of camber changes, a lot of bumps. You have to brake right before the hoarding that's on the top, and you have to ensure that your car, does stop in time. If you do manage to get it well, you'll be able to stop it, although you don't really want to fully stop it, of course. You just want to slow down a bit and coast as you are going downhill before very, very tight right-hander comes through, and you have to brake for that. Very small bit of throttle, go downhill, and a left-hander. But in the meanwhile, Deepak is on the track, warming up his tires. And Swagger, why don't you warm up this session by talking over his lap? So Deepak getting onto the main straight, just now, pretty good with power, and of course this is the lap on top. This is how 1 lap, and you have to make it count. If you make a small mistake, it's pretty much done for. Going through turn 1 now, it was pretty wide, line as well. Pretty clean, didn't really make that much of a mistake. And this is the mountain straight right here, which is one of the longest straights on this circuit. But yeah, of course, going into turn 2 now, and this is a very, very intricate part of the track as well, where you want to go down to turn here, get those power just right, over steer coming out of turn 2. But overall, pretty decent looking lap right now. He hasn't really gone wide or needed his lap. So yeah, overall a pretty good lap right here. Going into turn 5 and 6 as well. Going to body corner as well now. And this is the most important part of this whole circuit. Going down the S's. And he gets his braking point right. So after this is really under control. Going down. Perfectly taken and not too shabby. Deepak right now in that Audi, he's making the car, just fly and glide across the track. Coming on to the Conrad straight as well. This is just, pedal to the metal, completely foot to the floor,
just try and make sure that your car does not mess up coming towards, you know, the chase, because it's a slight, you know, slight right, heavy braking, and a left-hander. So, yeah, there we go. Comes to the slight right, and now he has to get his braking point right, which I think he did. There we go. And yeah, slightly wide, I would say, but overall a very, very decent lap here by Deepak. He's of course the first person going out on track right now. And if you can see in the, you know, track map on the right, another car is out already, but that's how Super Bowl works. And Deepak setting a 2:03.1. That's a very, very respectable lap. And yeah, he just goes off track, gets back to the pits, and now we can go on board Shantanu. So would you like to take us through Shantanu's lap here? Absolutely. Coming into the final corner, great lap by Deepak, of course, but let's see if Shant 7 or Shantanu can beat it. Coming on the, of course, the main straight, pedal to the metal, braking between 150 and 100. No, it is between 100 and 150. Taking the apex immediately on the throttle, and we, of course, will have to be on throttle for the rest of the straight. Very, very good braking from him there, absolutely nailing the apex, getting a very good exit onto Mountain Straight. Coming into Griffin's Bend, he'll be braking right at the patch that you can see on the side. He hit the apex, immediately back on throttle. This is a corner where you don't really want to waste time. You do not want to let the car settle and want to, of course, go right on to the power. Same over here at the cutting. And absolutely amazing lap by Shant 7 so far, and a bit of contact on the side there. Shouldn't really affect him much, maybe a few tenths of damage, but nothing to be concerned about. And these corners, of course, you have to hold it in fourth. This one coming in fifth, slight lift, but I'm pretty sure he'll be able to go right about with it. All the way to the left, braking, a bit loose on the braking there initially, but he absolutely kept it under control. Very, very good stuff from Shantanu. Now coming into the Forest's Elbow, a very hard corner, second gear. Your car really wants to go off wide, as his car almost did, hitting the wall on the outside. But of course, he missed it by an absolute inch there. Full pedal to the metal. Ferrari, good and everything. Of course, he's going to have a lot of straight line in itself. And the lap is pretty much over for Shan. Of course, he's going to be hoping to beat Deepak's 2:03. Coming into the chase, very good braking. And now on to the final corner, hitting the apex, of course, right where it's supposed to be, comparing to Deepak's lap. And final corner, once again, a very slow corner. I believe the slowest corner of the whole track, and nailing it absolutely well. But unfortunately, almost a second off of Deepak, although it was quite clean in itself, I'd say. Yeah, we did have, you know, at least one Ferrari is on the grid, so that's one for the Tifosi fans out there. But yeah, overall, a pretty decent lap by Shan right there. Of course, it's a 1 second off, but again, these guys have to, you know, adapt to the cars as well as the whole rig, of course. So we are getting a few, you know, video captures of the drivers as well, driving the cars. And the only thing over here is that the other drivers just have to wait it out and, you know, make sure they are in that right mindset to try and put their lap in. So yeah, on board Sam right now, and he's, you know, doing pretty well. He's the only one in the BMW as well, and we have an amazing onboard shot as well for him, as well as his, you know, the way his rig is and the wheel movements as well. So that's a very cool feature that has been added to the stream. And overall, taking the turn pretty okay. Slight bit of oversteer there. Had to fight the car a little bit, going into the cutting and the quarrying corner, obviously. And here, just going up the hill, getting down to, you know, first gear or second actually. And yeah, up quarry corner now. A pretty decent lap. You know, it looks very clean, but of course, when we are on board and, you know, just in a different third-person camera, it makes a lot of difference. So yeah, Sam right now doing whatever he can. And yeah, there we go. We have the onboard camera right now. Going through Skyline and the SS now. Takes it pretty well. Just braking, going into the dipper now. And yeah, there we go. This is just such a, you know, close part of the circuit where if you make a slight mistake, you're into the wall, and that's pretty much, you know, the game done for you. Coming out of
the Forest Elbow, and that's a pretty decent line by Sam right there. And I think he could be, maybe closer to Deepak or even faster there, but we did see a few oversteers here and there. So yeah, it's going to be interesting to say the least, because Audi has one of the fastest top speeds as well over here. So yeah, it's like the Audi will be better on the straights, but then we have a very intricate section where you need to have the downforce, you need to go, and you have to make sure that your car is turning in as well. But yeah, coming to the last corner now, the Murray's corner, turning in well and going up to the line. Can Sam go fast? And he does by 5/8 of a second. So he is on pole right now and will become, starting the lap or starting the race in P1. So yeah, let's go on board the next driver, who is Absolutely a great lap by Sam, beating Deepak's already a very quick time by 5/10 here, and just goes to show that that BMW can adapt anywhere. I mean, it's just a car that's very good, just like the Ferrari overall. Of course, its downforce does help it, and yeah, a great lap by Sam. However, on board FIFA Kanak in a very, very beautiful black and gold livery, coming into the Griffin's Bend. Very, very good line through there on the throttle, coming into the third corner before he gets right into the cutting, on down to second, trying to get close to the wall, not close enough, unfortunately. That will be a few hundredths loss for him, but it shouldn't really affect his time if he can get it back in the other corners. Still full throttle there. Very brave by Kanak, because that corner is not easy to take in full throttle, as well as this one. Here, of course, all of the cars have to lift, but very, very brave sent by Kanak. Breaking right under the board, down to fourth, and then through third, down to second. Amazingly shifted the gears through there, and keeping it in second before going up to third, fourth, and then back to second. Missed up the braking a bit there, a bit of understeer, having to go off very, very wide there. I mean, there was practically no space left between his car and the wall on the outside, but luckily no contact, so that will not lose him any time. But already I see it's a bit of a time loss, so it will be absolutely crucial that he does get the chase as well as Murray's corner, which is the final corner. Absolutely correct, if he does want to have a shot at beating Sam. Otherwise, he'll have to settle for a provisional P2. Coming into the Murray's corner then, on board, getting past all of these boats, breaking right between 150, around 75, hitting the apex, a bit of oversteer on the exit, coming across the line, a 2-minute 1.5. And I was sitting here questioning his lap time. I mean, maybe he could have done a 2:01.3, but I mean, he's already a second faster than Sam. And now, yes, Sarthak Ray will have to see what he can do to perhaps challenge Kanak. I mean, that's already a very, very quick lap time. Indeed, that McLaren just flying through the whole course, and what a lap that is by Kanak to get almost a second over Sam, who we were actually thinking that, yeah, he did very well to stay in front of Deepak. So, yeah, on board Sarthak now, and he's also in the McLaren, and I feel like McLaren is one of the popular choices out there, because we already have 4 McLarens on the grid out of the 10. So yeah, a lot of drivers wanting to go for the McLaren, because of course after all the BOP changes in the game, ACC, there's a lot of different kind of metas that come out. So yeah, right now again on board Sarthak Ray, we can see that it's a very, very intricate game. You have perfect simulation. Make a small mistake here in the wall. This is exactly what we were talking about earlier as well, that if in, let's say lap 1, you are going side by side, it's going to be a huge issue, because it's going to be very tricky for 2 drivers, or let's say 2 cars to fit through this section of the track. Going downhill right now, and Ninja is completely focused. Sarthak Ray right now is trying to, get a better lap, a bit of snap down going into the braking, of course, but pretty decent exit out of the Forest Elbow right there. And going onto the contour straight now, this is just flat out pedal to the metal, and yeah, just have to get to
the chase, trying to just have to spot that 150-meter board or even the 100-meter board on the right-hander right there. Brake, turn left, instant right as well. And then, of course, you have to make sure you get your braking right for the final Murray's corner as well, which is right there at the 100-meter board, coming down to second. And pretty smooth as well coming out of there, but he did make a few mistakes, and that has cost him 7/10 of a second. Sarthak Ray could only put that McLaren in P7. Of course, these guys are running different setups as well, so there might be a few things that maybe Kanak likes better. Yeah. And of course, his car is set perfectly because he has P1 right now. Yeah. But we still have 5 more drivers left, and all 5 of them, I feel like there'll be at least 1 or 2 who can put their car up in P1. Absolutely. I mean, we could see for the brief moment that he was on camera there, that face that was very focused instantly turned into absolute disappointment. Those mistakes really creeping in on Sarthak, and that is what I was talking about earlier. The pressure will absolutely get to these guys, and clearly it has already started setting in. Dipanshu going off wide. Luckily, the track limits are very, very lenient through turn 1, but he's keeping it stable, going through the mountain straight, braking right at the patch that will be coming up right there, hitting the apex, immediately back on throttle. You want to force the car to understeer, and he has done it right on the edge of the track limits, going up through the cutting corner and taking it in first gear. That is a bit odd because drivers usually take it in second, but first, once again, depends upon what, of course, his driving style is. If he's decided that first is what suits him, then let it be first. But yeah, oh, the contact with the wall there, that is absolutely going to lose him time. That is going to give him a bit of damage that he'll have to carry on through the lap. A bit of understeer will kick in, completely putting off the balance of the car, which could screw him over. But he's still continuing on. Not over. Car number 95, that green McLaren, still going on. And there you go. That's the understeer hitting the wall again on the exit. Absolutely not an ideal situation for Dipanshu. He'll be lucky to get into the provisional top 3, I'd say, after this qualifying so far, after his lap so far. But let's just hope that at least maybe in the race, he can pull something, because his race pace is pretty much out of this world. Like, very, very quick in terms of race pace, so that is where he can catch back. But for now, he will have to deal with this car that he has. Laps almost over and missing the braking point. Once again, understeer on the grass, and that is 2.3 seconds off of Kanak. I mean, that is... yeah, absolutely not an ideal lap for him, but ideal for Shubham Das, because more positions for him, eh? Indeed, he's also in the Audi just like Deepak, and we just have to see if he's able to put a better lap in compared to, his more like teammate, or should I just say, his opponent, who's also chosen the Audi. But yeah, we can see that both the McLarens, of course, Kanak and Sarthak, they were just able to work the car out, whereas maybe, Dipanshu is having a little bit of issues with his, let's say, setup and getting used to the setup more like. So, yeah, just on board Shubham Das right now. He has a lot of pressure upon him, of course. Like, as you were saying, there are times already put in, and they have to, try and beat that. You know that every mistake is going to cost you around a 10th or 2 at least. So, yeah, they have to be on their toes. Of course, they'll get a small break before going into the qualifying 2 as well. So, yeah, we'll just see how everything goes. And yeah, ooh, Shubham having a crazy snap and goes into the wall as well. That is not going to help him for the super pole at all. He had a crazy snap of oversteer right there. Yeah. Wasn't able to, just hold the car, but he still pushes on. Of course, anything can happen here. Very, very close to the wall right there. But yeah, that was super, super. Of course, Shubham right now will be just confused of what happened, but yeah, he has to just put his head down, try and finish his lap, and maybe get at least P5, P6, or else it's going to be hard for him. Coming into the forest elbow right now,
pretty decent exit, but yeah, this I don't think can be the fastest lap out there because of that crazy snap. But yeah, as of now, it looks as if he just had a snap. Of course, right there, you can see his concentration. And the other drivers just looking at the screen, waiting for their chance as well for the Super Bowl. Of course, all 10 drivers will be on track in just a couple of minutes once the Super Bowl is done. So that's where all the action will start. Coming to the last corner right now on board was Shubham Das. And getting on to the last and final turn. Gets out a pretty decent exit compared to the McLaren just before him. But how much has that snap lost him? And that actually, because he touched the wall, I think his lap just didn't count. So that is super unfortunate for Shubham because that was an invalid lap. So that is what we were talking about, high stakes, high rewards, because you just have one shot of, putting your lap time in. And because of that, let's say mistake, Shubham right now does not have a chance of, he will basically be starting last. Absolutely. Unless, I don't know, some big thing happens and like someone gets disqualified, which is pretty much impossible in Super Bowl. He will be starting last. A very, very bad situation from him. And when, of course, when he was there on the camera, while we are watching the racing right now, but when his face was there on the camera, you could see it wasn't even that he was confused. He was just frustrated with what was happening. And he was like, okay, I just need to finish this lap, get across the line, and at the end of the day, even if it was an invalidated lap, it is still another lap that is added to his points tally. And talking about points tally, of course, Davleesh with a lot of points is still going on, getting so close to the wall. I mean, a lot of drivers do back off because they just see the wall getting closer and closer, but Davleesh is the only one who challenges the walls and absolutely rides them without, of course, picking up any damage. Absolutely millimeter perfect lines by Davleesh going down this very tricky section, very close to the apex. Back on power, coming into Forrest's elbow in just about a second here, and down into second gear, getting very close to the Bentley boards on the inside. On the exit, I think had a bit of contact with the wall there. Should not be a big issue for him at all. On the Connaught straight now, and of course, that Lambo is very, very quick in the straights. I mean, that is how Lambo have made their cars to be, and that is exactly what he'll be taking the most benefit out of. Coming now, braking at just before 100, around 110, hitting the apex back on power. You can see the amount of corrections he's doing. Not a lot compared to the other drivers. Finally coming into Murray's corner, then braking at 80, I'd say. Great exit by Davleesh on power, coming across the line, a 2:08. And he's disappointed with it. I mean, I don't think anyone, I mean, they will get close. We still have Sai Prithvi and Gaurav Arora who will definitely get close. But I mean, a 2:08 is already proper international esports pace. And he's disappointed by it. I think he had maybe a 59 in there, but yeah, I mean, that is a very, very quick lap in itself. And if anything, he should be happy that he did not invalidate it anywhere, hit the wall, or make a very big mistake, which is, of course, quite possible. But yeah, talking about, the reaction there, of course, we have Sai Prithvi on screen right now. We can see the onboard as well as the camera view. And Davleesh right in the back looking at his lap right now. And you know that Davleesh is slightly, concerned about his lap because yes, there was, maybe slight touches here and there. You can see that both of these guys are pushing it to the limit right here. So yeah, Sai right now, if he can just, get a better lap than Davleesh, that will be an amazing chance for him to take pole as well as a victory in Bathurst, because again, it's pretty hard to overtake on Bathurst. But yeah, overall right now, Sai is doing a pretty decent job. The car does not look very twitchy. It feels as if, he's completely under control, and some great camera work by the team as well. Us looking at him, as well as, just the car. And yeah, coming out of Forrest's elbow now. And again, it's a very, very, very close to the wall. Just same like Davleesh. And you can see that the difference between Kanak and Davleesh right now, the P1 and P2, is 7 tenths. So the question right now is, where will Sai Prithvi end up?
because we know he's fast. He has, he has given some good competition to Doublish earlier on as well in different leagues. So it's going to be interesting to see where he can put this McLaren of his. He's completely setting it, going from one part of the road to the second edge of the road, coming on to the last and final turn. On the power, pretty right, and it's just a pedal to the metal now, going on to the last and start finish straight. He gets P2, so just 4 tenths off of Doublish, and now I think Doublish can take a slight breath because there's a bit of time before Gaurav starts his lap. So yeah, maybe now he's a bit confident that I did make maybe a slight mistake in the first part. Now it's time to focus on the race and focus on Gaurav, of course, Gaurav's lap as well, to see where they're all going to end up. Absolutely. Going onward, Gaurav Arora, the only Porsche on this grid, braking very close to 50 there. I'd say about 70 meters where he broke at. On the power, Porsche, its, I guess, biggest benefit is that it has one of the best straight lines in this game. Of course, there are other cars that are close, but it is definitely up there. And Gaurav, of course, will be doing whatever he can to extract that out of the car along with the corners, coming through into the very, very tricky slow section, getting very close to the wall. Second gear once again, inch perfect, millimeter perfect, I'd say, through there. And yeah, overall, just a great lap so far. Indeed, but like he's been doing pretty well till now. Yeah. But yeah, it's like he's also pushing the car completely very close to the walls again. And overall, not too bad because they're coming up to Sunshine now. He is in the Porsche, of course, and there we go, just pushing a bit too much and goes completely into the wall. So that's pretty much his lap over. Head shake from Panda as well. But yeah, he knows that there's still time. We have 3 races and we will have enough, he will have enough time to come back and just in the race, him and SD, both of them starting from the back. We can see a bit of rivalry between them as well. So it's going to be interesting to see what kind of lap times they can put and how consistent they can be, because at the end of the day, it's just about the races. The Super Bowl is just where you start, whereas in the race, it's where you finish. So still a lot of action to come through, and yeah, we just have to wait and watch. Coming up to the final corner now, he's basically just chilling and getting the car back home because of course he did hit the wall, so his time may or may not have been deleted. And coming up to the final, the start finish straight, his lap has been deleted. So right now we have the whole list. We have Doublish in P1, Sai Prithvi in P2, Kanak in P3, 4th is Sarthak Ray, 5th is Sam, 6th is Deepak, and yeah, it's just unfortunate for the bottom 4 because 2 of them didn't even have a lap put in, and like Sam and I think it was Shan who weren't able to really get the extremes out of the car. So yeah, unlucky for them, but again, they still have the race to try and get all that back. Absolutely, and yeah, those guys, of course, especially Gaurav and Shubham, will be under immense pressure to perform now, and they will pretty much have to put in all of the work, everything that they have prepared for, to go in and put in the best performance that they can in the race. They have 20 minutes to do it, but then again, in Bathurst, even a 24-hour race is too short of a distance to make overtakes and all of that. So yeah, a lot of pressure on these guys to perform. They'll have to do whatever that they can to make sure that they can, of course, gain a lot of positions. And as we did say earlier, it's not the end of the world because it's just the first race. It's just Super Bowl. And even if they finish, I'd say, in the top 8 or something, they should still be fine because they do have 2 other races to recover from it. So yeah, I mean, a lot of points still left on the table. 3 races yet to come, 20 minutes at Bathurst, 20 minutes at Silverstone, and 45 at Hungaroring. So a lot more to still play for, of course.
Of course, and one thing that these guys can try now, because of course they were not able to really put the lap that they wanted, is they can try a last to question mark challenge. We see a lot of them happening on YouTube. Yeah. So at least they can try and do that. Just try to come from last or all the way at the back of the grid to maybe let's say P5, P4, or maybe even P1. Who knows? Because there could be a crash up front. Anything can happen. And of course, we'll have to wait to see what kind of laps they do, how consistent they are, because as we saw, just right now on screen in Super Bowl itself, a lot of them making a few mistakes here and there. So maybe a bit of nervousness, or maybe just pushing a bit too much. Yeah. Of course, it's Super Bowl, you want to try and put your best lap in, whereas race, you can chill a little bit, just try and be a bit more consistent and try and get the car home. So we just have to wait and see what kind of performance they can do in the race, because as I said earlier, Super Bowl is just where you start, whereas the race is where you finish. Absolutely, as is the mindset for pretty much any racing driver, regardless of the class or whatever, is that, qualifying is one thing, but the race is where you score points. And the race is where, of course, your finishing position matters, not the qualifying, because let me take you back to Monza in 2020. I mean, Pierre Gasly was pretty much towards the end of the grid, and then he ended up winning the race. I mean, yes, a lot of factors went into it, but then again, that is racing. A lot of factors will come into play for anything, and for all we know, SD or Shubham Das and Gaurav, by the end of the race, they could be there in the top 5 as well, depending on, of course, what happens. So all to play for. They can do a lot of things. And yeah, I mean, all they have to do is keep a calm head. Anyways, whatever the drivers that we have, all of them are not really known for losing their heads. They are very, very calm people, and they will keep a very, very cool head going into the race. But of course, if things do start building up, then it could get to them. But I don't think it will be, a lot. And I'm pretty sure that whatever happens, only one thing will be in their mind: damage, unfortunate situation, get past it, finish in the top 3. Indeed. And yeah, while we wait for the drivers to get ready for, of course, the race as well, the server needs to restart once or twice. That's how ACC works. So once it's completely set up, we'll get back to you. And until then, let's take a quick short break, and we'll see you guys on stream really, really soon.
Won't you take me I can wait another minute. I can wait another second to be with you for an eternity. I feel like I am in a daydream. Every moment that I spend with you, with you. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in night. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. We were traveling mountains, seas. We said no matter fire, no, we couldn't higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean, memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We said no matter fire, knowing we couldn't higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.
straight from the top. And I'm hating the slack, couple man slide around like the hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, if we try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control. And we're back after a very, very short break, and then, of course, a very, very good Super Bowl. Yeah, I mean, we only have the races left that are coming up. Of course, all of the points to gain are in the races. Gaurav and Shubham starting from P9 and P10. A lot of pressure on them. Of course, Davlish in P1 still was disappointed with his absolutely amazing lap. Yep. But, I mean, of course, he is someone who goes for the top of the leaderboards. Even though he was already at the top of the leaderboards, I guess he just wanted more. We did see some very minor mistakes, but then I guess, you know, when at his level, even those minor mistakes get turned into something really, really big, right? So that is something that will be, I'm pretty sure he's going to iron out those mistakes as we go into the race. Yep. 20 minutes of Bathurst coming up. It is going to be a dry race, but the track temperatures are quite high. 26, I believe, degrees or 28 degrees ambient temperature, sorry, which means that it is going to be very, very hot for the tires at an already a very challenging track where the tires melt even in cold temperatures. So yeah, it is going to be a very, very big struggle for these guys, especially for Gaurav, who is also in the Porsche. And that car is known for eating up the rear tires. And in this track, of course, you need the rear tires mainly because of the slow speed corners. You need the car to, you know, stay balanced. You need the car to turn in. So it will be a challenge for him and, of course, all of the drivers in general. But yeah, of course, not just the temperatures or the tires. These drivers did make a few mistakes here and there. You know, everyone, even Davlish for that matter, after setting that lap, he had a bit of a head shake. He wasn't really happy with the tires, or should I say, he wasn't really happy with the lap. So, of course, a few tenths here and there for all the drivers, to be very honest. But yeah, at the end of the day, it's about getting your race right, not getting into any contact, not really making many mistakes, and basically trying to finish the whole race, you know, in one piece.
and of course just trying to finish the race overall. But yeah, they just have to see, like, what kind of setup changes they can do. Of course, they can make setup changes right now. So we have to make sure they have a right setup. And coming from Super Bowl, of course, you just get one lap for the setup. So you have to make sure you don't really mess up too much, because if you change the setup and then it doesn't work for you, it's pretty bad. So yeah, overall, just have to focus on the race strategy, make sure that their fuel, of course, which is a huge part of any racing, is right. And yeah, then get used to the track in the first few laps, because they have to do the lap for 20 minutes. So yeah, overall, it's going to be an action-packed race coming up. And would you like to add up something to that? I mean, you've pretty much described it quite well. I'd say it is going to be challenging. It is, of course, also going to be fun for the drivers and, of course, fun for us. A lot of chaos that could ensue, obviously, and a lot of, I guess, brave sense that will also be coming, especially after the Conrad Straight. Going into that slow speed second gear corner, although it is going uphill, that helps you because gravity will naturally slow you down. On top of that, you're using the brakes to slow yourself down. So you can brake just that little bit later, and your car will, of course, still stick. And that is one place where, of course, people will be going for a move. And yeah, we'll just have to see what really happens, because the slipstream will be key, especially because they will be running maximum downforce here. Which means that, of course, they're not going to have a lot of straight line. But if you are tucked into the slipstream, that gives you around 5 to 10 kph of a boost in your top speed, which could, of course, help you out in making that overtake, but, of course, help you carry that momentum into the corners as well, which could, help you make that gap on the car that you've just overtaken. Or, of course, being off the line, there will be a lot of marbles. Coming off from the tires, and if you do put the car over there as well, the car that you're fighting, if you force them onto there, they will be struggling with the tire grip, on that bit of the track as well. So yeah, a lot of things you can do in Bathurst, not just in Bathurst. I mean, this kind of applies to all of the tracks, but it is emphasized in Bathurst. So a lot of things that these guys can do, and yeah, it's all up to them as to how they play out their overtakes and their defenses. Then the thing that I was about to say was, of course, they have to, there's so many things that they have to look at and try and just rectify and even nail it. So there are a lot of things, a lot of variables that are going to play for, this particular race. And of course, we have a 20-minute race right now. Then we'll have another race in Silverstone, which is going to be completely wets. So that's going to be very, very challenging for the drivers, because, of course, they are on a different setup, as well as, the braking and everything has to be on point. So we'll just have to see what kind of, how they will be able to adapt from a very tricky Bathurst to a pretty open track in Silverstone, but a completely wet track. So yeah, a lot of things that they have to get used to, but of course, this is esports at the end of the day. So the key over here is try and adapt to different things and basically get used to the different tracks and used to your whole rig as well. So yeah, we're just waiting on the server to get ready and for the drivers to get on track. Of course, we'll have a rolling start procedure. So that is going to be extremely important as well, because as soon as the lights go green, you have to make sure that you just accelerate and don't lose out on time and lose positions. Absolutely. Short formation lap is what we call it in ACC, and just to give a gist to the viewers of what it is, basically the drivers will be sat right before the final corner, and of course they'll have around 2 minutes to make any changes to the setups if they do need to do it. And in that meantime, they'll of course just be preparing their minds, their cars, changing pressures if necessary, making a few changes if they are still unsatisfied with something, or maybe something that can help them in the race, especially at Bathurst, to control tire wear or fuel consumption or something. So after those 2 minutes have elapsed, we will begin the short formation lap, and they'll come through the final corner, and they'll be told to maintain 70 kph. This is regardless of the track. 70 kph is on all tracks. And when the flags go green, pedal to the metal,
try and make sure you don't get hit into turn 1, and of course keep it clean through turn 1 and the rest of the race as well. That is a very short gist of what a short formation lap is, and in that the key will be, of course, you can't weave, because in GT3 cars or in GT cars in general, the first few laps, the tires, the grip that they give you is the best grip, of course, you'll have at any point. Their degradation is slow, but then they fall off from the peak very, very quickly. So Indeed, yeah. the best way to warm up your tires is using the brakes. Heat transfer, the key component of, you know, building up the temperature in the tires. But yeah, we've been seeing a lot of different, let's say, comments as well on the YouTube channel where everyone's asking for the timesheet. So we'll try and get that up on screen if possible. But if not, of course, we have ACC today, and we have other events, of course, after this. But yeah, all of them are lined up. We'll have a lot of different casters, a lot of different games as well, including Free Fire, maybe even FIFA, and even CS maybe today or tomorrow. So Pokemon Unite as well. of course, we can't forget Pokemon Unite. So yeah, a lot of different games hosted by Esportz right here, and most of these are LAN-based. So all the teams will be flown into Mumbai, and you guys can join us in Mumbai as well. You can get those tickets in Book My Show. Yep. And yeah, you can come join us over here. And of course, we can see the whole set behind us as well. So yeah, everyone can come to NESCO over here out in Mumbai. Yeah. But yeah, talking about ACC now, we have all the drivers who are ready, and maybe even putting in a bit more of practice because they really need it, because they just flew in yesterday, or maybe took a train over here, or they just traveled here pretty tired, woke up, came to the site, and tried to get some practice in. So everyone is just trying to adjust, get used to the whole track, used to the whole cars again, because it's one thing of playing at home and getting used to your own rig, and there's no pressure. There's, you can literally see your opponent on the side here. Exactly. Pretty much. So that is something which not everyone is used to, but I feel like that's something which can kind of it's like an advantage to some people, because some people like to see their opponents and be like, okay, I am better than you. I want to do better than you. But hopefully, let's say if there's a crash, no one gets out of their chair and starts a fight. So yeah, a lot of content to be, we still get. Of course, we still have 3 races. It's a 20-minute race right now in Bathurst, 20-minute wet race in Silverstone, and a 45-minute Hungary race where fuel also will play a big part in the whole race, because right now they can just fuel to the end of 20 minutes and just finish the whole race pretty much. So yeah. Well, not just the fuel. In the 45-minute race, they'll also have to look at tire wear, especially at Hungary. Already a very high downforce circuit, but usually the way, of course, physics work is that high downforce means lesser tire wear. Of course, because you're not putting a lot of pressure through the tires, they're not slipping through the corners. However, Hungary is a track where even if you don't want the tires to slip and all that, you absolutely eat them up, because of the amount of steering angle that you have to put in for corner after corner, the tires just scrub. And in the first few laps, sure, you'll be fine, but then the tire management does become a very, very crucial thing that, you have to manage. Some drivers will opt for perhaps, a tire change as well. Of course, the minimum pit stop time being 25 seconds. If they just change the tires, it's 30 seconds. So 5 additional seconds. But if some drivers are confident, especially the McLaren, its BOP allows it to use up its tires for longer because it has low tire wear to begin with. So, people like Dipanshu or, maybe even Sai Prithvi, they can absolutely extend their stints out without having to worrying about, their tires getting changed. And for all they care about, they can just change the fuel or, add in a bit of fuel in their pit stops and then go on. But we'll get to that later. Let's come back to Bathurst for now. I mean, there's so many strategies available for Hungary. That we'll discuss about it when we get to Hungary. For now, coming back to Bathurst, I mean, the only thing that's really left for them to do is just make sure that they keep it clean, keep reminding themselves that they keep it clean, because they can get into the situation where the nerves take over
and they end up making a mistake. So even if they do get nervous, main goal is to just let the drivers by. That is what you see from a lot of these great drivers as well. If they get nervous or if they're in any sort of situation, they let the other drivers by, recoup themselves in their minds, and then go right back at it. And that is, of course, one of the signs of a great driver. And we'll definitely see some of that today if there are any incidents to happen. Yeah, talking about mentality, you know, it's like a lot of these drivers, let's say they aren't the best in qualifying, but then come back to the race and they have some very, very consistent lap times, because of course you have a lot of factors, as you were stating earlier. We have the tire wear, the fuel burn and whatnot. So qualifying is, you know, the least fuel possible, and just try and just, you know, send it everywhere pretty much. Whereas in the race, you have to make sure that you don't have any contact. There'll be other drivers with you. Whereas in qualifying, it's just you alone. Focus on your lap, put the best lap in, you know, whatever is possible. So yeah, in the race, you have to make sure that if someone's going down the inside, you have to give them space, because otherwise you'll probably get a penalty for, you know, just taking them out. So a lot of strategies and a lot of variables as well for the main race. So yeah, we still have 20, 45 minutes of different categories of races. So yeah, we're just waiting for the race to start. And there we go. As soon as we're talking about that, the 20-minute race is about to be a go. And yeah, all the cars are ready. 18 seconds till the race start. So The formation. yeah, formation to start, of course. And it's going to be a pretty short, you know, let's say rolling start to get to the start-finish straight and then start the whole thing. So yeah, we can see all the 10 drivers in the different cars. Lambo at the start, have a McLaren, you know, I think 2 and 3, even 4 to be very honest. So yeah, a lot of drivers ready, and the formation, you know, the short formation lap has started. So they have to get down to 80 kilometers per hour after a point, of course. 70. Okay, yeah, 70 kilometers per hour after a point, of course. But yeah, getting into the formation now, the 2x2x2, and I think that's lights out, and the, you know, green flags here. And are they racing already? They are, of course, they are. The flags are out. We can see Sarthak right behind. The timing sheets are once again messed up. They will sort themselves out once they cross the first sector line, but he is following a blue-colored, I believe, Audi right in front of him, and you can see all the drivers on the right-hand side, very focused as to what's happening, and I'm sure that everyone's gotten away clean, and I'm sure there have been no incidents so far, despite the chances of it, you know, being quite high. Yeah, well, I think Davlish is still in the lead. Maybe Shubham Das and Gaurav Arora have caught up a few positions. But yeah, maybe, you know, just a slight technical glitch Yeah. from the team side. Of course, they are working day in and day out to get this whole thing set up. So yeah, just a small issue right there. But hopefully, you know, we get back to the racing as well, because that was, you know, it just looks so calm, because everyone just starts off at the same speed. Of course, you're at 70 kilometers per hour, as you said, and just after that, the acceleration that the top two had was pretty crazy. And yeah, right there, we are back for a bit more racing. We can see that Davlish is already, you know, around, actually, only 0.2 of a second fast, or in front of Sai Prithvi right there. We have Kanak in P3, Sarthak Ray in P4, Deepak P5, and Shubham has already, you know, gained a few positions. He's up to P6, and I think he started P8, so that's a good start from him. And we have a nice split screen going on for the lead right here, which is the Lambo of Davlish Singh, and in P2 we have the McLaren of Sai Prithvi. Yeah, well, a great battle between these two guys. Of course, the first lap coming to an end here, and by the looks of it, these guys have gotten away quite cleanly, and no incidents so far. We can see Shubham Das. Yeah, my prediction was correct. He's in P6 right now. Sarthak Ray maintaining his P4, and Deepak in P5, so moving up a position. Car number 95, oh, that's Dipanshu, who's actually been caught up in an incident, so that is a bit where I was wrong. So there has been some sort of an incident, but Dipanshu is last right now, a bit far from the rest of the pack. Not to worry, 17.5 minutes to go. I'm pretty sure he can catch back up. But Sai Prithvi giving the
Davlish the run for his money right now, as he is looking to send it, but of course not a lot of places to send it. Still following very closely with Davlish, putting a lot of pressure on him, making sure that he's always there in Davlish's mirrors, so that whenever Davlish does look up on the top of his screen, looking at his rearview mirror, he can see Sai Prithvi's car right there. Davlish hit the wall, whereas Sai Prithvi did. So a bit of time gain. Lambo, of course, will be much faster in this section, but as we start going downhill, so somewhere from up here, the McLaren will pick back up because of its balance of power, and of course, it's all about the long game as well. So Sai Prithvi trying not to make any mistakes, just making sure he can finish in the top 3, even if he can't really get close to Davlish, and within the slipstream of Davlish now, and he'll be trying to get close to them, or get close to Davlish as quickly as possible, while of course Kanak in P3 defending from Sadak. And yeah, in race 1 itself, you can see that Davlish and Sai are on kind of like a different level, because they already have such a huge gap, almost 3 seconds to the person in P3, which is Kanak. And yeah, overall, they both are doing a very, very good job, to be honest, because both of them are doing pretty much similar laps. Of course, Davlish slightly better lap times compared to Sai, but Sai is not giving up. He's still right behind Sai. So I think we'd have to do a quick restart of the game as well, because of few technical glitches, and we did see that Dipanshu was all the way back in P10, so maybe a technical glitch right there. So pretty unfortunate for that, but what a start by Davlish as well as Sai. We were talking about this earlier as well, that will anyone be able to challenge Davlish, who has been showing that he's been doing extremely well throughout the qualifiers as well as the semi-finals. So coming to the finals, Sai has a very, very good chance of, let's say, dethroning Davlish and maybe getting that P1 from him, because we know for a fact that all of them have obviously practiced, and Sai does like a bit of vet session. So we'll just have to see if he is able to, maybe let's say get P1 in Silverstone, a track which he might like. And of course, coming to the 45-minute race, you have to have a lot of endurance and get till the end. Of course, I mean, talking about endurance, these guys have partaken in a lot of endurance races, so they are used to that endurance bit. But when you pack it down into just the 45-minute race where you have to do a pit stop, it does get extremely hectic. I mean, at one point, I'm pretty sure we'll be seeing multiple cars in the pits just following each other, and there'll be a big scramble, because if someone does have damage, they'll of course repair that damage. If someone wants to change their tires, they change their tires. So the order will definitely not be the same when they do come out of the pits, when comparing to when they do go into the pits. And yeah, once again, we'll just have to wait and watch for it, because a lot of racing action still to come. And once again, coming back to Bathurst, I mean, yes, Davlish did get away well. Now, yes, Shubham Das did, go up into P6, but a restart. Of course, we had a bit of a technical glitch, but that really, I mean, stuff happens. I mean, it's out of our control. And of course, we'll restart. We'll be right back very, very shortly. And for all we know, Davlish might not be in P1 and Shubham might not be in P6 once, the restart commences. So once we do restart, we'll, join you guys right back. In the meanwhile, go have a short break. And while we are on a break, let's get, the stream up a few likes as well. And yeah, make sure to comment down below, like, which driver you support, who you support, even in ACC. And yeah, we should be back after a short break. So see you guys soon. Well, I guess we ain't getting a break. That's completely fine as well. But yeah, you guys can, just send your opinions on, the chat as well. We have the live chat right in front of us, and we can see you guys. That is why we're looking down, by the way. Yeah, and let's just talk about a little bit about, the rigs that we have. So of course, Logitech is the official, sponsor as well, and they have been, it's been great to have a Logitech G29 here with, of course, the stock G29 pedals as well. So it's a very, very good wheel, I would say. Absolutely. And yeah, let's just
let's more than like before we go into deeper into this topic, let's take a short break now, and we'll get back soon. We could be taking control, yeah.
after that break, of course, we had to restart. A bit of a technical glitch, but of course, not a big issue. We've gotten past it. 20 minutes of Bathurst is still coming up. Conditions will still be the same. Dry and challenging, of course. I mean, Bathurst will always be challenging, but we'll get going very, very shortly here, and I'm pretty sure, you know, the restart has added a curveball, because those drivers, when they are, you know, going from qualifying, of course, they go into the practice session and then they go into the race again. So they do have a bit of flow state going on where they're just completely focused on driving. But now that a restart has occurred, that flow state has completely diminished. So there could be a chance that they might not get the focus back quick enough, and then there might be a few mistakes here and there. And for all we know, Sai Prithvi or Kanak or any of the drivers, they can take the lead away from Davlish, or even, you know, Gaurav Arora and Shubham. They can be like far into the top 5 by the end of lap 1 if, you know, things were to repeat themselves. And of course, a few of the drivers have nothing to lose. You know, you have to just try and go for P1 at any point given. So yeah, a lot of opportunities for the drivers, because of course it's a restart. Few of them can lose a few, you know, positions, whereas the others have a chance of gaining the few positions. Of course, from the last race that we had just had, like before the restart, Dipanshu was one of the person who, you know, got the bad end of the stick, let's say. Yeah. So yeah, he has a good chance of getting back now and trying to get a few positions. Whereas, you know, let's say as the likes of Davlish or even FIFA Kanak for that matter, he was able to, you know, just keep the position P3, and Davlish was able to keep the position from Sai, who was in P2. So yeah, overall a pretty good opportunity for all of them to do better, and there are chances that we have a bit of carnage as well. So of course it's a 50-50, and yeah, we're just waiting for the race to start yet again. And as soon as the race starts, we know we will be swapping screens and we'll get some more racing in, of course. And let's not forget, we are reading the chat here, and we have seen a lot of support for Shant 7. I mean, people are going crazy about Shant 7, and I don't think he knows about it right now, because of course he's just trying to focus onto the race. But yeah, a lot of support for Shant 7, of course a lot of support for Davlish as well. So pressure mounting on those guys. Shant 7 not in a bad position, of course, just starting right behind Dipanshu, who's in P7, and Shan is in P8. So it's not the end of the world. Those guys can of course recover and have a very good race coming up ahead of them. So yeah, Shant 7, you know, get your game up and focus. Come on, you can do this. A lot of support. But yeah, of course, Shan is also in the Ferrari. So all the Tifosi fans, of course, you know, we are meant to support supposed to support Shan right there. But yeah, we have to see how he performs, because of course he is one of the wild cards who got pulled in at the end of, you know, he didn't really get, I think that he didn't do many practice laps or anything. So yeah, a bit less on the practice side, but he can put in consistent laps. We know that he can put in consistent laps. So we just have to wait and watch what kind of race we are going to have. Of course, we can have a complete opposite of what we had in the first time around, but again, it can just be like a lot of crashes, which will spice it up for us, but definitely not for the drivers. Absolutely, and I'm pretty sure the viewers will of course enjoy watching a bit of a carnage, but emotions will run high when that carnage does ensue. And I'm still once again very confident, these guys, that there will not be any major crashes. A few mistakes, a few incidents are bound to happen, but I don't think there'll be a massive pile up. And yeah, I'm pretty sure everyone will move on, and you know, within the first few laps, maybe of course the incidents will happen if they were to happen, and then of course they'll move on from there and, you know, put in the best that they can to recover from whatever's happened so far. So yeah, I'm quite confident in these guys. They're going to put up a very good show. Restart is done. I think we'll be moving to the game in some time, hopefully very, very quickly. And I genuinely cannot wait to see these guys perform at the top level of Indian sim racing. And of course, you know, huge thanks to everyone who's here on, you know, for the LAN as well, to, you know, come here live and watch the whole event. Absolutely. And thanks to everyone out there as well who have been working day and night to get this whole event sorted. You know, the cameraman, the lights, everything pretty much. You know, there was so much going on, and yeah, it's a pretty good job. Like, if you guys from the stream as well come over here, you can see there's so much over here. Absolutely. And of course, you know, it's like there's so many people who come here
just to look at the event and see what other people are doing as well. So yeah, a lot of interaction, and a lot of people were very, very excited about, of course, ACC, and of course the other games that we have, like Free Fire, Pokemon Unite, CS2, as well as the other games which are there. So yeah, overall a lot of electric crowd, and pretty happy with the kind of turnout we had as well. Absolutely. So yeah, of course, this is just the first day. We still have a few more days of just the games, and yeah, we just have to wait and watch. It's waiting for the race, of course, but yeah, a lot of other games as well, which are going to happen maybe in the evening tonight. Yeah, I mean the schedule is given in the description of the stream if you are watching it on YouTube, so you can go and check that out. And I believe the schedule is released as well, so I'm pretty sure you'll be able to find it somewhere. And yeah, I know a lot of people are waiting for Free Fire and the other games as well. And of course, I mean, it's a whole LAN event. There's going to be multiple games happening, so just wait a little bit more, and I'm pretty sure there will be what you need to watch. But of course, let's give credit to ACC as well. I mean, the first time we're here, and we haven't even properly begun the first race. A lot of expectations on these guys to perform and set the proper stepping stones for the upcoming seasons as well. So yeah. Short formation up about to begin, and I think Swagger, I think you can take us away with the start again. Yep, so as I was saying, we're back for the race now, and let's see what these drivers can do. We have a nice capture on the right as well, and you can see that there's kind of a bit of a crowd at the background. So yeah, all of them just starting up. It's going to be a 2x2 lineup yet again, just like last time around, and let's see if this time it's a bit more cleaner or not. And it's still red lights. We are waiting for the green flags, and there we go. The green flags are out. And actually speaking, Sai Prithvi has a better, just start compared to Davlish. And there's a contact at the background. The top three are just, sailing out in the distance. No contact right there. But the guys at the back, they did have a bit of contact. They were going 3 wide going into turn 1. And yeah, we're just focusing on the top 3. Of course, Sai getting a very good start, but yeah, just settling down right behind Davlish, and FIFA Kanak right behind him, Sarthak Ray in P4, and Dipanshu P5. He was pretty much P10 last time around. The restart helping him this time, and we can see that Deepak is P7 right behind them. All of them very, very close to each other. In the background as well, we saw a Porsche going slightly wide, maybe even too wide going into the cutting. And yeah, what a start this has been simply. It has been an amazing start. You can see all of the drivers, the absolute focus on their faces, just making sure that they keep it clean, making sure they can survive through this race and keep on going until the end. Deepak Raj in P7, so of course there have been a few people who have fallen back down in a few positions, but absolutely not a big issue. Sai Prithvi keeping that pressure on Davlish. He's still within that half a second as he was right before the restart, and he is making sure that Davlish sees his car, and he makes sure that Davlish does fall under pressure. As we can see Sarthak Ray on the screen as well, who is right behind Kanak. Both of them watching on the battle of the lead, and of course trying to gain time on each other as well, so that they can fight for the final podium position. As we can see Sam and Sarthak Ray, I believe that is Sam and Dipanshu going side by side. Sam does get ahead but has a loose moment, so does Shubham Das. Shubham Das making a great overtake on Dipanshu right there. Dipanshu losing too many positions coming into the final corner here. SD has the inside, both Sam and SD going side by side, but SD does take the curb, which you're not supposed to, and loses out on a bit of a time. But a 4-way battle for P5 going on right now, and these guys are just absolutely at it at the beginning of the race. Of course, most of them, starting from the back as well. Sam, again, he's in the Beamer, doing very well, and you can see that the Audi has such good top line. And Deepak coming back at Sam now, going down the inside and braking for the turn 2. And that's a very, very bold move right there by Deepak, going side by side still. I think Deepak makes the move stick, and what a move that is by Deepak. The Porsche just following them right at
right behind them. And yeah, we can see that how focused these drivers are. They want to, try and get as many points as possible in race one itself. And Deepak is trying to, just put in a gap to the beamer right behind him, which is Sam. And Dipanshu just following Sam really, really closely, just waiting for them to make a small mistake to capitalize on that and maybe even overtake. So yeah, we have Gaurav Arora in P8 and Shubham in P9 as of now, going into the S's. And again, Sam has not really left Deepak to just sail through. But yeah, they just, and that's, I think, the slight tap on the wall by Gaurav Arora right there in the Porsche behind. Coming out of the forest elbow now, getting a good exit, and this is where the Audi shines. The top speed of the Audi is pretty crazy, but the BMW can, of course, contest it by getting a better exit. But right now on screen, we have Sam super, in pressure from Dipanshu right behind him, and he's trying to go for a move. Dipanshu tries to just fake a move on the left, and yeah, there we go. And he does go down the inside, and what a move that is by Dipanshu. Dipanshu later on the brakes and gets the move done, but Sam has not given up the position yet. He's trying to get back at Dipanshu, but Dipanshu is in front, going into the Hell's Corner, the final turn, and what a move that is by Dipanshu. But the beamer of Sam is coming back, going side by side still, and going into turn one. Both of them will be side by side. Sam on the inside, Dipanshu on the outside. Sam breaks a little bit. Dipanshu has better braking right there, and the Porsche of Gaurav Arora getting into the mix as well, going 3 wide almost now on the mountain straight, and Shubham Das wants some of this. A little bit of bump draft going on between Shubham as well as I think that is Gaurav. But yeah, Shubham getting boxed in, wants to make a move real soon. And oh boy, what a race this has been already. Absolutely, there's a big mistake from Sam, who has absolutely put it into the wall there. Absolutely not what he wanted. Gaurav Arora with a 5-second time penalty. He has damage on the rear of the car, which we can see very clearly on board with Shubham Das. And that is not good for Sam, not what he wanted, especially by being in that beamer, which is absolutely amazing at any track, especially over here, where you need that downforce. And unfortunately, it has been a horror show for Sam. Still 14 minutes to go. Slight tap of the wall by SD, but he can recover. But yeah, you can see the frustration on Sam's face. He's going to try and recover. We can see Sai Prithvi as well, who's trying to put that pressure on Davlish. But yeah, not ideal, and there will be a lot of damage. And trust me, at this track, getting even 1 second of damage means an absolute understeer galore, especially considering that he hit the front of the car. So that will be a lot for Gaurav, apologies, for Sam to deal with. Yeah, and it's only like 14 minutes, we still have 14 minutes in the race, so it's only 6 minutes, and there are so many driver, or actually position changes between those drivers, because all three of them were super close. You can see that Deepak, after overtaking Dipanshu as well as Sam, has basically checked out. There's almost 3 seconds gap between them, and Shubham, who got really close to overtaking in that, the whole kerfuffle which is going on, Shubham still right behind these two. Dipanshu again in front of Gaurav Arora, and Shubham is just waiting for them to go side by side, make a mistake. And while I'm talking about side by side, Dipanshu and Gaurav Arora try to go for side by side, switch back line for Gaurav right there, still going side by side, and yet again he's getting boxed in. But Shubham now is side by side with Gaurav and might be able to make a move, down the inside, going into turn 2. And this is super close between P1 and 2, which is Davlish as well as Sai Prithvi. Just a few moments ago, we saw that Sai and Davlish are sitting right next to each other. So yeah, super close between these two, and of course the guys behind as well. So the race is very exciting at this stage of the race, and yeah, it's a very, very close margins between everyone, to be very honest. Absolutely. But, yeah, go on. Yeah, it is very close margins, as you did say. 2 battles happening on track right now. Split screen, you can watch both of them. Sai Prithvi right on the rear of Davlish, not letting him breathe out. The gap was around 0.5 of a second, which did increase a bit. But Sai Prithvi has just locked in the final half, almost nearing the final half of the race. And he's like, I'm going to start putting that pressure on Davlish, and I'm going to just see where he's making a few mistakes, see where he can capitalize on Davlish and send
you know, a big move going into that and just hoping that it works out, because if it doesn't, he still has P2. If it does, then he's P1, taking away the maximum points for this race. I mean, on screen we can see that SD has, is still right behind, and yeah, overall a very good performance by all of them, to be very honest. But Sai keeping Davlish on his toes. He hasn't really let go of the car in front. Is under a second behind Davlish right now, and the guys behind as well. Of course, we can see that Sam has pitted because of the damage that he had, and yeah, Sai doing a very good job of keeping Davlish honest right there, and right behind him, there is still 11 minutes in this race, and anything can happen. We did see that SD was trying to make a move on Gaurav, and that did happen going into turn 2. And now Gaurav is under pressure from Shantanu, who already has a 5-second time penalty. And of course, we don't really have to pit in this particular race. So yeah, you can see that the Porsche has a better straight line speed, was able to keep the Ferrari behind, but the Ferrari is pretty decent when it comes into this section of the track. So really close margins between these guys, and yeah, overall a pretty good race so far. Absolutely, and we can see that the paint scrapping off on Shantanu's as well as Gaurav's car there. That is, of course, because of them scraping the walls or having a few contacts here and there with each other. But yeah, I'm pretty sure it's nothing too big just yet. And just as I say that, Shan once again hits the wall, and that will of course add a lot more damage to his car, along with giving him more understeer and of course losing him time. What's a big issue for Gaurav right now, of course, is his 5 seconds time penalty, because Shan is just not willing to let go of Gaurav. He can pretty much secure a P8 there, and commentators curse right in play as Shan hits the wall, and that is suspension damage. He will have to go back to the pits and get it fixed. An absolute sunshine for Gaurav Arora in a very, very dark tunnel there, and he'll be happy with the P8, I'm sure, after what has happened so far in this race. But yeah, Shan has to RTG. Sam is also, I believe, a lap down, considering his name is in blue, which means that, of course, they are a lap down. So maybe a bit of battle between Sam and Shan, as Shan has RTG'd in this race, but that was extremely unexpected. And we can see Dipanshu in the back, his wheels spinning a lot more. It looks like he lost control, and he did. He spun out and he's hit the wall on the rejoin, and that will be adding more damage to him. Gaurav Arora will absolutely take any of this in P7, far ahead of Shan, far ahead of Dipanshu, and far ahead of Sam. And you can just see the damage on the front of that McLaren, and not going well for Dipanshu. And yeah, this is where the adapting to a different, let's say, wheel and a different rig is very, very important, because we can see that Davlish as well as Sai was super close, but now Davlish has started using those back burners. He has opened up the gap to 1.4 seconds and pretty comfortable in the lead. But yeah, again, Sai is trying to get back at him, and Sai has a crazy spin, somehow just kept the car on track without hitting a wall. Some amazing control by Sai right there. But yeah, Davlish now 1.6 seconds ahead of Sai Prithvi. So a slight mistake from Sai, and Davlish just using that to his advantage. Almost a 2-second gap between those two. So yeah, talking about the other guys, we have Kanak in P3, Sarthak in P4, Deepak in P5, and Shubham, who was pretty much at the end of the grid, is back up to P6. So overall, a very, very good recovery from Shubham. Whereas, yeah, Sai was super close to Davlish, but he can still come back, because again, as we just saw, these guys, a slight mistake, you're into the wall, you have so much damage that you can't even drive the car. And that's exactly what happened to Shan. Shan, tried to go around the maybe outside, missed his braking point, hit the wall, and that's pretty much, his race over right there, because now he's at the back of the pack, had to pit, and by the time he comes out, he's already lapped. So unfortunate right there. But yeah, Davlish right now pretty under control, and yeah, Sai is following him right behind, 2 seconds behind, of course. And yeah, that is kind of unfortunate. What is not unfortunate is the fact that Sam and Dipanshu
None of them have given it up. Both of them are right on the tail end of each other. Both of them not wanting to finish in P9, fighting it out. We can see it in the track map. I have been looking at it. At one point, they were within a tenth of each other, so they were going side by side at some point. Unfortunately, we have missed it, but they're still extremely close to each other, and that battle will continue going on as we progress further in this race, as Sam and Dipanshu, with 6.5 minutes left, will try and do whatever they can to gain as many points as possible and, you know, just all out send it at this point. And I think that is what Davlish is doing as well. He has been on his toes the whole race because of Cypress V. And yeah, even though the gap has, you know, formed a bit now, 2.5 seconds, it is still not a large margin compared to what we have seen in the qualifiers and in the semi-finals, where he was around 20 or 30 seconds ahead. So it just goes to show everyone has upped the ante and everybody wants to win, and they will do whatever they can, of course, cleanly, to win over here. And yeah, FIFA Kanak in a very comfortable P3. He has a 4-second gap to Sarthak Ray right behind him. And yeah, Deepak, Shubham, both of them in the Audi, just chilling in P5 and P6. It's a pretty decent recovery from the kind of super pole they had, the qualifying. And yeah, overall, it's not too bad. But yeah, we are on board Shubham right now. We did see him getting blocked or more like boxed in by the likes of, you know, Gaurav, as well as maybe even Dipanshu, who were in front of him. Now he has overtaken them, has a 5-second gap to Gaurav. And Dipanshu, I think, has spun out in the background. Yes, he has. It's just his day is going from bad to worse right there. It's a very, very tricky part of the track. Thankfully, there's no one around him as of now. But the leaders are catching up to him because they are somewhere near, I think, turn 6 or turn 7, coming closer to him. And he has to get out and, you know, make a proper 3-point turn right here so that he can be on his way. Because coming out of, you know, the Dipper and the S's, the P1 and P2, you know, both of them are getting pretty close to where Dipanshu has spun out. And yeah, we are on board Sai Prithvi right now. Let's quickly, you know, just check Davlish's POV as well. Has Dipanshu been able to clear off of the track? And I think he has. He has been able to go in front. He does have yellow flag, so he will let P1 and P2 off. But, ooh, getting super, super close right there. But yeah, didn't really, you know, didn't really hinder both the P1 and P2. And I think Dipanshu is just looking to try and finish the race rather than, you know, getting the positions back at this point. Absolutely. Not a good race for Dipanshu at all. I mean, it started off well. It wasn't the best start that he would have wanted, but it was still quite good. And then after that, he's just, mistakes over mistakes. And let's not forget, after that initial spin, the tires heat up a lot. Sai Prithvi a bit on the edge there as well. Dipanshu, I think he has suspension damage, because otherwise I'm pretty sure he would have made that corner. But yeah, there's definite suspension damage for Dipanshu. But yeah, not a good race, but then again, it's not over. We still have Silverstone left, and we still have Hungaroring left. And talking about Silverstone, the coming up race, you know, it's going to be full wet. And someone like Dipanshu, who has so much experience in this game, that is where these people will shine. You know, even though, you know, Dipanshu will start, I'm not sure if it's the grade will be taken from qualifying. I think it will be taken from the race. But whatever he starts from, regardless, he has the potential of going up there. Because the wet, it's not just about, you know, keeping the car steady. It's also about going fast. You know, you have to take alternate lines, you know, off the track, as we have seen multiple times in real life, as well as, of course, in ACC, where they've taken alternate lines and found grip there, and then they just gain so much time with the, you know, the guys around them. And that is Gaurav Arora with a mistake, and his suspension is also damaged. So Bathurst is absolutely living up to its name by collecting driver after driver, and unfortunate for him, he will have to pit, and that 5 second is just rubbing salt into the wounds at this point. 2.5 minutes to go. I'm pretty sure, you know, they're just gonna calm down, move on forward, just think about the next race, just make sure that they can bring it home and be done with it. But yeah, Silverstone, rain, a lot of carnage, but of course, great amounts of scale will be on display.
But yeah, overall, a pretty decent race for P1 and 2, which is Davlish as well as Sai. Sai did try and get close to Davlish, maybe even overtake him, but Davlish had this under control from the start of the race. And yeah, Shubham is getting closer to his Audi, driver as well. And we can see that there's a car going slow right in front of them, which I think is Dipanshu. Yeah. So yeah, that's just lap traffic at this point. So Deepak and Shubham, again, under a second gap between both of them in the exact same car as well. But of course, the setup will be slightly different. But yeah, a lot of different cars chosen by the drivers, of course. And ooh, a slight bit of snap right there by Shubham. But he is, he did lose 2 tenths right there, but in the last 1 minute, 22 seconds, can he come back and maybe take P5 from him? Because again, every single point counts, especially in the finale. So the likes of, Gaurav, Dipanshu, Sam and Shan, they just have to focus on getting a better race start in, the second and third races and try and get back points. But talking about points, right now, Davlish, Sai and Kanak in a very solid 1, 2 and 3. Then we have Sarthak in a solid P4 in kind of like a no man's land. And then we have Deepak and Shubham very close to each other. But of course, it's the last final 45 seconds. Davlish has done a very good job of leading this race. Almost 4-second gap between him and Sai now. And they're just going to try and bring it home. So I guess, if they don't really make any mistake in the last and final lap, it's going to be Davlish P1, Sai P2, Kanak P3, Sarthak P4, and we have Deepak and Shubham. It's still a question mark because we have Deepak in P5, Shubham in P6, pretty close to each other, a slight mistake, and anything can happen. Absolutely. Both of these guys, knowing them and also, of course, watching them in the qualifiers and in the semi-finals, none of them ever will have the will to give up a position, even if it's just the last lap. Of course, Davlish will cross the line to win the race in just a few moments' time here. But neither Shubham nor Deepak will be giving it up. Gap has remained around 0.6, but all it takes is for one of them to mess up one small mistake. And yes, Davlish is saying making no mistakes, winning the race at Bathurst, taking away maximum points. But yeah, coming back to this battle, not over yet. 0.4, the gap, it's still reducing. Will Shubham send a massive dive bomb coming into this corner? No, keeping it safe. But the final corner still remains, and that is a corner which catches these drivers out. They could be side by side crossing line here. We'll have to see. Coming into the final corner, and both of them have a bit of damage. Deepak braking slightly early. Shubham getting a very good exit, bumper to bumper, and unfortunately not enough straight left for Shubham to make a move on Deepak. He will have to settle for a P6, but still he'll absolutely take it because that was one hell of a chaotic race, and being within the top 6 is still amazing. Indeed, huge congrats to Davlish for getting P1. And of course, Sai for getting P2. We have Kanak in P3, so really, really good points for, all three of them. And of course, following after that, we had the likes of Sarthak, who was P4. And yeah, overall, just the others just trying to finish the race now. And yeah, overall, a very, very good race for most of them. Let's say the second half of the grid, not so much, because making a few mistakes here and there, just going into the wall, getting some suspension damage, and hitting the walls quite a lot. So yeah, overall a very, very good race for the top 3. And if they can just continue this form in the second and the last race as well, they could be winning a lot of money from here. Absolutely. They just have to carry on this momentum, especially Shubham and Deepak, both of them not starting in ideal positions. They have to keep continuing on and make sure that they can get, clear out the traffic ahead of them, or at least challenge them, because Sarthak Ray, even though he was in no man's land, P4 is considered to be the best of the rest position, and that is exactly where he was. It will be quite hard to challenge with him, especially going into a wet race. I mean, all of these guys are quite experienced, and Sarthak is obviously a fighter. He's not going to let that P4 get away from him. And even if he remains in P4, it is still a very, very good bag of points. So I'm pretty sure there's going to be a lot of competition for that P4.
And if any of the top 3 do make any mistakes, which they fully could, I think there could be some twists in the finishing order. But to find out, of course, we're going to have a short break. And after that, we're going to have 20 minutes at Silverstone in full winds.
There you go. We're back after a very short break. And yeah, 20 minutes, apologies, 20 minutes of Silverstone coming right up. And it's going to be a full wet race. A lot of if you thought that Bassers was gonna have a lot of chaos, I think Silverstone has the potential to beat that purely because it's a full wet race. It'll be raining throughout the 20 minutes of the race. And all that's going to add up to is a lot of drivers showing their skills, but then a lot of drivers also making mistakes because already in ACC, even in dry conditions, you have to be absolutely millimeter perfect in terms of your lines, in terms of your inputs. But in the rain, that stakes even goes up even higher. So a lot to play for these guys. And what are your thoughts? Who's going to take it away in Silverstone, Swider? It was pretty close between Davlish and Sai, of course. Those are the fan favorites, I would say, for P1 and P2. But yeah, after a point, we saw that Sai was making a few mistakes here and there, and Davlish just kept it consistent throughout. So hopefully, this time around, Sai, maybe in the wet session, in the short break that we had, I just quickly, went and chat with the drivers as well. And the nerves have just calmed down now, So it's like all of them are in the zone. A few of them having, a few technical issues here and there as well. So that's why we saw them, spinning out. But hopefully, all that is fixed now, and they won't really have those kind of issues anymore, hopefully. So yeah, but I did speak to them, and I did see Sai just, doing a lot of those, wet session practices. So he is taking this completely seriously. Of course, he wants to try and beat Davlish because, of course, Davlish has won the first race, so he has called first blood as of now. But yeah, he's trying his best to get back and maybe even try and get that P1 off of Davlish. Absolutely. And in the wet, we haven't seen Davlish try much in the wet because in qualifiers and semis, we didn't really have a wet session like that. But there is still, a lot that can happen. And yeah, I mean, Davlish can probably get a run for his money. I mean, the whole of the first race, there was only a gap of about half a second, maybe 6/10 between the two of them, until, of course, I guess Sai just decided to take it a bit easy and just decided, okay, let's just finish the race instead of, risking it. Because at one point, of course, tire wear sets in. And once that does, it makes no sense pushing on forward after that. And your main goal will be, of course, to just bring the car home and just finish the race. Because P2 is still a very solid position. I mean, you still are getting the second most points. So, yeah, I think with the wet added in, because it's more about the driver rather than, the cars themselves, I think a good race could be coming up our way here. Indeed, and of course, only 20 seconds before we start the race, and not many of them have had the chance to sit and, basically focus on the race. So yeah, it's complete wets, not much practice, anything can happen. I did see that these guys, weren't able to do too much of practice in the wets, but yeah, we are going to start the short formation lap very soon. And simply, do you want to just, take it up from here? Absolutely. There will be a small, of course, I guess, formation lap. Of course, we got a short formation lap. A rolling start. Green flags will be going any second now, just as they cross the line. And waiting for it, I think it'll be at the first, the line that's coming up right here. And it is green, green, green. The drivers are away for Silverstone. Great start for Davlish. And that is a bit of contact going into turn 1. 3 wide going through turn 1. And the cones are flying away. That is Deepak Raj, who was in a bit of an incident. But drivers behind him, such as Shan, I believe, and SD, who were caught up in a bit of a kerfuffle that I think Gaurav Arora was also involved to a certain extent, and that has caused a slight bit of damage between these guys. But so far, so good. They're all following very, very closely. But yeah, Davlish is already quite a bit far ahead of Sai Prithvi. So I think not the best starts for Sai, but he's still going. And that is a bit of a spin for Deepak. They're almost losing his car. Great car control, but that has brought Deepanshu right in. And Deepanshu has a very, very good chance of getting past Deepak here, because that Audi is not the best in the wets, but that McLaren is good at pretty much any given condition.
and there is a very, very good chance that we could see a multi-car battle happening for a P4. Currently Deepak in the best of the rest position, but all of these guys who are lining up right behind him to try and nab that P4 away. Indeed, and we did see that, going into the braking zones, they were making a few mistakes. Of course, the braking points for the wets is completely different from a dry. And yeah, these guys are super close. Again, Sarthak actually losing a few positions right here. Maybe his driving style doesn't suit the wets, but yeah, he has to try and adapt real quick because Dipanshu right now is right behind Deepak. Dipanshu doing extremely well in the wet conditions, trying to go side by side into the next turn. Almost, the penultimate turn right here. It's a very technical turn again because it's a long right-hander going, into the final turn and going down the inside. Dipanshu, can he get better exit? He can. Both of them going side by side. Deepak is getting taking a wider line, whereas Dipanshu is going for a more of a shadow, narrow line, and it's kind of working for him because he is in front of Deepak, and there's contact, and Deepak has been sent into the grass, breaks a little late, has going into cops, just completely wrong line, I would say, but yeah, does come back, and Dipanshu may or may not have a penalty coming his way for it, but yeah, it does look like a racing incident from our end, but it's completely up to the stewards to decide what exactly happened there, because right there, Deepak would say that, maybe because of the contact, he lost the position. But yeah, that's up to the stewards to decide. Getting back to the race, there are still, this car going side by side at the back as well with Shantanu as well as Gaurav Arora. So yeah, overall, a lot of racing going on, a lot of overtakes going on. Gaurav Arora going for a late move down the inside of Shantanu right in the background and does make the move stick. Shan just going for a very conservative approach compared to Gaurav, who just wants to send it down the inside and get those positions back that he lost in Bathurst and get as many points as possible. Absolutely, and the Porsche right now will obviously be quick, but as the race progresses, once again, not the easiest of cars to drive. Gaurav Arora, of course, has mastered it, but then again, he can also have his own moment, and that could mean a very, very big mistake coming his way, and that could bring Shant right back in. I mean, Shant's not too far away, only about a half a second separating the two of them. Sarthak Ray is also not too far ahead of Gaurav, so those guys are quite close to each other in terms of this battle, but overall right now it does seem like a proper fight for a P4 right here, in which Dipanshu is P4, so he's doing quite well. McLaren 2, 3 and 4, so that just goes to show that McLaren is pretty much good everywhere. And just as I see that, a bit of a mistake from one of the McLarens, that's bringing SD, apologies, that is an Audi of Deepak. And Deepak clearly struggling in the wets. I think his pressures may be off because there's no grip for him at all anywhere. SD right on the rear of Deepak, a 10th separating the two of them. SD having a look down the inside, not worth making the move in the wet especially, and going through cops once again. Both of them are very, very close, coming very shortly into the infamous Maggots and Beckett section. Considering that Deepak is struggling a lot for the grip, I think SD can gain a lot more time here. And just as I say that, commentator's curse strikes right in. SD losing his rear there, and clearly the Audi guys not having a good time, and so is Gaurav Arora. Has lost a lot of time in the back there, and there you go. The pressure is kicking in for these guys. 15 minutes left in this race, and already the chaos has started to ensue. Indeed, just 14 minutes, 50 seconds left in the race, and a lot of drivers is trying to get used to the track conditions. Of course, it's a very treacherous conditions with the full wets right here, and Deepak losing a few positions but gaining it back as well. And yeah, Deepak was having a lot of issues with just traction at start, but maybe he's gotten used to the whole track now. And of course, going from a dry session completely into wets, you need to make sure your setup is also right, and without any prior practice, it's going to be hard to get that setup perfect. But yeah, Shantanu in the background getting a 5-second penalty for maybe going wide. But yeah, Gaurav Arora having a crazy movement in the background as well. And Sarthak Ray did lose a few positions from the last race compared to from the last race to now. He did lose a few positions, but he's trying to get back because P5 all the way down to I think P7, P8
it's very, very closely stacked. So these guys, again, it's going to be anyone's race for the top spots. Of course, Kanak yet again in a very consistent P3, and we can see that Davlish, even in the wets, is able to keep Sai Prithvi behind him. So whatever you throw at Davlish right now, he's able to keep, you know, his head in the game. And while talking about head in the game, in the background, we saw a huge movement from one of the Audis. I think that was Shubham Das right behind, or actually Deepak, who was in front of him, going into Cops corner. Both of them bumper to bumper, and yeah, well held by Deepak right there. We did see him, maybe, you know, his setup isn't perfect, but he is making it work. Going into Maggots and Beckets, pretty decent, you know, slides for both of them. We can see the drivers focus on the small camera that we have on the right as well. And oh boy, what a race this is, you know, turning out to be, with super close racing, and anyone can take P4 and P5 as of now. Exactly, and so much has already happened so far that we haven't even noticed the time passing. Almost 8 minutes are over in this race and it didn't even feel like it. I am getting a word from the stores though. Shan got a 5-second time penalty for pushing Gaurav Arora off the track on lap 1. So that is why he's gotten a 5-second penalty. Not to worry too much, just has to keep his head down and start gaining on those positions and start gaining that time on Sam to ensure, of course, that he can keep that P9 at least. And that is a big mistake from Deepak. He's gone off wide, let all of these cars by side with Gaurav, but Gaurav will also come out ahead. This has been the worst race for Deepak, and he is cracking under pressure. Clearly, flashbacks from the semi-finals coming into Deepak's mind right now. Indeed, Japan wasn't the best of tracks for him, and we can see that he's making so many mistakes in the wets as well. But he has to, you know, get his head down, get as many points as possible, because the, you know, reward that you're getting for finishing, let's say P6 or compared to P7, is a lot of money. And of course, all of the drivers are, you know, trying to compete for a total of 3 lakhs. So that's a lot of money, and these guys are trying to get, you know, as many points as they can over the 3 races. So one inconsistent race can just, you know, mess up your whole standings. And yeah, out in front, Davlish is cruising right now, almost a 3.7-second gap between him and Sai Prithvi right behind him. And yeah, right now, if you see the pace, Davlish is doing around 204s, and Sai is doing 205, 206, and Kanak is doing 207s, and the rest of the gang are also, you know, doing 207, 209, whatever. So yeah, overall, a pretty decent performance for all of them, to be very honest. And yeah, very treacherous conditions as well. The wets is not very easy to drive. In real life, as soon as it starts raining, there's just so much of traffic because people don't really want to push it because they lose their cars. Over here, they have to push it. They have to try and, you know, get as much time as possible. And while doing that, we did see Deepak just going a bit wide and losing around 3 or 4 positions. Absolutely, and that is very uncharacteristic of Deepak, but of course it's not something we really want to see. I mean, it's been happening since the semi-finals, and not just Japan but in Nürburgring as well, where, you know, it was a transitioning race. It went from wet to dry, and that is where, you know, he just, you know, lost all of his momentum. And I think he just really ran out of patience in that race, making a few mistakes here and there then as well. So clearly the wet conditions are not suiting Deepak, and it is very clear to see. Although, yes, Sarthak Ray right behind Shubham Das, I think it is an issue with the Audi cars themselves, because they're not really, they're already tricky enough to drive in the dries. And then when you add in the twist of the wet as well, I think the drivers do struggle a little bit. So it's not the best balance of power for the Audis as in the wet, but then again, it's track-based, not condition-based. So that's just something they'll have to deal with. In the meantime, Sarthak Ray keeping it consistent, 9.5 minutes to go, around half a second away from Shubham Das, has a very good chance of nabbing that P5 away. Clearly, Dipanshu has run away with that P4. So the best Sarthak can do now is a P5 and make it a 2, 3, 4 and 5 for the McLaren cars. So that will just
prove that the McLaren is good at any track. I mean, we saw in qualifiers week 2 where we had Spa and Sarthak absolutely dominated in that McLaren. It was like Davlish came on Sarthak's account and started playing for him, but of course that was not the case. But this goes to show the McLaren is a very, very good car, and SD is a very good driver because he's maintaining the gap somehow despite the Audi being a bit of a anchor for him. But still great efforts by Sarthak to catch up, and of course Gaurav Arora because of this is right in the background. And yeah, one thing to note over here is that, you know, Davlish took the Lambo, whereas the others have gone with McLaren. Lamborghini is not, you know, the most stable car to drive unless you have a proper setup for it and, you know, just get used to the whole driving style. So Davlish absolutely loves it, and you can see that because he's clearly in the lead and the gap is just, you know, increasing lap by lap. But overall, as you know, you were talking about, let's just talk about Dipanshu right there because he's in P4. He had, you know, he was spinning out quite a lot in the turn, or actually race 1, whereas he's done a very good job of coming back in the race 2. As you were saying earlier as well, he has a lot of experience. The McLaren of Sarthak Ray just going slightly wide over there onto the AstroTurf. But yeah, Dipanshu doing a very good job of getting back into the groove of this race. Of course, he made a lot of mistakes in the first race, but now he's super consistent. P4, 3 seconds, you know, let's say behind maybe Kanak, and doing a very good job. And you can see that Sam is in P10 right now, going almost side by side with Shantanu. And yeah, Shan is just trying to defend from Sam, but he does have a 5-second penalty, which will probably put him, you know, down the order and maybe even P10. But of course, everyone over here is going to get something or the other. So yeah, nothing to get disheartened from. And yeah, Sam just still behind Shan. Shan doing a pretty good job of keeping Sam behind him. And yeah, the rest of the drivers as well doing pretty consistent laps by now. Absolutely. Consistency is the key in the wet conditions. Of course, in the dries, but especially in the wets, because in the dries, if you're not really consistent, maximum you can be around half a second to a second off. Whereas if you're not consistent in the wets, you can be anywhere from at least 2 to around 5 seconds off your actual pace. So it is extremely important these guys focus and just make sure, even if they can't really gain positions at this point, they might as well keep it clean, because all it takes is one little bit of a mistake from Shubham or one little bit of a mistake from Sarthak for the guys behind to just capitalize on that and get past these guys. And with 6.5 minutes to go, still anything can happen. The gap has reduced between Gaurav Arora and Sarthak, so Gaurav really starting to put pressure onto Sarthak now, so we could see a few mistakes from that side, or that could also fuel Sarthak to go and push and try and catch SD up, and you know, we could have a very, very good 3-way battle for P5. Indeed, we really have, you know, this is like the last corner for the F1 track, of course, but yeah, getting close now. Sarthak is, and talking about getting close, Shubham right there, getting very close to the track limit right there. And yeah, overall, a pretty good race for all 3 of them, to be very honest, because Gaurav also making a really good comeback in this race, just like Dipanshu, and Kanak, Sai, as well as Davlish, just keeping it super, super consistent, not really making many mistakes. And Sarthak is trying to take some, you know, different lines compared to the Audi in front of him, which is Shubham Das, trying to just, you know, maybe put SD off and capitalize on one of the mistakes, because he is super, super close now. The Audi is good in the straight line, but can they go side by side? They cannot. And he just has to wait for maybe, you know, getting out of the final corner, going into Cops, and a bumper to bumper right here. And on screen, we could even see Dipanshu just a little bit right there. So Dipanshu has to make sure he's doing some consistent laps in, because if he doesn't, he could get caught by Shubham as well as Sarthak right behind. And of course, Gaurav is only 1 second behind Sarthak as well. And these guys are doing pretty much similar lap times, just 3/10 here and there in between them. So the gap is coming down, but very, very slowly. Yeah, well, I think that 2/10 of a gap will close in soon enough, as we can see the inputs by the driver on our right. I'm not sure who that is, because they're on a whole different corner. I think they're in the beginning of Maggots and Packets. So it's not Sarthak or Shubham, but you can just see what the drivers do on a lap generally, how many corrections they make and how, you know, they have to keep their wheels steady while they are going through
the corners because it's all about the throttle and the brake application. Sarthak is 2 tenths away from Shubham Das, still trying to put pressure onto SD, and I think at this point the tire wear has kicked in a little bit for the Audi cars, especially in the wets, or I think the the tires have started getting a little bit more hotter because of the dry line forming. So considering that SD is not going off onto the wet pitch to cool his tires down, those tires will start heating up a little bit more than he really wants to, but I think should still be fine. Had a great exit coming out of F1's final corner, gap up to half a second again when it was just about 2 tenths. But yes, Sarthak's McLaren is very, very good in this final sector, and I'm pretty sure he's going to gain all of that time back and going to put pressure on SD once again to, force him to make a mistake, essentially, and see if he can get past through that way, because overtaking in the wet is already quite hard to do, and with someone like SD, who's defending off from Sarthak, I mean, he's one of the best defenders I've seen. I mean, his defensive skills are absolutely amazing. So it's not going to be easy for Sarthak to get by. So the max Sarthak can do right now is put pressure on SD and just see where he can, get past SD and probably into turn 1. And yeah, on screen we have FIFA Kanak as well, who's been consistently in P3 and not really doing many mistakes, and that can also, get you a lot of points, because consistency is key right here. And because he's in P3, even let's say if he makes a mistake, he will lose a lot of points. Whereas now he's just doing consistent laps in P3, making sure he's getting at least a decent amount of points, and that's just solidifying a very, very good result for him overall over here. And yeah, talking about Shubham as well as the Sarthak fight, both of them having some great liveries as well. But yeah, a drive-through for Shan in the background. We can see in the top left that he gets a DT, which is a drive-through where he has to slow down and slowly go through the pits and serve the drive-through. No idea why that is, come up. And we'll surely, soon get a... Oh, while I'm talking about that, we are going side by side between Sarthak as well as Shubham Das. Try to go for a move, but I think, Sarthak has to, think otherwise, because 1 minute 40 seconds left in this race. Got a chance, try to go for it around the outside, but that's not a place where two cars can go side by side and, go around the outside of another car. But yeah, a very, very good performance by Sarthak as well. Sarthak did start P4 this race and trying to get back at least a P5. He has lost 2 positions now. He wants to try and reduce the damage that's already happened and at least get a P5, because Dipanshu right now is quite, a few seconds in front of these guys. We can still see him in few of the shots, but that is not close enough to get, get that particular position back, because it's only 1 minute left in this race. Davlish yet again doing a very good job of keeping P1. Sai in P2, Kanak in P3, Dipanshu P4, a very good recovery from him. Shubham is in P5, Sarthak P6, Gaurav P7, Deepak P8, Sam P9, and Shantanu has to serve a drive-through, or when he finishes the race, will get a 30-second penalty added to his finishing time. Yeah, and I think he's last anyways, so it won't really change his position much, but if Sam were to make a mistake by any chance, I think he'll be able to get past him. As we can see, Tavlish Singh driving quite confidently here, absolutely focused on this final lap. Talking about the final lap, of course, Sarthak getting extremely close, 0.2 of a second separating the two of them now, and both of them will be pushing to the absolute max, making sure that SD can defend, and Sarthak, of course, that he can attack as quickly as possible, because there's only about a sector left. Timer has stuck to 0, and Tavlish is entering the last sector just about now, so this will be the final lap. No more chances for Sarthak to get past Shubham Das after this lap. He has to do whatever he can, try out whatever line that he can to try and get past Shubham here. As we can see him absolutely focused on trying and getting past Shubham. 0.3 of a second separating the two of them. And in the slipstream, not too much effective in the wet, to be fair, but still there is around a 10th or so in terms of a time gain, at least on that short straight that is there.
So all Sarthak can do now is make a move somewhere in this final sector, otherwise it will not be possible. What will not be possible for Davlish is to finish last as he comes across the line to win yet another race with absolute dominance. 10 seconds to P2, who is Sai Prithvi, who's also come across in P2. Kanak will be in P3, Dipanshu of course in P4. But this battle still continues on between SD and Sarthak Ray. Sarthak has absolutely sent it there, and he only has one final corner and one final straight remaining. Has a look down the inside. Both of them go side by side momentarily. SD has the much better exit, and unfortunately, I think that will be it. For that battle. SD in P5, Sarthak will have to settle for a P6 despite his best efforts. And yeah, Gaurav Arora P7, Deepak P8, Sam P9 and Shantanu in P10. So a very good race nonetheless, but of course it's not over yet. There is a 45-minute race with the mandatory pit stop coming at Hungary, and that will be the final race, of course, for this finale. But yeah, it will be quite a bit of a challenge for these guys to deal with. Any thoughts before we go into a small break and then, of course, go into that 45-minute Hungaroring race? Of course, Sai did a very good job of keeping it P2, and Kanak did a good job of getting P3. But one thing to keep in mind is that if Davlish has something not going his way in the final race, which is going to be a 45-minute race, there's still a chance for Sai to win this. But again, it's a very outside chance. There are a lot of things, a lot of factors that need to try and basically align. The stars need to basically align for him to win the final race and be the ACC champ. But for now, he's doing a very good job of getting P1. Davlish has it just on lock. Sai P2 and Kanak P3 as of now. Going into the final race, we'll see what happens. But before we get into the final race, let's have a quick short break and we'll get back at you.
Jack it up. on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Go wish. Go wish.
something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm
Stockholm lights. I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. The Stockholm lights. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like they hate in the gaff. Please start talking that trash, cause the vibes and the fun all the way to the back. Is that light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man slide around like they hate in the gaff. Please start talking that trash, cause the vibes and the fun all the way to the back. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah.
There you go. Yep. So we are back with the finale of the 3-set races that we had. The 45-minute race in Hungaroring, Hungary, and yeah, it's going to be a lot of things going on in this race because till now we just had a sprint till the end, basically 20 minutes race, till the finish line. Whereas now we have pit stops, and where it's double points as well. So Yep. it could be anyone's game. And Sai still has a chance of, maybe getting a win from Davlish. But yeah, we've seen that Davlish has been pretty dominant till now, doing pretty well. So it's going to be hard to try and beat him, but there is an outside chance Sai can do this. So yeah, a lot to, look for because of course we have a 45-minute race. These guys have to be on form, just focused on the game completely. And yeah, what do you think about the whole race? I mean, pit stops are mandatory. There's no pit window, but they are, of course, mandatory, which means that a lot of chaos will ensue in the pits, especially in a 45-minute race. Usually you see pit stops in races that are over an hour, but of course, since this is only a 45-minute race, especially at Hungaroring, there will be a lot of chaos that will absolutely happen. We have seen, at least in the practice when we were around the drivers, some of them were speeding into the pit lane. And again, I mean, in practice, of course, there's no penalties, but of course, in the race, they will get a stop go 30 seconds, which is, of course, not what they want. So, yeah, I mean, 25 seconds pit stop mandatory. There is a chance that, I mean, there are a lot of strategies to be fair, but there is a very, very high chance that they might go for something of a tire change, because tire change along with that mandatory pit stop will be around 30 seconds, which is only 5 more seconds than the actual 25-second mandatory pit stop. So if they want to change the tires, they can. Otherwise, they can just go there, stay in the pits for 25 seconds and go on out. If, of course, they don't want to change the fuel or, of course, change the tires. So completely up to the drivers, a lot of things that can happen. Yeah, they do have to, refuel up their cars because obviously 25 seconds might as well refuel a little bit, just under fuel at the start and then go for it. But yeah, for the final time, we are queuing up for the rolling start. And for the final time, today at least, Davlish is going to be leading this pack. And can he keep that P1 off of Sai? Till now, he has been able to. We are coming close to the final, flag, and it's lights out, and away we go. The green flag is on, and it's very, very close between P3, P4, and P5, which is Kanak, for the first time, is actually getting pressurized by Shubham Das was going down the inside, and around the outside goes Dipanshu. That's been a very good move, but in the background, we did see that Davlish was able to keep P1, but yeah, Sai making a small mistake going off track, but he is back, and we can see that Davlish completely focused, going left, right. Deepak in the background as well, having a little bit of a snap, but catches the car pretty well, and now it's slowly settling in. Well, they haven't really settled in because we can see Dipanshu and SD right here. Both of them very, very close to each other. Dipanshu did try and make a move around the outside of Kanak, which he did manage to do before Kanak did go off wide in turn 1. So that is why Kanak is in P5, whereas Dipanshu is in P4. There's contact between Dipanshu and SD. SD gets spun out. Even more contact on the rejoin. And that is multiple cars out. Only 3 remain for this pack right here. Fight for P3. Kanak goes off wide. Absolute chaos is ensuing. I think they took the mandatory pit stop a little too seriously because it would have been better if they didn't, get damaged because they'll have to stay in the pits for even longer. But I guess if everyone has damage, then everyone stays in the pits for a longer time. But right now, Deepak and SD, the Audi does suit this track quite a lot. So they do have a lot of pace, but both of them with damage will be suffering from a lot of understeer. But Sai Prithvi is still keeping Davlish on his toes as we come to the closure of the first lap in just a few seconds right here. And of course, Sai Prithvi is being helped by the fact that he is in the McLaren. Lambo isn't the best at this track, especially because of the balance of power. So it is in Sai Prithvi's hands. Although, if my calculations aren't wrong, well, I guess Sai Prithvi's calculations were wrong about the braking point. But if my calculations aren't wrong, I think Davlish has to finish behind Sai Prithvi, at least in P3, so that Sai Prithvi can win, of course, considering the double points. But right now, it will remain as is. Sai Prithvi is all over the back of that, Lambo right in front of him.
this is some very close racing between P1 and P2. Of course, this is for winning the first ACC Esports Premier Series Grand Finale. So very close racing between these guys. Dipanshu, having a lot of contact in lap 1 as well. So that was pretty, weird what happened there. Maybe this cold tires, cold brakes, anything happened in P1, lap 1, and that's exactly what happened. Everything that could have gone wrong went wrong for both the Audis because Shubham as well as Deepak are P8 and P9 right now. Gaurav Arora taking that opportunity to get P4, but is pressurized by FIFA Kanak right behind him, and they are still, they did try to go side by side, but Kanak just thinks otherwise, stays behind him just for now. And yeah, it's a very hard track to overtake this, but you can make chances, you can force the guy in front to make a mistake and then overtake. And we did see Sai very close to Davlish, and maybe this is a track that Sai likes a lot. And right now, the gap is only 3 tenths between him and Davlish. Absolutely, multiple battles happening on track. If you look at the track map on the right-hand side, battle for P1, battle for P3, and a battle for the final few point positions as well. So there's battles pretty much everywhere, but one thing I would like to point out is that Sarthak Ray, after the lap 1 incidents, has already pit, and he's cleared his pit stop. So if anyone does make any mistakes, if anyone does have any damages going on forward here, Sarthak Ray will be able to capitalize, and of course he can just go to the end all out. It will be a bit tough because there's still 40 minutes left in this race, but it's not the end of the world. And I mean, these cars can go for an hour and a half on full fuel and the same set of tires, so not a big deal, especially for someone like Sarthak Ray. But yeah, we did see a very nice shot of Davlish on the right-hand side. Again, completely focused on the track, and of course trying not to make any mistakes, as Sai Prithvi is just about right behind him. Around 2 or 3 tenths is still separating these guys, so that McLaren is helping, Sai out quite a bit to try and get that P1 away from Davlish. But we can see on the left-hand side of the screen as well, thanks to the nice split screen that we have going here, a 3-way battle for P3 with Dipanshu leading this pack, Gaurav Arora in the Porsche in P4 and Kanak in P5. Kanak seems to be struggling a bit right now, but it could also be that he's conserving his tires, and perhaps he doesn't want to change his tires and get those 5 extra seconds in and just go on until the end. And yeah, at this stage of the race, Sai does look very confident, and he is taking the race completely up to Davlish right here. And it does look like he is slightly faster because he is right on that Lambo. He's right behind it and super close. Goes wide though, coming out of the last and final corner. And that will give Davlish a bit of, just breathing space because he was very close. Davlish is under pressure right from the get-go, and Sai has a very good shot of at least winning the Hungary race. And as you were talking about earlier, Sarthak is already pit. That's why you can see the green mark on the left-hand side of your screens, and the rest of the drivers will have to pit. So again, during the pit strategy, you will have to wait in the pits for 25 seconds. So it's up to you if you want to take 5 seconds more and change your tires, or just take the same tires till the end. And one of the most consistent drivers at the back, which was FIFA Kanak, was able to keep his position in P3, whereas now he's dropped down to P5, and getting back to P3 will be pretty hard because we can see that the drivers in front as well are trying to just overtake each other, but Hungary is a very hard track to overtake. Absolutely, and looking at the updated point standings after the second race, Davlish of course leading at 33 points, Sai Prithvi with 26 and Kanak on 21. But if you look at Florida Man, who's also Sarthak Ray, who's currently last, but let's not count him out because there's still a very long race left, and he's already cleared his 1 minimum required pit stop. He's on 13. He's in contention with Nomo Pro Player or Dipanshu for that P4. So currently Dipanshu is taking it away very easily, but then again, all of the drivers other than Sarthak have not pit, so anything in this race could happen at any point if they do mess up their pit stops. If they speed into the pit lane, that could absolutely change the face of this race. And the face of Dipanshu's car has also changed a bit because it seemed to have picked up a bit of damage. You can just about see it on the bonnet. It's very minor, but if you pay attention, you can see it. So that will be hindering him just a little bit, considering Gaurav Arora and Kanak are pretty much right there, right behind him, and in fact are driving faster than him right now.
yeah, most of these guys just putting pretty much identical laps, just a 10th, down or 10th up compared to each other, and super close on track as well. Can Gaurav, right in front of Kanak and behind the Panshu, go for a move, maybe just send it down the inside somewhere and get a position? Because right now it's pretty much a stalemate, because they're trying to overtake but they're not able to overtake because of the way Hungary circuit is. So it all comes down to pit strategies. Of course, we haven't really seen any pit strategy in the previous races, whereas now it is an element which these guys have to take into account. And yeah, overall this is very close, even for the top two, as well as P3 down to P5. And then we have Sam in P6, and then Shubham, Shan, and even Deepak recovering from their first lap incidents. Exactly. So a lot to just look at even now, because it's only 36 minutes and around 35 seconds left in this race. It's still a long race. There is Mistake. That's a mistake right there by Gaurav Arora. Goes completely wide, off track, and comes back. It's an okay rejoin, I would say. Going down the inside, FIFA Kanak does make the move stick. They're still going side by side, going into the penultimate lap, penultimate turn of the lap, and still side by side. What a move this is by, actually what a defend this is by Gaurav after making that mistake. And Kanak just wants to get that pit stop out of the way, so that he's trying to basically go for the long run and get that position later on in clean air. Exactly, and this is something that you see a lot of real-life races also implement, where when you're doing long endurance races, or even in F1, when you are stuck in a traffic, like he was, even though it was just a 3-car traffic, it's still a bit of traffic that is slowing him down. Might as well get your pit stop done, fuel up until the end, change your tires if you really want to, because you might as well, and just go on until the end, fully push. And then, of course, these guys, since they are still battling each other, they are still losing time. So in the overall, timing sheets, they are still losing time, even though he is, of course, done. He's done his pit stop, which is 25 seconds. We can see Davlish making a mistake that he never ever does. Contact between Sai Prithvi and Davlish side by side through the second sector at Hungaroring, and Sai Prithvi has taken the lead. Davlish in absolute awe, because he has really not made any mistakes throughout this whole day. And on the final race, where there is double points to be awarded, he's made a very crucial mistake that could bite him at the end. We haven't really seen any mistakes from him in the qualifier as well as the semi-finals, let alone the finals. And yeah, Deepak at the background getting a DT, and that's pretty unfortunate. But yeah, coming back to Sai and Davlish right now, what a move that is by Sai. He saw Davlish making a mistake and he capitalizes instantly on that. He was just 3 tenths behind him, and yeah, he's done a very good job of just getting back on Davlish. He was all over the back of that Lambo, and now the order has changed. Sai is in front, Davlish in second, Dipanshu getting a 5-second penalty for the lap 1 incidents as well. And my god, this is going to probably change the whole entirety of the points as well as the race. Now Sai has a chance of maybe getting a win in Hungary, and of course winning the whole finale as well. Yeah, absolutely. This has given him a very good boost, because it was 15 points before. Now there's 30 points on the line, and he's leading. And I think the points are marginable between the two positions, where Sai Prithvi does still have a bit of a chance of winning. Of course, a long race, so we won't say anything. Provisionally, he might. I can't really get the points calculations right, but yeah, he has a solid chance. But who doesn't have a solid chance right now is Dipanshu and Kanak. Kanak's cleared off his pit stop along with Sarthak, one of the first 2 drivers to clear off their pit stops. But Kanak has a 5-second penalty, and Dipanshu also a 5-second penalty. Kanak, it's fine right now because he still anyways has to do that recovery, so he could basically end up anywhere in this race. Whereas Dipanshu, he's right in the mix. He's in P3, he's fighting for that P3 position, and getting that 5-second is not helpful, because Gaurav Arora and Sam and even Shubham Das are well within that 5-second time penalty range, and that could absolutely ruin things. And I'm just getting a word from the stewards room. Kanak got 5 seconds for missing his braking point for that collision. Dipanshu also for causing a collision, and apparently Deepak has gotten his drive-through for
unsafe region resulting in a collision. So I think all of this was what we saw in lap 1, and yeah, unfortunate for these guys, but then again, it's completely down to them how they manage this, because this could put a very, very big dent at the end of the race. And now there's something very interesting happening on screen right now, because Sarthak has made his pit stop and the leaders have caught up to him. But yeah, even though he's almost, let's say, a lap down, that's because of his pit stop. And he has to give way, and he, like, he did put up a decent fight, but yeah, he gives way. He knows that these guys are faster. He lets them through because it's a 1-2 and he doesn't want to get involved in the title battle. So Sai is still in first, Tablish right behind, and we have Sai on screen as well, the leader of Hungary as of now, in that black McLaren that you see on screen right now, and you can see that it is intense. Tablish again touching a bit of grass, and closely followed by Tablish right there, who has already won race 1 and 2. So a lot of pressure on Sai, but right now he's handling it pretty well. Absolutely, and great stuff by Sarthak, to be honest, because if he just stays behind the leaders, you know, uses their slipstream, sees where they're braking and what lines they're taking, he can also learn from it. It is worth getting lapped right now because you're following faster cars. And by following the faster cars and seeing what they're doing, and of course, when he replicates it, he will also gain a lot more time. Of course, he won't be able to exactly replicate it, but he will still go faster than what he already has been, which means that, you know, in the overall run of the race, he can absolutely catch up to the cars ahead, because Kanak is, even though he's a bit further ahead in, you know, the race right now, of course, there's still drivers who haven't pit, Dipanshu, Gaurav Arora, etc., etc. So this could be very, very crucial for Sarthak as well as Kanak, because at this point, it doesn't make sense for Kanak to slow down and get lapped. Of course, he's not going to purposefully slow down, but there is no, it doesn't make sense for him to get lapped, because that will be a negative right now, because he's 30 seconds ahead of the leaders on the track. So might as well continue on. But yeah, someone who is royally screwed over right now, to say in the safest manner, is Deepak, because he has the 25-second mandatory pit stop. He also has a drive-through, which will take the same amount of time. He'll have to go into the pits twice for the same amount of time. So overall, he's going to be losing around a minute on the track, which will, I mean, he's already P8. It will put him far behind Kanak, and the leaders might end up lapping him as well. So this whole day really hasn't gone good for Deepak, because, I mean, I've just looked at this. He also has damage. So just not a good day for Deepak, is it? Well, yeah, it is really unlucky. He did have a few spins as well in Silverstone, as we saw earlier. But yeah, a very, very, you know, good, I would say, race right now going on for Sai. I don't want to jinx anything, but a 1.4 second gap to Davlish, who has been extremely dominant this whole, you know, the whole day actually. But yeah, overall doing pretty well. And yeah, Sai right now doing a very good job. And yeah, we have Dipanshu in P3, Gaurav in P4, and Kanak is all the way down to 9th. But the good thing is, he can come back, because they still, the drivers in front have to pit, and because they haven't really pit yet, he has a slight chance of coming back. And while we're talking about that, while we're talking about pits, Davlish has decided to pit. So this is a very crucial lap for Sai Prithvi to put a, you know, decent lap, get into the pits maybe just next lap, so that there's no undercut going on, and comes back instantly. So yeah, it's a very, very crucial lap for Sai right here, and a very crucial out lap for Davlish as well, because he has to sit in the pits for 25 seconds just looking at his rival Sai going around the track. But the same thing will happen with him as well. So he will get a chance to do a blistering out lap. If that does happen, there's an outside chance he overtakes Sai. But right now, Sai is just cool, calm and collected, and just leading this race pretty well. If anything, in my opinion, it would be better for him to push now, because his tires are anyways, of course, worn out a bit. He might as well push and completely use them up. Whenever he decides to pit, he can obviously pit, because when he does come out of the pits, the issue then becomes is the tire pressures will be low, because the pressures will be exactly what they have set in the setup. Davlish coming out of the pits in P6, but yeah, the pressures will be what they set in the setup, which is of course not, you know, the race pressure, because as they drive and the temperatures increase of the tires, the pressure, so does the pressure. Ideal pressure is around
we retain 26 to 27. That is a very, very good window for the tire pressures. So you don't want to exceed it. And of course, when he's going to come out of the pits, they're going to be extremely low because of the track temperature, which is 36 degrees. They obviously have reduced the pressures quite a bit to adjust to that. So there is obviously going to be a very, very big gamble there for him to push on the first out lap. So he might as well push now and just have a good time and take it a bit of a chill when he does come out of the pits, whenever he, of course, does go into the pits. One thing to take note of is that Sai Prithvi has still not pit, and he's going for another lap now. He's choosing to go a bit long and maybe later on pit. He knows, he's pretty confident that he will be able to keep that lead off of Doublish and not just lose P1. So a very bold strategy right here by Sai. Of course, the pit stop is a very, very important part in this race, and to be very honest, he's doing an amazing job of keeping P1 right now. Has obviously overtaken Sarthak Ray, who's already pit. Will be obviously, after he pits, he won't be a lap down. But yeah, right now a pretty dominant race right here by Sai. And we have the likes of Shubham as well as Kanak, who have already pit. So Kanak doing a pretty good job of making a comeback after the very early pit, because he was stuck behind, I think that was Gaurav. So we have to see how that pans out towards the end of this race, because we have Gaurav in P3, and there's a slight chance that he actually gets overtaken by Kanak if Kanak can put in some consistently fast laps. Anything's of course possible, but yeah, Kanak has to absolutely put in the work now, because 25 minutes remaining in the race, around the halfway point of this race. So right now, if you're not pushing, then of course you will not be able to pull anything out of this race. So Kanak has to push. So do, all of the drivers who have already pit. So Shubham and Sarthak, who we are also seeing on the screen right now, all of these guys have to completely focus, forget about everything else, and just push until the end. Because if it was a longer race, then it makes sense to conserve, but right now it's not the time to conserve. 25 minutes remaining, go for it. They've already done it before. They can obviously do it again. It's obviously in their best interest to do so, and yeah, Dipanshu in P2 is also holding out quite well. Of course, he hasn't made that big of a gap to P3 and P4, only about 4 or so seconds, so he still has to do a lot more work, of course, considering that he has a 5-second time penalty. But for now, I think where these guys are in terms of the pace is absolutely fine, considering tire wear, etc. And yeah, the top 5 as of now haven't pit. So even the pit strategies, as we were talking about earlier, is going to play a very important role. So yeah, we're just waiting for even the leader, Sai, to pit actually. So on board Sarthak Ray right now, who is in P10 as of now, but with some consistent laps, he can make a comeback. He would be able to, just get back into maybe a low P5 maybe. Yeah. But again, we just have to wait and watch, wait for all the drivers to make their pit stops, because on the left, top left, you can see that there are green as well as, a yellow color box with a 1 written on it. So that shows that you have either pit or not pit. So we have around 5 drivers who have already pit, and then the rest of the guys haven't pit. So it is pretty, I would say even as of now. Sai going for a very longish, I would say a different, a different kind of strategy, because yeah, he's going long, maybe pitting towards the end, getting to the end, whereas Doublish wanted to pit early and try and chop that gap down. Yeah, absolutely. I mean, with the damage as well, and of course a lot of these cars, because of the lap 1 incident, sorry, it is going to be an absolute, shocker for these guys if they don't get a lot out of their, strategies that they are pulling off right now, especially for Sai Prithvi. He's gone very, very long. And of course, he's taking advantage of the fact that there is no pit window in this race. He can go for as long as he wants to. For all he cares about, he can pull off a Michael Schumacher, pit in the last lap, get that, pit sorted out, drive out, and then that's it. Of course, it doesn't make sense to do it. I mean, Michael Schumacher, of course, was an absolute legend, and he still is. I'm not denying Sai Prithvi of anything, by the way, but right now in this race with only 22 minutes left, I think
he should be pitting sometime soon because Davlish is in P4 and there's not a lot of gap left between these guys considering that Sai Prithvi, I mean, he has to stay in the pit box for 25 seconds. Driving in and driving out with the pit lane speed limit also adds about another 5 seconds to that time. So around 30 seconds will be your total pit time anyways. So I think it would be in his best interest to pit right now, come out behind Davlish, and then do what he did in the beginning of the race. Just put Davlish under pressure, force him to make mistakes, overtake him, go past, and get the job done. Yeah, and you can see that most of the cars have a little bit of scratch here and there. You know, all of them have had a bit of damage, but you know, on screen right now, Sam is getting closer to Dipanshu. So both of them have in pit. There could be a little bit of, let's say, pit strategies going on towards the end. We are only, of course, halfway through this race. And talking about pit strategy, Dipanshu gets into the pit. So he does have a 5-second penalty as well, which ain't gonna help him. But Dipanshu has decided to come into the pits. It's Sai P1, Sam P2, Dipanshu P3 as of now, and Davlish P4. But of course, it's only provisional as of now because the top 3 have in pit. And talking about top 3, Dipanshu has just pit. So yeah, we'll probably have Sai and Sam, the only drivers in the top maybe 3 or 4, to have to have not pit. Whereas most of the other guys have pit. Deepak going extremely long without pitting because he doesn't really have that many options as of now. So yeah, again, Sai Prithvi on screen, the leader of the race as of now, provisional as well as current leader of course, because he was very good in the early stages of the race. Caught Davlish off guard, when he made a mistake and did overtake, and he's just cruising, trying to put in consistently fast laps in because he knows that the final pit that he'll have to do is very important. I think talking about pits, he is going into the pits to serve his penalty. Not sure where Davlish is. I mean, it can't be right that he's a minute behind, can it? Oh no, he is a minute behind. I'm not sure what's happened. Maybe he has done Davlish has done something in the pits, because Davlish, if you look at your track map right now, he's in the 2nd sector. Sai Prithvi is in the pits. Of course, he'll lose around 30 seconds, but that's only half of 60 seconds. So, I mean, I'm not sure what's happened to Davlish. Maybe he's made a crucial mistake somewhere. And if, I mean, he'll still be P2 because Sam still has to pit. But if he does make a mistake, it does fall and remains in P3 or lower, then Sai Prithvi has pretty much secured it for himself. Not really, because when you are just in the pits, it takes a lot of time to go through the pits as well. So it's not really just a 30-second pit stop. It's going to be a 25-second stationary stop, and then you're just going super slow whereas Davlish can go over 100 kilometers per hour. So coming out of the pits now, and Davlish is just in the last part, last sector, final lap. So let me say final turn. But yeah, Davlish coming on the main straight now. But yeah, Sai Prithvi has this completely under control, I would say, because he's around 5 seconds in front, coming out of the first turn now, going into turn 2 and turn 3. Sai has Davlish covered. This could be a very decent win for Sai. We have the rest of the drivers on the right side of our screen as well, and we can literally see Sai as well as the Davlish on the screen right now. So both the top drivers are on screen right now, and you can see both of them just completely glued onto the screen, trying to focus. And maybe this track is more suited to a McLaren and Sai, and he's doing an amazing job with that car. Absolutely, and 6 seconds, he's absolutely nailed his strategy right here. Davlish, I think, made a mistake somewhere, something happened to him. It's not clear what's happened, but he's lost out more time than he would have really wanted to. 6 seconds separate Sai Prithvi and Davlish, but there is over 30 seconds of a gap between Davlish and Kanak. So even if Davlish does make a mistake and spins out, unless he picks up some sort of damage by going off into the runoff and hitting the walls, a P2 is still secured for him, which makes me wonder who will actually be the champion at the end of this, because double points. I know P1 gets 15. P2, I guess, gets around 12 points, considering the split. Yep. So what do you think? Will that crown Sai Prithvi the champion? I don't think so. I think there might be a tie.
Again, that's up, that's for us to look at the end of this race. We still have 17 minutes. Anything can happen, anyone can make a mistake at this point. But all the drivers have crucially, made the pit stops. So it's Sai P1, Davlish P2, and Kanak back in that P3 spot, the consistent P3 spot. We have Gaurav Arora in P4, and of course, Kanak does have a 5-second penalty as well. So Shubham Das in P5, Dipanshu P6, Sam in P7, Sarthak in P8, Shan in 9, and Deepak in a very lonely 10th as of now. So overall, the field is just spread out completely. You can see on the top right of your screens. And yeah, as of now, at least Sai has this under control. He has around 6 seconds of a gap to Davlish, who is his champion rival. And only after the whole thing is done, we'll be able to know if Davlish has this in the bag or has Sai in the final race of the finale got P1 and can he become the champion? Absolutely, and once again in the same corner where Davlish made that mistake earlier on in this race, which let Sai Prithvi by, he's done that same mistake. I'm not going to deny that corner is particularly hard. It does look easy, but it's quite deceptive. You think you can go on throttle and your car will stick. But the issue is your car doesn't. It just completely understeers off if you don't get your throttle right and of course your line right. So Davlish is making those mistakes which we didn't expect from Davlish, but then we also kind of did mention it at the beginning of this day when, at least I was expecting Davlish at some point would make some mistakes under pressure, and clearly the pressure is getting to him, but right now, yeah, I think a P2 might still secure him the championship. I think it might be a tie. I know you're saying we need to do the calculations at the end of the race, but I think these drivers, at least in the back of their minds, are thinking about, the points gap. Of course, their main focus is on driving, making sure the car is on track, no mistakes. But the main point of the matter is that somewhere in the back of their mind, in the last race, in the last 15 minutes, when there is a bit of a gap and all you're trying to do is just keep it on track, it does happen sometimes that, the thought of you winning or not does come into the back of your mind. And I'm pretty sure Davlish and Sai Prithvi have started at least thinking a little bit about it, because at the end of the day, there's a big difference between P1 and P2 in the standings, especially with the prize pool. The way it's being distributed, P1 is of course getting a lot more than P2. It's still a very, very good amount. Of course, these guys will be plenty satisfied. But after so much hard work in Bathurst and after so much hard work in Silverstone, both very, very challenging races, throwing it away in the last race is not something anyone wants. That is indeed true, and yeah, I feel like the most contempt person out of the whole performance right now would be Kanak in P3. He did have, he was stuck behind Gaurav and I think it was Dipanshu. He chose to pit a bit early, and now he's just come back in P3. He's been P3 in every single race, and we can pretty much call him the P3 merchant now. So yeah, overall a very, very consistent drive by him. Of course, we have seen even Sai and Davlish changing positions in this particular race, and Sai even now is doing a very good job of keeping Davlish behind. The gap, if you can see on top left of your screen, it's always changing, it's ever changing, and Sai is slowly but surely going further and further away from Davlish. So a very good performance right here by Sai in the finale, double points of course. 14 minutes left, and that's a slight snap from Kanak right there, but held pretty well, and this is why he's being able to do and put in such consistent laps in. Exactly, that 5 seconds not really affecting him anymore because of the gap. He has 11-second gap to the car behind, so he's absolutely sorted. Sai Prithvi lapping Deepak Raj. I mean, in GT racing, I'll just make it clear, the lapped car doesn't really have to give way an F1. In F1 how they do it, you have to basically just keep your line and don't do any sudden changes, and it is upon the car lapping you to get past you in some sort of a way. So if Sai Prithvi was for some reason held up behind Deepak, especially through this very tricky sector 2, he would have easily lost around 2 or 3 seconds to Davlish. Not that it matters because the gap is around 8 seconds at this point, but those 2-3 seconds could have been crucial, and of course he will lose a bit of his temper there because nobody really likes being held up by a lapped car. Well, but as of now, we are in that
phase of the race where everyone's just settled in, they know where they're probably going to finish, and they have to make sure that they don't lose focus and just dip a tire into the grass or go wide, because we saw it earlier that Davlish made a mistake and Sai was able to capitalize on it, but Sai has 7 seconds and it's just growing more and more. So he does have a very good gap. So even if he makes a small mistake, it's going to take a miracle for Davlish to come back from all the way, almost 8-second gap back to, P1. So it's going to be hard for Davlish to actually get the place back, especially with Sai just driving amazingly, very consistent and slightly faster than Davlish at this point of time. And talking about consistent, we have Kanak in P3, Gaurav P4, Shubham in P5, and Dipanshu in P6, while Sam, Sarthak, Shan, and Deepak end up the P7 to P10. Yeah, I mean, the drivers have obviously divided in the race now. Some of them are still kind of close to each other. We can see car number 24, who is Shubham Das, who is kind of close to Gaurav Arora. I mean, they are very, very close. There's 3 tenths separating the two of them. So obviously, they're going to get into a bit of a battle between themselves. Gaurav Arora, someone who, of course, just sends it all out when he's trying to attack. And Shubham Das, who, of course, will try and leave you no room to overtake. Gaurav Arora doing whatever he can to try and get past Shubham Das right here. Only 3 tenths still separating the two of them. Of course, it's not the easiest to make an overtake in Hungary. However, the main point of this sort of format was so that drivers put pressure on the other drivers, force them to make mistakes, and of course the pit stop and the strategies will obviously help you out. Gaurav Arora, of course, his strategy has helped him out. He's only, I mean, he did go a bit wider, so he's lost a bit of time, but well within a second of Shubham Das, who's in the Audi, and the Audi has its own disadvantages at this track, to be fair. Gaurav Arora in the Porsche, his car has one big disadvantage, which we have mentioned countless number of times now, and that is his car does not like its rear tires, and Hungary is a track where you need your rear tires. So I think his strategies worked out well. I believe that he might be able to keep up this pace for the next 10.5 minutes that do remain in this race. But fact of the matter is, for how long can SD go on, without making those mistakes and not falling under pressure? Because though he's not someone who really cracks under pressure like that, but the second he might do a slip up, like, braking 5 meters later or braking 5 meters earlier, that really gets to him in the head and affects him a lot mentally, which destroys his focus completely, which could play in the favor of Gaurav Arora. Indeed, the P4 hasn't been sealed yet, of course, because Shubham and Gaurav are very close to each other, and probably the only 2 cars very, under a second on track right now. So yeah, most of them have settled in their spots, just trying to put in consistent laps, not make any mistakes. And for those of you who are watching us online and are here on the event as well, we are going to have other games as well real soon, like Pokemon Unite, Free Fire, and FIFA by the end of today. So stay tuned, and we'll get back on that as well. And getting back to the race now, again, both of them super close. Gaurav trying to just close up on Shubham, but Shubham is not keeping a foot wrong, because he has been able to just put in consistent laps in, and he's actually capping Gaurav now. We can see Gaurav on screen right now. We can see his camera and the way his hands and stuff are moving, and we can slightly see SD as well on the screen. So both of the drivers on screen, in the onboards as well as on the camera. So all of them super close to each other. And during the breaks, when we went and spoke to the drivers as well, all of them are pretty happy with the performances. They are trying to get better and better, of course, but yeah, they're trying their best with what they have, and yeah, just trying to put on a good show for all of us. Absolutely, they are going to go still side by side. Both of them are quite close in the points tally as well. Not a lot of gap separating these two guys. I mean, it's marginable, but yeah, I mean, Gaurav Arora is on 6 points, Shubham Das on 11. With double points in play, Gaurav Arora really has to get past Shubham Das, make a bit of a gap, and see if he can try and challenge Kanak.
might sound unrealistic because Kanak is 15 seconds ahead and he is, of course, increasing his gap on these guys. Of course, he has been putting in faster lap times. But if Kanak were to make a mistake and, you know, maybe have a bit of a moment, lose 10 seconds, well, then he already has a 5 seconds penalty. And, you know, if Gaurav Arora does manage to stay within that time, which, of course, he, has the capability of doing so, then he could secure a P3. And for all you know, he could overtake O. Well, commentator's curse at its finest right here, ladies and gentlemen. Drive-through for Gaurav Arora. Any hopes of a P4 absolutely thrown out, and any hopes of even a P3 if he did have it in mind, absolutely thrown out. And not a good race for him. I think he got a drive-through for track limits. It's not the easiest to keep it within track limits over here, but I mean, it is something that you don't really expect out of Gaurav Arora, you know. So with his drive-through, I think he'll be coming out somewhere in P7, and that is a lot of points loss going from P5 to P7, so that's not ideal for him. And at this point, he has to count on the drivers behind making a mistake, you know, when he does serve the drive-through, so that maybe he has a chance of getting back in the P5. But otherwise, I think it's pretty much sealed for Gaurav Arora. Well, that's a slam dunk penalty. Of course, track limits, you get 3 warnings. The 4th one, you go off track, you get a penalty for it. So yeah, that's pretty much simulation for you. And yeah, it's like pretty realistic compared to what happens in real life as well. So that's just unlucky for Gaurav because he was in a very good position, but Dipanshu is right there, like around 5 seconds or 6 seconds behind Gaurav. So a drive-through is basically, a GG for him, because from P6, he's definitely going to drop down to at least a P8, if not P9. So that's unfortunate for Gaurav, to say the least. But yeah, we'll just try and focus on the race in front. Of course, Gaurav Arora also has to focus on that, and he'll probably is in the pits already trying to get that DD off, because of course 30 seconds after the race doesn't really make sense, and you normally get 3 laps to finish the drive-through before you get disqualified as well, just like real life. So a lot of variables in game as well, so let's not get too technical. Yeah. But yeah, right now Sai doing an amazing job of keeping that lead and actually extending that lead. In P1, he was right behind Tavrish in races 1 and 2, whereas I think Hungary is a track which he really likes, and so does his car, because without having a good car, he won't be able to put in some good laps. And while I'm talking about that, a bit of oversteer right there by Sai, but amazing control as well to keep the car on track and not just sliding around. And Gaurav has come out P7 right in front of Sarthak Ray, and this battle between Sarthak as well as Gaurav can go till the wire, because both of them pretty close to each other on during the LAN and in the rig as well. We have Sam on screen right now in the BMW, a very comfortable P6 as well, trying to maybe close up to Dipanshu, but there's not much time left in the race. We only have 4 minutes and 30 seconds for this race, so yeah, it will be over soon. Sai, a very comfortable P1, unless there's something happens to P1 and 2, it's pretty much going to stay the same. Absolutely. I mean, Sarthak is going to try whatever he can to get past a P7. Let me remind you once again that he is in a battle with Dipanshu for that, I believe, P4 position in the overall standings. And him being in P8 and even in P7, if he does manage to get past Gaurav Arora, is not going to help him out a lot. Dipanshu has to make a mistake somewhere or get a DD or just do something that will lose him a lot of time, because otherwise it's Dipanshu's P4. And once again, coming back onto the topic of the points gap, for the people that don't know, who don't really follow racing, if both Sai Prithvi and Tavrish were to equalize on points, it would go on a count back in terms of race wins, in which of course Tavrish will take it away. If of course the situation was different, where both of them had 1 win each and then this was the deciding one, I think it would have already been decided. But yeah, basically there's a lot of count back that they can do, and if they want, I guess they can also go to the semi-finals or something, or they can look at the whole tournament in terms of count back and award the winner there. But right now, if it is equalized,
And if countback is in play, then of course Davlish will absolutely knock it out of the park, despite Sai Prithvi's amazing efforts throughout the game. Yeah, we have Saturday on screen right now, who is trying to get closer to Gaurav Arora right in front, but Gaurav actually does have a lot of pace. We have seen that he was getting close to Shubham, who is in B4, but yeah, has dropped back down to B7 after that drive-through that he had to serve for exceeding track limits. But the final, 2.5 minutes of this race, I'm pretty sure the drivers are also super tired, because they have been racing for over 3 hours now, technically, because even during the break time, we went, next to the drivers, and all of them were just trying to put in laps, trying to get as many points as possible, just practice for the race. So, yeah, they have been putting a lot of hard work in, and of course, that's what is required to see in an esports event, of course. So, yeah, going to be super tired, but at the end, they're getting good reward for it. So, Exactly. yeah, overall, a pretty decent race by Sai for, maybe finishing this race in P1. Yeah. So, yeah, that was a very, very crucial move for him when Davlish made the slight mistake. Yeah, and with 1 minute 40 remaining in this race, what a day it has been. I mean, it was an absolute chaotic Super Bowl that we had. It was an absolute chaotic, race at Bathurst that we also had with Dipanshu facing some issues, and of course because of that, of course, him spinning out and not gaining the points that he really needed. Although I think his P4 is secured now, but I think he could have challenged for a P3 if it weren't for that first race. In the second race, the rain put in a lot of curveballs. Deepak Raj and Shubham Das, both the Audi cars, struggling a lot, and that was very, very clear to see, with them making multiple mistakes throughout the race pretty much every lap. Of course, not something that is very regular with these guys, but it is something that happened today under pressure. And yeah, I mean, this will obviously just boost them later on. Disappointment for now, but for the races after this, for the seasons that will come for ACC in the Esports Premier Series, it will just give them a boost to just do better, put in more effort, and try and perhaps decrown Davlish as the defending champion, if he does get crowned champion, that is, or whoever gets crowned champion, dethrone them. So of course, at the end, in the long run, it is very beneficial for them. Sai Prithvi finally starting the final lap of, I guess, ACC in the Esports Premier Series. Absolute dominance by Sai Prithvi after he did get past Davlish. But yeah, at this point, he'll just be cruising home. Of course, taking in the victory and just feeling happy about it. Whatever happens with the points, that is for, of course, the race directors to sort out. For now, timer has ticked to 0, and Swagger, throughout these multiple months, qualifiers 1, qualifiers 2, semi-finals, and now even the finals, what have your thoughts been on this whole thing, and what do you think holds in the future for ACC in the Esports Premier Series? This has been a very, very competitive race. Of course, it's kind of like a two-horse race at this point, but both of them have been doing extremely well to even, try and finish P1 and 2 consistently, just faster than the rest of the group. Whereas the, let's say P4 to all the way down to P10, the order has been going up and down quite a bit because of consistency. So that's what has kind of separated these guys from the rest of the field. But yeah, the final lap of ACC 2024 Esports Premier Series, and Sai Prithvi coming to the end, like the penultimate corner of the last lap. For the one last time, he'll be going through turn, like literally the last turn for the final lap, final time. That's Sai Prithvi getting P1 as of now, and what a race it has been from Sai, because he has been doing very, very consistent laps, and what a finish that is for Sai. It is a good finish for Sai, but I'm just hearing news from race control as Davlish Singh does come across the line. He is the Esports Premier Series 2023 champion for Assetto Corsa Competizione. Great efforts by Davlish Singh, and over the months, his practice and his hours of efforts has turned into something great for him. And
Yeah, I mean, it is a very big achievement, and I'm pretty sure he will be satisfied with the results. And of course, congrats to whoever, you know, has taken whatever position. Sai Prithvi in P2, Kanak in P3 in the championship, and the other drivers after all of the points will be sorted out. You know, whichever position they were in, irrespective of that, considering these guys are, you know, the best top 10 sim racers in India, they have obviously proven it, and no doubt all of these guys will be putting in a lot more effort, and of course even double the hours that they have put in now for the next season, and see what they can do. And perhaps all of them could be challenging Davlish to try and dethrone Davlish in the next season. And who knows, next season we could have even more signups and, you know, some new faces, because of course this is a very good game to have, and there are a lot of people who could be joining us for the next year as well. But what a race this has been. 45 minutes of, you know, just driving. I'm pretty sure the drivers will be super tired, and yeah, overall an amazing race for all of them. Not only an amazing race, but an amazing day and an amazing series to begin with. Sai Prithvi and Davlish Singh shaking hands, that great sportsmanship. This is what we love seeing in racing. Davlish Singh being congratulated by everyone, and so is Sai Prithvi. This is just what we love to see. Absolute sportsmanship between these drivers, regardless of what happens on track. Off the track, everyone is obviously happy for each other, considering they are obviously all friends with each other. But on track, everyone is a fierce competitor. But it is a very nice thing to see in terms of the racing. And yeah, I guess that is it. I mean, a very good ending in my opinion, a very eventful day and a very good ending for ACC, Assetto Corsa Competizione, in the Esports Premier Series 2023. And I think, yeah, despite Sai Prithvi's efforts for now, next year for sure he will be putting in double those efforts, and who knows, maybe it could be Sai Prithvi dominating the field instead of Davlish Singh next year around. And yeah, Davlish Singh just on his rig, yeah, having a nice time. I think he's wiping his tears. So yeah, nice race. All of this was very nice to see. And thank you guys for watching throughout the months as well, following this very closely. We absolutely loved commentating over it. Of course, Moto and the other commentators who also contributed to this. Unfortunately, they couldn't be here, but obviously we also have Swagger, who's also one of the commentators. But yeah, thank you from all of the team, genuinely, for taking part, the drivers as well as the viewers for watching. This has been an absolute pleasure from me and Swagger. And Swagger, any final words for us here today? Yeah, well, this is not the end of the event. Of course, we have some more games lined up for you guys, of course, after a while, which will be starting. But yeah, as of now, it's both of us, Simply and Swagger, signing off from the Combox, and we'll be, you know, giving this over to Spiro as well as Insane. So see you guys in a bit. Thank you so much, casters. It was lovely. Can we have a round of applause for our brilliant casters? Yo, Finally. that's the spirit. Finally, the applause is here. The audience is also here, guys. ऐसे ही आप लोग our support पूरे अरीना में बना के रखिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक गेम खत्म हुआ है, सिर्फ एक ACC का एक्शन हमने देखा, भी प्लेयर्स को देखा, अमेजिंग परफॉर्मेंस देखी, अमेजिंग कार रेसेस देखी, लेकिन अब बारी है हमारे दिल के करीब पोकेमॉन यूनाइट की। I hope you guys are ready, because अभी के लिए हमने कार रेसेस तो देख लिया, जैसे इनसेन ने बताया, बट वो कार रेसेस इनक्रेडिबल थी। I mean, कितना कुछ था उसके अंदर, टेक्निकलिटी, आपके टायर्स फ्रेश है या नहीं है, कार का टेम्परेचर कितना है, तो जो प्लेयर्स वहाँ खेल रहे थे, एंड भारत में पहली बार हो रहा है इस बड़े लेवल पे, तो एक ह्यूज शाउट आउट esports प्रीमियर सीरीज को भी, जो इस नए गेम को लेके आया हम सब के लिए। बट अब जैसा आपने कहा कि एक ऐसे गेम की तरफ चलेंगे जो हमारे दिल के बहुत करीब है। I mean, सब किसी ने भी देखा है पोकेमॉन, जब वो बचपन में खेलते भी थे, देखते थे। पोकेमॉन एक ऐसी चीज है जो हम सब जानते हैं, सब चाहते हैं और सब पसंद करते हैं। चलिए, अब आपने कह दिया कि सब पसंद करते हैं, तो एक बार हमारी जनता से पूछ लेते हैं, गाइस, everyone that is in the audience, एक बार लाउड चेयर फॉर पोकेमॉन। क्या आप लोगों को पोकेमॉन पसंद है? चलिए, अच्छी बात है। चेयर्स आ रहे हैं, चेयर्स आ रहे हैं। वो पावर, जो एनर्जी की हम मॉर्निंग से बात कर रहे थे, वो एनर्जी धीरे धीरे करके आ रही है। काफी सारी ऑडियंस हमारे साथ जमा हो चुकी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारे साथ बहुत सारी जनता ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़ी हुई है।
वो लोग भी कॉन्स्टेंटली अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं, बट आई एम रियली एक्साइटेड। अब तक सिर्फ एक ही गेम खत्म हुआ है और अभी आज के दिन पे कुछ और गेम्स बचे हैं और अंत में हमारा वो स्पेशल मोबाइल गेम का हम हमारी जनता वेट कर रही है, हम वेट कर रहे हैं। बिल्कुल इनसे हम सब इंतजार तो जरूर कर रहे हैं, बट यू नो व्हाट, पोकेमॉन यूनाइट का एक सीक्रेट स्टैट आपको बताता हूं मैं। ये जो 2 टीम्स यहाँ तक पहुंची हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी टीम्स को हराया है। और esports प्रीमियर सीरीज की जो खास बात है कि ओपन फॉर ऑल ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, कोई भी आके खेल सकता था। एक टीम रैंडम 5 नाम की आई, रैंडम प्लेयर्स एक साथ जुड़ के आए और वो यहाँ तक पहुंच गए। दूसरी टीम की बात करें NTRR, उनके प्लेयर्स भी लाजवाब है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए ये मैच। देखिए अब आपने ये कह दिया कि रैंडम 5 प्लेयर्स है यहाँ पे, बट गाइस लेट मी टेल यू एंड एवरीवन जो हमें देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्लेयर्स फिरो इनको इंडिया की टॉप नॉच ऑग्स के साथ खेलने का एक्सपीरियंस है। जितनी भी ऑग्स है, यू नेम इट, दीज प्लेयर्स हैव प्लेड इट वेल। प्रोफेशनल लेवल पे बहुत सारे प्लेयर्स ने खेला है और इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स है ना, every single one is going to put in every single effort, 110% एफर्ट के साथ यहाँ पे खेलने वाले हैं और जो ट्रॉफी है वो जीतने की कोशिश करेंगे। देखिए जब ट्रॉफी आपकी आंखों के सामने होती है तो कोशिश तो आपको करनी पड़ती है और वो कोशिश यहाँ पे ये प्लेयर्स करते जरूर नजर आएंगे, बट आई एम वंडरिंग कौन से पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करेंगे, क्या स्ट्रैटेजीज रहने वाली हैं। आईजीएल से बात करने का मौका काफी जल्दी मिलेगा हमको। बिल्कुल सही कहा, आईजीएल से हम लोग इवेंचुअली तो बात करेंगे जब प्लेयर्स आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय और ले लेते हैं अपनी टीम्स। गाइस अपनी टीम्स को थोड़ा सा वक्त दे देते हैं, क्योंकि देखिए फाइनल स्टेज पे, स्टेज के इस तरफ आने के लिए जो मेहनत करी है हमारे प्लेयर्स ने, वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। बिकॉज इट्स ऑलवेज इजियर टू बी ऑन दैट साइड ऑफ द स्टेज देन बी हियर। प्रिपेयर कर रहे हैं, बैक स्टेज बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन एक सिंपल सा सवाल, आपका सबसे फेवरेट और क्यूट पोकेमॉन कौन सा है? यार क्यूट का तो पता नहीं, बट मैं तो चारिज़ार्ड यूज करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। बट व्हाट यू? ऑरेंज इसीलिए मुझे लगता है आपने पहन के रखा है, बट अगर कलर पे जाते हैं तो मेरा तो यहाँ पे हल्का सा ग्रीन कलर है, बट आई वोंट से बल्बासौर, आई वुड गो विद पिकाचू ऑफ कोर्स। पिकाचू मुझे लगता है ना पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा क्यूट और सबसे ज्यादा फेवरेट सबका पोकेमॉन पिकाचू, मुझे ऐसा फील होता है। यार आप हो भी पिकाचू जैसे थोड़े गोल मटोल मजेदार से, तो मुझे लग रहा है ये भी एक रीजन है कि आप पिकाचू को पसंद करते हो। बट क्या पिकाचू का इस्तेमाल आज के दिन में होगा, ये भी एक सवाल हम सबके मन में है। बट यू नो व्हाट, इन सारे सवालों के जवाब हमें बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, बिकॉज द टीम्स आर ऑलमोस्ट रेडी एंड दे आर अबाउट टू कम हियर एनी टाइम नाउ। टीम्स एक तरफ है NTRR और दूसरी तरफ है रैंडम टीम। सोच के नाम रखा गया है एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट डेफिनेटली इज अ बिग एंड गुड मीनिंग बिहाइंड इट। वो पूछेंगे जरूर अपनी टीम से, जैसा आपने बताया कि क्या पिकाचू का यूज होगा इस टाइम पे, मेटा में कौन से पोकेमॉन इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रीटी श्योर हमारी जनता को पता है, हमारे साथ जितनी भी ऑडियंस जुड़ी हुई है गाइस, आप लोगों को तो पता ही है, लेकिन हम लोग जितने भी हमारे प्लेयर्स आएंगे इनसे जरूर जानेंगे। बिकॉज आईजीएल जो मेटा की बात करेंगे, जो गेम की बात करेंगे, वो एक अलग लेवल पे होता है। देखिए आप और मैं कॉम्पिटिटिव प्लेयर नहीं है, वी आर सिंपली कैजुअल गेमर्स जैसा कहते ही है। हमारे देश में बहुत सारे कैजुअल गेमर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, बहुत सारे सेंसेशनल ई स्पोर्ट्स एस्पायरिंग प्लेयर्स हैं। सो उनका सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, लेकिन कुछ ऐसा सवाल आपके मन में जो पूछना चाहेंगे आप? यार मैं तो एक मैसेज पूछना चाहूंगा कि आप अपने अपोनेंट को कोई मैसेज देना चाहो, क्योंकि दोनों ही टीम्स में बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि फॉर्मेट क्या होने वाला है। हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगा कि BO3 फॉर्मेट यहाँ पे रहेगा। जो भी टीम 2 मैचेस जीत जाएगी वो जीत जाएगी। बट आई बेट पहले 2 मैचेस में स्कोर सेटल नहीं होंगे, ये मैं आपसे बेट कर रहा हूँ। तीसरे मुकाबले तक ही जाएगा। चलिए बेट लग गई है, डन। समोसे खिलाने की। कितने समोसे खाओगे? जिनको नहीं पता बहुत समोसे खा चुके हैं सुबह से। ये भूख लग रही है गाइस, क्या करें, समोसे से ही पेट भरना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स, हमारी टीम्स, ये समोसे से काम नहीं चलाने वाली। हमारी जो टीम्स है ना, ये ट्रॉफी जीतना है, इन्हें ट्रॉफी की भूख है, इन्हें विन करना है। एंड ऑफ कोर्स 2000 पहला इवेंट है, बट मैं चाहूंगा कि जनता भी हमारे साथ बुलाए। गाइस, on the count of 3, I want you to applaud the coming team because यहाँ पे वो आए हैं बहुत मेहनत करके। Can we have a
लगता है इंतजार Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. माइक एज वेल ताकि मैं देवेश से बात कर पाऊं। माइक की जरूरत है, हमारे पास तो है। यार उनके पास नहीं है ना, उनकी आवाज भले ही बुलंद है, बट आई वुड लव के जो ऑनलाइन हमारे दर्शक हैं वो भी इनकी आवाज सुन पाए। तो कैन आई गेट अ माइक राइट नाउ? वैसे जैसे तो लगते हैं थोड़े बहुत। देवेश आपका क्या कहना है, यस या नो? ओह स्नोलैंड, आई थिंक I'll take that as a compliment. You don't need to say sorry. But guys, I think हम लोग इस चर्चा में डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए रमेश आप अपनी जगह ले लीजिए। As a team, आपको दोबारा आपको यहाँ बुलाएंगे। And please prepare. Thank you so much. आप लोगों ने इतना अच्छा स्वागत किया anti-RR का, but it is about time for the team random team के स्वागत के लिए एक बार every one of you. Yeah, can we have on stage Team Random? समय ले रहे हैं, एक बार फिर से प्यार से बुलाना चाहेंगे रैंडम टीम, आ जाइए स्टेज पे, आपका इंतजार हो रहा है। Ladies and gentlemen, Team Random! शायद हमें भी कभी ऐसा मौका मिलता कि स्टेज पे एंट्री लेते इस तरीके से फ्लैग को अपने कंधे पे रख के, लेकिन इतनी मेहनत कर नहीं पाए। यार हम उतनी मेहनत नहीं कर पाए, बट यू नो व्हाट, यहाँ पे जितने भी दर्शक आए हैं या फिर जो स्ट्रीम पे दर्शक देख रहे हैं वो मेहनत कर सकते हैं, बिकॉज esports प्रीमियर सीरीज का ये तीसरा सीजन है और हर सीजन के साथ एक चीज जरूर होती है, हर सीजन ओपन फॉर ऑल होता है, हर किसी के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे पहुंच सके, वो यहाँ पे खेल सके। बट अभी के लिए मुकाबला होगा बहुत फियर्स। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे अगर बात की जाए NTRR की, क्लाउन 5 को 3-1 से हरा के यहाँ पे पहुंचे हैं। भाई अगर रैंडम टीम की बात की जाए, टीम एसेटो जैसी एक सॉलिड टीम को 3-0 से हरा के यहाँ पे आए हैं वो। लेंसेन आपको स्नोलेक्स क्या बोल दिया हमने, आपकी आवाज ही यहाँ पे चली गई है, बट आई होप आपकी आवाज काफी जल्दी हमें सुनाई दे। बट टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए सिनारियो को, दोनों टीम्स बहुत ही सशक्त हैं, बहुत ही शानदार हैं और मुझे लगता है कि घमासान जरूर आज के दिन में होता नजर आएगा।
इनसेन, क्या आपकी आवाज़ आ रही है अब? नहीं आ रही आपकी आवाज़, कोई बात नहीं इनसेन, हम आपको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। बट राइट नाउ दिस इज द टाइम फॉर ग्रैंड फाइनल्स पोकेमॉन यूनाइट। जैसा मैंने पहले बताया, हमने शुरुआत करी थी ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट से। भारत के बेस्ट पोकेमॉन यूनाइट के प्लेयर्स ने हिस्सा लिया एंड फाइनल्स के अंदर वी हैव दीज टू टीम्स। एक घेरा बना के दोनों टीम्स यहाँ पे तैयार हैं और फाइनल्स बस कुछ देर में शुरू होगा। हमारे दो बेहतरीन कास्टर्स भी आपके साथ यहाँ पे जुड़ने वाले हैं एंड दे आर ऑल्सो रेडी फॉर द सुप्रीम एक्शन। वी हैव स्टार्ट क्लैशिंग एंड TTR, ओवर टू यू गाइस। यार टीम्स का इंट्रोडक्शन अब हो चुका है, लेकिन अब बारी है ग्रैंड एक्शन की, क्योंकि ग्रैंड फिनाले स्टेज पे हम आ चुके हैं। टीटीआर क्वालिफायर 1 से आप मेरे साथ हैं, क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं यहाँ? देखिए उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने देखा है कि जब इधर परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था हर एक प्लेयर का ही। हर एक टीम ने कोशिश करा, लेकिन उनमें से जो टॉप 4 टीम्स थे वो सेमीफाइनल में है, उनको भी इधर कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ लड़के अभी हम लोगों के सामने NTRR एंड उसी के साथ साथ रैंडम टीम, सो ऑब्वियसली वो अपना बेस्ट देने ही वाले हैं इधर। वेल लेट्स सी, देखिए बेस्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ से आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। हम दोनों जानते हैं, टीम्स भी जानती है, एक बेस्ट ऑफ 3 सीरीज उन्हें देखने को मिलेगी। मतलब अगर आपने एक गलती कर दी, एक गेम गवा दिया, उसके बाद आपके पास बस एक और मौका रह जाएगा। वेल लेट्स सी क्या करेंगे, क्योंकि देखिए बैक स्टेज पे भी हम बात कर रहे थे TTR, दोनों ही टीम्स के जो IGLs हैं, जो प्लेयर्स है वो बहुत ज्यादा पम्प्ड अप हैं, और साथ ही साथ थोड़ा सा स्नीक पिक भी हमने लिया था, तो हमें तो अंदाजा है क्या क्या आ सकता है। आप लोग बने रहिए, क्योंकि आपके लिए काफी सारे सरप्राइजेस आएंगे। फॉर श्योर सरप्राइजेस तो काफ़ी रहेंगे ही रहेंगे, एंड नॉट ओनली दैट, मुझे लगता है कि आज एक दूसरे के खिलाफ वो जो राइवलरी है वो हम लोग को इधर स्टेज पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो जीतेगा वो इतने पूरे साल का जो मेहनत है वो सफलता के साथ अंत करके जाएगा। सो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने दिन से लड़ाई करने के बाद, इतना ज़्यादा बेहतरीन खेलने के बाद जब आपको वो ट्रॉफी उठाने का मौका मिलेगा, दैट्स ग्रेट ऑब्वियसली। जी हाँ, बिल्कुल वो चमचमाती ट्रॉफी। TTR ने तो उसके साथ फोटोज भी खिंचवाई हैं, एकदम मिरर की तरह हम अपना चेहरा उसमें देख पा रहे थे। और सोचिए आपको मौका मिलता है अपने साथ लेके जाने में, बूट कैंप पे, अपने घर में, जहाँ पर सजाना है सजाइए। और जब भी आप उस ट्रॉफी को देखेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ग्रैंड फिनाले नहीं याद आएगा, आपको याद आएगा क्वालिफायर 1 से अब तक का आपका सफर। हमें पता है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरा रहा, और जैसा कि हमारे होस्ट ने भी बताया, सेमीफाइनल्स में आके इन दोनों ही टीम्स के सामने बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज था। स्पेशली अगर बात की जाए रैंडम टीम की, SATUL 3-0 से उन्हें हरा के यहाँ पर जगह बनाई है, तो देखिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं सभी की इनसे। बिल्कुल, एंड NTRR की भी अगर बात किया जाए, वो भी क्लाउन 5 के साथ लड़ाई करके आए थे, सो लाइक बहुत बेहतरीन वो मैच भी था, बट उन्होंने भी 3-1 से उनको हराया था, तो दैट मीन्स दोनों ही टीम्स जो है वो एक अच्छे खासे लीड के साथ जीत के आए। बट देखिए एक चीज़ जो इधर ध्यान में रखना होगा कि जो ये चारों के चारों क्वालिफायर्स हुए थे, उसके बीच में बहुत सारे अपडेट्स आए, और वो अपडेट्स के बाद बहुत सारे पोकेमॉन थे जो कि नर्फ हुए, बहुत सारे पोकेमॉन बफ हुए, मेटा में चेंजेस आए, और उसके बावजूद इतना कुछ चेंजेस के बाद भी ये दो टीम्स है जो कि हर एक हर्डल्स को पीछे छोड़ के वो क्वालिफाई करके आए हैं। सो ऑब्वियसली इनका कंसिस्टेंसी तो एकदम टॉप नॉच चला था पूरा साल। वेल देखिए TTR कहीं ना कहीं उसी बात पे हम वापस आ जाते हैं कि हमने पीछे देखा है, हमें अंदाजा है कि क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, स्पेशली वो जो बफ्स आए हैं, वो जो पैच अपडेट्स आए हैं। देखिए समय समय पे आते रहते हैं। अब तो गेम में म्यूज कराडा भी है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चांसेस आर प्रीटी हाई शायद से हमें इस्तेमाल होता नजर आए। वॉल्क ने कुछ बातें कही थी हमारे कानों में, तो हम बस इंतजार कर रहे हैं कि क्या क्या होगा। एंड नॉट टू फॉरगेट, ऐसा नहीं है कि esports प्रीमियर सीरीज में हमें सरप्राइजेस ना मिले हों। आपको याद होगा TTR 5 इवोल्यूशंस को भी हमने देखा है, जीतते हुए देखा है। बिल्कुल, पिकाचू जो कि शायद से अगर आप एक सर्वे करवाने जाएंगे ना, तो पूरी की पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पसंदीदा पोकेमॉन होगा, उसका भी इस्तेमाल शायद देखने को मिले, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब हमें आखिरी बार देखने को मिला था पिकाचू। एंड स्पेशली जब हम बात करते हैं WCS की, वहां पर भी काफी कुछ इस्तेमाल हो रहा है नया नया। बिल्कुल, देखिए उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो है वो बहुत सारे सरप्राइजेस देखना शुरू हो चुका है हम लोगों को। एंड उसके बाद आज तो एक्सपेक्ट इसीलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि जो चेंजेस आया है जी, एक पोकेमॉन है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, वो था वेनेसोर। वेनेसोर अभी भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो अपडेट्स आया उसके बाद हम लोगों को थोड़ा ऊपर नीचे सीन तो लग रहा है, तो उस पर जो चेंजेस आएगा क्या लेंगे उसका मतलब खिलाफ
वो एक चीज़ जो है वो एक क्वेश्चनेबल बात रह जाता है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए, अगर हम लोग बात करें डिफेंडर्स की भी, तो उसमें भी अभी कहने कि हम लोग को पिछले कुछ टाइम में तो हम लोग को डिफेंडर्स बैन ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या दोनों ही साइड से डिफेंडर्स ही बैन होंगे? बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग को इधर पता चलने वाला है। देखिए क्वेश्चंस तो कई सारे हैं टीटीआर, क्वेश्चंस कम पड़ जाएंगे, हम कम पड़ जाएंगे पूछने के लिए, लेकिन क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है डिफेंडर्स की हम बात करते हैं तो मेरा फेवरेट डिफेंडर स्लो ब्रो। आप तो अच्छे से अब समझ चुके हैं, क्वालिफायर 1 से मैं एक ही मोमेंट पे रुक चुका हूँ कि स्लो ब्रो क्या उसका बैन या फिर पिक हमें एकदम इग्नोर किया जाएगा स्लो ब्रो को। लेकिन अब तक हमने शायद ही ऐसा कोई गेम देखा हो जिसमें स्लो ब्रो को साइडलाइन किया गया हो, या तो पिक होता है या बैन होता नजर आता है। क्या ये ग्रैंड फाइनल्स हमें एक हिस्ट्री रचता नजर आएगा? क्या स्लो ब्रो को साइड रखते नजर आएंगे ये प्लेयर्स पूरी तरह से? क्योंकि ध्यान रखिए ट्रेवेनेंट भी गेम में है, अम्ब्रियन को हम कैसे भूल सकते हैं, और भी ऐसे पोकेमोन हैं जिनकी तरफ आप रुख ले सकते हैं। बट एट द सेम टाइम टीटीआर आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप इस स्टेज पे होते तो आप किस ऐसे पोकेमोन पे रिलाई करते? वो कौन सा पोकेमोन है जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जैसे ऐश पिकाचू पे करता था? देखिए मेरा पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे तो डेलफॉक्स खेलना बहुत पसंद है। अभी के टाइम में थोड़ा सिचुएशंस अलग चल रहे हैं, मेटा अलग चल रहा है, बट पर्सनली मुझे डेलफॉक्स बहुत पसंद है। बाकी आप बताइए आपका फेवरेट पोकेमोन कौन सा है? देखिए आपने डेलफॉक्स का नाम लिया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले गार्डीवॉयर का नाम आया, क्योंकि ध्यान रखिए गार्डीवॉयर मेटा अब एक बार फिर से वापस आ रहा है। लेकिन आपने जब मेरा फेवरेट पोकेमोन पूछा है तो अगर मैं करंट मेटा में बताऊं तो ऐसे कई पोकेमोन है, बट स्लो ब्रो उसके साथ मैं क्वालिफायर 1 से स्टिक करता नजर आया हूं, अभी भी करूंगा। देखिए कई बार प्लेयर्स काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं स्पेशली डिफेंस पोकेमोन को, लेकिन हम दोनों ही जानते हैं कि जो डिफेंस पोकेमोन होते हैं उनके पास कितनी ज्यादा पावर होती है, और कई बार हमने देखा है कि डिफेंस पोकेमॉन गेम बदल देते हैं। आपको तो याद ही होगा, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब हमने एक सर्व के साथ रेक्वाजा स्टील होता देखा था। बिल्कुल, एंड ये जब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों को इधर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखिए ये अलग एक स्टेज है और ये स्टेज पे आके दोनों के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। बेस्ट ऑफ 3 का एक ही मुकाबला है, और जब आपके पास एक ही बेस्ट ऑफ 3 हो और उसके अंदर ही आपको सब कुछ आपका दिखाना है, देन जाके कहने कि वो डबल थॉट्स एंड ऑल ये आ जाते हैं। बट ये टीम्स के पास एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे से संभाल पाएंगे इस पूरे सिचुएशन को। देखिए एक्सपीरियंस की बात करें तो शायद अब ये वो 2 टीमें बन चुकी हैं जो कि पूरे के पूरे भारतवर्ष में टॉप पे होंगी, क्योंकि हमने स्ट्रीम की शुरुआत में हम जब आए थे हमने तभी बात की थी कि कैसे एक टीम एसएचयूएल को 3-0 करके यहाँ पे आई है, दूसरी टीम क्लाउन 5 को 3-1 करके यहाँ पे आई है। तो जब आप इतनी दिग्गज टीम्स के अगेंस्ट खेल लेते हैं, और सबसे बड़ी बात अगर आपने वो क्वालिफायर्स खेले हैं, मतलब आपने भारतवर्ष की हर एक टीम का सामना कर लिया है। बट चलिए बढ़ते हैं प्राइस पूल पे, देखते हैं इस ग्रैंड फाइनल्स में क्या है लाइन पे। टोटल प्राइस पूल 4 लाख रुपए का देखने को मिलता है इस ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज के ग्रैंड फिनाले में, जहां पर पहले पायदान पे आने वाली टीम लेके जाएगी 1,80,000 और इसके साथ साथ वो चमचमाती हुई ट्रॉफी। दूसरे पायदान पे आने वाली टीम 1,20,000 हमें लेके जाती नजर आएगी, एंड थर्ड फोर्थ प्लेस जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुकी है सेमीफाइनल्स में, वो 50,000 रुपए ऑलरेडी अपने नाम कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए एक ह्यूज प्राइस पूल है, एंड जो टीम्स है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात किया, वो चमचमाता ट्रॉफी, क्योंकि वो ट्रॉफी जो है वो सबसे ज्यादा मेन आकर्षण रहेगा इस पूरे सिचुएशन के अंदर, और ऑब्वियसली उसके लिए ही होने वाला है ये सारे के सारे लड़ाइयाँ। तो लेट्स सी कि किस तरीके से वो अपने पूरे जो प्लान्स एंड ऑल है वो इधर बिल्ड करते हैं, क्योंकि पिछले टाइम में अगर देखा जाए ये दोनों ही टीम्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज के अंदर। अगर वो चाहे उनके रिजल्ट्स के बारे में बात करें, इधर जो हम लोग को सेमीफाइनल में देखने के लिए मिला था, जैसे कि इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, एंटी-आरआर 3-1 से जीता, रैंडम टीम 3-0 से जीता, वो भी एसेटो को हरा के, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अलग जगह पे झलकता है। बट दोनों जब आज एक जगह पे आ चुके हैं, आई थिंक हम लोग जब पहले बात करते हुए देख रहे थे, ये दोनों बाहर तो दोस्त हैं, बट गेम के अंदर आके इधर कहने के अलग लेवल का स्पार्क फॉर श्योर देखने के लिए मिलेगा। देखिए वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो जरूर है ही है, लेकिन चलिए अभी बात कर लेते हैं अब तक की जर्नी की इन दोनों ही टीम्स की। हमें पता है पहले क्वालिफायर से ही ये दोनों टीमें हमें खेलती नजर आ रही हैं। एंटी-आरआर की बात करें तो पहले ही क्वालिफायर में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ वो क्वालिफाई करते नजर आए थे। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए रैंडम टीम की, तो वो हमें देखने को मिली थी क्वालिफायर 2 से आगे आती हुई। इनके सामने की बात करें तो सेमीफाइनल्स में हमने देखा कि एंटी-आरआर ने सामना किया एसएचयूएल ईस्पोर्ट्स का और 3-0 के साथ आगे बढ़ते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा रैंडम टीम, उन्हें सामना करने को मिली क्लाउन 5 जो कि चौथे क्वालिफायर से आई थी सेमीफाइनल्स तक, और वहां से वो इस ग्रैंड फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं।
अब यहाँ से कोई एक ही टीम होगी जो कि इस बेस्ट ऑफ 3 को खेलेगी और वो चमचमाती ट्रॉफी जो कि आपको वहाँ स्क्रीन पे भी नजर आ रही है और जब हम इसको सामने से देखते हैं तो इसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है टीटीआर। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए भी बता दें, रैंडम टीम एमजी के नाम से भी आप जानते थे। हाँ, 1-2 चेंजेस हुए हैं, उतार चढ़ाव कई हुए हैं ओवर द टाइम, लेकिन ये टीम, इसमें अभी भी वो स्पार्क है और ये स्पार्क आपको कुछ ही देर में गेम प्ले में भी नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो स्पार्क तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और उसी के साथ अगर देखा जाए तो एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आपको क्या लगता है इतने सारे चेंजेस के बाद क्या नाइनटेल्स आज देखने के लिए मिलेगा? देखिए, चांसेस आर प्रीटी हाई। आप सवाल ऐसे पूछ लेते हैं ना कि एक दो-धारी तलवार की तरह, आप एक मीठी छुरी की तरह आप वो सवाल फेंक के मारते हैं मेरे ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि नाइनटेल्स एक ऐसा पोकेमोन है जो कि कई मायने में खराब भी साबित हो सकता है, लेकिन कई मायने में गेम को पलट के रख सकता है। टीटीआर हम हमेशा बात करते हैं नाइनटेल्स बीइंग अ पोकेमोन जो कि बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, बट जब देखने को मिला है, एक बात ध्यान रखिए, 10 में से 9 बार नाइनटेल्स हमें पॉजिटिवली इस्तेमाल होता नजर आया और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें गेम पे भी देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड उसी के साथ जो सरप्राइजेस है वो क्या होंगे वो तो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके पहले अगर हम लोग इधर बात करें, जैसे कि हम लोगों को ब्लास्टॉइस काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। बैन्स की अगर बात करें तो हम लोगों को जो आखिर के कुछ दिनों में देखने के लिए मिला है, न्यू मेटा के अंदर डिफेंडर्स बहुत ज़्यादा बैन हो रहा है। तो ब्लास्टॉइस के साथ क्या हम लोगों को चाहे वो ज़्यादातर टीम जाते हुए देखने के लिए मिलेंगे? आई थिंक मुझे तो लगता है कि ये क्वेश्चन के पीछे आंसर है यस, शायद वो जाएंगे इधर ब्लास्टॉइस के साथ। बट स्टार्ट आप ये बताइए, अगर आप होते इधर तो सबसे पहला पोकेमोन कौन सा होता जो आप बैन करना चाहते हैं? देखिए, बैन की जब बात करते हैं तो अम्ब्रियन और स्लोब्रो, नो डाउट ये दो वो पोकेमोन हैं जिन्हें मैं चाहता कि पहले ही थोड़ा सा बाहर कर दिया जाए, क्योंकि जब आप बात करते हैं अटैकर्स की या फिर बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, हमने देखा है आप टीम वर्क के जरिए उन्हें सप्रेस कर सकते हैं, कई बार आप उनका काउंटर भी कर सकते हैं। लेकिन डिफेंडर्स जैसे कि अम्ब्रियन या फिर स्लोब्रो वो ऐसे पोकेमोन हो जाते हैं जो कि एचपी टैंक हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा हाई एचपी है, आप इतने आसानी से उन्हें डाउन कर नहीं सकते। एक बार अगर पूरी की पूरी टीम को वो बफ मिल गया, वो लेवल्स का एडवांटेज मिल गया और मान के चलिए डिफेंडर्स हल्का सा भी लेवल में ज़्यादा आ गए ना, तो फिर आप बार बार अगर कोशिश भी करेंगे उन्हें एम्बुश करके भी आसानी से डाउन नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उनमें से ही किसी को बैन किया जाए। बट उसी के साथ साथ और भी ऐसे पोकेमोन है, हम दोनों ही जानते हैं टीटीआर, जिन्हें भी बाहर करना ज़रूरी होता है। हुपा उनमें से एक रहता है। हम हमेशा बात करते हैं कैसे छोटा सा हुपा जब अपने विशालकाय अवतार में आता है तो पूरे के पूरे गेम को उलट पलट कर देता है। बिल्कुल, एंड आई थिंक इसी वजह से, ये कुछ कारणों की वजह से मुझे लगता है कि आज ट्रिविनेंट का यूज़ जो है वो शायद बढ़ सकता है, क्योंकि डिफेंडर्स की अगर बात करें तो ट्रिविनेंट भी एक अच्छा डिफेंडर है जिनको आप लेके खेल सकते हो। एंड हम लोगों ने इसके पहले प्रीवियसली बहुत बार देखा है, एंड इनफैक्ट हम लोगों ने WCS में भी देखा था मोस्ट प्रोबेबली, जिधर हम लोगों को परफॉर्म करते हुए देखने के लिए मिल रहे थे। तो सब मिला क्या करते गए थे, सबसे क्लोज इवेंट वही था जिसके बाद हम लोगों को जो है वो esports प्रीमियर सीरीज ग्रैंड फाइनल देखने के लिए मिल रहा है, ये इतना बड़ा स्टेज। तो फॉर श्योर मुझे लगता है कि उसका भी थोड़ा बहुत जो टच है वो हम लोगों को आज देखने के लिए मिलेगा शायद। वेल बिल्कुल, देखिए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज का दिन किसी क्वालिफायर का फाइनल नहीं है, आज का दिन है इस पूरे के पूरे जर्नी का फाइनल, आज का दिन है इस esports प्रीमियर सीरीज का फाइनल। तो आज टीम्स जानती हैं कि उनके पास जितने पैतरे हैं, जितना कुछ उन्होंने सीखा है, जो कुछ समझा है, वो सब वो लेके आए। और देखिए, जब हम पैतरों की बात करते हैं तो वॉल्क, वो खिलाड़ी वहाँ बैठा हुआ है, हमें भी हमारी बातें भी शायद सुन रहा होगा, और हमें पता है उनके पास कई पैतरे हैं, हमेशा कुछ नया नया करके लाते हैं, और उन्होंने इस सीरीज़ में, इस जर्नी में भी हमें करके दिखाया है, यहाँ से बाहर भी कई बार करके दिखाया है। बट एट द सेम टाइम हमें पता है हम कामिल और उनकी टीम को भी हल्के में नहीं ले सकते, वहाँ पर भी कई बेहतरीन खिलाड़ी बैठे हुए हैं। साइडक से भी हमने बात की थी और टीटीआर काफ़ी सारी ज्ञानवर्धक बातें वो हमें बता के गए थे। आपसे पूछना चाहूँगा, क्या प्रिडिक्शन आप करना चाहेंगे, बिकॉज एक BO3 सीरीज़ है, क्या लगता है आपके हिसाब से क्या हो सकता है फाइनल स्कोर लाइन? देखिए, BO3 में प्रेडिक्ट करना बहुत टफ है, क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ हम लोग को होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। इवन आई थिंक मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत टफ होगा सिचुएशन, क्योंकि एक बार आप एक मैच खेल के जाते हो, उसके बाद आपका स्ट्रैटेजी बाय एनी चांस अगर थोड़ा साउथ चला गया तो उसको रिबिल्ड करने में जो टाइम लगता है वो कहीं ना कहीं शायद ना मिले, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक गेम का ही हारने का बफर है। सेकंड हारे दैट मीन्स आपके हाथ से गया वो ट्रॉफी। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद ये प्रेडिक्शन जो है वो बहुत टफ होगा। बट आपने जब क्वेश्चन पूछा, आपने तो कुछ सोचा ही होगा, तो आप ही बता दीजिए। देखिए, मुझे इतना पता है कि 2-0 के चांसेस तो बहुत कम है,
2-1 के ही साथ मैं जाना चाहूँगा। वो किसकी तरफ होगा वो तो देखिए वक्त बताएगा, क्योंकि हम दोनों जानते हैं, हम ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ से किसी एक टीम का नाम बता पाना या फिर क्लियरली बोल पाना कौन विजय बन के जाएगा, कौन विजय होगा, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट टीटीआर। लेकिन मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि 2-0 तो नहीं होगा। और आपने एक बात कही, मैं उससे भी 100% एग्री करूंगा कि जब आप बेस्ट ऑफ 3 सीरीज की बात करते हैं तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कारण यही है, एक गलती आपको गेम से बाहर कर देगी, और अगर आपने वो गलती से भी पहले गेम में कर दी उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप जब 1-0 से पीछे होते हैं वहां से वापसी करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली ऐसे स्टेज पे जब आपके सामने बैठी है दूसरी टीम, जब आप लैन में है, जब ऑडियंस आपसे उम्मीदें लगाए हुई है, और इतने प्रेशर के साथ खेलना काफी मुश्किल होता है प्लेयर्स के लिए। बिल्कुल, लेकिन उसी के साथ साथ अगर देखा जाए एक पॉजिटिव वाइब्स भी आता है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और वो होता है ना एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग इधर जरूर देखने के लिए मिल सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, देखिए एक चीज़ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, वो है कि इधर जो टीम पहले हारेगा वो क्या डिस्कशन करेगा, क्योंकि देखिए अभी तक मैच चालू नहीं हुआ है। एक बार चालू हो जाए तब हम लोगों को जो है वो बहुत तो कुछ देखने के लिए मिलेगा, और बहुत फास्ट पेस होगा। हम लोगों को जैसे पता है कि एक मैच जो है वो 10 मिनट का होता है, जिसमें भी अलग अलग पोजीशंस रहते हैं, जिसमें आपको कैप्चर करना पड़ता है, कैप्चर इन द सेंस लाइक कंट्रोल में रहना पड़ता है वो टाइम पीरियड को। वो चीज़ें होने के बाद जब आप फर्स्ट मैच अगर कोई जीतेगा तो वो तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, बट कोई हारेगा तो उसके लिए प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक मुझे तो लगता है कि 3 प्लान्स आपको कम से कम लेके चलना ही चाहिए आज के दिन में, क्योंकि इस स्टेज पे आके कुछ भी हो सकता है। देखिए, या तो 3 प्लान्स लेके चलिए, या फिर एक ऐसा प्लान लेके चलिए जिसमें आप कोई भी गलती ना करें, एक सुई की नोक के बराबर भी चूक आपकी तरफ से ना हो, और सबसे बड़ी बात वो प्लान इतना अचूक हो कि आपके प्रतिद्वंदी कोशिश करते रह जाएं लेकिन उसका कोई तोड़ ना निकाल के ला पाएं। लेकिन एट द सेम टाइम टीटीआर बोलते हैं, मैं इस बात से एक जगह पे जरूर एग्री करूंगा टीटीआर, एंड दैट इज आप सेम कॉम्पोजिशन को 2 गेम्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने वो गलती कर दी तो वहां से गेम बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। क्योंकि हमें पता है आपके सामने जो टीम है वो भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं कि कैसे एक बार अगर वो हारे हैं वो समझ जाएंगे, वो ग्रास्प कर पाएंगे कि क्या क्या गलतियां उनकी तरफ से हुई, क्या क्या पिक्स थी जो कि वो डिफरेंट यूज कर सकते थे, और वहां पे शायद से आप मात खा जाएं। तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आप एनर्जी की बात कर रहे थे टीटीआर, और हम दोनों भी यहाँ फील कर पा रहे हैं, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी इस पूरे के पूरे अरीना में है, इतने सारे लोग हैं जो कि इन टीम्स को चेयर करते नजर आ रहे हैं, एंड वो पॉजिटिविटी अपने आप से फील होती है, राइट। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ बस गेम के शुरू होने का, क्योंकि गेम के शुरू होने पे ना शायद पॉजिटिविटी से ज्यादा हीट हमें फील होगी। फॉर श्योर गर्म होता रहेगा इधर टाइम टू टाइम। और सबसे बड़ी बात है इधर देखिए, मैच एक बार चालू हो जाए ना तब धीरे धीरे हम लोगों को भी आइडिया लगेगा कि आज के दिन में सोच क्या है प्लेयर्स की, क्योंकि बात तो हम लोगों ने कर लिया है, बात और काम दोनों में फर्क बहुत ज्यादा होता है। तो जब एक बार मैच चालू हो जाएगा तब हम लोगों को प्रॉपर्ली पता चलेगा कि वो क्या स्ट्रैटेजी या फिर क्या प्लानिंग के साथ आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को शुरुआती 2 से 2.5 मिनट शायद हम लोगों को उतना कुछ पता ना चले, लेकिन जब एक बार वो टाइम पीरियड पार हो जाएगा, फर्स्ट मैच से ही थोड़ा बहुत हम लोगों को दिखने लग जाएगा कि किसने कितना स्टडी करके आए हैं ओपोनेंट टीम को। मैं तो आशा करूंगा कि दोनों ही टीम जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टडी करके आए होंगे, और ऑब्वियसली एक तोड़ भी निकाल के लेके आए होंगे कि अगर ये खेलते हैं तो मैं दूसरा काउंटर में कुछ खेल लूंगा। तो वो सब कुछ जो है वो हम लोगों को इधर देखने के लिए मिलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। वैसे स्टार्ट आपसे मैं एक चीज़ पूछूंगा इधर कि ओवरऑल में तो हम लोगों ने इतने सारे क्वालिफायर्स देखा, सेमीफाइनल देखा, आपने प्रेडिक्शन भी करा 2-1 होगा, लेकिन इतने सारे मैचेस में आपको कोई भी एक ऐसा प्ले बताइए जो आपको अभी भी याद है, मतलब कुछ ऐसा हो गया था जिसके बाद एकदम आप चौंक गए थे अचानक। देखिए, ऐसा एक प्ले बता पाना तो बहुत मुश्किल है टीटीआर, क्योंकि हम दोनों साथ में ही थे इस बात में, तो आप जरूर मेरे साथ सहमति रखेंगे, क्योंकि ऐसे कई प्लेज हुए हैं, राइट। सबसे पहले तो एक प्ले जो कि हमें 5 इवोल्यूशन गेम देखने को मिला था, आपको याद होगा, वहां पर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ था, और मैं ज्यादा सरप्राइज तब हुआ था जब वो गेम में एक डोमिनेशन भी हमें देखने को मिला था 5 इवोल्यूशन वाली टीम से। एट द सेम टाइम अगर हम स्टील्स की बात करें तो शायद ये सवाल आप मेरे से 1 साल पहले पूछते तो मेरा जवाब होता कि हाँ, वहाँ पर रेक्वाजा स्टील हुआ था, वहाँ बड़ा मजा आया था। लेकिन अब इस स्टेज पे आते आते हमने इतने सारे रेक्वाजा स्टील देख लिए हैं, चाहे वो ब्लिसी के यूनाइट मूव के साथ स्टील हो, चाहे वो एग बॉम्ब के साथ स्टील हो, चाहे तो फिर वो सर्फ के साथ स्टील हो। हमने ऑलमोस्ट हर एक मूव के साथ, स्पेशली ये जो डिफेंडर्स और सपोर्टर्स होते हैं, इनके मूव्स के साथ कई बार रेक्वाजा सिक्योर होते देखा है। और आपको तो याद होगा इवन ग्रेविटी के इस्तेमाल से भी सिक्योर किया गया है रेक्वाजा को। बिल्कुल, एंड वो सब मोमेंट्स जो है वो अभी भी याद आ रहे हैं, मतलब ये सारे क्वालिफायर्स क्या शानदार गए थे।
लेकिन उसी के साथ साथ मुझे कहने की ये भी लगा था, जो सेमीफाइनल हम लोगों को देखने के लिए मिला था, एसेट का हार जाना 3-0 से, वो भी बहुत ज़्यादा एक अलग सिचुएशन बना के निकाल के लेके आया था, और उससे पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस था रैंडम टीम की तरफ से। बट फाइनली हम लोग आ चुके हैं द ग्रैंड फाइनल्स के पहले मुकाबले के साथ, और बैन फेज स्टार्ट शुरू हो चुका है। एक तरफ से हुपा बैन किया जा रहा है, बीच में कहने के हुपा बैन करने का जो एक ट्रेंड था वो खत्म सा हो गया था, लेकिन एक बार फिर से हुपा बैन किया जा रहा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से अम्ब्रियन, दैट मींस स्लोब्रो खाली है। देखिए भूलिए मत टीटीआर की, जब हम डेस्क पे आए थे शायद से हमने ये बात की भी थी कि वो हुपा, वो छोटा सा पोकेमॉन जब अपने विकराल रूप में आता है, अंदाज में आता है, तब तो परेशान करता ही करता है, लेकिन जब वो छोटू सा होता है ना, तब भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मेरियम ब्लास्टॉइस के साथ जाते नजर आएंगे, हमें पता है वो ब्लास्टॉइस को ऑलराउंडर की तरह इस्तेमाल करने का मेटा, लेकिन आपने लूज छोड़ा स्लोब्रो को, तो गॉड फ्री वो गलती नहीं करेंगे, वो उसे इंस्टेंटली इस्तेमाल करते नजर आएंगे। पिक किया है, देखते हैं कितना वैल्यू निकालेंगे, लेकिन सामने से वॉल्क वीनसॉर को इंस्टेंटली अपनी मुट्ठी में करते हुए। बिल्कुल, और देखिए हम लोग यूजुअली देखते हैं कभी कभार कि सपोर्ट के लिए भी जाते हैं प्लेयर्स शुरुआती में, बट इधर म्यूरियम ने सबसे पहले ब्लास्टॉइस को सिक्योर किया, और दूसरी तरफ से देखिए क्लिफेबल ऑलरेडी सिक्योर हो चुका है, तो दैट मींस इधर हम लोगों को ब्लिसी शायद देखने के लिए मिलेगा। वॉल्क ने वेनेसॉर के साथ किया, इंटेलियन भी आ रहा है, रूबन विद इंटेलियन, ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है, और जैसे कि मैंने कहा ब्लिसी आने वाला है, तो स्विफ्टी इधर ऑलरेडी ब्लिसी ले चुके हैं, ट्रिवेनेंट आ चुके हैं इधर टेंसेई के पास, तो काफ़ी अच्छा एंड वेल बैलेंस कहने की देखने के लिए मिल रहा है अगर हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करें तो इस पूरे एंटायर सिनेरियो के अंदर। और टीम रैंडम टीम की अगर बात करें स्पेशली, इनका थोड़ा ज़्यादा बैलेंस दिख रहा है। देखिए रैंडम टीम की बात की जाए तो अभी तो बाय द बुक्स जाती नजर आई है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वो कॉम्पोजिशन है जो कि हमने शायद से इस पूरी की पूरी स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज में बार बार देखी है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है। हाँ वीनसॉर हमें पता है रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा मेटा में आता नजर आया है, और अभी भी हमें वो मेटा में एक्टिव देखने को मिल रहा है। ब्लिसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड था, क्योंकि फ्रॉड ने ऑलरेडी क्लिपेबल को छीन लिया था, और देखिए फ्रॉड के हाथ में हुपा तो आप लगने दे नहीं सकते थे, और मैं बस उसी चीज़ को बार बार जब भी फ्रॉड का नाम मेरे सामने आता है मुझे बस हुपा गेम याद आ जाता है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने हुपा के साथ इतने गेम बदले हैं, लेकिन कामिल डॉडरियो को लेके आए हैं, और कामिल के हाथ में ये डॉडरियो ये गेम को बदल सकता है, नाक के नीचे से निकाल के लेके जा सकता है। बिल्कुल, और जब भी हम लोग बात करते हैं डॉडरियो की, तब कहीं ना कहीं एक अलग सा माहौल क्रिएट होता है, क्योंकि इतने स्पीड में ये काम करके जाते हैं ना, इसीलिए तो वो स्पीड स्टार है, और इनका परफॉर्मेंस जो है वो एकदम टॉप नॉच हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। बात करते ही करते शुरुआत हो जाएगा हमारे आज के दिन के पहले मुकाबले की, बेस्ट ऑफ 3 का पहला मुकाबला, ग्रैंड फाइनल्स का पहला मुकाबला, दोनों ही टीम्स एक दूसरे के खिलाफ ये पहला मैच खेलने जा रहे हैं। जो भी जीतेंगे उनके पास रहेगा एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज, और जो हारेंगे उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा, लेकिन ये 10 मिनट डिसाइड करने वाला है कि कौन सा रोल प्ले करने वाले हैं कुछ दिन बाद। वेल लेट्स सी क्या होता नजर आएगा, लेकिन अगर बात की जाए स्प्लिट की तो रैंडम टीम वही बेसिक स्प्लिट, देखिए रैंडम टीम ओजी दिनों की याद दिलाती नजर आ रही है, उन पुराने दिनों में हमें वापस लेके जा रही थी, जहाँ पर हम देखते थे कुछ ऐसा ही सिमिलर सा कॉम्पोजिशन 2-1-2 का वो स्प्लिट, लेकिन एक चेंज आया है, चेंज ये कि ब्लिसी और उनके साथ साथ वो फैंटम दोनों ही हमें अपने ओपोनेंट का फार्म इन्वेड करते नजर आए हैं, बट नो आई थिंक देखिए जो मुझे लग रहा है वही होगा टीटीआर ऑब्वियसली, क्योंकि एनटीआर की तरफ से कोई ना कोई टेक्निकल इशू फेस करती हुई नजर आ रही है टीम, तो ये गेम तो हमें कुछ ही देर में ज़रूर रीस्टार्ट होता नजर आएगा। पूरी की पूरी टीम शायद से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं अपने पोकेमॉन को, बट देखिए ये ट्रेनर्स ये जानते हैं ग्रास प्लेन एंड अगेन अगर गेम रीस्टार्ट होता भी है तो हमें पता है यही सेम कॉम्पोजिशन के साथ दोनों टीम्स वापस उतरेंगी, बट टीटीआर चलिए अब हमें कॉम्पोजिशन पता चल गई है, तो आप बताइए इस कॉम्पोजिशन के हिसाब से आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रह सकता है? देखिए ये डिपेंड करता है, अगर प्लान वाइज अगर देखा जाए तो दोनों के लिए ही अपना ये स्ट्रॉन्ग एक कॉम्बिनेशन उन्होंने लिया है, मोस्ट प्रोबेबली जेक के जो लग रहा है, तो ये जगह से रहते हुए ऐसा कहना बहुत टफ है, जो गलतियां कम करेंगे वो जीत के जाएंगे, क्योंकि गलतियां अगर आप कम कर रहे हो दैट मीन्स आप आपके प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हो, जो अपने प्लानिंग के हिसाब से 100% प्लानिंग के हिसाब से अगर वो 95% भी चल जाए तो आई थिंक मुझे लगता है वो काफ़ी होने वाला है, क्योंकि इधर सिर्फ प्लानिंग नहीं, ओपोनेंट कैसे खेल रहे हैं वो भी आपको देखना होगा, उसी के साथ साथ ओपोनेंट के प्लानिंग जो होने वाला है उसको आपको चैलेंज करना है, और इतने प्रेशर में भी खेलना है, तो सब कुछ एक साथ लाइक कहने की संभालना ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक टफ सिचुएशन क्रिएट करता है, बट एक्सपीरियंस
वही मैटर करता है एंड में। देखिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है लेकिन एग्जीक्यूशन वो बहुत मुश्किल होता है टीटीआर, क्योंकि आपके जो प्रतिद्वंदी है वो बैठ के देखेंगे नहीं। हाँ इस गेम में ग्लिच हो गया था तो बैठ के देख रहे थे लेकिन जब उनके गेम में कोई ग्लिच नहीं होगा, जब वो खेलते रहेंगे तो आपको वो बैठ के देखते नजर नहीं आएंगे। वो काउंटर अटैक करेंगे और वो ग्रास लेंगे, और अगर उनके आईजीएल ने थोड़ी सी भी भनक लगा ली कि आप इस मोमेंट से अगले 30 सेकंड या 1 मिनट बाद क्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपकी वो जो प्लानिंग है वो वहीं के वहीं ध्वस्त हो जाएगी और एग्जीक्यूशन की जो उम्मीद आपके दिमाग में है वो शायद से पूरी ना हो पाए। बट लेट्स सी कि कैसे, क्योंकि हमें पता है टीटीआर 10 मिनट का गेम होता है। आपने कोई चीज़ अपने दिमाग में सोच लिया, आप सिर्फ और सिर्फ उसी के हिसाब से गेम नहीं खेल सकते। आपको हर 1 मिनट के साथ एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके प्रतिद्वंदी क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, और उस हिसाब से हर 10 मिनट में वो जो गेम है हर 1 मिनट में आपको अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। शायद तभी आप विजेता बन पाएंगे इस स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज के और उठा पाएंगे वो ट्रॉफी। बिल्कुल, देखिए एट द एंड सबका जो नजर है वो ट्रॉफी के ऊपर ही है और हमारा भी नजर है मुझे मिल नहीं सकती वो बात अलग है, बट हम फोटो खिंचवा रहे थे दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी नजर है वो ट्रॉफी के ऊपर ही, क्योंकि इतना चमक रहा है ना, वो अलग ही जो है वो सुंदर है वो ट्रॉफी। बहुत ही सारा मजा आ रहा है देख के, और आई थिंक ये प्लेयर्स जब मतलब उठाएंगे तब उसके बारे में, लेकिन मेन तो टारगेट वही है ना कि ट्रॉफी उठाना है और विनर टाइटल लेके जाना है। तो इसी वजह से सब लोग अभी कर रहे हैं प्रिपेयर, और जो भी अभी टाइम है वो लेने के बाद हम लोग शुरू करेंगे आज का पहला मुकाबला, और उसके बाद देखेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन जैसे कि हम लोग को पता चल गया है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, डॉट्रियो एक एक्स फैक्टर हो सकता है इधर, क्योंकि हम लोग अगर बात करें इसके पहले के कुछ टाइम पे तो हम लोग को डॉट्रियो बहुत बार बैन होता हुआ देखने के लिए मिला है। उसी के साथ एक चीज जो हम लोगों को बहुत कम देखने के लिए मिला है टाइम दर टाइम, वो है हुपा बैन होना। तो हुपा को अभी भी एक चैलेंज की तरह लिया जा रहा है इधर। जी बिल्कुल, हुपा को चैलेंज की तरह लेना भी चाहिए, क्योंकि हुपा गेम में आ गया, और स्पेशली तब जब आपके ओपोनेंट में प्रॉड बैठे हों, क्योंकि प्रॉड अगर बैठे हैं तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। स्पेशली अगर आप उनके हाथ में हुपा दे देंगे, ऐसा है कि आप अपने दुश्मन के हाथ में गन दे रहे हैं कि हाँ लीजिए आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा है उनके हाथ में हुपा देना। तो उनसे हुपा को थोड़ा दूर रखिए, और वही काफ़ी ज़्यादा समझदारी के साथ हमें करती हुई भी नजर आई टीम। बट प्राइस पूल की हमने पहले भी बात की, एक बार फिर से थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से टीटीआर, क्योंकि 1,80,000 ये कोई छोटी रकम नहीं है, रकम बहुत ज़्यादा बड़ी है, राइट। 50-50 हज़ार की जो तीसरे चौथे पायदान की रकम थी वो ऑलरेडी टीम्स लेके बाहर हो चुकी हैं। हमें SHUL और उसके साथ साथ क्लाउन 5 लेके जाती नजर आई हैं वो प्राइस पूल। लेकिन अब फाइट है इस 1,80,000 के लिए। दूसरे पायदान पे आप जाएंगे सीधा 60,000 रुपये नीचे चले जाएंगे, और साथ में ध्यान रखिए वो ब्रैगिंग राइट्स, हम हमेशा बात करते हैं वो ट्रॉफी आप उठाएंगे, वो मोमेंट आप एंजॉय करेंगे, और साथ ही साथ आप ब्रैक कर पाएंगे कि हाँ हम हैं विजेता, हम थे वो जो क्वालिफायर से गए थे और फिर ग्रैंड फाइनल्स भी जीत के गए थे। बिल्कुल, वो चीज़ कहना और कहने की बाद में जाके वो एक अलग ही रिस्पेक्ट इंक्रीज करता है आपका। तो वो सब चीज़ जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड स्पेशली अगर बात किया जाए 60,000 का जो गैप है ना, ये बहुत मतलब नंबर में देख के लग रहा होगा ऐसे ठीक है, बट जब अकाउंट पे क्रेडिट होता है तब पता चलता है कि वो जो शून्य है या फिर जो वो नंबर है वो चेंज होने पे कितना कुछ चेंज हो सकता है। बट यस, इधर बात तो हम लोगों का चल रहा था, इधर अगर हम लोग बात करें स्ट्रैटेजीज़ की भी, तो स्ट्रैटेजीज़ का अगर बात करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो दोनों का मिला के आपने कहा कि हाँ लाइक अगर हम लोग बात करें रैंडम टीम की, तो कुछ इसी तरीके की स्ट्रैटेजीज जो है वो स्टार्टिंग से ज़्यादातर यूज़ करते आए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, मतलब इतने दिनों में जो चेंजेस आया है इन टर्म्स ऑफ मेटा एंड उसी के साथ साथ स्ट्रैटेजिकल चेंजेस, क्या आपको लगता है कि इधर एंटी-आरआर जो है वो पढ़ के आए होंगे कि ये सेम मेटा अगर खेलेंगे तो उनके लिए कुछ काउंटर जो है वो बना के लेके आए होंगे? देखिए पढ़ाई तो दोनों टीम्स ने की होगी, लेकिन मैंने पहले भी कहा यहाँ पे पढ़ाई काम नहीं आने वाली। जितना डिफरेंस थ्योरी और प्रैक्टिकल में होता है ना, कुछ उतना ही डिफरेंस है पुराने गेम्स और इन गेम्स में। हाँ कॉम्पोजिशन शायद से वही की वही सेम आ जाए, लेकिन क्या अप्रोच भी सेम रहेगी, क्योंकि हमें पता है आप पोकेमॉन का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा, चैंसी और फैंटम दोनों को सीधा भेजा गया था ओपोनेंट के फार्म की तरफ, जो कि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा रही थी। तो अगर ऐसे बार बार अप्रोच में चेंज आएगी और आप थोड़ा थोड़ा सरप्राइज देते रहेंगे अपने ओपोनेंट को, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ग्रास्प ले पाना और समझ पाना आप आखिर करना क्या चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ तो है ही, और ये कहने के हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा भी। लेकिन उसी के साथ साथ जो हम लोगों को आज और भी देखने के लिए मिलने वाला है वो है और भी टाइटल्स। पोकेमॉन यूनाइट तो अभी चल रहा है, हम लोगों के इधर टोटल 5 टाइटल्स है, तो वो सारे के सारे टाइटल्स आप लोगों को इसी स्ट्रीम में देखने के लिए मिलेगा। बट अब बारी है पोकेमॉन के फैंस के लिए, क्योंकि इसके पहले हम लोगों का एसेटो कॉर्सा चल रहा था, इतने देर से वेट कर रहे थे पोकेमॉन के फैंस कि कब
हम लोगों का पोकेमॉन शुरू होगा। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं और अभी आप लोगों का जो है वो एंटरटेनमेंट शुरू होने वाला है, क्योंकि असली एंटरटेनमेंट जो पोकेमॉन फैंस हैं उनके लिए वो तो पोकेमॉन देखने में ही है, पोकेमॉन यूनाइट के फाइट्स में ही है। वो फाइट्स जो रेक्वाजा फाइट होगा, आई थिंक मुझे लगता है कि सिर्फ अभी के टाइम में वो ही सबसे ज़्यादा बेहतरीन पोजीशन ना भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मैच है 10 मिनट का, ये 10 मिनट के मैच में आपको हर एक मोमेंट पे उसी तरीके से सेम तरीके से फोकस रहना होगा जैसे कि आप आखिरी 2 मिनट में रहते हो। क्योंकि इधर अगर लेवल्स में गैप ज़्यादा बन जाए तब भी आपके लिए सेम प्रॉब्लम हो सकता है, फिर तो रेक्वाजा जो है वो आना ही आना है अगर आपके पास लेवल का एक अच्छा खासा लीड हो जाए तो ये सब चीज़ें जो है वो बहुत कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है गेम के अंदर। बट आई डोंट नो, लाइक आज तो कुछ भी प्रेडिक्ट करना भी बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, जैसे कि हम लोग बात कर भी रहे थे। बट फिर भी आउट ऑफ नोवेयर अगर मैं एक प्रेडिक्ट करूँ, अगर जिस तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिला था उनका पिक्स उस हिसाब से, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद रैंडम टीम का थोड़ा सा ज़्यादा चांस हो सकता है। वेल चांसेस किसके हाई होंगे किसके कम होंगे ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए अभी ना सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं जो कि कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम दोनों नहीं है वो, बिल्कुल आप ये गलत फहमी मत रखिए। वो 2 लोग हैं, दोनों ही रिस्पेक्टिव टीम्स के आईजीएल्स, और बहरहाल बात कुछ ऐसी है कि उनमें से भी कोई एक पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हम 2-0 से जीतने वाले हैं, लेकिन जीतेगा कोई एक, और क्या होगा स्कोर लाइन वो तो सिर्फ और सिर्फ वक्त ही बताएगा। देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही देर में हमारे सामने हमारा गेम नंबर 1 आएगा। और टीटीआर देखिए ब्लास्टॉइस हमें पता है वो एक सदाबहार सा पोकेमॉन रहा है। शुरुआत में जब ऑल माइट, ओपी ऑल माइट, हम जानते हैं इनफाइनाइट प्रोटोकॉल के ज़माने से यूनिवर्स 7 SATL सफ़र लेजेंडरी रहा है उस खिलाड़ी का भी, और कास्टेड एस्क में भी आपकी मुलाकात तो हो ही चुकी है, काफ़ी मस्ती आपने भी की थी उनके साथ। बट एट द सेम टाइम उस खिलाड़ी ने जब से वो ब्लास्टॉइस इस्तेमाल किया था उसके बाद से एक एरा आया है, और आज भी हम देखते हैं ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि उस ब्लास्टॉइस को लेके आते हैं, डोमिनेट करते हैं। और देखिए जब मैं ब्लास्टॉइस का नाम लेता हूँ ना, मुझे याद आ जाते हैं वो हमारे 3 ब्लू जेम्स, आपको याद होगा, हमें पता है लैप्रेस भी उनमें से एक थी। लैप्रेस आती थी, ब्लास्टॉइस आते थे। लैप्रेस को अब नर्फ मिला है, लेकिन जब तक नर्फ नहीं मिला था वो भी एक काफ़ी ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन थी। बिल्कुल, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि लैप्रेस को मल्टीपल इधर कहीं ना कहीं डिक्रीज मिला था उनके, अगर बात करें पावर पे, लेकिन उसके बावजूद यूज इतना ज़्यादा होता हुआ देखने के लिए मिलता था। तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना, एक ऐसा पोकेमॉन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा ओवरपावर्ड है काइंड ऑफ, तो उस तरीके की चीज़ों पे आपका हो जाता है कि आप मल्टीपल नर्व्स लगाओ उसके बाद भी यूज़ हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अभी के टाइम में, हम लोगों को एस्पियन जो है वो देखने के लिए उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा कुछ दिनों से। अभी क्या एस्पियन आज यूज़ हो सकता है, वो भी एक क्वेश्चनेबल बात है, क्योंकि ये सारा का सारा जो सिनेरियो है वो एक साथ आने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि लाइक क्या होने वाला है क्या नहीं। अभी के लिए तो एस्पियन चलिए पहले मुकाबले में तो यूज़ मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाला, लेकिन इसके बाद क्या देखने के लिए मिलेगा वो मैं तो लाइक एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था और एक टाइम था जब यूज़ ही नहीं हो रहा, और वो इसी सिर्फ प्रीमियर सीरीज़ के चलते ही हुआ है। शुरुआत में बहुत यूज़ हो रहा था, आखिर में आते आते वो यूज़ ही नहीं हो रहा है, और यही होता है अपडेट्स। देखिए ये होता है और लेट्स सी क्या होता हुआ नजर आएगा या नहीं, क्योंकि हमें पता है इंटेलियन के अगेंस्ट भी एक काफ़ी अच्छे काउंटर का काम कर सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से डिनाई कर सकता है, डिफाई कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम जब एस्पियन की बात करते हैं तो वो जो उनके मूव सेट हैं, साई बीम ले लीजिए आप, चाहे उनका यूनाइट मूव साइकिक सोलार ले लीजिए, हमें पता है स्पेशली जब वो हिट करते हैं जो स्क्विशी पोकेमॉन है उनका बच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे ट्रेनर कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी आप लेफ्ट राइट कर लें, एक बार अगर वो लॉक इन कर गए, अगर हिट कर गए तो आपकी 70-80% जो HP है वो चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। साई शॉक हिट कर गया, सेम लेवल्स पे आपका स्क्विशी पोकेमॉन एस्पियन के 70% 7% HP यूं गई, आप समझ भी नहीं पाएंगे। और अगर किसी ने भी पीछे से थोड़ा सा सप्रेशन दे दिया आप खत्म है। ऑलरेडी साई शॉक का अपना सप्रेशन होता है। तो देखिए ऐसे काफ़ी सारे मूव सेट्स हैं, ऐसे काफ़ी सारे पोकेमॉन हैं जो कि एक दूसरे को काउंटर करते हैं, लेकिन एट द एंड बात ये होती है कि पूरी की पूरी कॉम्पोजिशन किसकी स्ट्रॉन्ग है और अप्रोच, क्योंकि 5 के 5 खिलाड़ियों को एक ही अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होता है। हाँ शायद आप डिफरेंट पाथ्स पे खेल रहे हैं, शायद से आप डिफरेंट रोल्स खेल रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी एक प्लेयर ने लक्ष्य ले लिया, भाई मुझे तो रेक्वाजा चाहिए, दूसरा गोल करने में लगा है, तीसरा नॉकआउट्स लेने में लगा है, तो फिर बहुत ज़्यादा खिचड़ी सी बन जाएगी और फिर शायद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बट चलिए TTR सब्र की घड़ियाँ हो चुकी है समाप्त, बारी आ चुकी है देखने की SPO3 सीरीज का पहला मुकाबला। एक तरफ में स्विफ्टी, तेंसे, र्यूबन, मेरियम और वॉल्क, उनका सामना करती हुई नजर आएगी हमें पूरी की पूरी टीम जो कि तैयार है NTRR की। रैंडम टीम
इस बार भी मैं देखना चाहता हूँ क्या वो फार्म इन्वेट की तरफ जाएंगे या थोड़ा सा चेंज इन अप्रोच लेके आएंगे। तो देखिए वो सब चीज़ तो हम लोगों को टाइम से टाइम धीरे धीरे करके आगे पता चलने लगेगा। बट NTRR की अगर बात किया जाए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने फेवरेट पोकेमॉन के साथ ही जाने की कोशिश करा है और उन्होंने लिया भी है। गार्डी एक बहुत ही अच्छा पिक के लिए हो सकता है। अगर गार्डी शुरुआत में जल्दी लेवल अप कर ले तो आगे चल के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है रैंडम टीम के लिए। तो लेट्स सी कि रैंडम टीम किस तरीके से उस पूरे सिचुएशन को संभालते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें डक, तो इधर कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सोन के साथ जितना ज़्यादा हो सके वेल पोकेमॉन्स को डाउन करके अपना जो लेवल अप है वो जल्दी करते हैं। क्योंकि देखिए लेवल्स का जो एक मैटर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है हम लोग को एवोल्यूशन अभी देखने के लिए मिले नहीं है। सो ये चीज़ हम लोग को बहुत कम देखने के लिए मिलता है कि एक दिन भी आपका एवोल्यूशन है वो आपका ना हो दे। लेट्स सी कि कितने जल्दी इवॉल्व करते नजर आएंगे। अभी तो मात्र 1 ही मिनट हुआ है इस गेम में एंट्री लिए, लेकिन अभी फंसे हैं फ्रॉड। डक भी फंसते हुए नजर आए और देखिए इस बार तो बच पाना इम्पॉसिबल होने वाला है क्योंकि स्क्वेटल हैं, आईवीसॉर हैं, उनका साथ देने के लिए ब्लिची मौजूद है। बहुत ही ज़्यादा ऑफ गार्ड सिचुएशन में पकड़ लिया था। रैंडम टीम सब्र से भी खेल रही है, लेकिन सब्र के साथ साथ अपनी एग्रेसिव जो स्टांस है उसे पीछे नहीं छोड़ रही। काम में लाए, शिकार किया एक पोकेमॉन का, पर अच्छी चीज़ ये समय रहते पीछे भी हटे। इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना होगा, बार बार करना होगा, स्पेशली इस अर्ली गेम में। बिल्कुल देखिए, और अभी तो ये शुरुआत है और शुरुआत के सिर्फ 13 मिनट हुआ है गेम में, तो भी बहुत कुछ कहने के आगे भी देखने के लिए मिलने वाला है। लेवल्स की अगर बात करें तो बजोल ऑलरेडी लेवल 5 पे पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे करके इधर और भी सारा लेवल अप तो होंगे। बट मेनस और के ऊपर ध्यान रखना होगा। लेवल और की अगर बात करें, ट्रिलियन की अगर बात करें, ये दोनों के दोनों पोकेमॉन ऐसे हैं अगर आपने उनको थोड़ा मौका दिया तो वो आपके पूरे टीम का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं टीम के लिए। गोल्स की अगर बात करें तो 15 गोल्स ऑलरेडी आ चुका है टीम की तरफ से। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें तो NTRR की तरफ से उनकी तरफ से 9 गोल्स है। बट ये जो गोल्स का फासला है वो तो टाइम दर टाइम लोगों को चेंज होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। कभी रैंडम टीम आगे, कभी NTRR आगे। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आने वाला है वो है ऑब्जेक्टिव्स की। ओनली 40 सेकंड के बाद हम लोगों को इधर हमारा पहला ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल जाएगा और ये ग्रैंड फाइनल का भी पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो आप लोगों को आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। टॉप लेगी और रेजी लेगी, या उसके लिए आगे जाएंगे या फिर बॉटम रेजी के लिए आगे जाएंगे, वो एक क्वेश्चन। लेट्स सी, शायद से एक पोकेमॉन को पीछे जरूर छोड़ा जाए, लेकिन जिस एग्रेसिवनेस के साथ आगे बढ़ रही है रैंडम टीम, मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों ही रेजी अपने नाम करना चाहती है। हालांकि बॉटम पाथ पे थोड़ा सा जूझती हुई भी नजर आएगी। वाटर टर्टल को गवाया है, लेकिन उसके बदले काफी अच्छे गोल्स दागते नजर आए। अच्छे खासे नॉकआउट्स इनकी तरफ से भी लिए गए। दूसरी तरफ आप देखिए तो अब तक किरलिया को गार्डी बॉयर में इवॉल्व नहीं होने दिया गया है। लेवल्स का बहुत बड़ा डिफरेंस मैं नहीं कहूँगा, कहीं पर रैंडम टीम आगे है, वहीं दूसरी तरफ NTRR किसी सिचुएशन में हमें आगे देखने को मिल रही है। किसी भी प्रकार से आपको डॉड्रियो को शट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से डॉड्रियो लेवल अप कर रहे हैं ना, कुछ ही देर में वो तबाही मचा देगी। बिल्कुल सही है। एंड उसी के साथ अगर देखिए तो इंटिलियन एंड डेनस और दोनों का भी लेवल 8 हो चुका है ऑलरेडी। तो दोनों ही साइड से कहने की अपना बेस्ट देने की कोशिश तो चल रहा है। बट इधर बॉल किधर फंसते हुए देखने के लिए मिल रहा है, उनके लिए हो सकता है मुश्किल, लेकिन नहीं, उनके जो सपोर्टर्स उनके मेंबर्स हैं वो सपोर्ट के लिए उधर आ गए। और उसी के साथ साथ केओ निकाला गया है इधर बजोल का। तो ब्लास्टॉइज और बजोल के बीच में जब फाइट होता है ना, तब एक अलग ही मजा आता है। और उसमें इधर देखिए मजा तो बहुत ज्यादा आता है, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आप अपने प्रतिद्वंदी के स्पीड फ्लग जोन में जाएं, वहां पे 3 पोकेमॉन आपको घेरें, आप 3 पोकेमॉन को पेडल डांस, गीगा ट्रेन और अपने यूनाइट मूव के इम्पैक्ट से नॉकआउट कर दें और वहां पर अपनी जीत का ध्वज लहरा के वापस भी आ जाए। और ये खिलाड़ी वॉल्क ऐसी ही चीजें करना जानता है, फिर से भी करते नजर आए। हालांकि फाइनली गार्डी बॉयर इवॉल्व हो चुके हैं। देवेश लेवल 9 पे हैं, यूनाइट मूव ऑलरेडी ऑनलाइन आ चुका है और NTRR हल्का सा भी समय बर्बाद किए बिना वो अपने नाम कर लेना चाहते हैं इस रेजी स्टील को। इंटेलियन क्या फाइनल हिट ले पाएंगे? जी नहीं। देवेश दिखाते हुए कि एक बार गाड़ी इवॉल्व हो जाए तो वो कितनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है। फॉर श्योर देखिए गाड़ी को अभी जिस तरीके से यूज किया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो भी काफी ज्यादा है। और उसी के बीच में एक बार फिर से इधर मेरम जो है वो डाउन करते हुए देखने के लिए मिले बजोल को। और डक के लिए ये एक परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम जरूर लेके आएगा, क्योंकि उनका जो लेवल है वो लेवल अभी अपना थोड़ा रुक जाएगा। लेकिन केओस आ रहे हैं, सबके सब मिलके केओस स्टिक टू गाड़ी के पास, और उसी के साथ गोल्स भी आएंगे क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया गया था। इंटेलियन का भी काम हुआ इधर तमाम। और उसी के साथ NTRR बहुत देर के बाद गोल्स के मामले में
कमबैक करना शुरू कर चुके हैं एंड इवन आगे भी निकल जाएंगे रैंडम टीम से। बहुत ही शानदार ये एक वापसी अगर बात करें तो वो देखने के लिए मिला था। और लेवल्स की अगर बात करें तो एनटीआरआर आगे। जी हाँ, देखिए किसी प्रकार से गोल्स में आगे तो निकले हैं, लेकिन क्या इस लीड को बरकरार रख पाएंगे वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाने वाला है। लेट्स सी कैसे वो करते नजर आएंगे, बिकॉज डॉट रियो है तो आप लेवल्स का एडवांटेज तो वो गोल्स का एडवांटेज तो लेंगे ही लेंगे। डॉट रियो आसानी से गोल्स कर सकते हैं, स्पीडीली गोल्स कर सकते हैं, और इसी वजह से वो हल्की सी लीड आपके पास है। पर उस लीड को बढ़ाइए, क्योंकि सामने ये जो वीनसोर आपको दिख रहा है ना, ये जैसे जैसे लेवल अप कर रहा है वैसे वैसे आपके लिए टीम फाइट्स में इंगेज करना मुश्किल होता जाएगा और खौफनाक होता जाएगा। क्योंकि वो एरिया डैमेज, चाहे वो पेटल डांस का हो, चाहे वो वर्दन तेंगर का हो, चाहे वो कीगा ट्रेन, एक साथ दो पोकेमॉन सामने आ गए, दोनों को चूस लेंगे, एनर्जी ट्रेन कर लेंगे, उससे थोड़ा बच के आपको रहना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए बच के तो रहना ही होगा। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए गॉडफ्री भी उधर बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे एंड इधर एक फाइट जो है वो हम लोगों को बॉटम पाथ पे कुछ देर के बाद ही शुरू होता हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। डैमेज काफ़ी ज़्यादा दिया गया है स्नोब्रो के ऊपर एंड उसके बाद भी वो सही टाइम पे पीछे चले गए, नहीं तो प्रॉब्लम कहने के इधर बनता हुआ देखने के लिए मिल सकता था। इसी टाइम पे देखिए इधर एक प्रॉपर फाइट चलता हुआ, उसी के साथ म्यूनम इधर अपना यूनाइट मूव इस्तेमाल करते हुए विनसोर को मिला केओस स्ट्रिक 2 एंड रैंडम टीम प्रॉपरली ये टीम फाइट को डोमिनेट करते हुए देखने के लिए मिले। और उसी के साथ साथ जो गोल्स हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन लेवल्स का जो एक डिफरेंस है वो भी इधर क्रिएट करना शुरू कर चुके हैं। वेनेसोर ऑन लेवल 13, वॉल्क इधर तबाही मचा रहे हैं। देखिए कामिल अपने चार्जिंग जाम का काफी अच्छे से इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन वॉल्क, वाओ कामिल, अगर वो स्पीड कैक्टस नहीं मिला होता, हमें पता है वो पेटल डांस की एकदम जो हल्की सी लकीर थी वो उन्हें डैमेज डील कर रही थी, और अगर 0.1 सेकंड के लिए और उनको डैमेज इनटेक करना पड़ जाता तो वहां पर वो नॉकआउट होते नजर आते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप टेंसे को देखें, वो भी लगे हुए हैं, उनको वॉल्क का सपोर्ट है, जिसकी वजह से वो दोनों ही ट्रेनर्स मिलकर अपने प्रतिद्वंदी के एक्सेलगोर, एसके वैली और दोनों बफ्स को अपने नाम कर लेंगे। और देखिए मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, लीड थी एनटीआरआर के पास, बट क्या लीड आप बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि अब छोटी ही सही लेकिन गोल्स की लीड रैंडम टीम के पास है, और हमें पता है आपके पास डॉड्रियो भी है। अगर आप गोल्स की लीड नहीं ले पाए तो चीजें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। जी हाँ, देखिए मुश्किलें फेस करना पड़ सकता है। फाइनल स्टेज के पहले जस्ट ओनली 40 सेकंड बाकी है, और फाइनल स्टेज के पहले आप थोड़ा बहुत कोशिश करते हो कि आप जितने भी एनर्जी की हो गए या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स है मेनली वो सिक्योर कर लो। ओनली 8 सेकंड्स बाकी है, और 8 सेकंड्स के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा रेजिली के आते हुए। रेजिली के लिए ऑलरेडी रैंडम टीम आप देख सकते हैं कि पहुंच चुके हैं टॉप पाथ पे, तो ये अगर रेजिली के उनको मिलता है उसका क्या वो फायदा उठा पाएंगे या फिर नहीं, वो देखना होगा। लेकिन गोल्स करने के लिए आए हैं बॉटम पाथ पे पूरा टीम एनटीआरआर, और वो इधर से गोल तो दागेंगे। गोल पोस्ट इधर तोड़ा गया, ओनली 9 सेकंड्स टू गो, उसके बाद रैक्वाजा स्पॉन होने वाला है। जी हाँ, मात्र 5 और सेकंड्स बचते हैं, और यहाँ पर एनटीआरआर इनके पास बड़ा मौका है, क्योंकि इंटेलियन अभी तक भी गेम में वापस नहीं आए। वापस जरूर आए लेकिन ब्लिसी मौजूद नहीं है गेम में। यूनाइट ऑनलाइन था, ब्लास्टॉइस का शिकार किया गया, और यूनाइट्स की बौछार एनटीआरआर करेगी। ट्रेवेनेंट फैंटम फॉरेस्ट काम जरूर आया है, लेकिन कोई भी नॉकआउट रैंडम टीम अपने नाम नहीं कर पा रही थी। फाइनली डॉड्रियो को डाउन करेंगे वजवोल, उनको भी काफी ज्यादा समय लगने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है रैंडम टीम उन्होंने मैन डिसएडवांटेज में फाइट ली थी, उसके बावजूद वो एक इवन स्टीवन सिचुएशन में है, और एडवांटेज है उनके पास 3 यूनाइट मूव्स का। बिल्कुल, एंड उसी के साथ अगर देखा जाए वॉल्ट का मैं तारीफ करना चाहूंगा, अकेले जिस तरीके से डटे रहे, और दोनों का सिमिलर पोजीशन में भी आने के पीछे उनका भी थोड़ा बहुत हाथ है। बट अभी दोनों ही साइड से पांचों के पांचों पोकेमॉन जो है वो ऑनलाइन आ चुके हैं, और उसी के साथ एक प्रॉपर फाइट होता हुआ इधर देखने के लिए मिलेगा। आखिरी 1 मिनट और 12 सेकंड का टाइम बाकी है, बट केओस निकलते जा रहे हैं। बजोल ऑलरेडी इधर केओ हो चुका है, एनटीआरआर के लिए मुश्किल। बॉल किधर पहुंच चुके हैं मिल्ट करने के लिए रक्वाजा को, और इस जगह पे देखना होगा क्या उनको रक्वाजा मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि गोल्स का जो फासला है वो ज्यादा नहीं है। केओ निकाला गया है टोट्रियो की तरफ से, इंटेलियन डाउन, एंड इस बार कहीं ना कहीं एक एडवांटेज पे आ चुके हैं एनटीआरआर, और उसी के साथ केओ करेंगे बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से, और एनटीआरआर उन्होंने दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। लेकिन रैंडम टीम एक बार फिर से दिखाती हुई ब्लिसी का जलवा, एक बार फिर से नाक के नीचे से सिक्योर करके लेके चले जाएंगे उस रेक्वाजा को, और उसी के साथ साथ इस गेम को भी, क्योंकि मात्र और मात्र 25 सेकंड्स आपके पास बचे हैं, और 25 सेकंड्स में इतना बड़ा रास्ता कवर कर पाना, इतने सारे गोल्स की लीड कवर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, स्पेशली तब जब पूरी की पूरी टीम डिफेंस लाइन पे मौजूद है। हाँ, आपने ट्रेवेनेंट का शिकार कर लिया, लेकिन 4 और पोकेमॉन है जो कि ऑलरेडी गोल पोस्ट को कवर करने में लगे हैं। क्या कुछ और स्कोर्स आ पाएंगे? जी नहीं, कोशिश जरूर काफी बेहतरीन,
लेकिन वो कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब। और टीटीआर हम इसी बारे में तो बात कर रहे थे जब हम डेस्क पे थे, तब भी हम बात कर रहे थे कैसे ब्लिसी के यूनाइट से, ब्लिसी के एग बॉम्ब से हमें कई बार वो रेक्वाजा निकलता नजर आया है। एक बार फिर वही चीज करके दिखा के चली गई है ये टीम, और रैंडम टीम 1-0 के साथ लेके गई है इस पहले गेम में बढ़त। बिल्कुल बिल्कुल, एंड उसी के साथ अगर देखा जाए पहला मैच, पहला मुकाबला इधर खत्म होता हुआ, एडवांटेज कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शानदार इनके पास। लेकिन अगर बात करें एंटी आरआर का भी, उन्होंने भी काफी अच्छा इधर एक मुकाबला दिया था। आखिरी मोमेंट तक कहीं ना कहीं उन्होंने अपना लड़ाई किया, और उसके बावजूद भी हो जाता है कभी कभार सिचुएशन ऊपर नीचे। बट देखिए अभी अगर सिचुएशन जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, दैट मीन्स आपके पास और कोई भी बफर नहीं है। ये आखिरी बफर था जिधर आप गलती कर सकते थे। हालांकि मैं नहीं कहूंगा ये गलती रहा, ये ब्रिलियंस था ओपोनेंट साइड से। तो वो चीज के बदौलत इधर बहुत ज्यादा प्रेशर अभी आता हुआ देखने के लिए मिलेगा। बट लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। बहुत ही ज्यादा शानदार क्या है ये पहला मुकाबला। जी बिल्कुल, पहला मुकाबला बिल्कुल वैसा जाता नजर आया जैसी हमने उम्मीद की थी, जैसा हम देखना चाहते थे। और देखिए एक चीज काफी ज्यादा क्लियर थी इस गेम में कि दोनों ही तरफ से कोई गलती नहीं हुई। जैसा कि टीटीआर ने भी बताया, अंत में भी वो गलती नहीं थी बल्कि आपके प्रतिद्वंदी की ब्रिलियंस थी, वो टाइमिंग थी। क्योंकि इतनी अच्छी टाइमिंग के साथ ब्लिसी का कोई भी मूव, चाहे वो यूनाइट मूव ही क्यों ना हो, इस्तेमाल कर पाना और उसके साथ उस रेक्वाजा को निकाल के लेके जाना। आप एग बॉम्ब से कितना ही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, कोशिश आप बस कर सकते हैं, लेकिन क्या वो कोशिश कामयाब होगी ये जरूरी नहीं। ये डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन पे, और वो कैलकुलेशन ऑन पॉइंट हमें देखने को मिला रैंडम टीम की वजह से, जिसकी वजह से रैंडम टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है। और टीटीआर, हमने पहले भी बात की थी, जब आप BO3 देखते हैं, जब आप BO3 खेलते हैं, 1-0 की बढ़त अगर आपने बना ली तो आपको बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है कॉन्फिडेंस का। और अब वही होता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ से वापसी थोड़ी मुश्किल तो रहेगी एनटीआरआर के लिए। देखिए थोड़ा तो मुश्किल रहेगा, लेकिन इधर बात करते हैं ना कि कहीं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो हो सकता है कि अगर वो जीत जाए तो हार के जीतने वालों को एनटीआरआर कहेंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। बट जिस तरीके का हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा था कोऑर्डिनेशन, या फिर जो पिक्स हम लोगों को देखने के लिए मिले थे, उस हिसाब से जैसे कि मैंने पहले भी प्रेडिक्शन करा था, शायद थोड़ा सा एज लग रहा था कि रैंडम 5 के पास जाएगा। इसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि जो ट्राइड एंड टेस्टेड होता है ना, मतलब जो आप बहुत दिन से खेलते आ रहे हो, एकदम ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया, क्या आपके लिए हो सकता है। और आपके पास अगर वॉल्क जैसा प्लेयर हो, जो आईजीएल भी हो और इतना ज़्यादा एग्रेसिव एक प्लेयर भी हो, तो क्या ही कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा शानदार ये मैच गया, और उसी के साथ वॉल्क के बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जिधर उनको चारों तरफ से घेरा गया था, लेकिन पैटल डांस और ग्रिगेड्रिन के साथ जिस तरीके से उन्होंने संभाला सिचुएशन को, वो बहुत ही शानदार था। यस इंडीड, क्योंकि जिस हिसाब से वो खेलते नजर आए, एंड जैसा कि आपने भी कहा, 2 पोकेमॉन नहीं थे उस फाइट में मौजूद, इंटेलियन भी आई थिंक शायद से नहीं थे, 2 पोकेमॉन नहीं थे, उसके बाद भी आपने 3 वर्सेस 5 फाइट ली, और वहां पर फाइट को संभालना बहुत मुश्किल था। ट्रेवेनेंट का जो यूनाइट था फैंटम फॉरेस्ट, उसकी टाइमिंग याद होगी टीटीआर आपको, इतना सही टाइमिंग की लगभग 3 से 4 पोकेमॉन को वो इम्पैक्ट करता नजर आया था, शायद 5 को भी कर दिया हो मैंने अगर मिस किया हो तो। बट एट द सेम टाइम उसी समय पे वॉल्क का अपने यूनाइट का, अपने गीगा ट्रेन पेटल डांस का इस्तेमाल करना, ये जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये हमें दिखलाता है कैसे 2 पोकेमॉन और 2 ट्रेनर मिलके सामने 5 पोकेमॉन का भी सामना कर सकते हैं। और आलम कुछ ऐसा था कि उस फाइट के बाद सामने से भी 2 खिलाड़ियों को नॉकआउट कर दिया गया, डॉड्रियो को नॉकआउट कर दिया गया, एंड उसके बाद एक इवन स्टीवन सिचुएशन आई थी। पर अच्छी बात ये थी, वो 2 पोकेमॉन और एक और एडिशनल पोकेमॉन जो कि बचे हुए थे रैंडम टीम की तरफ से, उनके पास यूनाइट मूव्स थे। वहीं दूसरी तरफ एनटीआरआर सारे यूनाइट मूव्स इन्वेस्ट कर चुकी थी, वहां से एक एज मिला और उस एज का काफी अच्छे से इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक बार के लिए लग रहा था कि शायद एनटीआरआर के पास भी चांस है कि वो इधर मैच निकाल के लेके चले जाए। आखिरी कुछ सेकंड्स के अंदर वो सारे के सारे जो डिफरेंसेस है वो क्रिएट हुए, और उसके बाद वो ग्लोरी कहने की अगर बात करें तो वो अभी फिलहाल के लिए रैंडम टीम के पास है। बट देखिए बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला है, जैसे कि हम लोग पहले शुरुआत में ही कहे थे, जो जीतेगा वो तो काफी कॉन्फिडेंट होगा, जो हारेगा उनके ऊपर रहेगा प्रेशर। बट ये प्रेशर से किस तरीके से निकल के आते हैं, वो ही कहीं ना कहीं साबित करेगा क्या एनटीआरआर उस तरीके से प्रिपरेशन करके आए हैं। एंड प्रिपरेशन करके अगर आए हैं तो क्या उनके पास वो प्लान्स मौजूद है कि अगर पहले मैच पे कुछ सिचुएशंस ऊपर नीचे आता है, नॉट ओनली पहला मैच, सेकंड में भी हो सकता था, तो क्या उनके पास कोई सेकंड प्लानिंग है जिसके साथ वो एकदम आके 4 पार के चले जाएंगे सबको। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मुझे तो नहीं लगता कि 2-0 होने वाले।
देखिए सवाल अभी ये नहीं है कि क्या उनके पास प्लानिंग है, क्योंकि टीटीआर ये तो हम दोनों जानते हैं, ये तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं सब जानते हैं प्लानिंग तो है जी। लेकिन सवाल ये है क्या सही से एग्जीक्यूट करने दिया जाएगा उस प्लानिंग को, क्योंकि ये टीम जो पीछे बैठी है ना रैंडम टीम, ये करने नहीं देगी इतने आसानी से। उन्हें पता है 1-0 किया है और कितनी मुश्किलों से किया है, क्योंकि हम दोनों तब से यही बात कर रहे हैं कैसे बस एक मोमेंट उसकी वजह से ये गेम पूरी तरह से हाथ से निकल गया। अगर आप उस मोमेंट को हटा देते हैं तो हम सब जानते हैं कि ये गेम एंटी-आरआर की तरफ भी जा सकता था, क्योंकि जब वो रेक्वाजा सिक्योर किया गया उस समय पे एंटी-आरआर फाइट में हमें पावरफुल नजर आ रही थी, डॉडरियो इफेक्ट हमें नजर आ रहा था, लेकिन वहां से गेम पलटा। और टीम रैंडम भी ये जानती है काफी अच्छे से कि अगर उन्होंने दूसरे गेम में थोड़े से भी स्ट्रिंग्स लूज छोड़े तो यहाँ से वापसी हो सकती है, और क्या पता एक रिवर्स 2-1 हमें देखने को मिल जाए। और ये चीज हम लोगों को देखने के लिए मिला है पिछले कुछ टाइम में कि वापसी इससे जीतते हुए बहुत बार देखने के लिए मिले हैं। तो आशा करेंगे कि आज स्पाइसी हो चीजें। अभी जीतेंगे कौन वो तो ऑब्वियसली जो भी जीतेंगे उनके लिए हम खुश होंगे, और जो हार जाएंगे लाइक वो ट्राई करेंगे फिर से एक बार, लेकिन स्पाइसी होना चाहिए। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि ये मैच सब कुछ स्पाइसी कर देगा बहुत ज़्यादा, और जिनको वो स्पाइसी पसंद है उनको तो बहुत मज़ा आने वाला है। जी बिल्कुल मज़ा बहुत आएगा, और जैसा मैंने टीटीआर को कहा भी था कि अभी बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है, बट कुछ देर बाद ना हमें वो माहौल में हॉट देखने को मिलेगा, गर्माहट देखने को मिलेगी जब ये प्लेयर्स अपने फॉर्म में आ जाएंगे, एकदम पूरा मन लगा के जब गेम में हमें देखने को मिलेंगे, खेलते नजर आएंगे। और वो चीज़ मुझे थोड़ी थोड़ी ना फील हो रही है, एयर में वो प्रेशर अब फील हो रहा है, वहाँ पीछे बैठे बैठे खिलाड़ी थोड़ा सा प्रेशर तो फील कर रहे हैं, क्योंकि एंटी-आरआर वो बस एक कदम दूर हैं बाहर होने के, यानी कि दूसरे पायदान पे फिनिश करने के। अगर एक कदम और बढ़ा लेती है उनकी प्रतिद्वंदी टीम रैंडम, तो फिर एंटी-आरआर यहाँ से वो सपना भूलाना पड़ेगा, इस सपने में यहीं तक उन्हें रुकना पड़ेगा कि वो चैंपियन बनेंगे। सामने ही ट्रॉफी रखी है, दोनों टीम्स बैठी है, बीच में ट्रॉफी रखी है, और उस ट्रॉफी को देखकर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन ज़रूर मिल रहा होगा, लेकिन उस मोटिवेशन की फोर्स को आप कैसे अपने गेम में दर्शाएंगे, क्या क्या चेंजेस लेके आएंगे, क्योंकि बैन्स हमें पता है पिछली बार क्या बैन थे, हुपा को डिनाई किया गया था। अगर किसी प्रकार से प्रॉड के हाथ हुपा लग जाता है, क्योंकि शायद पहली पिक इस बार मिल सकती है एंटी-आरआर को। बिल्कुल, देखिए ऑब्वियसली इधर हम लोगों को तो कुछ बेहतरीन चीज़ें देखने के लिए मिल ही सकता है, लेकिन अभी सिचुएशन है कि इसके बाद के जितने भी मैचेस हैं, लाइक 2 ही होंगे मैक्स, एक होगा अगर जीत जाते हैं रैंडम टीम, लेकिन डिसाइडर होने वाला है। इधर से जितने भी मैच होंगे डिसाइडर होगा, ये मैच में भी हम लोग को विनर मिल सकता है, एक और मैच हम लोग को रुकना पड़ सकता है, तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज जो है वो हम लोगों के इधर हैं। इतने साल, मतलब इतने साल क्या, पूरा साल अगर हम लोग बात करें तो पूरे साल के शुरुआत में शायद पोकेमॉन यूनाइट से ही हम लोग का स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज जो है वो शुरू होता हुआ देखने के लिए मिला था। जी देखिए टीटीआर कितने सारे चेंजेस, कितना कुछ बदल जाता है एक साल में, आप खुद को देखिए कितने बदल गए हैं, आप पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। क्या ये वही तन्मय रॉय हैं, तन्मय दादा जो हमें क्वालिफायर 1 में ज्वाइन होते नजर आए थे, या फिर ये कोई और ही हमारे सामने बैठा है? देखिए बहुत बदलाव आते हैं, और जब हम बदलाव की बात करते हैं तो टीटीआर आपको ये भी याद होगा क्वालिफायर 1 से लेके क्वालिफायर 4 तक, और फिर सेमीफाइनल और ग्रैंड फाइनल्स, इन 6 इवेंट्स हमने टोटल देख लिए इस स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज में, सिर्फ पोकेमॉन यूनाइट के। इस ग्रैंड फाइनल्स तक क्वालिफायर 1 से लेके हमें कितने सारे मेटा चेंजेस आते नजर आए हैं, कितने सारे पोकेमॉन आए जो कि एकदम टॉप पे गए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिसअपियर हो गए। लेकिन स्लो ब्रो वो अभी भी वहीं का वहीं बरकरार है। ये बात आपने एकदम सही कहा, क्योंकि स्लो ब्रो कहने की ज़्यादा चेंजेस लाते नहीं है, बट फिर भी सबका एक पसंदीदा है, वो क्यूट सा है थोड़ा, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दिखने में क्यूट हो सकता है, बट जब आप लेके जाओगे उससे ज़्यादा खतरनाक ओपोनेंट टीम के लिए और कुछ नहीं हो सकता। स्पेशली अगर हम लोग बात करें, अगर आपको होल्ड करके खेलना है, अगर आपको होल्ड करके खेलना है, आपके पास स्लो ब्रो है, आप बोलो एक पाथ में निकल जाओ और पूरा देख लो, वो देख भी लेगा, वो होल्ड भी कर लेगा ओपोनेंट टीम को पूरा। तो इतना ज़्यादा इसीलिए बैन भी होता है कहने के स्लो ब्रो कभी कभार, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़फुल है। और उसी के साथ अगर देखा जाए आज के दिन में एक तरफ से हुपा बैन आता हुआ देखने के लिए मिला था कुछ देर पहले, दूसरी तरफ से हम लोग को अम्ब्रियन बैन होता हुआ देखने के लिए मिला। इस बार क्या बैन्स आ सकते हैं, आपको क्या लगता है? पिछले गेम को देखते हुए आपका क्या मतलब लगता है कि इस बार क्या बैन हो सकते हैं? देखिए बैन्स की बात करूं तो मुझे लगता है अम्ब्रियन को शायद बैन रखा जाए, जैसे कि पिछली बार किया गया था। स्लो ब्रो हुपा, देखिए अगर एंटी-आरआर को फर्स्ट पिक मिलता है और वो हुपा अपने नाम कर लेते हैं, पहले ही उसे होल्ड कर लेते हैं, तब नहीं, पर अगर वो नहीं करते हैं तो शायद से हुपा भी बैन होता नजर आ सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली रैंडम टीम कि आप अपनी मनपसंद का कोई पोकेमॉन ले लीजिए फर्स्ट पिक में और उसके बाद आप हुपा भी ले लीजिए, क्योंकि उन्हें भी पता है फ्रॉड है आपकी टीम में।
तो मुझे लगता है हुपा और अम्ब्रियन फिर से बैन हो सकते हैं। उसके अलावा स्लोब्रो एक ऐसा पोकेमोन हो सकता है जिसे शायद बैन किया जाए, और उसके अलावा वेनुसॉर। हमें पता है अभी अभी वेनुसॉर के साथ क्या बवाल मचाया है वॉल्क ने, लेकिन देखिए जब आप वॉल्क जैसे खिलाड़ी की बात करते हैं ना, एक पोकेमोन को बैन करके आप उन्हें नहीं रोक सकते। आप वेनुसॉर बैन कीजिएगा, इंटेलियन ले आएंगे, डेसिडुआई ले आएंगे, उनके पास इतनी बड़ी लिस्ट है, म्यू लेके आ जाएंगे कि वो कोई ना कोई एक पोकेमोन लेके आ जाएंगे और उसी के साथ तबाही मचा देंगे। बिल्कुल, देखिए यही तो बात है, अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस है, वो स्किल्स है, तो आप इतना ज़्यादा वर्सेटाइल हो जाते हो, ओपोनेंट टीम्स को सोचना पड़ता है कि करे तो करे क्या। लेकिन बात करते ही करते शुरुआत होने वाला है द डिसाइडर। ये मैच से भी हम लोगों को मिल सकता है हमारा विनर इस पूरे साल का esports प्रीमियर सीरीज का, लेकिन क्या वो इतना इजीली होने देंगे एंटी-आरआर, वो अभी देखना होगा। बट अगर हम लोग बात करें बैन्स की, तो अब देखिए अभी पता नहीं चल रहा कि क्या बैन होने वाला है। काफी हम लोगों के साथ खेल खेला जा रहा है, बट फाइनली इधर आ रहे हैं और क्लिफेबल को बैन करके जाएंगे। देखिए, और जैसा हमने सोचा था हुपा, एक चीज तो रैंडम टीम सोच के आई है कि कुछ भी करेंगे लेकिन प्रॉट के हाथ में हुपा नहीं लगने देंगे। और ये स्ट्रेटेजी मुझे ऐसा लगता है ना, ये वो प्लानिंग है जो कि एंटी-आरआर के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सटीक होती है। अगर आप इस चीज को लूज छोड़ देते हैं कि चलिए यार कोई और पोकेमोन बैन करके देखते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा एक हुपा से, तो वहां से गेम पूरा परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये गलती बिल्कुल भी नहीं करती हुई रैंडम टीम। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गॉडफ्री अम्ब्रियन इस बार बचा था, इंस्टेंटली लॉक इन किया गया। ये होता है जब आप अम्ब्रियन को लूज छोड़ते हैं। बट ऑन द अदर हैंड क्लिफेबल को भी डाउन किया गया है, क्योंकि 2 सपोर्ट अब डाउन है, तो अब सपोर्ट पोकेमोन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पिक करना एंटी-आरआर के लिए। ऑलरेडी ब्लिसी निकल गई है हाथ से। अब आपके पास कितने ही ऑप्शंस बचे हैं। आप कंफी की तरफ जा सकते हैं, जो कि मुझे बहुत कम चांसेस लग रहे हैं इस कॉम्प के साथ जाए। एल्डेगोस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, तो क्या एक बिना सपोर्ट का गेम खेलती नजर आ सकती है एंटी-आरआर? देखिए ये क्वेश्चनेबल बात है फिलहाल के लिए। तो अगर खेलेंगे तो ये कहने के बहुत रिस्क लेना हो जाएगा, तो देखना पड़ेगा कि इस जगह पे आके इतना ज़्यादा टफ सिनेरियोस पे क्या वो करेंगे। बट एल्डेगोस आ रहे हैं प्रॉड की तरफ से, और उसी के साथ काबिल ने इस बार लिया है वेनुसॉर। तो वेनुसॉर तो मिल चुका है, वॉल किधर क्या लेने वाले हैं वो देखना होगा। आखिरी पिक इस पूरे एंटायर पिक फेज का, वॉल्क क्या लेने वाला है, क्या लगता है आपको? डेसिडुआई देखिए अगर आ जाता है मजा आ जाएगा मुझे तो, क्योंकि जितने दर्शक हैं और आप टीटीआर अच्छे से जानते हैं, डेसिडुआई देखने के लिए मैं कितना ज्यादा उत्सुक रहता हूँ। मेरी सोल क्रेव करती है कि कब हमें डेसिडुआई गेम देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉड की तरफ से वो एल्डेगोस पहले रैपिड फायर स्कार्फ का इस्तेमाल किया जा रहा था, और मैं सोच ही रहा था क्या रैपिड फायर स्कार्फ के साथ एल्डेगोस आएगा, बट फाइनली चेंज किए गए हैं ऑलरेडी। उसके जो हेल्ड आइटम्स होते हैं ऑलरेडी स्विच किया गया है स्पाइस ग्लासेस की तरफ। बट लेट्स सी, अभी भी स्विच किए जा रहे हैं, वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइटम्स लेके आना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू निकाल पाएँ अपने एल्डेगोस के साथ। मसल बैंड ज़रूर एक ऐसा हेल्ड आइटम है जो वहाँ पर रहेगा ही रहेगा, बाकी कुछ चेंज कर दीजिए, मसल बैंड रहेगा तो रहता रहेगा, और वही चीज़ हमें नज़र भी आ रही है। लेकिन कामिल के हाथ में इस बार लगा है वो वेनुसॉर। तो क्या आपको लगता है टीटीआर जो वैल्यू पिछली बार वॉल्क ने निकाली थी वेनुसॉर के साथ, क्या कुछ वैसा ही कामिल भी कर पाएंगे? क्योंकि अब डेसिडुआई है, मतलब स्पिरिट शैकल है, और वो स्पिरिट शैकल पीछे से परेशान एस्पियन को भी करेगा, अम्ब्रियन को भी करेगा। हालांकि एस्पियन अगर कनेक्ट कर जाते हैं तो डेसिडुआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कमबैक कर पाना गेम में। बिल्कुल, देखिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो चीज़। एंड उसी के साथ अगर देखा जाए इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो बहुत सारी चीज़ें अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसके पहले तक अगर देखा जाए तो हम लोगों को एक भी इवोल्यूशन नहीं देखने के लिए मिल रहा था। इस बार 3-3 आ गए हैं, और अगर हम लोग बात करें इधर तो एक जगह पे हम लोग को अम्ब्रियन भी देखने के लिए मिल रहा है, और उसी के साथ साथ एस्पियन भी। और एस्पियन तो बीच में बहुत दिन तक मिसिंग था, तो विद द एस्पियन किस तरीके से खेलेंगे एंटी-आरआर वो देखना होगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वेल देखिए, एस्पियन एक ऐसा पोकेमोन है, कितना भी मिसिंग रहे लेकिन जब भी आता है ना अपनी छाप छोड़ के चला जाता है टीटीआर। लेकिन मैं अभी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एल्डेगोस के लिए, क्योंकि हमारे एक और बहुत अच्छे मित्र हैं, आप तो अच्छे से जानते हैं, फिक्सेस, जो कि अगर एल्डेगोस का नाम आप ले दे तो वो कहीं से भी दौड़े आ जाएंगे। अभी बैठ के भी देख रहे होंगे कि अरे वाह मेरा एल्डेगोस आ गया। लेट्स सी कितना अच्छा वैल्यू निकाला जाएगा एल्डेगोस के साथ। टीम्स को देखिए, टेंशन साफ साफ नज़र आ रही है, कैमरे में भी कितने ज़्यादा एकाग्र होके वो जो खिलाड़ी हैं वो अभी अपने फ़ोन्स की स्क्रीन में देख रहे हैं, क्योंकि पता है एक गलत ऐसे थोड़ा सा भी आपने हिला दिया ना, गलती से भी आपने रॉन्ग मूव यूज़ कर लिया तो आपको इंस्टेंट नॉकआउट मिल जाएगा। क्योंकि टॉप पाथ पे हमें देखने को मिल रहे हैं
बॉटम पाथ की तरफ ग्लेशियन गए हैं, अगेन अ वेरी गुड चॉइस, जल्दी से जाते नजर आए। लेकिन टॉप पाथ पे ये जो वजवोल है ये इतने आसानी से डोमिनेशन तो नहीं आपको कायम करने देगा। बिल्कुल, देखिए आसान तो इधर कुछ भी नहीं होगा अगर देखा जाए तो, जो प्लान करके आएंगे उतना इजी नहीं होगा। शुरुआत में ही इधर डाउन कर दिया DCDY को, और देखिए पूरा टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हल्ला बोल चुके हैं वो, और उसी के साथ केओस भी बैक टू बैक निकाला जा रहा है NTRR की तरफ से, और गोल्स भी अच्छे खासे आ चुके हैं। 62 गोल्स शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप लेवल अप कितना जल्दी कर रहे हो। इस जगह पे हम लोग बात करें NTRR के पास दो एवोल्यूशंस हैं, जिसकी वजह से उनको वो चौथे लेवल का जो एक फ़ायदा है वो उनको मिला था। उनके डिफेंस की भी अगर बात करें, और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें इधर अटैकर्स में भी, तो दोनों पे ही कहीं ना कहीं इनको वो फायदा मिला है। लेकिन अभी जस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिनट्स हुए हैं, और ये 2 मिनट्स के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारे फाइट्स देखने के लिए मिल गए ऑलरेडी। जी हाँ बिल्कुल, अभी 2 मिनट भी खत्म पूरी तरह से नहीं हुए हैं, अब हो गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो तेंसे को देखिए, इसे कहते हैं कि मैं दादा हूँ इस दुनिया का, क्योंकि उन्होंने कुछ वैसा ही गेम दिखाया। 2 पोकेमॉन के अगेंस्ट गए, फिर भी एक्सेल गॉर छीन के लेके गए, और दूसरी बात वहां से सरवाइव करके भी निकल गए थे। टीम आई, सपोर्ट आया तो फाइट में भी इंगेज किए जरूर हैं, और ये फाइट उनके लिए काफी अच्छी भी हो सकती है। गॉडफ्री बच के रहिए नोवा, फंसेंगे, नॉक होंगे, वही हुआ। लेकिन समय रहते पूरी टीम आई। NTRR अगर समय रहते सपोर्ट नहीं आता तो यहाँ पर रैंडम टीम को एक अच्छी बढ़त मिल जाती, लेकिन ये 3 नॉकआउट्स वो भी विनसोर की तरफ से, ये अब NTRR के लिए काफी ज्यादा एडवांटेजेस हो सकते हैं। फॉर श्योर होगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इधर परफॉर्मेंस किया जा रहा है NTRR की तरफ से, ये पिछले कुछ फाइट्स के अंदर देख के लग रहा है कि उनका जो सोच है इस बार कुछ अलग है। वो डोमिनेट करके खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका लेवल्स का फासला जो है वो क्लियरली इधर विजिबल है, और उसी के साथ साथ गोल्स का भी। लेकिन इधर फाइट चलता हुआ, और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए वाइल्ड पोकेमॉन्स भी इधर उसी तरीके से सेम मायने रखते हैं। बट फाइनली एस्पियन का क्यों आया, DCDY को डाउन किया गया। DCDY की अगर बात किया जाए, उतना रैपिडली इधर वॉल्क कर नहीं पा रहे लेवल अप जितना कि वो विनेसर के साथ कर रहे थे। वेल देखिए कहीं ना कहीं वो जो शुरुआती एस्पियन की तरफ से उन्हें नॉक दिया गया, उसने परेशान जरूर किया। र्यूबन आए थे, ग्लेशियल स्टेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं 1 वर्सेस 3 में, वो भी अकेले। आई थिंक यहाँ पर वो थोड़ी सी गलती कर गए, थोड़ी सी जल्दबाजी उन्होंने दिखा दी। लेकिन देखिए एक बार फिर से वही हुआ। एस्पियन को लाया ही इसीलिए गया है कि आप एक साइलेंट असैसिन का काम कीजिए, आपको बस फोकस करना है उस DCDY पे, आपको उन्हें लेवल अप नहीं करने देना है। और उस चीज में बखूबी वो निभाते भी नजर आ रहे हैं, अपना कर्तव्य निभाते नजर आ रहे हैं। बार आई थिंक 3 बार DCDY को ऑलरेडी नॉकआउट कर चुके हैं, अभी किया, वो भी उनके ही फॉरेस्ट को इन्वेड करके। ये काफी बड़ी बात है कर पाना। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कामिल और वजवोल दोनों की बात करें तो विनेसोर और वजवोल 2 पोकेमॉन 10 लेवल हिट कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ रैंडम टीम हाईएस्ट लेवल पोकेमॉन ही 8 लेवल पे बैठे हैं। बिल्कुल, एंड उस जगह पे कहीं ना कि ये एक क्लियर विजिबिलिटी दिखा रहा है कि कौन इधर डोमिनेट कर रहा है, और वो NTRR है। क्योंकि वेनेसोर ऑन लेवल 10 धीरे धीरे जितना ऊपर जाएगा और भी सारा प्रॉब्लमेटिक करेगा। और इसी जगह पे केओ आया, केओ स्ट्रिक 2 आ चुका है एस्पियन की तरफ से, और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन अभी तक NTRR की तरफ से देखने के लिए मिला। उसी के साथ इधर रेजिलिकी भी लिया जाएगा। तो सब मिलाकर अगर देखा जाए NTRR इस बार के लिए तो रैंडम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे, वो फाइट भी जीत रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स भी लेके जा रहे हैं, सारा का सारा कंट्रोल इनके पास ही है। देखिए NTRR 2-0 तो बिल्कुल नहीं होने देना चाहती। स्प्रिट शैकल अच्छा नॉक है, ये काफी अच्छा इंपैक्ट है, शायद एस्पियन डाउन हो जाए। जी हाँ बिल्कुल होंगे। अंत में भी हमें काफी अच्छे हिट्स आते नजर आए। स्विफ्टी का बच पाना भी थोड़ा सा मुश्किल। र्यूबन की बात की जाए तो उनकी तरफ से काफी अच्छे अटैक जरूर से हिट किए जा रहे थे, बट एट द सेम टाइम सरवाइव करने में कामयाब हो जाएगी NTRR की टीम। अगर वहां पर कुछ और फॉलोअप अटैक होता, अगर आपके पास वर्दन टेंगर होता तो यहाँ पर जरूर काफी नॉक्स मिलते। लेकिन ग्लेशियल स्टेज सजाया गया पर सारे के सारे हिट्स एल्डेगोज ने सोक कर लिए। अच्छी बात यह कि अंत में वो नॉकआउट जरूर से हुए, बट ग्लेशियन फाइनली लेवल 10 हिट कर चुके हैं। 11 लेवल पर DCDY भी आते नजर आए हैं। TTR लेवल्स को तो अब कवर अप कर लिया गया है, लेकिन आप वो जो गोल्स का डिफरेंस है, 110 गोल्स का डिफरेंस हमें नजर आ रहा है 109 गोल्स का, इसे कैसे कवर करेंगे? देखिए यही तो अभी मेन क्वेश्चन है। अगर ये कवर कर लिया फिर तो इधर कहीं ना कहीं फासला कम हो जाएगा, और उसके बाद एक बार फिर से सिमिलर पोजीशन में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप बात कर रहे थे कि डिफरेंस कम करने की, उल्टा और बढ़ चुका है। हालांकि रैंडम टीम की तरफ से भी गोल्स आए, लेकिन वो एनफ तो थे ही नहीं, उल्टा 100 गोल से भी ज्यादा का एक फासला जो है वो इधर बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके टाइम जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है। आखिरी सिर्फ 4 ही मिनट बचा हुआ रहेगा। उसी बीच में रेजिस्टील रैंडम टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
जो कि उन्होंने इधर कैप्चर किया, मेल्ट किया, और इसके बाद आगे चल के देखते हैं इसका कितना फायदा वो उठा पाएंगे। केओस तो चलिए निकलना शुरू कर चुका है, और उसी जगह पे डक की अगर बात करें, जैसे कि हम लोग कुछ देर पहले बात भी किए थे उनसे, कॉन्फिडेंट तो थे वो और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा ही आ रहा है इस मैच में। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज रैंडम टीम के लिए यही होने वाला है कि आप अपने प्रतिद्वंदी के एस्पियन, वजवोल, वीनस और इनसे अपने डेसिडुआई को कैसे बचाएं, क्योंकि हमें पता है चाहे तो फिर वो वजवोल हो वो भी उठा के पटक देंगे आसानी से। स्क्विशी से पोकेमोन है, छोटू से पोकेमोन है, डेसिडुआई उन्हें कोई भी उठा के पटक देता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम एस्पियन हमने अभी देखा कैसे वो कितना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बट एक बार फिर से ग्लेशियल स्टेज आया, ओके हाइड्रो टाइफून काफ़ी ज़्यादा ऑन पॉइंट था, ब्लिस असिस्टेंस का भी इस्तेमाल ज़रूर से किया गया है, ये एक कमबैक हो सकता है। 2 नहीं बल्कि 3 अच्छे नॉकआउट्स मिलेंगे रैंडम टीम को। उसी के साथ साथ वो जरूर से लेके जाएंगे इस रेजिली की डक आई अल्ट्रा सोल स्लैम का इस्तेमाल किया सीधा वॉल्क के ऊपर, मात्र एक ही गोल। क्या बॉल को वो डाउन कर पाएंगे? शायद नहीं, कोशिश बहुत अच्छी। 1v3 2 नॉकआउट शायद वहां पर लेके वो चले जाए। डेसिडुआई जाएंगे बाहर, उसके साथ साथ जाएंगी ब्लिसी भी। फाइट अभी भी बरकरार है और वजवोल जो अकेले पोकेमॉन थे वो अब भगाते हुए नजर आएंगे रैंडम टीम को, और एक 4 नॉकआउट की स्ट्रीक टीटीआर अपने नाम करके लेके जाएंगे एनटीआरआर के वजवोल। क्या शानदार प्रदर्शन रहा है उनके तरफ से। उन्होंने बोला है कि मैं एक बार बोल दिया हूं तो वो करके ही रहूंगा, और उन्होंने बहुत सारा शानदार तरीके से इधर प्रदर्शन अपना दिखाते हुए, और 14th लेवल पे वो पहुंच चुके हैं। गोल्स देखिए 326 गोल्स आके हैं एनटीआरआर ने, और ये कम बिल्कुल नहीं होता, वो भी फाइनल स्टेज के पहले ही। फाइनल स्टेज पे जाके कितना ज्यादा इधर टिक पाएंगे इधर रैंडम टीम, वो एक देखना होगा, क्योंकि लेवल्स के मामले में अगर देखा जाए तो एक बढ़त तो है एनटीआरआर के पास, बट वो फाइनल फाइट, आई थिंक वो फाइनल फाइट ही इधर रैंडम टीम को बचा सकता है सिर्फ। देखिए नहीं टिक पाएंगे, जैसा आपने कहा वो फाइनल फाइट, उसमें भी कोई मिरेकल बोले तो जैसा पिछली बार हुआ था जब हमने देख लिया था किसी प्रकार से आपने आउट सिक्योर कर दिया था, क्योंकि हमें पता है चाहे तो आप वीनसोर की बात करें और चाहे आप वजवोल की बात करें, वीनसोर की एक सोलार बीम 50% एचपी ग्लेशियन की ले जाएगी, 60% एचपी ऑलरेडी डेसिडुआई की ले जाएगी। उसी के साथ साथ वजवोल परेशान करेंगे, बट अम्ब्रियन डाउन हुए हैं। एक ओपनिंग मिली है क्योंकि जो शील्ड थी वो डाउन हो चुकी है। 326 165 डिफरेंस बहुत बड़ा है। ग्लेशियन परेशान जरूर से करेंगे, लेकिन एक बार फिर वजवोल एंट्री बनाना चाहते थे, डाउन हुए। 3 बनाम 4 की परिस्थिति, एस्पियन को भी डाउन किया जाएगा। वीनसोर गोज आउट। अम्ब्रियन जो कि वापस आना चाहते हैं, लेकिन समय रहते वो भी शायद ना आ पाए वापस। रैंडम टीम क्या फाइनल हिट आएगा एनटीआरआर का? जी नहीं, रैंडम टीम लेके जा चुकी है रेक्वाजा। क्या गोल्स दागे जाने वाले हैं भर भर के? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मात्र 2 पोकेमॉन डिफेंस लाइन पे हैं मौजूद। बिल्कुल, और उसी के साथ साथ रैंडम टीम जस्ट कुछ गोल्स पीछे थे और गोल्स भी दाग चुके हैं। उसी के साथ शायद वो इस साल के लिए अपने नाम करने जा रही है ये ट्रॉफी। ज्यादा टाइम बाकी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड का टाइम बाकी। रैंडम टीम उन्होंने दिखाया एक हारी हुई बाजी भी वो इधर पूरा पलट सकते हैं। पिछला गेम उन्होंने जीता, इस गेम के अंदर भी एक मिराकल जैसा कहने के करते हुए इधर देखने के लिए मिले। अभी भी वक्त है, लेकिन शायद ये वक्त एनटीआरआर के लिए काफी नहीं है। उन्होंने ट्राई पूरा किया, बजोल ने अपना जी जान लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी रैंडम टीम द मास्टरमाइंड नहीं रोक पाए थे। लेकिन धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे गोल्स का फसला कम हो रहा है। क्या ये 24 सेकंड में कुछ पलट सकता है? एक गोल, एक बड़ा गोल बस उसकी तलाश है, लेकिन उससे पहले वापसी होती जरूर से नजर आई है ग्लेशियन की, जिसकी वजह से अब गोल दाग पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। 4 सेकंड्स में डेसिडुआई भी आ जाएंगे, जंप पैड पे आ गए। अगर एक बार 18 का एक गोल जरूर दागा गया है, 26 का एक गोल दागा जाएगा। क्या एक और अच्छा गोल दागा जा सकता है? जी नहीं, डेसिडुआई आए और वॉल्क विनिंग ब्लो भी लेते नजर आएंगे। जी हाँ, वो है रैंडम टीम जो कि बनेगी इस स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज पोकेमॉन यूनाइट की चैंपियन। शुरुआत की थी, क्वालिफाई करना थोड़ा सा था मुश्किल, लेकिन सेमीफाइनल्स में 3-0 किया एसेटो जैसी बड़ी टीम को, और ग्रैंड फिनाले में 2-0 के साथ जीत कर ली है प्राप्त। बिल्कुल, क्या शानदार ये था प्रदर्शन, और उसी के साथ साथ रैंडम टीम दिखाते हुए वो ही है इस पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट टीम, और उसी के साथ साथ ये टाइटल भी लेके जाएंगे और वो ट्रॉफी भी। क्या शानदार इनका आया प्रदर्शन। देखिए, बीच में एक बार के लिए लग रहा था कि एनटीआरआर ने ये दूसरा जो गेम है वो पूरा कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन उधर
साइड में रैंडम टीम बोल रहे थे अरे रुको जरा सब्र करो, हम अभी भी है और हमारे पास अभी भी टाइम है, और जब टाइम है तो कुछ भी हो सकता है। क्या शानदार ये प्रदर्शन, और देखिए तो मास्टरमाइंड वॉल्क इनके साथ है, पूरा टीम इनके साथ है। ओवरऑल प्रदर्शन इनका एकदम टॉप नॉच एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वेल द पोके गॉड्स आर हियर। पोकेमॉन यूनाइट में अपना झंडा काफी ऊंचा फहरा दिया है, क्योंकि जो जर्नी इनकी रही वो शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल, क्वालिफायर 1 में बहुत मुश्किल रही, लेकिन आने वाले क्वालिफायर्स में उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन सेमीफाइनल और ग्रैंड फाइनल देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दिखाते हुए चल के गए हैं प्रतिद्वंदी की तरफ, हौसला अफजाई करते हुए। बट ये समय है ग्रैंड सेलिब्रेशन का, क्योंकि वो बड़ी सी ट्रॉफी अब वो आने वाली है इन 5 खिलाड़ियों के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, एंड उसी के साथ अगर बात करें एंटी-आरआर की भी दाद देना होगा। जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन दिखाया, पिछला जो मुकाबला था वो मुकाबले में भी वो आखिरी कुछ सेकंड्स का जो एक कहीं ना कहीं अलग सा गेम देखने के लिए मिला फ्रॉम द साइड ऑफ रैंडम टीम, उनके तरफ से जो ब्रिलियंस आता हुआ देखने के लिए मिला था वो ब्रिलियंस की वजह से उनके हाथ से निकल गया। इस बार भी अगर आप देखें तो कंट्रोल एंटी-आरआर के पास काफी अच्छा था, लेकिन आखिर में जाते जाते रैंडम टीम ने फिर से बाजी मार के लेके गए। तो यही होता है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो आपके स्ट्रेटजी के साथ तो आपको वो टाइम जो है वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालता, क्योंकि आपको पता है कि जितना टाइम है उतने में ही हम कर लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, और कुछ वैसा ही करते नजर आए। आप सोचिए अंत में वो फाइट बहुत ज़्यादा मुश्किल थी उनके लिए लेना, क्योंकि लेवल्स की इतनी बड़ी डिस्पैरिटी वहाँ मौजूद थी। वीनस और 14 लेवल के थे, वजवूल भी 14 लेवल के थे, यहाँ पे आपके पास क्या है 12 लेवल के डेसिडुआई, 12 लेवल के ग्लेशियन, पर उसी के साथ फाइट में घुस गए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने एक विंडो क्रिएट की, एक ओपनिंग क्रिएट की, शुरुआत में ही अम्ब्रियन को डाउन कर दिया। और एक बार जब अम्ब्रियन डाउन हुए वैसे ही हम दोनों को अंदाजा लगा, वैसे ही खिलाड़ियों को अंदाजा लगा ये है ओपनिंग, ऑल आउट जाती नजर आई रैंडम टीम। और उसके बाद उन्होंने सोचने का, समझने का या वापसी करने का एक भी मौका नहीं दिया एंटी-आरआर को। ये है रैंडम टीम, वॉल्क, मीडियम, र्यूबन, स्विफ्टी और तेंसे, जो कि बन चुके हैं इस ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज के विजेता। देखिए क्या गेम दिखाया है, ऐसा गेम दिखाने के बाद दिल कहता है वाह क्या बात है, क्योंकि जब आप ऐसा गेम दिखाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ जीतते नहीं हैं, आप डोमिनेशन के साथ जीतते हैं। आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये, हमने 2-0 किया है, और वो 2-0 किया भी गया। हालांकि इतने प्रेशर में वापसी करना, जहां पर 9 मिनट 8.5 मिनट तक आप पूरी तरह से बैकएंड पे हैं, बैकफुट पे हैं, और आप अगले 1.5 मिनट में फ्रंट फुट पे आते हैं और 6 बॉल पे 6। बिल्कुल, और उसी के साथ बात करना होगा इधर बजोल का भी, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, क्या लाजवाब था। बिल्कुल 4 KO स्ट्रिक, और ऐसे जगहों पे जब आप फाइनल में आके इस तरीके का परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हो, देन ऑब्वियसली आप में कुछ अलग सी बात है, जो कि हम लोग इधर उनके तरफ से देखने के लिए मिला था। और दोनों ही टीम्स देखिए इधर बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही इधर पहुंचे हैं। बाकी सारी टीम्स 4-4 क्वालिफायर के सारे टीम्स को हरा के आना उतना ईजी नहीं है, इतना ईजिली आप पहुंच नहीं सकते इधर। तो देख के लग रहा होगा कि ये बेस्ट ऑफ 3 था, 2 मैच जीते और इतना ईजी था 2-0 करना, बट नहीं, इनका जो सफ़र था ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा चुनौतियों से भरा हुआ था, और जिसके बीच में वो हर एक एग्ज़ाम को पास करते हुए वो इधर आए, और क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाए दोनों टीम्स। देखिए यहाँ पे भले मात्र ये 1 घंटा था, 2 10-10 मिनट के गेम्स थे, लेकिन इस स्टेज तक आने में पूरा साल लगा था। बिल्कुल, पिछले साल शुरू हुआ था जनवरी में, हमें देखने को मिली थी शुरुआत इस ई-स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज की, और वहां से पूरे साल के ग्राइंड के बाद ये 2 टीमें हमें जैसे तैसे सेमीफाइनल तक 4 टीमें पहुंची थी, जिसमें हमें पता है क्लाउन 5 भी थी, जिसमें Assetto भी थी, लेकिन वहां से मात्र ये 2 टीमें थी जो इस स्टेज पे पहुंची थी। और इस स्टेज पे आके इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना, क्योंकि गेम 1 हमें पता है एक छोटे से मार्जिन से हार गई एंटी-आरआर, गेम 2 पूरा डोमिनेट ही कर दिया था। लेकिन हम हमेशा कहते हैं आपका प्लान आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमने पहले भी ये बात की, हाँ शायद आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके प्रतिद्वंदी ने अंदाजा लगा लिया कि आप 1 मिनट बाद क्या करने वाले हैं, तो गेम खत्म हो जाएगा। और वही हुआ, अंदाजा लगाया वॉल्क ने, दिमाग चलाया वॉल्क ने, पूरी टीम ने बेहतरीन गेम दिखाया, और उसी के साथ साथ वो चमचमाती ट्रॉफी अपने हाथों में उठाई। बिल्कुल बिल्कुल, एंड उसी के साथ अगर देखा जाए क्या शानदार रहा आज का ये शाम। पहले एसेटो कोर्सा, उसके बाद अभी पोकेमॉन, अभी भी बहुत कुछ बाकी है गाइस, बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है, और ऑब्वियसली आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो देखिए अभी शाम भी हो चुका है, स्नैक्स लेके बैठिए, कॉफ़ी शॉफ़ी मंगाइए और पीते रहिए, खाते रहिए, देखते रहिए। जी हाँ बिल्कुल, अभी तो शाम शुरू हुई है इस बेहतरीन से गेम के साथ।
दिन था अभी तक तो, क्योंकि जैसा कि टीटीआर ने बताया और भी टाइटल्स हमारे पास हैं, इंटरेस्टिंग टाइटल्स हमारे पास हैं, और आपको अब उनमें भी बेहतरीन गेम देखने को मिलने वाला है। बहुत सारा डोमिनेशन देखने को मिलेगा और बहुत सारे सरप्राइजिंग फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इस पोकेमॉन यूनाइट को तो अपने नाम कर लिया और कहीं ना कहीं मैंने जैसा कि कहा पोके गॉड्स बन चुके हैं। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं हमारे होस्ट की तरफ और देख लेते हैं क्या सेरेमनी चल रही है स्टेज पे। Thank you so much, Casters. It was lovely. What a match that was. You know, insane. Second match में पता ही नहीं चल रहा था कौन जीतेगा. एक काफी अच्छी लीड एंटी-आरआर के पास थी, but it was a brilliant comeback by random team. क्या लगा आपको कौन जीत रहा था? देखिए पहला मुकाबला हमने देखा. सेकेंड मैच में फॉर अ ब्रीफ मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि 1-1 हो सकता है, हम लोग डिसाइडर की तरफ बढ़ सकते हैं, बट आफ्टर दैट रैंडम 5 जिस तरीके से इन्होंने कमबैक किया, काबिले तारीफ। एंड ऑफ कोर्स जनता यहाँ पे आ चुकी है, इतनी सारी ऑनलाइन ऑडियंस हमें देख रही है, तो ये ड्रामेटिक एंडिंग तो होनी थी। देखिए ड्रामेटिक एंडिंग तो होनी ही थी, बट मुझे लगता है अब थोड़ा सा ड्रामेटिक इंटरव्यू हो जाए। वॉल्क अभी अपने प्लेयर्स के साथ बात ही कर रहे हैं। वॉल्क, क्या आप हमारे पास आ पाएंगे? अभी बिजी है मीटअप में, मैं बुलाने की कोशिश करूंगा उनको। वॉल्क, कैन यू कम हियर, टॉक विद अस? Yeah, he's coming. Can we have a loud cheer for the champions here? Well played, sir. I want to ask a question. First of all, it was a crazy game. Second match में उनके पास एक बहुत अच्छी लीड थी. Comeback की क्या strategy थी and कैसे आपने comeback किया? So our team, like we have been practicing since a while, so we know, we have an idea how to damage control. So we knew in the game that we are getting like screwed kinda. So we had a strategy towards the end, which is actually really difficult to execute. We need to kill one person and then there's an objective which is very difficult to kill, which we did somehow. So yeah. क्या बात है, अपनी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस किया जा रहा है, बट वो एक बड़ा ही अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है। बिफोर द गेम मैं बात कर रहा था कासस के साथ, तो प्रिसाइसली क्लैशिंग का एक कमेंट था आपके लिए। क्लैशिंग ने कहा कि वो इज द टाइप ऑफ प्लेयर जो हर बार नए 4 प्लेयर उठाते हैं and then he makes the entire team a champion team. So do you agree with it? I mean, credit where credit is due to everyone, because I don't think one player makes a team a champion team. It's like everyone. I just try to like join the pieces, and yeah, it worked out. Like it usually works out. So yeah. It did work out, guys, and I'm pretty sure हमारी जनता को भी बहुत ज़्यादा मजा होगा. But एक बार for the winner team and the winner IGL, once and for all, a big round of applause, guys. Can we have a huge cheer for the champions? Wow, I have a last question, Volk, and I want to ask you, ये experience LAN event यहाँ पे आके खेलना कैसा लगा आपको? I'll be very honest. I was telling my mates like a while ago. I think this is one of the best LANs we have played, because we had a great time, man. Like the goodies were insane. The production is really good. Like usually I don't say this, and I'm not saying it for the sake of saying it, but like I can say this on behalf of like all 5 of us, because we have talked about it. Like this is definitely one of the most fun LANs we've played. So shout out to Esportz, and I hope you guys enjoyed the games too. Yes, of course. We loved it. Thank you so much, Volk, for joining us. Thank it you was too. amazing. Thank you. I mean, this trophy awaits you, and we will know the time जब आप pick करेंगे ये trophy. But अभी के लिए thank you. You can join your team there. Again, once again, it was a brilliant performance by Random 5. Insane. मुझे लगता है कि अब इंसानिटी थोड़ी सी बढ़ चुकी है, बहुत ही मजा आ रहा है आज के कंपटीशन में, बट अभी भी 2 गेम्स बाकी हैं। अगली गेम कौन सी है? EAFC 24। करेक्ट, EAFC 24, एंड बिलीव मी हम दोनों खेल रहे थे, थोड़ा प्रैक्टिस वार्म अप हमने किया, एंड इट इज वंडरफुल। मैं अब देखना चाहूंगा कि भारत के जब 2 बेस्ट प्लेयर्स आपस में भिड़ेंगे तब क्या होगा, बट ये सब हम जानेंगे, सब हम परखेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस तरफ।
try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, if we try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. Negative bull, yeah. We could be taking control, yeah.
make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Make a wish. Make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit.
'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean, memories die out too hard. And we were traveling the mountains just to find the loudest tears. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. From the tap, and I'm hating the slack. Couple man slide around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, 'cause the vibes in the front all the way to the back.
Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack, couple man stand around like they hate in the gaff. Please stop talking that trash, cause the vibes in the front all the way to the back. Try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, if we try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah. Yeah. We could be taking control. Yeah. Yeah. We could be taking control. Yeah. Yeah. We could be taking control. Yeah. We could be taking control. Yeah.
guys, and we are back with FC24 action. काफी देर बाद सही, but अब उस घड़ी का इंतजार जिसका सबको बहुत देर से बेसब्री से इंतजार था, वो आ चुकी है. मेरा नाम है Esportz and joining me on the desk is Vader Bhai, and we are going to witness the best of the best FC24 talents.
FC24 के अंदर जब भी दो खिलाड़ियों का नाम आता है, सबसे ऊपर जो खिलाड़ी देखने को मिलते हैं, we are not going to reveal them right now, वो हमें कुछ देर में देखने को मिलने वाले हैं। डेफिनेटली देखिए प्लेयर्स की अगर बात करें जाए, नो डाउट जो क्वालिफाई किया है क्वालिफाई 1 से क्वालिफाई 2 से, डेफिनेटली दे हैव गॉट देयर ओन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। और एक हिंट की तरह अगर देना चाहें, सो दे आर द वंस जिन्होंने नेशन को रिप्रेजेंट किया है इन द ग्लोबल स्टेज। सो डेफिनेटली मैं कहूंगा एक्सपीरियंस की तो कोई कमी होगी नहीं उनके पास। बिल्कुल, ये वो फियरसम कंपटीशन है ना जो हर कोई देखना चाहता था, एंड अब वो फाइनली हमें देखने का मौका मिलेगा। मतलब उस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं ना, इट्स लाइक वेरी वेरी कम्पिटिटिव, एंड अब कुछ देर में जब मैच स्टार्ट होगा, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। ओह डेफिनेटली देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। सुबह से हमने बहुत सारी चीजें देखी, एसेटो कॉर्सा का एक्शन देखा, उसके बाद पोकेमॉन यूनाइट में हमने देखा, लेकिन जब बात आती है AFC24 की, द एक्शन विल बी इवन मोर बिगर। बट चलिए बात करते हैं प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन की। द टोटल प्राइस पूल विल बी वूपिंग 3 लाख रुपीस। When it comes to the champions, उन्हें मिलने वाले हैं 1,30,000 rupees. The runner-ups will be getting 90,000 rupees. The second runner-up, or should I say the third placement वाली जो player हैं, उन्हें मिलने वाले हैं 40,000 rupees. And fourth place पे भी same ही प्राइस है, लेकिन मुझे लगता है देखिए इस प्राइस से कहीं ज़्यादा बढ़ के वो एक्सपीरियंस, वो फैंस का प्यार और वो पूरा का पूरा डेडिकेशन जो इन्होंने दिया है, that is bigger. ओह बिल्कुल, खासकर जब आप एक लैन एक्सपीरियंस में खेलते हैं ना, वो खेलने का मजा ही कुछ अलग होता है। आपके ओपोनेंट के फेस के सामने बैठ के उसको हराना, एंड देन वो जो छोटी छोटी आप कह सकते हैं ना इंट्रिकेसीज होती हैं, आप परेशान करते हैं उन्हें, लाइक स्कोर अगेंस्ट मी नाउ, अब क्या हो गया, वो सब जो लैन एक्सपीरियंस के अंदर चीजें होती हैं, वो एक अलग ही वाइब है। डेफिनेटली देखिए वाइब की बात करी जाए, आई कैन फील दैट वाइब, दैट अरोमा हियर राइट नाउ इन दिस अरीना, बिकॉज जिस तरीके से लोग आए, जिस तरीके से वो सपोर्ट देखने को मिला है, एंड व्हेन इट कम्स टू द एक्शन, जैसा मैंने पहले भी बात करी, एसेटो कॉर्सा लंबी रेसेस देखने को मिली, पोकेमॉन यूनाइट का वो गेम देखने को मिला। बट चलिए ब्रैकेट्स की बात करते हैं। FC24 की अभी तक की जर्नी में क्वालिफाई 1 से जो प्लेयर्स यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे, दे वर इमाद अहमद एंड इवेंचुअली शुभम जादव एज वेल, एंड इवेंचुअली क्वालिफाई 2 से बात करी जाए तो वहाँ से हमारे शरांश जैन एंड चरणजोत सिंह क्वालिफाई होते हुए दिखे थे, एंड फ्रॉम देयर in the semi-finale currently they were Sharan Jain and Charanjot, and obviously यहाँ से जो आगे बढ़ेगा, whoever is going to become the champion, he is going to get the trophy. ओह बिल्कुल, सो अगर इस जर्नी को वापस रिएटेट करें, दोनों क्वालिफायर्स के अंदर से जब खिलाड़ी सेमीफाइनल्स के अंदर भिड़े थे, इट वाज सारांश और सिद्धेमा, दे गॉट अगेंस्ट द मैचेस, सारांश वहाँ से जीत के हमारे पास लैंड फाइनल में देखने को मिलेंगे, एंड देन वी हैव सीजे जो उनके खिलाफ आने वाले हैं। दो ऐसे खिलाड़ी जो हर बार जब भी इनको मौका मिलता है अपने ओपोनेंट्स को डेसिमेट करने में कामयाब होते हैं, लेकिन अब जब ये आमने सामने आएंगे तो स्कोर लाइन जो है मुझे नहीं लगता कि 1-2 गोल्स में सीमित रहने वाली है। देखिए क्लोज कंटेस्टमेंट होगा, दैट आई कैन प्रेडिक्ट, लेकिन स्कोर लाइन कहाँ जाती है वो तो देखना पड़ेगा, बिकॉज लैन एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अपना 110% डेफिनेटली देने वाले हैं प्लेयर्स, एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव एट दिस पॉइंट। बैकएंड पे भी बैठ के ये बातें कर रहे थे कि कितना ज्यादा इंट्रिगिंग ये कंपटीशन देखने को मिलेगा, प्लेयर सिलेक्शंस किस तरीके से होंगी, एंड जिस तरीके से यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है व्हेन इट कम्स टू एक्सपो म्यूजिक एंड आल्सो द लैन अरीना, ज़्यादा मैचेस देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है वैसे ही जो नो रिस्ट्रिक्शन वाला गेम देखने को मिलेगा इन दोनों प्लेयर्स की तरफ से, दैट विल बी इवन मोर बिगर। एंड रिस्ट्रिक्शन के बाद काफी ज्यादा मैटर करती है। अभी ऑफ स्टेज बिहाइंड द सीन्स बात हो रही थी मेरे प्लेयर से, एंड दे वर लाइक फुल पैक टीम है उनके पास। अल्टीमेट मोड के अंदर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्ड्स जो हो सकते हैं ना, वो लेके आने वाले हैं। थोड़े ग्लिम्पसेस देख के आया था मैं उनके पास कि क्या क्या यूज कर रहे हैं, एंड द कार्ड्स दे हैव, वाओ मैन, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चीज है। मतलब ऐसे ऐसे स्ट्राइकर्स एंड मिडफील्डर्स का कॉम्बिनेशन है, और दोनों के पास अलग सेट है। ऐसा नहीं है कि टीम बिल्कुल आपको मिरर देखने को मिलने वाली है। एक अगर R9 है तो सामने R9 गायब है, क्योंकि उनको वो प्रेफरेंस नहीं है, उनको चाहिए एम्बापे टाइप प्लेयर्स, उनको चाहिए थोड़े एजिलिटी वाले प्लेयर्स। सो वो जो कहीं ना कहीं प्लेयर सिलेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। जब रिस्ट्रिक्शन हट गई है तो वो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार्ड्स को भी इस्तेमाल करने वाले हैं आज। अपने छुपे हुए स्ट्रैटेजीज को वो तुरुप के को निकालने की कोशिश करेंगे, एंड आई डू बिलीव इसके चलते वो गेम और भी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेगा। पर चलिए आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, आपके लिए अगर एक अल्टीमेट टीम बनती है तो आप उनमें कौन कौन से कार्ड्स को रखना चाहोगे, कौन कौन से प्लेयर्स को रखना चाहोगे? देखो मैं थोड़ा CR7 बायस्ड हूँ, ओह मैं CR7 मैं भी वही हूँ, कम्स ऑन द टॉप, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई क्या मेटा चल रहा है, मेरे को सिर्फ ऑन द टॉप चाहिए, वो रहेंगे। एंड देन उसके साथ पेयर अप कर सकता है एम्बापे एंड R9 को, तो वो इन अ 4-3-2-1 फॉर्मेशन, पिरामिड में तीनों स्ट्राइकर्स वो हो गए। मिडफील्ड के अंदर आज एक रूमर्ड कार्ड है जो आने वाला है, बिकॉज वी नो आज FC24 का एक बहुत बड़ा प्रोमो है जो रिलीज होने वाला है थोड़ी देर में, एंड दैट कार्ड इज गोइंग टू बी ह्यूज, तो वो एक कार्ड लाइनअप में ऐड हो जाएगा। बट देन वी हैव बेलिंगम एज वेल, वन ऑफ फाइनेस्ट कार्ड्स इन द गेम। वैन डाइक तो सेंटर बैक पे मतलब गोटेड ही है, वो तो हर टीम में रहने वाले, बिना वैन डाइक की टीम नहीं बन सकती है। अगर आप वैन डाइक के बिना टीम बना रहे हैं मतलब आप गलती कर रहे हैं, दैट्स द पॉइंट।
एंड मुझे लगता है देखिए जिस तरीके के प्लेयर्स हैं ना चरणजोत एंड सारांश, गलतियां इज ये आउट नहीं ऑफ कर रहे बॉक्स वो नहीं होने वाला गाइस. इट इज जस्ट गोइंग टू बी दोनों में से बेस्ट कौन निकल के आता है. गलतियां मुझे लगता है देखिए कहीं ना कहीं काफी कम देखने को मिलेंगी. कुछ मिस्टेक्स होती हैं, इट हैपेंस, बट इवेंचुअली जब आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं इन इंडियन सर्किट आई कांट नेम एनी अदर गाय एट दिस पॉइंट. और स्पेशली जब आप इस टूर्नामेंट की बात करते हैं, esports प्रीमियर सीरीज की बात करते हैं, देयर इज अ रीजन व्हाई दीस टू आर इन द सेमीफिनाले. जिस तरीके से उन्होंने क्वालीफाई 1 क्वालीफाई 2 में एक मैचअप दिखाया अपना, और जिस तरीके का एक प्ले दिखाया उन्होंने, स्ट्रेटजीज दिखाई, दैट वाज ह्यूज. सो फॉर दैट रीजन आई डेफिनेटली आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी देयर ऑन दिस लिस्ट. ओह यस, ये ग्रैंड फाइनल्स का ना मजा ही लगाने वाला है. बिल्कुल बिल्कुल. अगेन फॉर्मेट बहुत ज्यादा क्लियर कट है, रेस टू 3 रहने वाला है ये. सो लगातार 3 मैचेस जीतना या फिर जैसे जीतना, जो पहले 3 मैचेस जीतेगा वो बेसिकली ईपीएस का विनर बनता हुआ नजर आएगा. एंड इट्स नॉट गोना बी इजी, क्योंकि अगेन ये दोनों खिलाड़ी किसी भी और के खिलाफ खेलते हैं ना, तब तो विन निश्चित होती है कि हाँ यही जीतने वाले हैं. लेकिन जब ये गुलायत आमने सामने आएंगे तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है. बिल्कुल, क्योंकि एक तो इतना ज्यादा आपस में फ्रेंडली है, ये जानते हैं कि ओपोनेंट का प्ले स्टाइल क्या है. दे ट्रेन विद ईच अदर. एग्जैक्टली, वो ट्रेन के बाद है ना पता चलता है कि हाँ अब ये यही चीज करने वाला है, तो वो रेडी है उस चीज के लिए. जी, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज बैटल बिटवीन देम. देखिए जब एक ही अरीना में या फिर एक ही फाइट में आप लोग ज्यादा नहीं आए हो, एक मैच में आपने ज्यादा नहीं खेला, देन यू हैव समथिंग, अपना ही एक्स फैक्टर आप वहाँ पे डाल सकते हैं. बट जब एक ही साथ ट्रेन कर रहे हैं, एक ही साथ खेल रहे हैं आप, इवेंचुअली नंबर ऑफ मैचेस आपने खेले हैं, कई बार नेशन को रिप्रेजेंट किया है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेडिक्टेबिलिटी वाला शायद सिनेरियो देखने को मिल जाए, वो एक्स फैक्टर ना निकल के आए. बट आई मीन दोनों प्लेयर्स की जब हम बात करते हैं, शायद दोनों में से जो भी जीतेगा उसके पास वो एक्स फैक्टर डेफिनेटली होगा. वो कुछ नया होगा, और उसके लिए हम भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से लेग स्टार्ट होते हैं, किस तरीके से ये मैचेस स्टार्ट होते हैं, एंड हु इज गोइंग टू इनिशिएट फर्स्ट, और कौन पहला गोल दागता है, बिकॉज़ दैट विल रन अ सर्ज ऑफ एनर्जी इन अस, टू बी ऑनेस्ट. ये चीज तो है, वो पहला स्कोर करना, वो पहला गोल करना बहुत ज्यादा क्रूशियल रहता है. सिर्फ आपको खुशी नहीं मिलती है, सामने वाले प्रेशर बढ़ता है कि हाँ अब मैं एक गोल डाउन हूँ, मुझे कमबैक करना है यहाँ से, और सामने सीजे है या सारा अंश है, तो भाई कमबैक वैसे मुश्किल रहने वाला है. डेफिनेटली फर्स्ट गोल स्कोर करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा. बट अगेन हम स्ट्रेटजीज की बात कर रहे थे. स्ट्रेटेजिकली जो जर्नल मेटा प्लेयर्स खेलते हैं, दैट्स द 4-3-2-1 फॉर्मेशन. 3 सेंटर मिडफील्डर, 2 सेंटर फॉरवर्ड, 1 स्ट्राइकर. ये हर कोई जानता है कि दोनों खिलाड़ी उसको बहुत अच्छे से खेल सकते हैं. जी, आई वांट टू सी समवन काउंटरिंग दैट. मैं देखना चाहता हूँ आज 4-4-2 नैरो कर दो, मतलब ऐसे 4-4-2 सेंटर वाली, नो सीडीएम, नॉट द 4-4-2 विद द सीडीएम, सेंटर मिड वाली 4-4-2, थोड़ा हाई प्रेसिंग गेम देखने को मिले हमें, थोड़ा पिंच किया जाए अपने ओपोनेंट को, अलग थोड़ा परेशानी में डाला जाए वो, क्योंकि रेगुलर फॉर्मेशन ये खेलते रहते हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं जो एक्स फैक्टर है वो डिमिनिश हो सकता है. बट अगर स्ट्रैटेजिकली एंड फॉर्मेशन में बदलाव आ गया फिर तो कहानी कुछ अलग ही बन जाएगी. डेफिनेटली देखिए जब अब बात कर रहे हैं BO5 की, देयर इज अ स्कोप ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, कुछ एक्सपीरियंस करने का, कुछ नया डिफरेंट ट्राई करने का. और मुझे लगता है शायद ये देखना चाहते हैं स्पार्टर्स भी कि कुछ डिफरेंट यहाँ पे होता हुआ दिखे. वो एक नॉर्मल फॉर्मेशन जिसकी आप बात कर रहे थे पिरामिड 4-3-2-1 की, वो ना देखने को मिले, कुछ डिफरेंट मुझे देखने को मिले. आई मीन दैट्स व्हाट दिस गाय इज आस्किंग. बट डेफिनेटली देखना चाहूंगा कि प्लेयर्स क्या लेके आए अपने घर से, क्या ट्रेन करके आए हैं, क्या ग्राइंड करके आए अपनी तरफ से, और क्या वो डिफरेंट दिखाने वाले हैं. क्योंकि अगेन आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं वो 2 से 3 फॉर्मेशन अपने आर्सेनल में रखनी पड़ती है कि अगर ये चीज वर्क नहीं करी है तो मेरा प्लान बी क्या रहने वाला है. जी, वो प्लान बी किसका कितना ज्यादा डिफरेंट है, उस पर चीजें बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है. बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो सिनेरियो ऐसे बनते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं अपने कंफर्ट जोन पे खेलूं, बट आपको भी ये पता है कि अगर मैं वो अपनी रेगुलर फॉर्मेशन में जाऊंगा द ओपोनेंट नोज हाउ टू काउंटर दैट. सो एक चीज को इस तरीके से मास्टर कर लेना कि सामने वाला परेशान हो जाए कि भाई सामने चल क्या रहा है, इज दिस अ 4-4-2, इज दिस अ 4-2-3-1, भाई चाहता क्या है मेरे साथ. तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करना ओपोनेंट्स को, वो कहीं ना ज्यादा क्रूशियल होता है. एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, दैट्स द वर्ड. आई मीन आप ढूंढ रहे थे शायद वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देखते हैं किसकी तरफ से हमें देखने को मिलता है. इज इट चरणजोत, इज इट सारांश? आई मीन एक्सपीरियंस हम इतनी बार बोल चुके हैं अभी तक जब से हमने एसेटो पे आए हैं, दैट एक्सपीरियंस इज जस्ट वे टू हाई एट दिस पॉइंट. दोनों एक साथ ग्राइंड करते हैं, दोनों का एक स्टेज है, एक अलग लेवल का मोड देखने को मिलता है. और जब आप बात करते हैं नो रिस्ट्रिक्शंस की, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक ऐसी टीम फॉर्म होने वाली है अब जो कुछ डिफरेंट हमें दिखाती हुई दिखेगी. तो मैं तो पेशेंटली वेट कर रहा हूँ इस समय कि कब हमारा ये मैच स्टार्ट होता है, कब वो ट्रॉफी उठती है, और साथ ही साथ वो 3 लाख रुपए का प्राइस पूल जो दाव पे लगा है वो देखने को मिलता है. अब देखिए यूजुअली जब हम बात कर रहे थे ना ऑनलाइन क्वालिफायर्स में, वी वर शेयरिंग द डेस्क, हम ये बात कर रहे थे कि कौन ही एक्सपीरियंस गेन करता है. जो हारेगा ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू गेन सम एक्सपीरियंस. देयर वुड हैव बीन सम मिस्टेक्स जिसके चलते शायद वो हारे हैं. बट द फैक्ट राइट नाउ इज एक्सपीरियंस की कमी है नहीं. लर्निंग का स्कोप हमेशा चलता रहता है ऑब्वियसली. अगर कुछ हुआ तो डेफिनेटली लर्न करने की कोशिश करेंगे. बट एट द सेम पॉइंट जो एक्सपीरियंस गेन करके आए क्वालिफायर स्टेज से, जब वहाँ पे उनके यहाँ पे लेग्स में मैचेस देखने को मिले थे, तो अब जो BO5 का एक जो मौका इनको मिला है, लंबे मैचेस देखने को मिलेंगे. BO5 है, एज ए सेड स्कोप ऑफ मिस्टेक्स है, तो कुछ भी जो गलतियाँ होती हैं, मे बी 2-0 से स्टार्ट होता है गेम, बट एक रिवर्स उनो स्वीप कार्ड अगर वो आ जाए, व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? 2-0 से 3-2.
कमबैक्स बिल्कुल पॉसिबल है इन गेम्स के अंदर, क्योंकि वो जो मेंटल गेम है ना वो दोनों का ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल। ये कभी भी अपने हथियार नहीं डालते हैं। इवन इन द फाइनल मूवमेंट दे नो कि वो एक अपॉर्चुनिटी को कैसे डिग आउट किया जा सकता है। यही कहीं ना कहीं एक प्लेयर को स्पेशल बनाता है। एंड ये तो भाई फिर इंडिया के फाइनेस्ट प्लेयर्स है ये, तो इनसे ऊपर तो मैं नहीं मान सकता कि वो स्कोर लाइन कभी भी ऐसा लगे कि चेजेबल ना हो। इवन विद 3 goals डाउन दे हैव मेड द कमबैक्स इन द पास्ट। ऐसा ही कुछ मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट अगर स्कोर लाइन की प्रेडिक्शंस पे जाए, क्या लगता है आपको कि कितना स्कोर बेयर मिनिमम देखने को मिलेगा? पर मैच या लेग्स में जा रहे हैं आप? पर मैच। पर मैच आई फील अराउंड लाइक 5-4। बहुत क्लोज कट थ्रोट मुझे लग रहा है मैच। देखिए मतलब दोनों तरफ से गोल्स की बारिश होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उसमें कोई कमी नहीं करेंगे। फैंस आए देखने के लिए, लोग आए जुड़े यहाँ पे EFC 24 का एक्शन देखने के लिए, और उसमें ना सारांश कमी करने वाले हैं ना चरणजोत। दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली मैन। ये चीज तो है। एंड इन दोनों का जो प्ले स्टाइल है ना वो भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। वो गोल कंसीड होने के बाद बैठते नहीं है कि हाँ भाई मैं थोड़ा डिफेंसिव हो जाता हूँ, देन आई विल ट्राई टू मेक द कमबैक। जी। अगर आपने गोल मेरे को स्कोर किया है, आई विल मेक श्योर कि मैं 2 और करके आऊँ। तो ये जो अप्रोच है इन दोनों का वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मजेदार रहने वाला है। एंड आई होप कि जल्द से जल्दी वो मैचेस देखने को हमें मिले, क्योंकि अब वो ना एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रहा है। बढ़ता ही चला जा रहा है गाइस, बढ़ता ही चला जा रहा है। दैट मीटर इज गोइंग हाई एंड हाई एंड हायर एट दिस पॉइंट कि कब मैचेस चालू होंगे, कब ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के सामने होंगे, टीम्स में उनके कौन कौन से कार्ड्स, कौन कौन से प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, क्या स्ट्रैटेजी के थ्रू खेलते हुए दिखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस समय दिमाग में, एक तूफान आता दिख रहा है कि क्वेश्चंस हैं कि क्या होगा, किस तरीके से होगा। एंड वी एज अ कास्टर्स आर जस्ट मेकिंग स्पेकुलेशंस एट दिस पॉइंट। वेरिएबल्स बहुत सारे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बट एट द एंड ये दो खिलाड़ी चरणजोत एंड सारांश, दे विल टेल अस व्हाट्स द स्टोरी लाइन टुडे। ओह बिल्कुल। एंड यू नो बिहाइंड द सीन्स मैं थोड़ा ऐसे स्नीक पीक भी कर रहा था प्लेयर्स के पास कि क्या प्लेयर्स खिलाने वाले हो, फॉर्मेशन रखने वाले हो। मैं घूम रहा था कि आजू बाजू के थोड़ा सा थोड़ा हिंट्स मिल जाए कि भाई आज पकने क्या वाला है, तो थोड़ा मजा सा आ जाता है ना। एक कार्ड जो सबके लिए वहाँ पे थोड़ा सरप्राइज था, नॉट फॉर मी दो, इट वाज विनीशियस। जनरली आप विनी को देखते नहीं हो, ऑल्दो ही इज वेरी रैपिड ऑन द विंग्स, बहुत तेजी से आपको ड्राइव इन कर सकते हैं, 5 स्टार स्किल्स हैं, तो आराम से बॉल रोल स्कूप के साथ मैगेटिक स्किन कैंसिल, बहुत सारी चीजें, क्रिएटिविटी लेवल नेक्स्ट लेवल है। बट व्हेन ही इज इनसाइड द बॉक्स, जो शूटिंग लेवल है, जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ विनीशियस कहीं ना कहीं लैक करता है एंड उसके चलते प्लेयर्स थोड़ा ड्रॉप कर देते हैं उसे। बट आई हैव सीन वन ऑफ दोस गाइस पिकिंग विनीशियस एज वेल। बट द फैक्ट इज जब आपके पास मैचेस कम हो, स्टेक इतना हाई हो, तो कोई एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए होता है एट द फिनिशिंग पॉइंट जो गेम को एक्चुअली कन्वर्ट कर सके, जो आपके लिए वो गोल्स ला सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट। सो आपने बोला कि शायद आप देखना चाहते हैं उन प्लेयर्स को, आपने तो देखिए आज आते ही ये बता दिया कि यू वांट समथिंग डिफरेंट। वो स्ट्रैटेजिक प्ले हमें भी देखने को मिलेगा डेफिनेटली। वेट कर रहे हैं उस एक मौके का जहाँ पे हमें भी शायद कुछ एक डिफरेंट देखने को मिले, कुछ चीजें बदलती हुई दिखे। व्हेन इट कम्स टू द मैचेस, व्हेन इट कम्स टू द लेग्स, तापमान हाई होते हुए दिखे, क्लोज मैचेस जाते हुए दिखे। प्रेडिक्शन में भी मेरा यही है कि 5-4, मैं सिर्फ 5-4 नहीं बोलूंगा, कहीं पे भी स्कोर जाए, वो 10 जाता है तो भी 10-9, वो 1 जाता है तो भी 1-0, कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। क्लोज का थ्रोट मैच, दैट्स व्हाट आई वांट। ये चीज तो है, क्योंकि डोमिनेट ये आपस में तो नहीं कर पाएंगे। ये तो नहीं होने वाला कि भाई एक बंदा 4-0 से जीत रहा है, मतलब नन ऑफ देम गोना अलाउ दैट। ये तो है, बट द टैक्टिकल डिफरेंस आई गेस वो सबसे ज्यादा क्रूशियल रहता है जब भी आप वेटरन्स के खिलाफ खेलते हैं। व्हेन यू आर स्टेपिंग इनटू दैट FC24 फील्ड, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में यही आती है कि आपको ओपोनेंट फॉर्मेशन क्या यूज करने वाला है। इज ही गोइंग फॉर दैट लेफ्ट बैक ओवरलैप 4-3-2-1? इज ही प्लेइंग पैसिव विद अ 4-4-2? इज ही गोना प्ले हाई प्रेस विद अ 72 डेप्थ, ऑटो अटैकिंग प्रेसिंग, हर एक चीज को मिक्स करते हुए। सो वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के कुछ मिनट अगर आप उसको फिगर आउट कर लेते हैं, देन यू हैव द टाइम टू काउंटर इट और मे बी जस्ट मैच इट इवन। वो कहीं ना कहीं टैक्टिकल डिस्पैरिटी सबसे ज्यादा मैटर करने वाली है आज। डेफिनेटली देखिए यहाँ पे आपने बात करी उस चीज को समझने की, परखने की, और मुझे लगता है देखिए उसके लिए नंबर ऑफ मैचेस हैं, नंबर ऑफ लेग्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर पहला लेग लग भी जाता है ऐसा कि मान लीजिए आप समझ नहीं पा रहे हैं स्ट्रैटेजीज को, मुझे लगता है अलॉन्ग द वे डेफिनेटली फिगर आउट करते हुए दिखेंगे दोनों अपोनेंट्स एक दूसरे को। एंड इन टर्म्स ऑफ दैट आपने बात करी स्ट्रैटेजीज की, 4-4-2 की बात करी आपने, वो शायद होते हुए दिख भी जाए हमें अलॉन्ग द वे व्हेन इट कम्स टू द लेटर पार्ट ऑफ द मैचेस। शुरुआत में मुझे लगता है कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी दोनों तरफ से, एंड उसके अकॉर्डिंग रीड करने की कोशिश करेंगे दोनों ही खिलाड़ी, बी इट सारांश बी इट चरणजोत, कि कैसे ये हमारा ओपोनेंट क्या करने वाला है, हाउ ही इज गोइंग टू पिन मी डाउन, किस तरीके से मुझे एक ऐसे पोजीशन में रखेंगे इसके चलते शायद मैं रिवर्ट ना कर पाऊँ। शायद वो उस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, बट आई ट्रूली बिलीव वो हमारे लास्ट के जो मैचेस होंगे ना, दैट विल बी फन। ये चीज़ तो है, ये एक तो क्लोज बैटल पर मैच भी रहने वाली है, एंड इवन ऑन दैट एग्रीगेट कि कौन पहले 3 मैचेस जीतेगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस देखने को मिलने वाली है। बट व्हाट इफ हम दोनों को सरप्राइज मिल जाता है, नहीं खिलाड़ी 3-0 कर देता ओपोनेंट को। ओह मैन, जस्ट इमेजिन दैट, हैप्पी फॉर दैट गाय जो 3-0 करता है, बट देन वी डोंट वांट दैट 3-0, हमें चाहिए एटलीस्ट एक 4-2, I mean 3-2 to be honest. But they will have it. Finally the match began between the Goliaths of FC24. CJ
वर्सेस सारांश यहाँ स्टार्ट हो चुका है सीजे इन हिज ऑल रेड किट हमको यहाँ देखने को मिलने वाले चरण जो 12 एंड सारांश विद द नेम गोस्ट एंड स्टफ इन दैट ब्लू किट। अभी के लिए लेफ्ट टू राइट अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं सीजे एंड हुलेट के साथ मिडफील्ड के अंदर ठीक है फेवरेट आउटलेट बढ़िया हिट और विद दैट ब्लॉक पोजीशन लूज जरूर किया बट एलेक्स पुटेरियस वापस से पोजीशन दिलाएंगे सारांश को। माल्दीनी की तरफ से एक लेफ्ट विंग की तरफ पास देखने को मिलेगा। मेल्दी इज मूविंग फॉरवर्ड, सेंटर भी फील्ड में खेलते हुए दिखेंगे। मिडफील्ड्स पे पूरा का पूरा फोकस देखने को मिला बट देखिए इस समय लेफ्ट फॉरवर्ड से काफी अच्छा एक अप्रोच देखने को मिल रही है। डी के इनसाइड आ चुके हैं ऑलरेडी। लेट्स सी हु इज गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। एक असिस्ट यहां पे जरूर से मैं देखना चाहूंगा किस तरीके से बनता है। तो यार की तरफ से एक पास देखने को मिलेगा बट लूसियो राइट ओवर देयर इज गोइंग टू इंटरसेप्ट एंड इसी के साथ जो एक मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश करी गई थी वो फिलहाल अभी के लिए चेंज होता दिखेगा। जी हां एंड यू नो प्री मैच हम जब फॉर्मेशंस की बात कर रहे थे वे वाले के क्या इस्तेमाल होने वाला है। दे आर स्टिकिंग विद अ 4-3-2-1 लेफ्ट बैक ओवरलैप पे कोई ज्यादा क्रेजीनेस नहीं लेके आना चाहते एज एक्सपेक्टेड। पहला मैच इसी सर्टेन मूवमेंट बट एम्बापे ऑन द विंग्स कट बैक टू काफू हुलेट के पास मौका क्राइव इनसाइड द बॉक्स विद डिनियो R9 विद द शॉट टॉप राइट कॉर्नर एंड सीजे ऑलरेडी पहला गोल स्कोर कर चुके हैं। At 9-minute marker, this guy finds the first opening. Wow, that's amazing. पहला गोल इनकी तरफ से ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। एंड हमने प्ले स्टाइल की बात करी, थोड़ा ज्यादा मैं कहूंगा कहने की अटैकिंग मूव देखने को मिलती है इनकी। गोल ओरिएंटेड ज्यादा खेलते हुए दिखते हैं। भाई सारांश की बात करी जाए, ही इज आल्सो ट्राइंग टू रिवर्ट बैक, गेम बिल्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। काफू आगे बढ़ रहे हैं एंड इवेंचुअली देखिए बैक पासेस का गेम यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। दैट्स एक्जैक्टली व्हाट हैपेंड। वर्कर्स के पास बॉल थी लेकिन अब ट्राइफ आएंगे, इंटरसेप्ट कर लिया गया है एंड नाउ द गेम गोज ऑन अबव एंड बियॉन्ड। विद दैट थोड़ा की तरफ से देखते हैं फिलहाल किस तरफ पास जाता है एंड ही क्लियर्स अवे इन द मिडफील्ड्स एंड इवेंचुअली राइट विंग से अब एम्बापे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राइविंग फॉरवर्ड येट अगेन हुलेट वापस से पुटायस ढूंढने का मौका बट द पास वाज टू हेवी। ये थोड़ा सा एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। यू वांटेड टू प्ले द पास डिडंट कनेक्ट बट नाउ सारांश ऑन द ब्रेक थ्रू बैक टू विनीशियस मेंडी मेकिंग द ओवरलैप रन स्टेप वाज इनसाइड वापस से मेंडी के साथ वो कटबैक ढूंढना जरूर चाहते हैं बस सीजे इज वेल अवेयर ही नोस कि किस तरीके चीजें डिफेंड की जा सकती है बट हुलेट इनसाइड द बॉक्स विद द ग्रीन टाइम शॉट मेक्स दैट स्कोर हैपन 1-1 इज द एग्रीगेट। Well, there you go, equalizing stance. इसी की बात करी थी, यही कटथ्रोट मैचेस है ये तो और exactly वही शुरुआती के ऑलरेडी 16 मिनट्स के अंदर हमें देखने को मिला है but still there is a larger picture to talk about. We have to see what happens. काफी क्लीन पासेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मेंडी की बात करी जाए वो लेफ्ट विंग से आगे बढ़ेंगे। पासेस की बात यहाँ पे करी जाए वो भी काफी क्लीन देखने को मिलेंगे but with that I believe it's going to be corner and eventually इस कॉर्नर के चलते शायद इस गेम के डायनामिक्स अब बदलते हुए दिखे। मेंडी passes back to क्राइफ एंड क्राइफ की तरफ से लीचे इंटरसेप्शन आएगा। एलेक्सिया goes in and राइट विंग से वो आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। Let's see who's going to take the pass. Ronaldinho and from there again some back passes. बैक पास अगर करते शायद इंटरसेप्शन ना आता। थोड़ी जल्दबाजी वो चाहते थे कि पुटायस को जल्दी से विंग पे ओपन अप किया जाए didn't make that happen। वापस से सेम चीज है सीजे भी करते हुए। ये अब थोड़ी है ना जल्दबाजी देखने को मिल रही है दोनों ही तरफ से। एक ऐसा पास जो रिस्की है जरूर बट खेलना चाहते थे बट नाउ पोजीशन होल्ड किया विनी के साथ ड्रिबल आउट एंड अब थोड़ा सा बॉल को होल्ड करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे सारांश। उन्हें पता है कि क्लॉक को थोड़ा रन डाउन करेंगे सीजे माइट गेट इन्वेशन बट क्राइफ विद अ परफेक्ट प्रेस ही इज वन वन गोलकीपर क्या स्कूप देखने को मिलेगा बट नो वर्जिल वैन डाइक वन ऑफ द फाइनल सेंटर बैक्स इन द गेम्स परफेक्ट टैकल और एक मौका जहां सारांश वापस से अपनी बढ़त बना सकते थे छीन लिया उनके हाथ से। जी हाँ, चांसेस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे थे। देयर कुड हैव बीन अ पॉसिबल सेकंड गोल कमिंग इन बट अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। विनी जूनियर पे आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। विनीसियस की तरफ से अभी एक अच्छा पास एलेक्सिया के लिए एंड फ्रॉम देयर अगेन ही वांटेड टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी बट लुक एट दैट एलेक्सिया उनके पास अभी बॉल देखने को मिलेगी वो राइट विंग से अभी आगे बढ़ने की कोशिश करे। प्रॉब्ली लेफ्ट विंग के यहाँ पे एक अप्रोच देखने को मिल सकती है। रोनाल्डो हैज गॉट द बॉल, ही वाज द वन हु स्कोर्ड द फर्स्ट वन। ओह लिटिल बिट स्लोअर एंड विद दैट यस वैन डर सर वहां पे इंटरसेप्ट करेंगे एंड देखते ही देखते कॉर्नर इज गोइंग टू डिक्टेट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ऑलमोस्ट सीजे चांसेस बहुत ज्यादा बना रहे हैं बट प्लेयर लॉक टू हुलेट चांस नहीं मिला शॉट लेने का बट नाउ बैक टू सारांश एंड अभी हमने फील्ड में पुस्कास को देखा फ्रॉम हिज साइड अ 3-star वीक फुट गाय एज द सेंटर फॉरवर्ड। पुस्कास के साथ उतरना सारांश का ये डिसीजन देखना पड़ेगा कितना ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है। फिलहाल तो हुलेट जस्ट होल्डिंग द पोजीशन ड्राइव करना चाहता है। एक बहुत अच्छा पास मेंडी के पास पुस्कास के पास मौका बैक टू विनी बैक टू डीनियो इलास्टिको करना चाहते जरूर थे डीनियो लेकिन स्पेस की कमी एंड द पोजीशन बैक टू सीजे। बैक टू सीजे ही इज अगेन मेकिंग एन अप्रोच। कोशिश यही रहेगी कि फिलहाल वो सेकंड गोल ढूंढा जाए बिकॉज उस पहले गोल के बाद अब देखिए कहीं ना कहीं काफी टाइम बीत चुका है बट ही इज अनेबल टू फाइंड दैट गैप। काफू मूविंग फॉरवर्ड एंड वो राइट विंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट एक टफ टैकल वहां पे देखने को मिला और इसी के साथ एक येलो कार्ड भी मिल जाएगा। अ फ्री किक विल बी कमिंग इन। लेट्स सी इस फ्री किक के चलते देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है एंड अ बैक पास। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। माल्दीनी पासेस बैक टू काफू एंड वो राइट विंग से फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नाउ ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू पास टू एलेक्सिया आई बिलीव। No, it's Lucio. Let's see what happens next. Ronaldo calling for a pass. Ronaldo moving in, possibly a goal. No.
was just outside. मौका बना सकते थे, थोड़ा जल्दी शॉट लेने का अटेम्प्ट था जरूर, but again शॉट कॉर्नर R9 ड्रिबल आउट करना चाहता है, क्राइफ को फिर से ढूंढा जरूर है, but Mendy he just wants one single cut back to take the lead again. But R9 एक और स्टेप ओवर with a speed boost, fake smash overs, पीछे जाएंगे, वापस एम्बापे को ढूंढा जरूर है, यार्ड और बैक टू द मिडफील्ड, किलियन एम्बापे मौका जरूर ऑन द एज, एक एक्स्ट्रा पास चाहते थे क्राइफ को मिल जाए, but यार्ड और yet another denying. He tried, man. He was trying to make an opportunity, but that definitely didn't came in. And यहाँ पे देखिए फिलहाल passes की बात करें जाए तो काफी decent देखने को मिल रहा है. And Mendy moving forward is trying to make a good move. Let's see what happens next. And eventually Maldini की बात करें जाए, passes back to Mendy, and then Maldini right there to right wing, and from there I guess again another opportunity could be created for Saransh. कोशिश देखिए उनकी तरफ से definitely देखने को मिल रही है, but जो interception और जो midfields का एक काफी अच्छा conversion देखने को मिल रहा है, defenders जिस तरीके से lined up है इस समय चरणजोत की तरफ से, is not letting it go that easily. Ronaldinho moving forward. Let's see if it changes the game. उसका इसके पास पास देखने को मिल चुका है, but again Maldini intercepts, but still the ball position is right there. Alexia moving in. I would love to see if there is going to be the second goal. Puskas again is on the ball, and there you go! Right there in the right post, there was the goal coming in from Gosensoff. That was offside. Count नहीं किया जाएगा उसको. Puskas just एक step आगे चले गए थे उस defensive line से, and CJ किस्मत वाले रहे कि वहाँ पे Puskas का वो जो गोल था वो count नहीं होगा, and the scores are still 1-1. Yeah. But एक चीज तो है, सारांश का जो composure है on the edge of the box, it is crazy, क्योंकि जितनी देर तक उस खिलाड़ी ने इस एज के ऊपर मेंटेन करके रखा उस पोजीशन को. जनरली आप देखते हैं कि प्लेयर्स अटेम्प्ट करते हैं एक लॉन्ग रेंज फिनिश का, एक त्रिवेला वहां से कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहां सारांश चाहते थे कि ओपनिंग को प्रॉपर्ली डाइसेक्ट किया जाए, वो परफेक्ट एंगल मिल जाए उन्हें. पुटेयास शुपुस्कास कांस्टेंट बिल्डअप बनाते गए, बट इन द एंड जब फाइनल पास की बारी आई वो हल्की सी टाइमिंग आगे पीछे, एंड ही लॉस्ट हिज चार्म. That finish didn't came in, right? Yep. Yeah, कोशिश थी definitely उनकी तरफ से, but with that we resume with the second half. देखना चाहूँगा फिलहाल इस second half के अंदर क्या हमें कोई एक initiation देखने को मिलता है. There was a very close chance that हमें वो second goal देखने को मिल जाता, but eventually that didn't came through due to an offside of course. but यहाँ पे left wing से देखिए Mendy आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, calling for a pass, Cruyff right over there, passes right to Mbappe, but eventually वो pass आगे Cruyff. Let's see if that is going to be an opportunity. It's trying, but Alexia once again has got the ball. Cruyff right there, passes back to Gullit, and from there Mbappe. Oh no, Virgil van Dijk वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, and Gullit clears the ball away. Oh, this has to be the perfect opportunity for CJ. क्या ही मौका बनाया था उन्होंने, but काफू जिस तरीके से फाइनल टैकल यहाँ लेके आए थे, वो टैकल ने फिर से यहाँ पे स्कोर्स को टाई अप रखा जरूर है. बट बैक अगेन टू Gullit, बैक टू R9. क्राइफ विंग्स पे ढूंढना चाहते हैं खिलाड़ी को, बट इसके पास इस समय नहीं देना चाहते हैं. ड्रिवन ढूंढा जरूर है Mbappe, बैक टू R9, बैक टू Mbappe, आउटसाइड द बॉक्स, अ ग्रीन टाइम शॉट, but again the defender just comes in the way, और एक बहुत इजी ब्लॉक देखने को मिलता हुआ. बट चांस क्रिएशन की जहां तक बात है, जिस तरीके से डिफेंसेस को डाइसेक्ट कर रहे हैं सीजे, सारांश को डिफेंसिव स्ट्रक्चर को आई थिंक रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है. देखिए कोशिश कर रहे हैं वो अपनी तरफ से पूरी, यहाँ पे देखिए एक हार्डशिप देखने को मिल रही है उनकी तरफ से, एंड डेफिनेटली एज यू सेड ऐसे कर रहे हैं चरणजोत, कोशिश उनकी यही देखने को मिलेगी शुरुआत से ही दैट ही मेक्स अ गुड मूव, एंड इवेंचुअली वहां से जो परफॉर्मेंस देखने को मिले वो एक गोल कन्वर्जन में आ सकती थी प्रॉब्ली, बट नो इट डिडंट केम थ्रू वंस अगेन. देयर वाज अ गुड चांस दैट यहाँ पे हमें शायद एक सेकंड गोल देखने को मिलता, बट लुक एट दैट, 5 minutes already done and dusted. He was very close, but eventually Cafu from the right wing is going to move forward, and a back pass, Gullit right over there, once again back to Cafu, but interception आएगा and Mendy takes it over. You know, ये जो सीजे के पास अभी हुआ है, ये जनरली बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है. आप चाहते हैं एक लॉन्ग क्रॉस दिलवाया जाए दूसरी साइड पे, आपका मिडफील्डर इंटरसेप्ट कर लेता है बॉल को बीच में, एंड दैट बॉल जस्ट बाउंसेस अवे समटाइम्स. किस्मत वाले थे कि याया टूरे ने कंट्रोल कर लिया, बट अगेन सारांश ऑन द अटैक, उसके बाद बॉल विद दैट राइट फुट ड्रिल्स इट इन, एंड सारांश टेक्स द लीड, सेकंड गोल टू हिज नेम, एंड अब सीजे एक गोल डाउन चल रहे हैं. देखिए सीजे कोशिश कर रहे हैं डिफेंसेस को डाइसेक्ट करने की, but the other guy did it already, and that's how Saransh is going to take that lead of 2-1 in his favor. And obviously अब देखिए सीजे के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता हुआ दिखेगा. चरणजोत will be trying his level best, राइट विंग से आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, but the defensive perimeter is way too good. Gullit उनके पास पास आता हुआ दिखेगा, Torreira was right there, Alexia to Mbappe, back to Alexia, and there Cruyff, Ronaldo wants to finish it off, let's see, and he did. You can't take that lead away from this man, और लीड बनाने की अगर कोशिश करते भी हो तो चरणजोत दोबारा आएंगे in just 2 or 3 minutes, and he's going to nail that goal in a way कि वो लीड के नाम से कुछ भी नहीं बचेगा. Yeah, and this is just complete different play style from both these guys. Yeah. सारांश एक सिंपल FC24 खेल रहे हैं, वो बेसिक पासेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो डाइसेक्ट कर रहे हैं डिफेंसेस को, वो इंटरकट पासेस ढूंढ रहे हैं. CJ just skill change the entire team. Heel to ball roll, into
रिवर्स इलास्टिक हो, दो ऐसे स्किल मूव्स, लेफ्ट टू राइट का, राइट टू लेफ्ट का, यार सामने वाले को पता ही नहीं था कि एक्चुअली डिफेंस किस तरफ से करना है, एंड दैट स्किल चेनिंग वाज जस्ट परफेक्ट. डिफरेंस इतना ज्यादा है दोनों के खेलने के तरीके में कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अगला मूव आने का वाला है. अभी के लिए अगर देखा जाए तो एक बहुत क्लीन टैकल अगेन फ्रॉम काफू, येट अगेन रिटेनिंग द पोजीशन, एंड यार टोरे ड्रिवन पास ढूंढना जरूर है पुस्कास के पास, लेकिन वो 5 स्टार स्किल मूव्स की कमी ये कहीं ना कहीं सारांश को खलेगी. रोनाल्डो मूविंग फॉरवर्ड सेंटर फील्ड से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे. मिडफील्ड पे देखिए काफी अच्छा कंटेस्टमेंट देखने को मिल रहा है. एलेक्सिया पासेस बैक टू तोरेया, एंड फ्रॉम देयर राइट विंग के लिए अगर जा सकते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए बेटर सिचुएशन देखने को मिल सकती थी, बट मालदीनी पे एक बैक पास देखने को मिलेगा. फ्रॉम देयर द लेफ्ट विंग अप्रोच, एंड एज आई सेड राइट विंग के लिए बढ़ते हुए दिखेंगे बहुत ही इजीली. वहां पे एक अच्छा पास इंटरसेप्शन देखने को मिल सकता है, एंड आई पॉसिबली बिलीव एट दिस पॉइंट वंस अगेन चरणजोत एक अच्छी अप्रोच बना सकते थे, बट नो, लिटिल बिट क्लोज, बट देन अगेन लिटिल बिट फार अवे एज वेल. ये आप होप तो कर सकते हैं कि हाँ ये ग्रीन टाइम त्रिवेला चला जाए, लेकिन उस एंगल से तो नहीं जाता है, थोड़ा ड्राइव आउट करना पड़ेगा आपको जी. बट एम्बापे स्टेप ओवर इनसाइड द बॉक्स, बॉल रोल स्कूप, येट अगेन बैक टू होलेड. एलेक्सिया को ढूंढा जरूर है और एक बहुत ही स्टेप ओवर्स के बाद पीछे आए थे, लेकिन द प्रेडिक्शन ऑन सारांश वाज जस्ट परफेक्ट. मालदीनी के साथ ऑलरेडी कवर अप कर रहे थे स्ट्राइकर को, एंड कोई दिक्कत नहीं होती वो इंटरसेप्ट करने में, बट नाउ काउंटर अटैक का मौका बना था, बट द टाइम ही टुक जस्ट लॉस्ट द पोजीशन. एंड अब फिर से सीजे को मौका मिला जरूर है अपने लिए एक और बार चांस क्रिएट करने का. बैक टू R9, बैक टू किलियन एम्बापे, थोड़े सा फैंसी ट्रिकस्टर मूव बनाना चाहते हैं, लेकिन बॉक्स के आसपास सारांश बिल्कुल स्पेस अलाउ नहीं कर रहे हैं. Yeah, that's why देखिए आप अपॉर्चुनिटीज बनी नहीं पा रही, but Ronaldo goes in big. There you go, आप अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे थे. This guy will create it and this guy will get the third one. इसी के साथ वो लीड भी देखने को मिलेगी जिसके लिए काफी देर से परेशान थे, and finally it's a 3-2. A simple step over to cut out the defense. एक डायरेक्ट स्टेप ओवर करा है उन्होंने और पूरा डिफेंसिव स्ट्रक्चर खड़ा का खड़ा रह गया. एंड यही चीज है, ये छोटा सा 2 स्टार स्किल मूव अगर आप टाइमली एग्जीक्यूट कर देते हैं देन ओपोनेंट के पास कोई ज्यादा मौका बचता नहीं है. एंड वही चीज है यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है. सो स्किल मूव्स का जो डिपार्टमेंट है वो तो कहीं ना कहीं अभी सीजे का बहुत ही बढ़िया देखने को हमें मिल जरूर रहा है, क्योंकि अगेन आपके पास वो जो एक सरप्राइज होता है बॉक्स के आसपास वो स्किल मूव्स के थ्रू ही बनता है, मेरा तो ये मानना है. एंड सीजे जिस तरीके से अभी खेल रहे हैं वो उसी को जस्टिफाई भी कर रहे हैं. डेफिनेटली देखिए वो स्किल मूव्स अगर ना आती तो फिर वहां पे जिस तरीके से आपने कहा कि स्पेस नहीं दे रहे सारांश, वो स्पेस को बनाने के लिए स्किल मूव्स बहुत इंपॉर्टेंट थी. एक स्टेप ऊपर आया और उसी के साथ पूरे का पूरा फ्लैंक एंगल वहां पे ओपन होता हुआ दिखा, एंड थ्रू दैट दिस गाय नील्ड द थर्ड गोल. एंड ऑब्वियसली उसी के चलते अब एक लीड देखने को मिलेगी. द प्रेशर विल बी देयर ऑन सारांश, बट वो प्रेशर साथ ही साथ सीजे पे भी है, बिकॉज ही नोज वो लीड इंस्टेंटली जा सकती है. ऑलरेडी एक बार गवा चुके हैं जब पहला गोल स्कोर किया था, सो उस चीज को देखना पड़ेगा. अब रिटेन किस तरीके से करते हुए नजर आने वाले हैं ये. अभी के लिए तो थोड़ा सा टैक्टिकल पॉज बदलाव करना चाहते हैं अपने फॉर्मेशंस में, एंड आई होप ये सारांश की तरफ से हमें पॉज देखने को मिला हो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि थोड़ी चीजें इन द बैक लाइंस परेशानी वाली हो रही है उनके लिए. वो जो स्पेसेस हैं वो एट टाइम्स खुलते जाते हैं, ऑल्दो इस बार तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे. इट वाज जस्ट अ ड्रिवन पास टू R9 एंड देन टू द स्टेप ओवर्स. बट नाउ 78 मिनट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, एंड दिस इज अ डबल हेड गेम. सो ओवरऑल एग्रीगेट के ऊपर जो स्कोर लाइन बनेगी that guy will be crowned the winner. So आपके लिए ये मैच सिर्फ 90 मिनट का नहीं है, ये 180 मिनट का मैच रहने वाला है इन गेम टाइमर के हिसाब से. So उस टाइम में जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्स हुए दोनों मैचेस को मिला के that guy will be named EPS FC24 winner. So उसी का ध्यान रखना पड़ेगा इन्हें. जी हाँ बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा एंटिसिपेशन है, काफी ज्यादा ईगरनेस है. हु इज गोइंग टू गेट दैट नेक्स्ट गोल? इज इट चरणजोत? इज इट सारांश? बिकॉज़ सारांश को अभी कहीं ना कहीं नीड है उस गोल की. कोशिश वो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं. रोनाल्डो की बात करें उनके पास देखने को मिलेगा. वहां से अगर आप देखें फिलहाल क्राफ्ट का फिनिश ऑफ द व्हाट जस्ट टुक इट लेफ्ट एंड फ्रॉम देयर another goal comes in. Wow, चरणजोत takes the lead again. और इस बार वो प्रेशर जो उनके ऊपर था कि एक बार फिर से गोल आ सकता है सारांश की तरफ से, वो भी अब देखने को नहीं मिलेगा, because now the lead is of 2 good goals. But we know Saransh how fierce he is and how can he give that comeback. But अभी के लिए जो लीड है कहीं ना कहीं हम एंजॉय करने वाले हैं चरणजोत, एंड डेफिनेटली इस लीड के चलते वो थोड़ा सा और प्रेशर डालेंगे अब सारांश के ऊपर. ये तो थोड़ी दिक्कतें हैं. बिल्कुल ये गलती नहीं करनी चाहिए सारांश को. वो डिफेंसिव लाइन में दिक्कत आई, लेकिन इस बार ब्लॉक थ्रू बॉल इज जस्ट परफेक्ट. ड्राइव इनसाइड द बॉक्स, शॉट लेने का मौका एंड नियर पोस्ट ग्रीन टाइम. 5th गोल फॉर सीजे, एंड अब तो रन थ्रू कर रहे हैं.
Saransh is in trouble at this point. Looking at the scoreboard, definitely लग रहा है कि Is फिलहाल this यहाँ पे tie कुछ over? definitely different देखने को मिलेगा हमें. But at this point 18 minutes already हो चुके हैं. ज़्यादा कुछ यहाँ पे comeback करने की आशंका इस particular leg में तो नहीं देखने को मिल रही है. But the fact is Ronaldo once again has got the ball. Llorente के पास देखने को मिलेगी from there. Cruyff की तरफ पास देने की कोशिश थी but that didn't came through. And through there, Zico is now going to take that ball position away midfield से होते हुए right wing को pass करके एक अच्छा pass जरूर से दिया. Ronaldinho might be able to snatch it away. A third goal could be coming in possibly. Let's see. And it does, man. It does. The third goal is going to be there from Saransh Jan. चलिए जाते जाते एक कॉन्सोलेशन जरूर लिया है इस पहले लेग से एंड खुश भी होंगे कि ओवरऑल एग्रीगेट स्टिल 5-3 2 गोल का डेफिसिट है. कमबैक अभी भी पॉसिबल है उनकी तरफ से. लेकिन जो आखिरी 2 गोल सीजे ने स्कोर किए थे वो गोल्स लगा नहीं था कि आते हुए नजर आएंगे. एक ऐसा लॉब थ्रू वॉल जो आपकी पूरी डिफेंसिव लाइन को बीट कर जाता है. यू हैव टू मैनुअली मार्क देम परफेक्टली. देन देखिए क्राइफ वहाँ पे अकेले लेके चले जाते हैं. देखिए बॉल जिस तरीके का पास यहाँ पे देखने को मिला, there was nobody to really intercept it and eventually goalkeeper आए वहाँ पे आगे, बैंडर्सर आए, but the fact is एक छोटा सा स्टेप वहाँ पे देखने को मिला and through that the left kick nails it perfectly और बहुत ही easily एक ease of comfort के साथ उन्हें वो गोल देखने को मिला. इस लीड के चलते डेफिनेटली अब चरणजोत यहाँ पे काफी ज्यादा मैं कहूँगा एक अच्छी लीड के साथ एंजॉय करेंगे पर्टिकुलर अपने नेक्स्ट लेग को भी. but the fact is things can change rapidly and I'm looking forward to it. जी हाँ, अब सिर्फ 90 मिनट इन गेम और यहाँ पे रहने वाले हैं इनके पास एंड सारांश को बेयर मिनिमम 2 गोल चाहिए टू मेक दैट एग्रीगेट ऑन लेवल. 3-5 का स्कोर लाइन है उनकी तरफ से अगर देखा जाए तो. अगर 2 गोल्स और ले लेते हैं तो अब जाके थोड़ा सा वो इक्वलाइज कर सकते हैं एंड देन ही विल हैव टू टाइम टू मेक श्योर दैट कमबैक हैपेंस इन हिज फेवर. क्योंकि अगर वो 2 गोल्स नहीं गए देन सीजे के पास एक डेफिनेटली एक ऐसी बढ़त है जो इतनी आसानी से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाली. दैट 5-3 लुक्स लाइक कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि 2 गोल ही आ गए हैं. लेकिन सीजे जब डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे, अगर उन्होंने सिर्फ पाक द बस खेल दिया अगले लेग के अंदर, सारांश के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी. Definitely man, at this point CJ will be trying to do that because देखिए उनके पास वो लीड है. He just want to take that control in his favor and लग रहा है कि फिलहाल उनकी तरफ से वो चीज देखने को मिल सकती थी. सीजे पाक द बस करते नहीं है. That's the fun part. Kind of aggressive, right? हाँ, क्योंकि वो इतने ज्यादा aggressive play style वाले खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है अगर मेरे पास 5 है इसको 8 कर लेते हैं, ट्राई करते हैं. Maybe 10 as well. ये चीज था क्योंकि वो जो फन है ना वो तभी आता है जब आप कांस्टेंट अटैक बना रहे होते हो. वो डिफेंसिव लाइन पे अगर आप बिल्कुल लो ब्लॉक खेलने लग जाते हैं, ऑल्दो आखिरी के 10-15 मिनट में चीजें होती हैं, वो टाइम पे आपको करना पड़ता है. यू हैव टू मैनेज द टाइम इन द एंड. लेकिन जब पूरा लेग बचा है आपके पास तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीजे भी अटैक करेंगे बट सारांश हैज टू मेक श्योर कि वो अटैक गोल्स में कन्वर्ट ना हो. Exactly, and he tried to do that. For the first 70 minutes हमें ये चीज देखने को मिली कि काफी क्लोज आ रही थी चीजें, but eventually in the later stages वो छोटे-छोटे step overs, वो clean passes, वो assists जिस तरीके से चेंज किया गेम, that was amazing. क्राइफ का वो गोल तो मुझे बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड नहीं था कि फिलहाल वो आ सकता है, but it came through. Absolutely amazing scenario वहाँ पे देखने को मिला. So yeah, with that lead डेफिनेटली चरणजोत पहले मैच को जीतते हुए दिखेंगे. फिलहाल अब उन्हें 2 और मैचेस चाहिए उनके फेवर में. BO5 का सिनेरियो अगर वो 2 मैचेस और जीत जाते हैं इसी तरीके से, यानी कि 180 मिनट अगले बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं. आई डोंट नो हु इज गोइंग टू बैक इट आउट. हल्का सा फॉर्मेट बदला है अभी क्योंकि अब प्लेयर्स भी चाहते थे कि थोड़ा सा लंबा किया जाए ना, एक या 2 मैच में खत्म हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा ना. इतना वेट हुआ है FC24 के मैचेस का. सो वी हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाया जाए, थोड़ा मजा है. सो नाउ इट इज गोइंग टू बी दैट ओल्ड 5 मैच फॉर्मेट. इट्स अ बेस्ट ऑफ 5, अ रेस टू 3. वो खिलाड़ी जो पहले 3 मैचेस जीतेगा विल बी द EPS24 FC24 विनर. पहला मैच उस बेस्ट ऑफ 5 में से सीजे के पास जा चुका है 5-3 की स्कोर लाइन के साथ. अब दूसरा मैच होगा एक फ्रेश स्टार्ट एंड वापस से अगर सारांश इस मैच को जीत लेते हैं द ओवरऑल एग्रीगेट मैचेस विल टाई टू 1-1. सो उनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अब आगे से जो मैच है एटलीस्ट एक अपने फेवर में करेंगे ताकि वो कहीं ना कहीं इस पहले मैच को नलीफाई किया जा सके. Definitely, it would be more over like a BO3 after that. अगर second match को जीत जाते हैं. But yeah guys, we have to see how that happens because again, Charanjot has got that lead और 5-3 का सिनेरियो दिखा रहा है कि फिलहाल कहीं ना कहीं वो एक बफर देखने को मिला है दोनों की गोल्डिंग स्ट्रीक में. और इवेंचुअली लेटेस्ट स्टेजेस में जिस तरीके से चरणजोत ने फिनिशेस डाले और जिस तरीके से गोल्स को वहाँ पे कन्वर्ट किया, दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी बिकॉज ये चीज़ें वो दोबारा कर सकते हैं. बिकॉज अगर आप एफर्ट्स की बात करते हैं, सारांश मेड दैट पॉसिबल. उनकी तरफ से वो डिफेंसिव बॉल काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही थी, मिडफील्डर्स वर कमिंग बैक और वो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कंट्रोल सिनेरियो में देखने को मिल रहे थे और बिल्कुल गैप नहीं मिल रहा था उस समय चरणजोत को. बट द फैक्ट वो स्टेप ओवर, वहां से पूरा प्रेशर चेंज हुआ. रोनाल्डो का दैट थर्ड गोल, एट दैट मोमेंट वी वर ब्लोन टू बिट्स कि कैसे, हाउ इज दैट पॉसिबल. बट हम भूल गए थे शायद फॉर अ मोमेंट कि चरणजोत इज द वन हु इज कंट्रोलिंग दैट कंसोल. वो ना आखिरी पे इतना सा सेकंड मिलता है ना एक्स्ट्रा, वो एक स्टेप ओवर एग्जीक्यूट कर देते हैं. एंड इवन द फर्स्ट टाइम स्टेप ओवर्स लाइक आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि डायरेक्शन कौन सी रहने वाली है. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टेप ओवर्स बैकवर्ड्स पोजीशन अपने पास रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी स्पेस को एक्सप्लॉइट करते हैं.
एक छोटा सा स्किल मूव लेकिन इतनी वेरिएशन में इस्तेमाल होता है कि सामने वाले के लिए प्रिडिक्ट करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। एंड अगर आप सामने वाले के मूव्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं इस लेवल पे, देन कहीं ना कहीं वो अपने लिए एक एडवांटेज क्रिएट कर रहा है, एंड दैट एडवांटेज लेड टू दैट 5 गोल्स फॉर सीजे। एंड अब देखना पड़ेगा क्या वैसे ही कहानी रिपीट होगी हमारे दूसरे मैच में या फिर सारांश बदला ले लेंगे। ये तो एक मेन सवाल है कि क्या बदला आएगा या फिर एक ऐसी कहानी 3-0 की जैसे आपने कही थी वो बनती दिखेगी हमें। बट आई फील कहीं ना कहीं देखिए पहले मैच में भी जो क्लोज कंटेस्टमेंट था, आई जस्ट फील दैट इज गोइंग टू गो ऑन। लेटर स्टेजेस में जो हुआ दैट डेफिनेटली वाज अ बम्पर फॉर अस एज वेल, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग वो चीज़ें। जिस तरीके के क्लोज कटआउट मैचेस जा रहे थे आई फील वो इसी सीरीज में जाते हुए दिखेंगे हमें। यहाँ पे कहने के काफ़ी अच्छे पासेस देखने को मिलेंगे, बट देन अगेन एलेक्सिया और क्राइव की तरफ से काफ़ी इंटरसेप्शंस भी हमें देखने को मिलेगा। बट व्हाट हैपेंड एट द एंड, वो स्टेप ओवर्स और वो अच्छे क्लीन पासेस मिडफील्ड से जो कन्वर्जन निकल के आते हुए दिखे, उसके चलते द गेम चेंज कंप्लीटली। बट अब यही बात आ जाती है कि क्या ये रिपीट होने वाले हैं अगले 4 मैचेस में? इज इट गोइंग टू बी अ सिमिलर सिचुएशन जहाँ पे शुरुआत में हमें क्लोज कटआउट मैचेस देखने को मिलेंगे, लेटर पार्ट्स में हमें कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो देखने को मिलेगा? दैट कुड बी इन फेवर ऑफ सारांश, दैट कुड बी इन द फेवर ऑफ चरणजोत। बट अगर चरणजोत के फेवर में जाता है तो लीड आ जाएगी और वो लार्जर पिक्चर में आएगी, BO5 में आएगी, नॉट इन अ पर्टिकुलर मैच। सो आई बिलीव दैट विल बी समथिंग सारांश को फिगर आउट करना चाहिए जिसे। ये तो मुश्किल रहने वाला है सारांश के लिए, क्योंकि अगेन वो एक मैच स्पेशली द सेकंड मैच ये बहुत ज़्यादा टफ रहने वाला है, क्योंकि अगर ये मैच भी स्लिप हुआ देन यू हैव टू मेक श्योर कि आगे के तीनों मैचेस आप एक साथ जीते हुए नजर आए बिना किसी गलती के। प्रेशर तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने लग जाएगा उनके ऊपर। सो ये अगला मैच बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है। एंड सारांश को ही पता है कि पिछले मैच में क्या गलतियां करी है उन्होंने। ही विल ट्राई टू रेक्टिफाई देम एंड देन बी बैक इन द सेकंड मैच, एंड वी आर होपिंग कि वो दूसरा मैच जल्दी जल्दी देखने को मिले हमें, क्योंकि हमारी एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हो रही है टू बी ऑनेस्ट। 5-3 पे वो स्टोरी लाइन छूटी है, उसे बढ़ाना है कि वो 0 से अब जो स्क्रैच स्टार्ट एक मिलता हुआ दिखेगा, स्पेशली इन द सेकंड मैच, हाउ दैट इज गोइंग टू गो। दैट्स व्हाट वी रियली वांट टू नो एट दिस पॉइंट कि किस तरीके से आगे की जो सिचुएशन है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। क्या चरणजोत का वही मोमेंटम आगे कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखेगा? इज इट गोइंग टू बी सारांश इज गोइंग टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन दैट, या फिर वी विल गेट टू सी अ क्लोज कटआउट मैच जिसमें हमें टाई ब्रेकर की तरफ भी जा सकते हैं? पॉसिबिलिटी तो है। बट अब अगर इनकी टीम्स की बात करें, सारांश ने पुस्कास का यूज किया एंड पुस्कास आई थिंक वीकेंड लीग वगैरह में तो ठीक है, बट एट दिस लेवल जब आपके पास हर एक कार्ड अवेलेबल है इन द गेम, वाज दैट अ राइट डिसीजन? वो मेरे लिए थोड़ा डाइसी है, क्योंकि जो मेरा पर्सपेक्टिव है एफसी को लेके, इट्स लाइक कि आपके पास 5 स्टार स्किलर होना चाहिए ताकि आप वो छोटा छोटा एडवांटेज क्रिएट कर पाए। द बॉल रोल स्कूप इज वन ऑफ द फेवरेट स्किल्स, इलास्टिकोस बहुत ज़्यादा हैंडी आते हैं, स्पेशली सारांश के अगेंस्ट जो गोल कंसीड कर रहे हैं उन्होंने मेजॉरिटी स्किल मूव्स के थ्रू ही आए थे। बट नाउ वो बातें और ऑल इन द पास्ट, ऑन टू द सेकंड मैच फॉर द डे। एंड अब देखना पड़ेगा दूसरा मैच किसके फेवर में जाता है। बट सीजे येट अगेन इन हिज ऑल रेड किट, स्टार्टिंग ऑफ विद लेफ्ट टू राइट, फिर से एज ऑफ द बॉक्स पे जा जरूर है। सीजे ने ड्रिल आउट जरूर करना चाहते थे बॉक्स के पास से, लेकिन पासिंग लाइन कट ऑफ हुई थी एंड अगेन टीनियो को ढूंढना जरूर है। काफी करारा शॉट लगाना चाहते हैं, बट मिस द शॉट पर जिडान विद अ रीबाउंड राइट बट फेल्ड। कोशिश पूरी थी देखिए 100% फॉर द एफर्ट्स, बट इवेंचुअली वो फिनिशर की बात करी जाए वहां पे वैंडरसर आते हुए दिखेंगे एंड इवेंचुअली वो इंटरसेप्शन हमें देखने को मिला। वर्चुअल वैन डाक वंस अगेन मूव्स इन टू गिव अ पास, बट मेंडी वहां पे इंटरसेप्ट करते हुए दिखेंगे। गलिट इज अगेन गोइंग फॉर द बैक पासेस, माल्टिनी क्लियर्स इट अवे, लेफ्ट विंग से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। बट देखते हैं फिलहाल क्या अप्रोच निकल के आती है, बिकॉज अभी थोड़ा सा डिफेंसिव खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा वो अटेम्प्ट ऐसा नहीं कर रहे कि जिसके चलते उनके ऊपर एक प्रेशर बनता हुआ दिखे। बट लुक एट दिस, मिडफील्ड्स में अगेन एक अच्छा खासा कंट्रसेप्शन आता हुआ दिखेगा, एंड विद दैट वर्चुअल वैन डाक विल बी मूविंग फॉरवर्ड। लोरेंते को पास मिलेगा, राइट विंग से अप्रोच बनती दिख रही थी, क्राइफ इंटरसेप्ट करेंगे, बट स्टिल many more passes to go, many more attempts to make, because अभी तो ये पिच शुरू हुई है सेकंड मैच की। जी हाँ, लेट्स सी किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बट आई थिंक सीजे शायद यहाँ पे वाइट किट में रहने वाले हैं, क्योंकि प्लेयर्स इस तरीके से ही देखने को नजर आ रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट वो सिर्फ अभी हम थोड़ी देर बाद जाएगा किस तरीके की चीजें हैं। बट लोरेंते ऑन दैट राइट बैक टू वैन डाइक, अ स्लो बिल्डअप, वापस से स्विच ऑफ प्ले एंड अ टेक्निकल डिफिकल्टी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सबसे ज़्यादा परेशान देती है, बिकॉज वी नो ये थोड़े से जो इश्यूज हैं ये हर एक ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी की ज़िंदगी का दर्द रहे हैं। डेफिनेटली मैन, बट इवेंचुअली ये टाइम दे रहा है इनको फिगर आउट करने का। वे दे स्टार्टेड ऑफ इन द सेकंड मैच, एक समय है देखिए जहाँ पे फिगर आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से उस सेकंड मैच की जो शुरुआत है उसे दोबारा बेनिफिशियल बनाया जाए अपने फेवर में। एंड आई डेफिनेटली बिलीव एट दिस पॉइंट कि चैलेंज के पर्सपेक्टिव से उन्हें चाहिए वो सेकंड मैच। द रीजन बिहाइंड इट इज कि अगर सेकंड मैच भी समहाउ चरणजोत नेल्स इन हिज फेवर,
the lead will be enormous. 2-0 का situation होगा and then it will be basically इनको हर एक मैच में रोकिए. सारांश के लिए एक नोशन रहेगा उनके लिए कि हर एक मैच में रोकिए, वो थर्ड मैच हो, वो फोर्थ मैच हो, वो फिफ्थ मैच हो. अगर आप तीनों मैचेस में लगातार रोकते हैं तो वो उनो रिवर्स कार्ड जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, that will be coming in, but मेरे को नहीं लगता कि फिलहाल इतनी आसानी से सेकंड मैच भी हाथ से जाने देंगे सारांश. And that's exactly what he was trying to do in this particular matchup. We got to see that he attempts उनकी तरफ से इस बार थोड़े ज़्यादा देखने को मिले. हल्का डिफरेंसिव अप्रोच हमें देखने को मिला white jersey from the चरणजोत perspective. Yeah. थोड़ा सा पोजीशन होल्ड करना चाहते थे. बिल्कुल करेंगे. आराम से टाइम ले रहे हैं बॉल के ऊपर. उन्हें पता है एक लीड है एंड रिस्की पासेस इन द फर्स्ट हाफ और स्पेशली जब बॉल आपके खुद के हाफ में है तब तो बनते भी नहीं है क्योंकि एक गलत पास, एक गलत प्रेस, यू माइट इवन कंसीड अ गोल. तो वो थोड़ा धीरे-धीरे अप्रोच चल जरूर आता. बट एक चीज तो है, जो ओवरलैपिंग लेफ्ट बैक है सीजे की तरफ से, वो बहुत ज्यादा एक न्यूसेंस बना है आज के पहले मैच में. सेम स्टार्ट दूसरे मैच में भी हमें देखने को मिली थी. 4-3-2-1 का वही एग्जैक्ट चीजें जो रिपीट होती है विद दैट ओवरलैपिंग लेफ्ट बैक आज भी चलती हुई नजर आ रही है. एंड अगर आप मैनुअली मार्क उसको नहीं कर रहे हैं, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं. अभी तक तो सीजे हैज बीन द वन जो है वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से यूज में लेके आ पाए हैं. डेफिनेटली ही इज गिविंग द आउटपुट एंड एक रीजन है उसकी वजह से यहाँ पे देखिए उनको 5-3 का स्कोर लाइन मिला. उनको पहले मैच की लीड मिली. ही हैज कॉन्कर्ड द फर्स्ट मैच इन हिज फेवर, बट इवेंचुअली दो और उन्हें क्लियर करने हैं मैचेस, तभी जाके वो विजेता बनते हुए दिखेंगे. तभी जाके वो 3 लाख रुपीस की जो एक महाधनराशि है, धनराशि है, उसमें उनका एक बड़ा चंक देखने को मिलेगा. नॉट जस्ट दैट, द ट्रॉफी शाइनिंग इन द बैक इज आल्सो गोइंग टू बी हिज ओन ट्रॉफी. जी हाँ बिल्कुल, काफी ज्यादा पीछे है, बट डोंट वरी, ही इज अप अहेड एंड ही इज परफॉर्मिंग. ये तो है एंड ही इज जस्ट वन स्टेप क्लोजर एज वेल. एक कदम और बढ़ा चुके हैं. वो चाहते हैं वो जल्दी से हाथ लगा ले उस ट्रॉफी को, क्योंकि प्राइस पूल तो सेकेंडरी है. द ब्रैगिंग राइट्स, द ट्रॉफी, वो क्या एक पूरा लैन FC24 का मैं जीत के गया, वो चीज को ब्रैग आउट करना अमंग योर फ्रेंड्स बेस्ट चीज है. खासकर जब आपके दोस्त के साथ ही आप खेल के जीत जाएं, उससे बेटर चीज क्या ही हो सकती है. एक FC का गेम दोस्त खेलते हैं आपस में एंड यू आर लाइक आई वाज अ बेटर प्लेयर. परफेक्ट ब्रैगिंग राइट्स फॉर द एंटायर ईयर. डेफिनेटली ये तो देखने को मिलेंगे. जब हम बात करते हैं esports प्रीमियर सीरीज की, इट वाज अ ईयर लॉन्ग चैंपियनशिप. कई सारे क्वालिफायर्स देखने को मिले. स्पेशली EFC24 के एक्शन की जब हम बात करते हैं तो 2 हमें क्वालिफायर्स देखने को मिले, जिनमें से हमारे पास ये 2 चेहरे देखने को मिल रहे हैं, सारांश जैन एंड चरणजोत सिंह. एंड विद दैट यस वी आर बैक विद द सेकंड मैच वंस अगेन. एंड इवेंचुअली अगर मैं बात करूं इस सेकंड मैच की, तो आपको रेड जर्सी में देखने को मिल जाएंगे सारांश जैन एंड व्हाइट जर्सी विल बी चरणजोत. एंड ही इज आल्सो ट्राइंग टू वंस अगेन फिगर आउट कि किस तरीके से वो इनिशियल लीड ली जाए. चरणजोत का एक प्ले स्टाइल हमें देखने को मिला है शुरुआत से, इवन इन द क्वालिफायर्स, दैट वो इनिशियली वो लीड बनाने की कोशिश करते हैं. वो इनिशियली कुछ गोल से यहाँ पे निकालते हैं. और पहले मैच में भी अगर आप देखें तो 9 मिनट पे एक्जैक्टली एट 9 मिनट मार्कर इन द गेम ही वाज एबल टू सिक्योर द फर्स्ट गोल. क्या ये देखना पड़ेगा. एक शॉट लिया जरूर था, काफी क्लोज गए जरूर थे, बट अगेन दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी. एक अटेम्प्ट वापस से बॉक्स के पास बहुत जल्दी में वो कह सकते हैं वो शॉट को ड्रैग आउट करना चाहते हैं छोटे से स्पेस से, बट टाइम ज्यादा नहीं मिला. बट नाउ एम्बापे ऑन दैट ब्रेक थ्रू लेफ्ट राइट बैक ओवरलैप पे है जरूर. एंड काफू कटबैक का फिर से मौका जरूर है, बट द कटबैक्स हैव बीन मार्क्ड. एम्बापे बॉल रोल स्कूप आउटसाइड, वापस स्पेस बाय करना चाहते हैं बैक टू R9 एंड मौका जरूर बना था, बट होल्ड denied that opportunity. Possession चल पड़ी है और back to R9 and Fernand Mendy. Possession जीता था, but that rebound, ये छोटी-छोटी दिक्कतें कहीं ज्यादा भारी ना पड़ जाए. Came way too close to secure the first one, but eventually आप देखिए तो इंटरसेप्शन आया. और इसी के साथ अभी लेफ्ट विंग से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे एम्बापे विद द हेडर, passes it over to Cafu and वहां से देखिए राइट विंग से एम्बापे निकलते हुए दिखेंगे. गलिट को पास दिया, रोनाल्डो का कॉल कभी भी आ सकता है. And eventually with that the passes will be coming in. There you go, Ronaldo once again moving forward. Cruyff also there. सेंटर फॉरवर्ड यहाँ पे बनने की पूरी कोशिश देखने को मिलेगी. एक अच्छी अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल रही है चरणजोत की तरफ से, बट स्टिल दैट फर्स्ट गोल हैज टू कम. एंड अगेन सिमिलर सिचुएशंस, वो इंटरसेप्शंस, वो अच्छा एक होल्ड देखने को मिला, वो डिफेंसिव वॉल जो क्रिएट करी जाती है हर बार वो फिर से इफेक्टिव देखने को मिली है, वो भी दोनों तरफ से. जी हाँ, वापस से पोजीशन मिला जरूर है. बैक टू क्राइफ, क्राइफ बैक टू याया टोरे, बैक टू होलेट, मिडफील्ड 1-2, राइट बैक ओवरलैप पे काफू, बॉक्स में ढूंढना चाहते जरूर थे बॉक्स को. रिबाउंड मिलेगा एंड पोजीशन होल्ड करते हुए नजर आएंगे. बैक टू R9, स्टेप ओवर्स करना शायद एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता, बट द ड्राइविंग फोर्स जेट गेट डिनाइड. एक काफी अच्छी लॉब थ्रू बॉल मिली जरूर है यहाँ पुस्कास ऑन दैट ब्रेक थ्रू. एंड अब सारांश के पास मौका जरूर था अपने लिए चांस क्रिएट करने का, बट दैट टाइमिंग, बट विज दैट अ पेन, क्या यहाँ चैलेंज किया गया था? ओह नो, बच गए यहाँ पे. जिडान को टैकल काफी हैवी हुआ था, बट दैट वाज ऑन द बॉल. कॉर्नर को वापस शॉट खेल के सारांश बिल्डअप शुरू करना चाहता है जिडान से, सोलो ड्रिबल, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल. मेंडी की तरफ से एलेक्सिया को पास, रोनाल्डो मूविंग फॉरवर्ड, क्राइफ इज गोइंग टू गेट दैट पास इन हिज फेवर. एलेक्सिया लेफ्ट विंग से आगे बढ़ते दिखेंगे. क्राइफ कुड बी द वन जो अभी इस पास को इंटरसेप्ट करते हुए दिखेंगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. यस, क्राइफ इज राइट ओवर देयर. एम्बापे टू क्राइफ एंड इवेंचुअली लिटिल बिट हायर, केम क्लोज, बट देन राइट पोस्ट से अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा ऊंचा देखने को मिला उनका ये शॉट. और इसी के चलते
the first goal didn't even came through. Oh, CJ yet again. वो skill moves chaining सारांश के लिए बहुत बड़ी situation को खराब करते जा रहे हैं. इस बार वापस से पोजीशन जीता जरूर है फॉलन मेंडी ने एंड लीनियर ट्रैक बैक वापस से आया टोरे के पास बॉल लॉब थ्रू बॉल पुटायस को फाइंड करना चाहते हैं पुटायस विंस द हेडर बैक टू एम्बापे दिस हैज टू बी अ गोल फॉर द रेड टाइम ट्रिवेला. Oh, you can't red time that. एक untimed shot शायद ये गोल दिला देता but that red timing made sure कि ये एक nice attempt ही रह जाए. This could have been the first goal, but eventually ऐसे कई attempts देखिए आप चरणजोत की तरफ से already आ चुके हैं इन particular matches के अंदर. Mendy is now moving forward from the left wing and यहाँ पे possibly हमें वो first goal देखने को मिल सकता है from Saransh, but Maldini right over there intercepts and from there the ball is going to get cleared away. Look at that, Cafu वहाँ पे देखने को मिलेगा एक अच्छा pass towards Mbappe from there. It could be a back pass and that's exactly what happened. थोड़े आगे की तरफ pass, Ronaldo moving forward, right wing से अभी भी एक अच्छा attempt बनता हुआ दिखेगा, but Maldini again intercepts and with that the ball gets cleared away once again. Perfect interception. बैक टू हुलेट. सारांश वापस है विंग्स पे स्पेस ढूंढना चाहते हैं एंड वो मिलेगा भी मेंडी को. अब वापस ड्राइव करने का मौका जरूर है. कट बैक अवेट कर जरूर है लेकिन रीड कर लिया. Maldini just perfectly positioned himself now on a breakthrough 3v2 scenario in the fourth position. Kylian Mbappe on that right wing. Space मिला जरूर है. Trivela cross back to Cruyff back to R9 for the header. Oh, it was just perfectly timed but R9 अपनी पेस को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड एक और चांस आते आते रह गया. Yeah, but we have to see that the चरणजोत की तरफ से वो attempts देखने को मिल रहे हैं. But defensive perspective से अगर मैं बात करता हूँ तो फिलहाल चरणजोत उस पे भी काफी अच्छा काम करते दिख रहे हैं. Eventually जितने भी attempts बने, beat the corners, beat the wing approaches, वहाँ पे हर बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा backfoot पे ही देखने को मिले हैं. But इस बार पुस्कास के पास बॉल देखने को मिलेगी. Maybe probably we are going to see that attempt, but no. Mendy to Maldini from there. The right wing will be coming in. Cafu right back पे देखने को मिल रहे हैं जो अब Mbappe को पास कर चुके हैं. Mbappe from there is going to pass to Ronaldo and फिर से एक right wing का approach मुझे देखने को मिल सकता है. But the back passes will be a little bit more preferable due to the fact कि वहाँ पे देखिए defensive line और midfielders जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं Saransh के especially they are going to put him down for sure. जी हाँ, एक बार Cafu step over outside फिर से अब जल्दबाजी देखने को मिल रही है दोनों ही तरफ से. जी कई ऐसे passes हैं जो आप हल्का सा उस डायरेक्शन में नहीं खेलेंगे तो पोजीशन होल्ड करने का मौका आपके पास ज्यादा रहेगा एंड यू विल हैव द चांस टू डाइसेक्ट द डिफेंस. बट इस बार काफी अच्छे 1-2 वापस से विंग्स पे ओपन अप करने का जरूर मौका है यहाँ पे. एंड अगेन विनीशियस जूनियर रनिंग डाउन द राइट विंग लेफ्ट विंग एंड अगेन इनसाइड द बॉक्स बट दैट बॉडी प्रेजेंस ये आराम से टैकल भी जीता पोजीशन भी दिलाया एंड अब काउंटर अटैक कन्वर्ट करने का मौका जरूर है. क्राइफ काफी अच्छे से होल्ड करने में कामयाब. वापस से मेंडी को ढूंढना चाहते थे बट सारांश सारी अटैकिंग लेन्स को एक पल में ब्लॉक करने में कामयाब. जी हाँ बिल्कुल. बट काफू फिर से राइट विंग से यहाँ पे देखिए एक अच्छी अप्रोच बनाते हुए दिखेंगे. लुकिंग फॉरवर्ड टू पास इट ओवर बट क्या वो एम्बापे हैं या फिर क्राइफ देखने को मिलेंगे. इट्स गोना बी एम्बापे फ्रॉम देयर. इट्स क्राइफ एंड नाउ इट्स एलेक्सिया. पॉसिबली कन्वर्जन हमें देखने को मिल सकता है बट दैट विल बी इन ऑफसाइड एंड थ्रू दैट अनदर इनिशिएशन विल बी स्टार्टेड ऑफ. वर्जिल वैन डाइक की तरफ से लोरेतो को पास एंड ज़िडेन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे राइट देयर इन मिडफील्ड्स. From there, the left wing approach will be coming in. Let's see. देखते हैं फिलहाल Mendy इस बार कुछ स्पेशल यहाँ पे कर पाते हैं या फिर नहीं because कई बार Maldini से वहीं पे इंटरसेप्ट होते हुए दिखे राइट बैक की तरफ. So थोड़ी सी एक परेशानी वाली बात रहेगी. काफू देखिए वहाँ पे फिर से इंटरसेप्शंस आते हुए दिखेंगे and with that if I'm not wrong the first half is done. और 45 minutes in the game there is no goals coming in. Attempts की बात करता हूँ वो डेफिनेटली देखने को मिले but goals it didn't pull through. स्कोरलेस जाना इन दोनों के बीच में तो मतलब एक चीज तो है कि इन्होंने फिगर आउट कर लिया कि दिक्कतें कहाँ आ रही थी. जी क्योंकि सारांश ने जिस तरीके का इस बार डिफेंसिव स्ट्रक्चर दिखाया है पिछले मैच में 5 गोल्स कंसीड किए थे और 3 तो पहले हाफ में आ गए थे. तो इस बार कहीं ना कहीं उन चीजों को फिक्स करने में कामयाब हुए एंड अब थोड़ा ज्यादा क्लोज कंपटीशन में देखने को मिल रहा है इनके बीच. देखिए शुरुआत जिस नॉच पे हुई थी डेफिनेटली वहाँ पे भी हमें अर्ली 70 मिनट्स के अंदर एक अच्छी शुरुआत देखने को मिली थी स्पेशली टॉकिंग अबाउट द मैच नंबर 1. बट इवेंचुअली मैच 2 की बात करी जाए शुरुआत से ही वो चीज़ें देखने को मिली. शरान स्टार्टेड ऑफ वे टू वेल. उन्होंने कुछ अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करी इट डिडंट केम थ्रू एंड देन इवेंचुअली अगर आप देखें तो चरणजोत की तरफ से काफ़ी अटेम्प्ट्स आते दिखे हैं जिसमें भी वो ज़्यादा सफल तो देखने को नहीं मिले बिकॉज देयर इज नो गोल ऑफ कोर्स. बट देन अटेम्प्ट्स की जब मैं बात करता हूँ प्रेशर बनाने की जब मैं बात करता हूँ वो चरणजोत की तरफ से डेफिनेटली देखने को मिल रहा है. सीजे येट अगेन विद काफू वापस से ड्राइव आउट करना चाहता जरूर है. बॉक्स के आसपास खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन कोई भी फाइनल पास के लिए तैयार नहीं था. एक खिलाड़ी मैन मार्क्ड बट नाउ बैक टू किलियन एम्बापे. लॉन्ग रेस ट्रिवेला ग्रीन टाइम एज वेल बट अ गुड ब्लॉक बट रिबाउंड मिला है R9 को एंड दैट रिवर्स इलास्टिको सीधा गोल के अंदर बॉल एंड सीजे येट अगेन रिवर्स इलास्टिको के साथ खाता खोलेंगे इस मैच का. Whenever you ask for a lead this guy is going to give you.
लग रहा था हमें पहले 45 मिनट्स के लिए कि गोल्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेप्शंस काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, अप्रोचेस बन रही है, बट देन दैट डिफेंसिव बॉल इज वे टू गुड, बट फाइनली वी गॉट टू सी द फर्स्ट गोल। एंड अब चलिए सेकंड यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए फिलहाल एक इक्वलाइजर का जो स्टैंड है वो शायद देखने को मिल सकता है, बट काफू ओवर देयर फ्रॉम द राइट बैक, 1 सेकंड इंटरसेप्ट्स एंड वहां से पास देखने को मिलेगा एम्बापे की तरफ, लेकिन मेंडी इंटरसेप्ट करते हुए दिखेंगे। शरांश पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से एक अप्रोच अपनी बनाते हुए दिखे, डिजोंग की तरफ से एक अच्छा पास देखने को मिल सकता है, दैट्स एक्जेक्टली व्हाट हैपेंड। विनी जूनियर वहां देखने को मिल जाएंगे विनीसियस, लेकिन ये अटेम्प्ट फिर से नॉट सो फ्यूटाइल। जी हाँ, अभी के लिए तो कह सकते हैं जितना कंट्रोल है यहाँ सीजे के पास, सारांश कहीं ना कहीं वो फाइनल थर्ड में चांस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। फाइनल थर्ड के अंदर आपको वो जो स्किल मूव्स का सेट चाहिए होता है, यू कांट जस्ट ब्रेक आउट द फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस विदाउट एनी स्किल मूव, वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक कर रही है, एंड सीजे उस चीज को ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करने में कामयाब हो रहे हैं। इस बार वापस से नाइस स्टेप ओवर, स्पेस पुश मिला जरूर है, बट वर्जिल वैन डाइक परफेक्टली टाइम इंटरसेप्शन एंड मेड श्योर कि सीजे को एक और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ना मिले। बिकॉज देखिए दैट विल क्रिएट इनॉर्मस प्रेशर ऑन टू दिस इंडिविजुअल। एक प्रेशर तो ऑलरेडी BO5 का देखने को मिल ही रहा है, बट देन अगेन वो सेकंड गोल अगर देखने को मिल जाता एंड इट विल बी अ 2-0, तो डेफिनेटली वो प्रेशर देखने को मिल जाता, बिकॉज द टाइम इज रनिंग आउट, वी आर ऑलरेडी एट 60 मिनट मार्कर, 30 मोर मिनट्स एंड देन आफ्टर दैट ऑफ कोर्स सेकंड मैच का विजेता घोषित होता हुआ दिखेगा। बट देखते हैं फिलहाल कौन है वो। बुस्कास इंटरसेप्ट करते हुए दिखेंगे गली की तरफ से, यहाँ पे देखिए काफी अच्छा अप्रोच, विनीसियस जूनियर को वहाँ पे एक अच्छा पास देखने को मिलेगा, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज नॉट सो फ्रूटफुल इन हिज फेवर। टीम मैनेजमेंट में जाके कुछ डिफरेंट चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे, सब्स्टिट्यूट्स देखने को जरूर से हमें मिल जाने वाले हैं जो शायद इनके इस प्ले स्टाइल को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते दिखे। जी हाँ, एंड जिस तरीके के यहाँ पे गोल्स भी जा रहे हैं ना, रिंस एंड रिपीट देखिए सीजे की तरफ से, बॉक्स के पास R9 को बॉल मिलती है एंड द इंस्टेंट फर्स्ट टैब रिवर्स इलास्टिको सेटल करते हैं खुद के प्लेयर्स को एंड देन अ टॉप वॉक विद त्रिवेला। उन्हें पता है कि ये चांस मुझे एक परफेक्ट एंगल देगा गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, एंड वो एक ऐसा स्किल मूव है कि अगर आपने परफेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया है बॉक्स के आसपास, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। लेकिन इस बार कॉर्नर बहुत तेजी से खेला था, द हेडर वाज नॉट गुड इनफ। वापस से अब सीजे के पास एक ब्रेक थ्रू करने का मौका है, क्या लॉब थ्रू बॉल मिलेगी? नहीं, डायरेक्टली 1-on-1 विद द कीपर, क्राइव रनिंग डाउन द विंग, मौका बनाया जा सकता है एंड परफेक्टली टाइम्ड हिट एज वेल, ग्रीन टाइम टू टॉप इट ऑफ, 2-0 फॉर चरणजोत। देखिए वो स्वीट स्पॉट था ये गोल जिसपे हिट करने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे चरणजोत, एंड दैट्स एक्जेक्टली व्हाट हैपेंड। चरणजोत वाज एबल टू गेट द सेकंड गोल इन हिज फेवर, बट देन अगेन अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी और परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी एक इजाफा देखने को मिला, स्पेशली फ्रॉम शरान जान, एंड ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट एट दिस पॉइंट, बट कहीं ना कहीं आपने जैसा कहा कि वो लास्ट में फिनिशिंग मूव्स जो देखने को मिलती है, वो स्किल सेट मूव्स वो निकल के नहीं आ पा रही, एंड दैट्स हाउ ही इज अनेबल टू कन्वर्ट दैट। और वहाँ पे अगर आप डिफेंसिव लाइन की बात करते हैं तो वो चरणजोत की काफी अच्छी देखने को मिल रही है, इज एबल टू एवरी टाइम डिफ्लेक्ट द शॉट, दैट्स एक्जेक्टली व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। लुक एट दिस, मिडफील्ड्स भी क्लियर नहीं करने दे रहे हैं वो, बिकॉज उनके पास वो लीड आ चुकी है, ही कैन प्ले लिटिल बिट मोर ओपनली दिस टाइम, एंड उनकी वो अप्रोच फिर से देखने को मिलेगी। एलेक्सिया का एक पास देखने को मिला क्राइव को, क्राइव का पास रोनाल्डो, फ्रॉम देयर रोनाल्डो माइट एक्चुअली गो फॉर बैक passes, but Virgil van Dijk was able to defend it, and from there Zidane goes for the midfields. रोनाल्डिनियो R10 बैक टू हुलेट। सारांश को देखना पड़ेगा किस तरीके से इस दूसरे मैच में वापसी करी जा सकती है अगले 20 मिनट में, क्योंकि अभी के लिए जो स्कोर लाइन है 2-0 की जी, ये मेक श्योर कर रही है कि चरणजोत इस बेस्ट ऑफ 5 सीरीज में 2-0 का एडवांटेज क्रिएट कर ले अपने लिए, एंड आई थिंक वही चीजें कंफर्म भी होती हुई नजर आएंगी। वी हैव अ कनेक्टिविटी इशू, विल गेट राइट बैक टू इनटू इट, लेकिन हाँ ये जो 2 गोल का एडवांटेज है दैट विल रिमेन देयर। ये मैच इसी टाइमलाइन से रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा, एंड जिस तरीके से चरणजोत खेल रहे हैं आज, सारांश को हक्का बक्का रख दिया उन्होंने। डेफिनेटली आई मीन उनकी तरफ से देखिए वो डिफेंसिव लाइन बन रही है, ही इज एवरी नाउ देन ट्राइंग टू एक्चुअली मेक श्योर कि वो गोल्स ना आए, बट देन अगेन जैसा आपने कहा वो स्किल मूव्स, वो स्किल सेट्स जो यहाँ पे यूज होते हुए दिख रहे हैं, वो पूरे के पूरे गेम के डायनेमिक्स में चेंज कर रहे हैं, एंड विद दैट यस वो लीड्स आती हुई दिख रही है, वो सेकंड गोल भी आता हुआ हमें दिखा, एंड इवेंचुअली इट वाज बेसिकली क्राइव एंड द गोलकीपर, दैट्स ऑल। 3 वहाँ पे पीछे प्लेयर्स स्प्रिंट कर रहे थे, बट इट्स जस्ट नॉट इनफ। वो एक थ्रू बॉल इनफ होती है, अगर आपका लेफ्ट सेंटर फॉरवर्ड या राइट सेंटर फॉरवर्ड जी 2 सेंटर बैक्स के बीच के अंदर कहीं ना कहीं एक स्पेस बना चुका है, अगर आपके मिडफील्डर ने एक परफेक्टली टाइम्ड थ्रू पास उसको दे दिया है, देयर इज नो वन स्टॉपिंग यू, फिर वो आती है कहानी पूरी 1v1 के ऊपर, एंड 1v1 जर्नली हम देखते हैं कि प्लेयर्स अटेम्प्ट करते हैं एक बॉल रोल स्कूप करने का, गोलकीपर को चाहते हैं कि उसको टेक डाउन किया जाए 1v1 में विद दैट फेक शॉट, इवन अ हील टू बॉल रोल, एंड देन गो फॉर द शॉट। जनरली ये सिनेरियो में आप चोक कर जाते हैं चांस को। सीजे मेड श्योर कि कुछ एक्स्ट्रा फैंसी नहीं करना है, बॉल रोल किया, फिनिश फार पोस्ट, इजी गोल, ग्रीन टाइम कर दिया ऊपर से हल्का सा मसाला डाल के जाएगा ही जाएगा गोल के अंदर, टारगेट तो मिस नहीं होने वाला है। द कंपोजर एंड द टाइमिंग टू प्ले इट परफेक्टली,
वही कहीं ना कहीं आज सीजे के लिए ज्यादा बड़ी बढ़त बनाने में कामयाब हुई है। देखिए आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट हाफ के अंदर एक अटेम्प्ट जो देखने को मिला था स्पेशली रोनाल्डो की तरफ से, इट वेंट लिटिल बिट ओवर द बार। तो वो जो गलती देखने को मिली उससे कितनी जल्दी ओवरकम किया इस इंडिविजुअल ने, दैट वी कैन क्लियरली सी। देखिए पहली बार गलती हुई थी कि टारगेट सेट नहीं था और इवेंचुअली इसी के चलते वो पहला गोल नहीं आ पाया था बिकॉज देयर वाज नो इंटरसेप्शन कमिंग इन बिटवीन और शायद वो पहला गोल कन्वर्ट होता हुआ दिख सकता था। और दिस टाइम सेकंड हाफ में ही मेड श्योर कि उनके गोल्स को कन्वर्ट होते हुए दिखे। 2-0 की लीड आ चुकी है ऑफ कोर्स और उसी लीड के साथ मुझे लगता है कहीं ये लीड 2-0 की सिर्फ इस मैच में नहीं BO5 में कन्वर्ट ना हो जाए। लग तो रहा है क्योंकि जितना डोमिनेंट यहाँ पे सीजे खेल रहे हैं, सारांश के पास कुछ ज्यादा मौके दिख नहीं रहे हैं वापसी करने के लिए। एंड आई होप कि मैं गलत हूँ इस चीज में एंड सारांश एटलीस्ट गेट द ट्राई टू मेक इट 2-2 ताकि हम बेस्ट ऑफ 5 के आखिरी मैच तक ड्रैग होते हुए नजर आए सीरीज को। लेकिन जिस पेस के साथ सीजे खेल रहे हैं ना जी, उनको रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। सारांश फाइनल थर्ड के अंदर जाते जरूर हैं एंड पुस्कस का इस्तेमाल कर रहे थे वो, तो ज्यादा स्किल मूव्स भी नहीं है करने के लिए। पुस्कस एंड रोनाल्डिनियो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, और रोनाल्डिनियो है भी आपके एज ऑफ द बॉक्स पे, तो आप लॉन्ग रेंज के लिए अटेम्प्ट करेंगे। द स्ट्राइकर पोजीशन इज गिवन टू पुस्कस एंड विद दैट 4-स्टार स्किल मूव्स कुछ ज्यादा होने नहीं वाला है। ऑन द अदर साइड चरणजोत विद R9 अप फ्रंट, हर बार रिवर्स इलास्टिक हो या बॉल रोल स्कूप एक मूव आता है एंड पूरा डिफेंस ओपन अप कर देते हैं वो। एग्जैक्टली। तो वो स्किल मूव्स कहीं ना कहीं एक की फैक्टर रहे हैं दोनों के प्ले स्टाइल को अगर कंपेयर किया जाए तो। I mean of course जब आप बात करते हैं मिडफील्ड्स की, they both are top notch on that and eventually जब आप बात करते हैं डिफेंसिव पैरामीटर्स की, हर बार वो एक दूसरे के अटेम्प्ट्स को नलिफाई करते हुए दिख रहे हैं। बट देन वो स्किल मूव्स, दैट इज द एक्स फैक्टर जिसकी हम बहुत शुरू में बात कर रहे थे व्हेन द होल सिचुएशन स्टार्टेड ऑफ EXP 24। वो एक एक्स फैक्टर जो देखने को मिल रहा है चरणजोत की तरफ से, दैट इज द स्किल मूव्स और वो सही समय पे उन स्किल मूव्स का इस्तेमाल करते हैं, नॉट थ्रू आउट द पासेस। आप अगर देखिए जब उनको फिनिश करना है, उनको वो गोल चाहिए, एट दैट पॉइंट दैट अनलॉक्स एंड वहां पे फिर एक कन्वर्जन देखने को मिलता है दैट मेक श्योर्स कि उनको वो लीड मिले। तो मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ स्किल मूव्स मार रहे हो एग्जैक्टली मेक श्योर कि हाँ अच्छा लगे, नॉट द फैंसी एंड शो बोटिंग। वो स्किल मूव्स एक्चुअली इफेक्टिव है टू बाय सम टाइम टू क्रिएट स्पेशल एंगल्स, टू क्रिएट सम स्पेस। जैसे रिवर्स इलास्टिक इज द फाइन एग्जांपल। अगर आपको प्लेयर एक अलग डायरेक्शन में देख रहा है, रिवर्स इलास्टिक को इनसाइड द बॉक्स मेड श्योर कि वो सामने की तरफ फेस कर लिया जाए। टाइमिंग होती है हर चीज की, डायरेक्शन एग्जिट होता है उसमें, उसके साथ वो फ्रंट के अंदर आते हैं एंड देन डिफेंडर के पास टाइम ही नहीं है टू रिएक्ट। जब तक वो रिएक्ट करेगा तब तक शॉट निकल चुका है और R9 के पैर से निकलेगा तो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट वो गोल जाएगा। 5 स्टार फर्क नहीं पड़ता उस खिलाड़ी को। सारांश ने जो टीम सेट करी है, एक तो वो दिक्कत दे रही है उन्हें। आई होप कि भाई जीको है आपके पास, जीको को प्ले में लेके आओ। हाफ टाइम के बाद नहीं, हाफ टाइम से पहले ले लो, क्या पता जीको शायद हमें शायद देखने को मिले भी थे वो एक। हाँ, हाफ टाइम के बाद सब्स्टिट्यूट में लेके आए थे, उसका हटाया था इन द फर्स्ट मैच राइट। यस, तो मतलब अगर जीको है तो प्ले में लेके आए। 5-5 वाला कार्ड है, ब्राजीलियन लेजेंड है हमारे, क्या पता किस्मत का साथ मिल जाए आपको भी, क्या पता दैट एक्स फैक्टर कुड बी अनलॉक्ड फ्रॉम हिज कॉर्नर एज वेल। वो पहला गोल वो देखने को मिल सकता है। बट इवेंचुअली मैच 2 की बात करी जाए, अभी तक तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक आउट ऑफ द बॉक्स देखने को नहीं मिला है। वही कन्वेंशनल प्ले स्टाइल चरणजोत की भी रही है, जहां वो शुरुआत से एक अटेम्प्ट बनाने की कोशिश करते हैं, वो राइट विंग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादातर। अगर देखा जाए लेफ्ट विंग से भी जब भी उनके पासेस निकल रहे हैं, गोस फॉर अ लॉब पास एंड राइट विंग की तरफ पहुंचाते हैं एंड वहां से वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बीट एम्बापे, क्राइफ और रोनाल्डो एज वेल। एंड दैट्स हाउ ही इज ट्राइंग टू कन्वर्ट इट। और ऑब्वियसली उसके ऊपर वो तड़का आ जाता है उनके स्किल सेट मूव्स का। दैट्स हाउ ही इज काइंड ऑफ एक्चुअली एट दिस पॉइंट लीडिंग। ऑब्वियसली अगर बात करी जाए टाइम पीरियड की तो समय ज़्यादा बचा नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द सेकंड मैच। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सिचुएशंस आर डायर फॉर सारांश। इट इज अ 2-0 मोस्ट ऑफ द टाइम। सेकंड लेग 70वें मिनट तक 2-0 था इन दोनों के बीच में। ओके, एंड ये मैच वहां से अगर रिज्यूम भी होता है देन द एडवांटेज इज स्टिल इन द फेवर ऑफ सीजे। 2 गोल का डेफिसिट ओवरटर्न करना 20 मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक सारांश को शायद थोड़ा फॉर्मेशन एंड टैक्टिकल भी बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। प्रॉब्ली है, वो इतना तो कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर को लेके। मे बी ही नीड्स दैट डबल CDM फॉर्मेशन, शायद थोड़ा 4-4-2 डिफेंसिव के साथ स्टिक करना चाहे, लेकिन फिर थोड़ा अटैक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो वही है कि आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये डू और डाई मैचअप होने वाला है अगला। अगर यहाँ 2-0 गया है सीजे के फेवर में, इफ वी आर काउंटिंग द सेकंड मैच इन द फेवर ऑफ सीजे जस्ट ऑन दैट 70th मिनट स्कोर लाइन, तो शायद जब ये तीसरा लेग आएगा, जो तीसरा मैच आएगा, वो एक डिसाइडर रहने वाला है कि अगर सीजे के फेवर में वो भी गया, इट्स गोइंग टू बी 3-0 देन। मैन द प्रेशर इज ऑन एट दिस पॉइंट। ओह यस, चाहते थे वो क्लोज कट थ्रोट कंटेस्टमेंट दिख कुछ डिफरेंट रहा है, कंटेस्टमेंट आ रहे हैं नो डाउट इन दैट, बट वो छोटी सी स्किल मूव्स, वो छोटे से इनिशिएशंस जो देखने को मिल रहे हैं स्पेशली फ्रॉम चरणजोत साइड, दे आर पेइंग द रिजल्ट। ऑन दी अदर कॉर्नर एज यू सेड, थोड़े से फॉर्मेशंस में चेंजेस अगर हो जाते हैं शायद वो थोड़ा बेनिफिशियल हमें देखने को मिले, स्पेशली फ्रॉम चरणजोत पर्सपेक्टिव, बिकॉज कहीं ना कहीं शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि वी वांट दैट BO5 टू हैपन। वो पूरे के पूरे 5 मैचेस हमें देखने को मिले, डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिले, बट चरणजोत
स्टिक कर रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजीज पे. देयर इज नथिंग अनकन्वेंशनल एट दिस पॉइंट. अगर देखा जाए उनके अप्रोचेस में, जिस तरीके से वो यूजुअली खेलते हैं अर्ली मूवमेंट्स में, उनकी तरफ से कुछ अच्छे गोल्स हमें देखने को मिलते हैं. सेम वो चीज़ें देखने को मिली. इट स्टार्टेड विद शरांस अटेम्प्ट्स इन द सेकंड मैच. स्पेशली सेकंड मैच में उन्होंने पहले अटेम्प्ट लेने की कोशिश करी पुस्कस की तरफ से. इट डिडंट पेड ऑफ. एंड वहाँ से जो अटेम्प्ट्स की लाइन्स देखने को मिली, दे वर जस्ट न्यूमरस. आई मीन पहले ही आपकी आप बात करते हैं 45 सेकंड्स की आप 45 मिनट्स की आप बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू इन गेम टाइम. वहाँ पे समवेयर अराउंड 8 to 9 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हमें चरणजोत की तरफ से देखने को मिले. एंड उसके बाद उन अटेम्प्ट्स का कन्वर्जन गोल्स में, अटेम्प्ट्स फिनिशेस में कन्वर्ट होते दिखे सेकंड हाफ में. ये तो है, मौके तो बन रहे थे लेकिन वो मौके हाफ हार्टेड थे, वो गोल के अंदर नहीं जा रहे थे. अगले हाफ में आके वो डिस्टेंस को पूरा करना उन्हें पता था कि गलतियों को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है. एंड मेड श्योर कि वो 70 सेकंड का जो इंटरवल आता है उसके अंदर उन चीज़ों को फिक्स किया जाए. बट अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सारांश कमबैक करता है. फाइटर प्लेयर है इन द पास्ट इन मेजॉरिटी ऑफ टूर्नामेंट्स. अगर सारांश कहीं एक ट्रेल बैक भी कर रहे हैं, अगर वो नहीं चल रहा है उनके लिए, कुछ दिन खराब जा रहा है, वो मेक श्योर करते हैं कि एक मैच तो वो कम से कम अपने फेवर में निकालेंगे. बट क्या वो दिन आ जाएगा, वो मेन सवाल है. ईयर लॉन्ग चैंपियनशिप, esports प्रीमियर सीरीज, लैन अरीना, मल्टीपल गेम्स, फैंस, मौका आना चाहिए. That's what I believe at this point. I really hope. मौका आना चाहिए शरांश की तरफ से, वो कमबैक आना चाहिए उनकी तरफ से. Then only that competition will be even more better. अभी ऐसी बात नहीं है कि competition अच्छा दिख नहीं रहा, बहुत ज़्यादा amazing दिख रहा है. And it shows कितनी ज़्यादा capability in individuals के अंदर. But then again शरांश की तरफ से हमें जब वो 3 गोल स्पेशली पहले मैच की अगर मैं बात करता हूँ देखने को मिले, at that point it felt like yes there will be a very strong comeback. एक statement आया था उन 3 गोल्स के अंदर छुपा हुआ कि yes I am also capable and he is. Don't no worries about that. But the fact right now is कि आपने बात करी कि 70 minutes already बीत चुके हैं in the game. 20 minutes हमारे पास और बचे हैं. But do you remember कि मैच 1 में इन्हीं 20 minutes में 3-2 से 5-3 हो चुकी थी स्टोरी लाइन. और उसमें भी सारांश ने एक ब्रेक लिया था. सारांश मेड श्योर कि थोड़ा अटैकिंग जाना चाहिए. अटैकिंग करने के चक्कर में गैप्स बने डिफेंस में, एंड वो गैप्स सीजे ने गोल्स के साथ फिल कर दिए. But again, we are just waiting for the third match to begin, or maybe the second match might resume. जो भी decisions आएगा, we will get to that. लेकिन चीज़ तो ये है कि सीजे डोमिनेट कर रहे हैं आज. Oh, definitely, man. सीजे के साथ इस तरीके कंपटीशन सारांश का रहेगा, मैंने नहीं सोचा था. I expected them to be in a close contest के सारांश बिल्कुल डोमिनेट कर रहे होंगे पोजीशन बेस्ड गेम को, एंड सीजे शायद एक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल दिखा रहे होंगे हमें. जी. बट वैसा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है. सारांश जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो अपने हाफ में है या मिड ऑफ द पार्क है. फाइनल थर्ड के अंदर जाके वो जो क्रिएटिविटी लेवल है वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है उनकी तरफ से. डेफिनेटली देखिए वो फिनिश, वो लास्ट का तड़का, वो गोल, वो अटेम्प्ट्स भी नहीं निकल के आ रहे हैं एट दिस पॉइंट. मैं ये कहना चाहूंगा लाइक सेकंड हाफ की शुरुआत से अगर आप देखें तो कोई खास अटेम्प्ट्स देखने को मिले नहीं है. एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन शरांश. पहले मैच की लीड के बाद डेफिनेटली चरणजोत इज फीलिंग लिटिल बिट बेटर व्हेन इट कम्स टू दैट प्रेशर सिनेरियो. एंड ऑब्वियसली इन इतने स्टेजेस पे खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं ग्लोबल स्टेजेस पे. प्रेशर नाम की चीज़ मुझे लगता है इनके अंदर है, बट जब दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं ना, वो सेम चीज़ें ट्रिगर करती हैं, वो सेम चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो प्रेशर बढ़ता हुआ दिखता है. एंड आई फील एट दैट पॉइंट यस थिंग्स माइट बी अ बिट मोर डाइसी फॉर शरांश एट दिस पॉइंट, बिकॉज वो लीड उनके पास नहीं है. 3-5 का पहला मैच हमें देखने को मिला शरांश की तरफ से, 3 गोल्स देखने को मिले, बट चरणजोत ओवर देयर वाज टेकिंग दैट लीड. ऑफ कोर्स उसी वजह से BO5 की अगर सिचुएशन की मैं बात करता हूँ तो एक मैच का उनके पास ऑलरेडी लीड देखने को मिल रहा है. नाउ इट ऑल ट्रिकल्स डाउन कि वो लीड को मेंटेन रखेंगे. विल देयर बी दैट सिचुएशन ऑफ कंसिस्टेंसी इन दैट फर्स्ट सिचुएशन, या फिर कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा. एंड आई बिलीव इन दैट टर्म्स अभी तक जो देखने को मिला पहले 70 मिनट्स में वो कंसिस्टेंट ही लग रहा है. यस, सीजे को दिक्कत नहीं आ रही है, वो एक रिदम सेट करके आए हैं. उनके हाथ बिल्कुल लग रहा है कि वो तैयार थे इस मैच के लिए, एंड सामने चाहे कोई ओपोनेंट हो वो अपना नेचुरल प्ले स्टाइल को डिलीवर करने में कामयाब हो रहे हैं. बिकॉज सीजे इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है अपने अटैकिंग सीक्वेंसेस को लेके, एंड एट द सेम टाइम उनका डिफेंसिव प्रेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है. सारांश ऑन द अदर हैंड एक पोजीशन बेस्ड प्लेयर लगता है मुझे, एंड ही लव्स टू टॉय विद द ओपोनेंट. जितना ज़्यादा बॉल वो अपने पास रखेंगे उनके ओपोनेंट को उतनी ही ज़्यादा परेशानी होगी, एंड वो तब डिफेंसिव एरर्स कमिट करेगा. ये चीज़ें कहीं ना कहीं जर्नली वर्क कर जाती हैं, बट वो फाइनल थर्ड के अंदर भी आपको थोड़ी सी जो क्रिएटिविटी चाहिए होती है, सारांश की तरफ से आज वो जादूगरी देखने को नहीं मिल रही है हमें. बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट मैन. उनकी तरफ से वो कमबैक डेफिनेटली आ सकता है. वी ट्रूली बिलीव दैट. शुरुआत में हमने बोला कि अगर एक 2-0 आता है और उसके बाद वो 3-2 हो जाता है इन द BO5 सिनेरियो, व्हाट वुड हैपन आफ्टर दैट? आई मीन वो कहीं ना कहीं एक अलग ही सिनेरियो देखने को मिलेगा. दैट टू इस ईयर लॉन्ग चैंपियनशिप की अगर मैं बात करता हूँ तो फिलहाल हमें कई मैचेस देखने को मिले, कई स्टार्स हमें देखने को मिले व्हेन इट कम्स टू EFC 24 एक्शन. बट एट द एंड द रिजल्ट विद होल्ड्स इन दीस टू प्लेयर्स हैंड्स. इनके पास है वो रिजल्ट जो हमें पता चलने वाला है मे बी इन एन आवर. शायद हमें पता चल जाएगा कि हु इज द चैंपियन. एंड ऑब्वियसली अगर चैंपियन बनना है तो अपना बेस्ट देना पड़ेगा, फिर वहाँ पे वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखना पड़ेगा. एंड
जैसा हमने पहले भी कहा, दोनों प्लेयर साथ में ग्राइंड करते हैं, दे ट्रेन विद ईच अदर, दे ट्राई टू फिगर आउट व्हाट द कैपेबिलिटी ऑफ themselves are, but then again जब आप कैपेबिलिटी फिगर आउट कर रहे हैं, उन स्ट्रेटजीज को आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, at that same point वो कमजोरी भी दिख जाती है, एंड उसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इस समय चरणजोत की तरफ से, एंड ही इज काइंड ऑफ गुड व्हेन इट कम्स टू द स्किल सेट मूव्स, ही इज ट्राइंग टू गो फॉर दोस फिनिशेस, और वो वर्कआउट कर रही है उनके फेवर में, वो फिनिशेस वर्कआउट कर रहे हैं, एंड जब हम बात करते हैं इवन पोजीशन की, आप बोल रहे हैं सरांश पोजीशन बेस्ड उनका गेम देखने को मिलता है, ट्रूली बिलीव दैट, बट वो पोजीशन भी तो नहीं लेने दे रहे चरणजोत, ही इज नॉट इवन लेटिंग दैट टू हैपन. Yeah, but now we are back into the second match. एंड वही जो 70th मिनट में स्कोर लाइन थी, उसी स्कोर लाइन के साथ ये मैच कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है. देखना पड़ेगा कि अगले 20 मिनट में क्या थोड़े से गोल्स सारांश की तरफ से आएंगे टू मेक द इक्वलाइजर हैपन, या फिर सीजे के ही अपना मैच, दूसरा मैच विक्ट्री अपने नाम कर लेंगे. Well, the possibilities are endless at this point, but as you said, time ज़्यादा नहीं बचा है फिलहाल, प्रेशर बहुत ज़्यादा है. इवेंचुअली अगर सारांश की बात करते हैं तो ये चीज़ें उनके ऊपर कहने की काफ़ी हावी होती हुई दिखेंगी, बट एट दिस पॉइंट व्हेन इट कम्स टू चरणजोत, वो फिर से काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं. विद दैट एन आउटसाइड विल बी कमिंग इन, एक थ्रो इन आता हुआ दिखेगा. वहाँ से क्राइव की बात करी जाए, मॉल्डिनी पे पास ट्राया वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्राइव मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट विंग, पॉसिबली एक अटेम्प्ट देखने को मिल सकता है. देयर यू गो, रोनाल्डो गेट्स द बॉल पोजीशन फॉर नाउ, अटेम्प्ट के लिए वो आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, बट नहीं, वैंडरसन राइट ओवर देयर डिफ्लेक्ट्स द शॉट, एंड मेंडी अब यहाँ से बॉल क्लियर करते हुए दिखेंगे, गलिट के पास आ चुके हैं ऑलरेडी, मिडफील्ड की तरफ बढ़ेगा फोकस, बुस्कट्स देखने को मिल जाने वाले हैं, बट अगेन आपकी बात एकदम सही यहाँ पे साबित होती हुई दिखेगी. हु इज द फिनिशर नाउ? विनीशियस जूनियर राइट विंग वापस एक्सप्लॉइट करना जरूर चाहता है, बट नाउ ये एक्स्ट्रा पासेस, ये थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा आपको. यू जस्ट कांट ड्राइव देम आउट. इतनी जल्दबाजी के अंदर अगर वो पास जाएगा दिक्कत हो सकती है, बट अ क्रेजी कंट्रोल फ्रॉम क्लीन एम्बापे. बॉल का पोजीशन भी रखा, लेकिन ये गलती हुई है. उसका उसके पास मौका जरूर है सारांश को एक लीड दिलाने का, एक गोल ओपनिंग करने का, बट नो, another interception, another block, and the chance goes begging yet again. He tried, man, he tried. मैं definitely कहूँगा इस समय जो अटेम्प्ट इनकी तरफ से देखने को मिला सारांश की तरफ से, that was good, but थोड़ा टाइम ले लिया कहीं ना कहीं, और ये टाइम अगर लेते हैं और उसमें कुछ सिलसिलेट मूव्स का तड़का लगाते हैं, कुछ अच्छे एंगल्स वगैरह बिल्ड करते हैं, कुछ असिस्ट वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो शायद वहाँ पे एक गोल कन्वर्ट होता हुआ दिख सकता था, मे बी फॉर बैक पासेस, बिकॉज हमने देखा ये चीज़ चरणजोत को करते हुए. जब भी हमने ऐसे सिचुएशंस देखी जहाँ पे चरणजोत के सामने एक पूरी डिफेंसिव लाइन खड़ी देखने को मिलती है, व्हाट ही डज, वो बॉल को वापस लेते हैं, कंट्रोल लेते हैं बॉल का, एंड इवेंचुअली गो फॉर द बैक पासेस, एंड फ्रॉम देयर ही कन्वर्ट्स अनदर अपॉर्चुनिटी. कुछ सिंपल स्टेप ओवर्स देखने को मिल जाते हैं, कुछ लेफ्ट राइट के कट्स देखने को मिल जाते हैं, एंड देन ही नेल्स दैट गोल राइट देयर इन हिज फेवर. बट वो चीज़ें सारांश की तरफ से अभी देखने को नहीं मिली. ही वेंट अहेड, और प्रेशर इतना है कि देखिए समय बीतता चला जा रहा है, 80 मिनट्स पास हो चुके हैं. ही वांटेड टू टेक दैट अटेम्प्ट, ही डिड, बट इट डिडंट पेड ऑफ. बट मैं तो अभी भी एक मेन क्वेश्चन यही रहेगा कि भाई पुस्कास का इस्तेमाल क्यों देखने को मिल रहा है हमें? 4-3 4 स्टार स्किल मूव, 3 स्टार वीक फुट, एंड वो भी लेफ्ट फुटेड है. तो अगर राइट फुट से जो पिछला शॉट लिया गया था, दैट वाज अ 3 स्टार वीक फुट शॉट, एंड वो एक रीजन था कि पुस्कास टारगेट तक पे हिट नहीं कर पाए थे उसे. सारांश को थोड़ा सा अपने स्क्वाड को चेंज करने की जरूरत है इस समय, क्योंकि वो वीक लिंक बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है. इस बार मौका जरूर बना सकते हैं, विनीशियस के पास है जरूर मेंडी को थ्रू बॉल पे आगे सेंड करने का, बट लूसियो इज जस्ट क्विक एंड स्ट्रांग. एक काफी अच्छा बॉडी ब्लॉक, पोजीशन छीना चाहते हैं, पर जिडान विंस द हेडर, बट या हेडर ऑन द अदर साइड. मेक श्योर कि सीजे की डिफेंसिव साइड में कोई गलती ना हो. That was a brilliant pass from Mendy, and वहाँ से एलेक्स आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, बट ये थोड़ा टाइम लेना चाहिए था इस पास को चलते. इवेंचुअली वो इंटरसेप्शन आता हुआ दिखा, प्रोबेबली एक थर्ड गोल आ सकता था, बट दैट डिडंट हैपन. राइट विंग से फिर से आगे बढ़ने की कोशिश, ज़ीको को लेके आ चुके हैं सेकंड हाफ के अंदर, बट इज इट इनफ? मेन क्वेश्चन राइजेस ओवर देयर. मेंडी वन सेकंड बॉल पोजीशन लेंगे, लेफ्ट विंग से आगे बढ़ेंगे, एक पास के लिए जरूर से बढ़ते हुए दिखेंगे, एंड इट इज गोना बी याया हु टेक्स दैट कंट्रोल, एंड क्राइव वहाँ से आगे बढ़ेंगे. रोनाल्डो इज देयर, एम्बापे इज देयर, जिनकी तरफ से एक अच्छा फिनिश यहाँ पे देखने को मिल सकता है प्रोबेबली. एलेक्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट ये थोड़ी सी गलती कर दी, बैक पासेस के लिए खेलना चाहा. रोनाल्डो टेक्स दैट पोजीशन again. Let's see if that is going to be a conversion, or there will be the third goal. There you go, Mbappe, brilliant finish from his corner, assist from Cruyff, and with that a 3-0 90-minute marker पे देखने को मिलेगा. शुरुआत भी ये खिलाड़ी करेगा, अंत भी यही करेगा, मे भी जीतेगा भी यही. लग तो रहा है 2-0 हो चुका है ओवरऑल ये स्कोर लाइन इस समय, एंड चरणजोत is just running away with it. ये नहीं रुक रहे हैं. मगेडी कैंसल्स एक्स्ट्रा पास, एंड उस एक्स्ट्रा पास के ऊपर एक और एक्स्ट्रा पास. ओपन अप गोल, टैप इन फॉर किलियन एम्बापे. तीसरा गोल ऑल द कंसोलेशन था उनके लिए, मैच तो वो जीत ही चुके थे, बट जिस तरीके से अपने अटैकिंग सीक्वेंस को बिल्ड कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है इस समय. सारांश ऑन द अदर हैंड ज़ीको को लेके आए सब्स्टिट्यूट के तौर पे, एंड ज़ीको के आते ही एक बॉल रोल स्कूप देखने को मिला इनसाइड द बॉक्स.
मतलब अगर आप वो चीजें एक्चुअली इंप्लीमेंट कर भी सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं हैंडीकैप पे क्यों खेल रहे हैं इस समय? बिकॉज मेरी नजरों में 4 स्टार 3 स्टार ठीक है, वीकेंड लीग वगैरह में चल जाता है, लेकिन आपको जब एक फाइनेस्ट प्लेयर को हराना है, वो स्किल मूव्स भी चाहिए और वो वीक फुट भी, एंड पुस्कास दोनों ही रोल फिट नहीं कर रहे हैं। वो फिनिशेस नहीं आ रहे हैं, वो अटेम्प्ट्स डेफिनेटली हमें देखने को मिले। एज यू सेड ज़ीको का एडिशन जब देखने को मिला सेकंड हाफ में, वी गॉट टू सी अ गुड अटेम्प्ट ओवर देयर एज वेल। बट फिर बात वही आ जाती है जो चीज़ें अभी चरणजोत ने करके दिखाई अपनी थर्ड गोल के अंदर। व्हाट आई लाइक ओवर देयर इज बेसिकली रोनाल्डो आगे बढ़ते हुए दिखे फ्रॉम द लेफ्ट विंग, पॉसिबल नहीं हो रहा था उनके लिए, 2 बार अटेम्प्ट लेने की कोशिश करी, वेंट फॉर अ बैक पास, क्राइफ को पास दिया, क्राइफ ने भी अटेम्प्ट नहीं लिया, ही कुड हैव गॉन फॉर दैट। जो सारांश ने गलतियां करी हैं अगर आप देखें उनके इस मैच के अंदर, उन्होंने अटेम्प्ट्स ले लिए, बट वहां पे अगर बात करें एक प्ले बनाने की कोशिश करी गई, चांस क्रिएट करने की कोशिश करी चरणजोत की तरफ से, एंड थ्रू दैट वो पास आता हुआ दिखा एम्बापे की तरफ, देयर वाज नोबडी टू रियली स्टॉप हिम, और एक आराम से लेफ्ट किक देखने को मिले, एंड विद दैट यस द थर्ड गोल केम इन। वो चांस वहीं खत्म हो गया जब मगेडी कैंसिल लगाया था उन्होंने। वो एक स्किल मूव के बाद सेंड ऑफ कर दिया था पूरी डिफेंसिव साइड को। दैट हैज बीन द केस, बट नाउ बेस्ट ऑफ 5 को 2-0 से लीड कर रहे हैं सीजे। एक मैच एंड ये प्रीमियर सीरीज की ट्रॉफी उनके पास चली जाएगी, एंड सारांश 3-0 डिफीट टू हिज नेम। ये तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये इस तरीके से रन डाउन हो सकते हैं आज। हुए नहीं है, पॉसिबिलिटी जरूर है, पॉसिबिलिटीज बनती जा रही हैं, वो प्रोबेबिलिटीज का जो नंबर है वो बढ़ता चला जा रहा है। बट एट द सेम पॉइंट आई हैव टू से कि मे बी एक रिवर्स देखने को हमें मिले, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन चीज़ों के बारे में जो जो चीज़ें गलत जा रही हैं। अगर आप देखिए पहले मैच से दूसरे मैच में वो चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली, बट देन अगेन जब आप बात करते हैं फॉर्मेशंस की, प्लेयर्स की, शायद उसको डेफिनेटली अगर वो कि वो इनिशियल लीड ना मिले, और जब भी हम देखते हैं चरणजोत को वो इनिशियल लीड मिलती है, स्पेसिफिकली पहले गोल की लीड मिली तो उतना ज़्यादा ओपन नहीं हुए थे। सेकंड गोल के बाद ही प्लेड लाइक लिटिल बिट मोर ओपनड अप, उनकी तरफ से और अटेम्प्ट्स हमें देखने को मिले, और ज़्यादा वो इंटरसेप्ट करना शुरू करते हुए दिखे, और इवेंचुअली कुछ थ्रो-इन्स भी देखने को मिले, कुछ कॉर्नर्स भी देखने को मिली। बट द मेन फैक्टर इज अगर आप पूरे उन 90 मिनट्स को देखें, शुरुआत में दोनों तरफ से टसल था, लेकिन लेटेस्ट एजेस में इट वाज ऑल चरणजोत हु वाज टेकिंग द बॉल पोजीशन टू हिमसेल्फ। या ये चीज़ तो है कि बहुत सारे जो छोटे-छोटे इश्यूज हैं वो फिक्स अप करने पड़ेंगे, बट आर दे इवन इश्यूज एट दिस पॉइंट? क्योंकि आप जानते हैं कि सामने इट इज सीजे, वो हर एक चीज़ को किस तरीके से इस्तेमाल में लेके आना है, हर एक चीज़ को अपने फेवर में कैसे टर्न करना है, वो खिलाड़ी बखूबी जानता है। बट नाउ ऑन टू द टेक्निकली फाइनल मैप ऑफ द डे, दिस कुड बी इट फॉर FC24। अगर सीजे ने इस मैच को अपने नाम कर लिया तो ये बेस्ट ऑफ 5 की सीरीज यहीं समाप्त हो सकती है, और अगर सारांश जीत जाते हैं there might be a hope to rise. Let's see, is it going to be a 1-2 or 3-0 coming in? That's the biggest question at this point. लार्जर पिक्चर की जब हम बात करते हैं, वो BO5 का सिचुएशन ऑलरेडी काफी टफ देखने को मिल रहा है फॉर सारांश। रोनाल्डो टेक्स द बॉल पोजीशन, चरणजोत फिर से अपनी एक अटेम्प्ट बनाने की कोशिश करेंगे, बट बैक पासेस, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम। इवेंचुअली अगर इनको दिखता है कि वो चांस नहीं बन रहा है, ही गोज टू बैलेंस आउट द इक्वेशन, ही गोज टू गो फॉर द पासेस, एंड उसी की वजह से वो अटेम्प्ट्स फिर नहीं मिल पाते हैं सारांश को। बट अभी के लिए सारांश लेफ्ट विंग से आगे बढ़ रहे हैं, मेंडी is trying to go for a good approach. Let's see क्या उनकी तरफ से पॉसिबल हो पाता है। विनी जूनियर वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बट गलिट के डायरेक्टली पास आता हुआ दिखा, एंड एम्बापे फ्रॉम द राइट विंग इज नाउ गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। रोनाल्डो वहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट थोड़ी गलती इस पास में वैन डाइक की तरफ से डेजोंग को, डेजोंग की तरफ से मल्जीनी, एंड नाउ देन इवेंचुअली once again from Mendy to Maldini, the passes are getting repeated. इस समय अगर अटैकिंग सीक्वेंस की बात की जाए फ्रॉम द साइड ऑफ सारांश जी, सिर्फ 2 सेंटर बैक्स पीछे हैं, दोनों विंग बैक को ओवरलैप पे लगा दिया है। सारांश इज गोइंग ऑल इन इनटू दिस गेम, he has to, एंड ये ऑल इन ठीक है, आप अटेम्प्ट करें, लेकिन डिफेंसिव साइड को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती है ऐसे सिनेरियो में, क्योंकि आपके पास पीछे ट्रैक बैक करने के लिए कोई नहीं बचेगा। एंड आई थिंक एक एक्सप्लॉइट अगर यहाँ ढूंढ लिया सीजे ने, he might even get the chance. R9 with the step overs yet again gets the first opportunity. Drills it in the top left corner, and चरणजोत एक और बार बढ़त बना चुके हैं। The lead is here. The champ is trying to rise. Let's see क्या उन्हें कोई रोक पाता है सारांश जैन, वहाँ पे कुछ हर्डल्स उनके लिए क्रिएट कर पाते हैं या फिर नहीं, कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर पाते हैं या फिर नहीं, बिकॉज वो पहले गोल की लीड अब चरणजोत को फिर से थोड़ा ओपन अप खेलने के लिए बिल्कुल पोजेस करती हुई दिखेगी। बट ऑन द अदर कॉर्नर काफू वंस अगेन इंटरसेप्ट्स राइट बैक, pretty precise on the point. Eventually एम्बापे से गलिट को पास आता है, या वहाँ पे देखिए राइट विंग से लेफ्ट विंग को स्विच करते हुए दिखेंगे। मेंडी passes back to Karaf, and वहाँ से रोनाल्डो के लिए भी बिल्कुल passes जाते हुए दिख सकते हैं, and that's exactly what happened. Ronaldo back passes to Elixia, Karaf moving forward, this could be another possible attempt coming in. Mbappe right in the hands of goalkeeper. वीक फुट फिनिश का अटेम्प्ट था यहाँ, ठीक है, एक थोड़ा सा ग्रीडी अटेम्प्ट कह सकते हैं इस चीज को, कि शायद चला जाए तो मजा आ जाता, बट didn't make that happen. और अभी के लिए वापस से मौका मिला, यूसेबियो को फाइंड करेंगे यहाँ पे डीनियो को, लेकिन अगेन द इंटरसेप्शन इज गुड। एक काफी अच्छा हाई प्रेस, पोजीशन जीता जरूर है, बट प्लेयर लॉक करके थ्रू पास खिलाना जरूर चाहते थे, बट इन द एंड थोड़ी चीजें
डगमगाती सीजे के लिए। पोजीशन अभी भी है, चांस एक और बनाया जरूर जा सकता है। अब थोड़ा सा इस गेम के पेस को कट डाउन भी कर रहे हैं। He has got that lead. Definitely कट डाउन करेंगे जब मौका मिलेगा तो उस पे स्ट्राइक भी करेंगे एंड एक्जैक्टली शायद वो मौके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट डिजोंग यहाँ पे मिडफील्ड में काफी अच्छे तरीके से इंटरसेप्ट करते हुए दिखेंगे। विनिकस जूनियर की तरफ से यूसीपीओ की तरफ एक पास देखने को मिला एंड फ्रॉम देयर वंस अगेन द लेफ्ट विंग इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अप्रोच विद। बट ये लीजिए एम्बापे इंटरसेप्ट करते हुए दिखेंगे। काफू द राइट बैक इज वंस अगेन गोइंग टू पास बैक टू एम्बापे एंड वहां से अब एक इंटरेस्टिंग अप्रोच, शायद लेफ्ट विंग की तरफ एक शॉट देखने को मिल सकता है। लूसियो बैक टू एम्बापे। एम्बापे को देखिए लेजेंड यहाँ पे सीडीएम रोल पे आ चुके हैं वो पीछे ट्रैक करते करते जी। लेकिन इस बार डीनियो को आर9 को ढूंढने का मौका जरूर मिला था। हुलेट को ढूंढा भी है लेकिन हुलेट फ्रॉम द अदर साइड मेक्स अ टैकल हैपन। बट पुटेयास एक एडवांटेज खेलेंगे, एक फ्री किक वापस दी जाएगी यहाँ पे। हुलेट बैक विद द पोजीशन, याया टोरे कुड नॉट मेक द पास इन टाइम। डिजोंग ने पोजीशन जीता बट जिडान लुक एट दैट इंस्टेंटली लूज आउट करने वाले हैं। वाओ, बॉल पोजीशन डेफिनेटली रखने की कोशिश कर रहे हैं बट देयर गोस द गोल। The left hook kick comes in at 27-minute marker. The second goal will be coming in. चरणजोत फिर से वही लीड, फिर से वही टर्म्स, फिर से वही इंटेंसिटी डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। एंड ऑन द अदर कॉर्नर शरांश इज लेफ्ट अनटेम्ड। पूरी कोशिश है कि उनकी तरफ से फिलहाल ये 2-0 को अब 2-2 करते हुए दिखें। इक्वलाइज नहीं किया, वो लीड नहीं ली तो गेम ये फाइनल हो सकता है। याया टोरे कटबैक का मौका के लिए एम्बापे नॉट मिसिंग दोस ऑफ द बार इनसाइड द नेट। चरणजोत तीसरे गोल का एडवांटेज और ये तीसरा गोल मेक श्योर कर सकता है कि ये सीरीज भी 3-0 खत्म होती हुई नजर आए उनके नाम पे। एक और बार इलास्टिको इन द मिडफील्ड sends the defender down. Back to R9, back to Cruyff inside the box, reverse इलास्टिको, Trivela top left खत्म कर चुके हैं यहाँ पे इस श्रृंखला को 4-0 सीजे के नाम। और ये सीरीज 3-0 से अपने नाम करने के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह गई है। औपचारिकताएं बताइए इस समय, बस फॉर्मेलिटीज दैट्स ऑल इट्स लेफ्ट राइट नाउ बिकॉज जिस तरीके की लीड यहाँ पे बना ली गई है 2-0 ऑलरेडी व्हेन इट कम्स टू द BO5 एंड अगर यहाँ पे इस मैच की बात करी जाए, थर्ड मैच की बात करी जाए, ही हैज गॉट दैट लीड ऑफ 4 गुड गोल्स इन हिज फेवर। ओके, वी माइट जस्ट गेट टू सी अ येलो कार्ड, दैट्स डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू कम। बट चलिए फ्री किक के साथ यहाँ पे शुरुआत करेंगे। शाहजहान वंस अगेन मिडफील्ड से गलित को पास दिया, नेजोंग वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक अच्छा क्लीन पास टू ज़िडेन एंड ही अटेम्प्ट्स, देयर गोस द डिफ्लेक्शन एंड ऑफ कोर्स एक अच्छा अटेम्प्ट तो था लेकिन उसकी कोई खास कामयाबी नहीं मिली। कॉर्नर विल बी देयर, सेकंड अटेम्प्ट बनाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे विनिकस जूनियर। आगे बढ़ते हुए देखेंगे बट एलेक्सिया लुक एट दिस। अब बात करते हैं शरांश की ब्यूटी की व्हेन इट कम्स टू दैट बॉल पोजीशन, बट उसी चीज को बार-बार ब्रेक करते दिख रहे हैं चरणजोत। सीजे इज रनिंग हिम डाउन राइट नाउ। किलियन एम्बापे वापस से लकुकेटा वापस से काफू को ढूंढेंगे एंड ही इज ऑफसाइड राइट नाउ, फर्क नहीं पड़ता। बट द क्रिकेटा इन द मिडफील्ड ये तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ऊपर से हाई प्रेस अलग ले लीजिए, ये एक और मौका बनाया जा सकता है। मालदीनी इस बार डिनाई जरूर करने वाले हैं बट चरणजोत चांस आफ्टर चांस, गोल्स आफ्टर गोल्स एंड सारांश की उम्मीदों को फ्रीज आउट कर दिया है। Man, it's looking like a 3-0 at this point because possibilities ही नहीं बन रही है। पहला हाफ खत्म होने वाला है with just 4 minutes left in this particular first half and we don't see even the first goal coming in. Attempts लीजिए, एक और काफी greedy attempt यहाँ पे देखने को मिला but when you have a lead of 4 good goals in a particular match तो इस तरीके के attempts आप definitely ले सकते हैं, pressure बना सकते हैं other individual के ऊपर। and आप देखिए तो बैक वॉल अभी थोड़ी कमजोर ही देखने को मिल रही है सरांश की, वो डिफेंसिव लाइन टूटती दिख रही है बार-बार। मेंडी की तरफ से पास देखने को मिलेगा towards Torreira and from there डिजोंग will be able to intercept it and गलित वहाँ पे देखने को मिलेंगे। possibly एक अलग attempt हमें देखने को मिल सकता है। 45 minutes अब very soon going to come and उसी के साथ वो whistle बनती हुई दिखेगी। oh before that a throw in will be coming in। जी हाँ, ये तो आप कह सकते हैं कि सिर्फ टाइम प्ले है इस समय। हाफ टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पे होने वाला है एंड 4-0 का डेफिसिट चल रहा है। सारांश के पास एक हाफ है इस 4-0 को अपने नाम करने के लिए, इस 4-0 को 5-4 में तब्दील करने के लिए। लेकिन एक हाफ में ये स्कोर लाइन को ओवरटर्न कर पाना एक बहुत ही बड़ा सपना रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है इनके लिए, बहुत ज़रूरी टास्क है, कहीं ना कहीं काफ़ी डिफिकल्ट टास्क भी है एज यू सेड बिकॉज इन जस्ट 45 मिनट्स 4 गोल्स इट्स पॉसिबल। सीजे ने जस्ट अभी करके दिखाया बट देन वो सिर्फ इक्वलाइज करेगा स्टैंड को, वो एक मौका देगा टू फाइट बैक इन द नेक्स्ट मैच। बट द फैक्ट इज कि जो प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है चरणजोत के ऊपर इट्स एनॉर्मस एट दिस पॉइंट एंड देयर गोस द सेकंड हाफ। चलिए देखते हैं सेकंड हाफ के अंदर क्या शुरुआतें देखने को मिलती है। लोरेंटे राइट कॉर्नर से आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, राइट विंग की पूरी एक अप्रोच यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। कुछ अच्छे कट्स एंड फिलहाल कटबैक का मौका और कटबैक मिला। लुक एट दैट, लूसियो इंटरसेप्ट्स एंड एक कॉर्नर जरूर से मिल जाएगा, एक सेकंड चांस जरूर से मिल जाएगा इस सेकंड हाफ के अंदर बट दैट अटेम्प्ट वाज लिटिल बिट क्लोज, पॉसिबली एक गोल देखने को मिल सकता था। जीनियो काफी अच्छे स्टेप ओवर्स वापस से मौका बनाया जा सकता था उनकी तरफ से। बट द चांस गोज बैकिंग अगेन एंड चरणजोत
कुछ ज्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते. स्लाइड टैकल फॉर द इंटरसेप्शन. ऑल्दो फॉलन मेंडी ने पोजीशन को लूज आउट जरूर कर दिया है, बट फॉर द टाइमिंग ही इज जस्ट होल्डिंग हिज ग्राउंड अप. एक और बार मौका पर आया जरूर जा सकता है विनी की तरफ से, लेकिन द इंटरसेप्शन वाज गुड. एंड सारांश क्लोज आ रहे हैं, वो फाइनल नेल नहीं मिल पा रही है. It's coming way too close as you said, but eventually वो final momentum उनको नहीं मिल रहा है. Final finishes की आप जब बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़े कामयाब देखने को नहीं मिल रहे हैं. And that's how चरणजोत अभी भी उस lead को enjoy करते हुए दिख रहे हैं. Not even a single goal yet. Attempts थोड़े बहुत अब यहाँ पे बढ़ते जरूर से दिखे हैं. Throw-ins यहाँ पे आते हुए दिखेंगे. Sharansh is going to take that throw-in और वो विनिकस जूनियर की तरफ ये पास देखने को मिला है. But look at this, directly in the foot of Lucio. ये दिखाता है कि प्रेशर अब बढ़ चुका है. गलतियाँ हो रही हैं जहाँ नहीं होनी चाहिए. जहाँ यूजुअली हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि शरांश की तरफ से वो मिस्टेक्स देखने को मिलेगी. That is coming in. But with that, a free kick will be also there. Lucio राइट विंग से आगे बढ़ेंगे, पास जा सकता है प्रॉब्ली टुवर्ड्स काफू, एंड दैट्स एक्जेक्टली व्हाट हैपेंड. राइट विंग से आगे बढ़ते हुए दिख तो रहे हैं, बट ये पासेस कितने ज्यादा क्लीन रहेंगे. इंटरसेप्शंस विल बी कमिंग इन. गलिट टेक्स ओवर द बॉल. ओह, एक और गोल के लिए जा रहे हैं यहाँ सीजे. R9 लॉन्ग रेंज रिवेला अटेम्प्ट करना चाहते थे. सारांश मेड श्योर के इंटरसेप्शन आ जाए, बट अब इस समय सारे गोल की दरकार सारांश को है. 60 मिनट का समय ऑलमोस्ट यहाँ पे होता हुआ नजर आने वाला है. एंड ये 60 मिनट, then all you have are 30 minutes plus additional time remaining, and उसके अंदर 5 गोल स्कोर करना जी बहुत बहुत बड़ा टास्क होने वाला है सारांश के लिए. The task is already way too big, man. देखिए इस मैच को जीतते हैं, अगला मैच जीतना है. अगले मैच में भी यही प्रेशर रहेगा, यही प्रेशर रहेगा कि फिलहाल अगर इस मैच को हार जाता हूँ इट्स ओवर. पर चलिए अभी के लिए बात करते हैं इन द गेम सिनेरियो की. तो फिलहाल अब देखिए गलिट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अटेम्प्ट बनाने की. क्राइव को यहाँ पे पास मिलता हुआ दिखेगा. पॉसिबली द फिफ्थ विल बी कमिंग इन. रोनाल्डो इंटरसेप्ट होंगे मल्जीनी की तरफ से, वहाँ से डिजोंग आगे का एफर्ट करते हुए दिखेंगे. मिडफील्ड्स की अभी ये फाइट देखने को मिल रही है, हमें पूरे का पूरा अप्रोच देखने को मिल रहा है. एक अच्छा पास जरूर से आया है फिलहाल. ज़िडेन कैन ही कन्वर्ट दिस, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन कमिंग इन. अब देखिए बैक पासेस नहीं जाएंगे, वो अटेम्प्ट जाएगा. जो गलती बार-बार देखने को मिली है चैलेंज की तरफ से, फाइनली वो बैक पास आया, एंड थ्रू दैट मे बी पॉसिबली हमें एक अटेम्प्ट देखने को मिला. देयर यू गो, फाइनली ही फाइंड्स इट once in a for all. अभी देखिए वो चीज उन्होंने करके दिखाई, यानी कि उन्होंने स्टेप बैक किया, थोड़ा चांस क्रिएशन को यहाँ पे कहीं ना कहीं तवज्जो देते हुए दिखाया, और उसी के चलते ये पहला गोल फाइनली आता हुआ दिखेगा. एंड विद दैट द होप of this guy coming back in the game is also coming. लेकिन दिक्कत यही है कि समय ज्यादा नहीं बचा है. 25 minutes. It's just 25 minutes on the clock, and ये 25 मिनट प्लस स्टॉपेज टाइम ले दे के 28 मिनट मान लीजिए जी. एंड उसके अंदर एक कमबैक के लिए अगर आपको सपने बुनने हैं, ये गोल स्कोर करना पड़ेगा. बॉल रोल स्कूप, कट बैक टू हुलेट, लेकिन लॉन्ग रेंज अटेम्प्ट, वो पास कभी हुलेट के लिए था ही नहीं. दैट वाज मेड फॉर यूसेबियो, बट यूसेबियो लाइन से आगे चले गए. एंड ये चीजें सारांश के कंट्रोल में थी नहीं, एंड अब तो किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया है. प्रेशर इज देयर मैन, डेफिनेटली हैव टू से दैट. अटेम्प्ट्स करने की कोशिश है लेकिन नाकामयाब देखने को मिले. पहला गोल जरूर से मिला है, होप एक जरूर से आई है, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो. They have to come up with 3 goals at least, तो एक टाई ब्रेकर हमें देखने को मिल जाएगा. बट कहीं ना कहीं अभी वो चीज़ों की पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती हुई दिख रही है. बॉल पोजीशन की आप बात करें वो डेफिनेटली सीजे के पास देखने को मिलेगा, बट ज़िडेन कम्स इन एंड इवेंचुअली इंटरसेप्टेड. विनिसियस जूनियर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखेंगे. सीपीयू को पास यहाँ पे जरूर दिया, बट या वंस अगेन लुक एट हिम, हाउ ब्यूटीफुल द इंटरसेप्शंस आर कमिंग इन. हर बार जब भी पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं शरांश, हर बार सीजे आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं ट्राइंग टू इंटरसेप्टेड, एंड इवेंचुअली इज 90% ऑफ द टाइम सक्सेसफुल ऑल्सो इन दैट. अगेन कुछ अच्छे टैकल्स देखने को मिले. या मूविंग फॉरवर्ड, लेफ्ट विंग से अप्रोच एलेक्सिया. Let's see. Back passes शायद यहाँ पे एक preferable choice हो सकती है. Didn't go for that till Llorente intercepts. जी हाँ, Martinho right now again right wing से एक attempt बनाना जरूर चाहते हैं. एक बहुत ही ज़्यादा उम्मीद भरा पास भेजा था उन्होंने, आगे मना कर दिया गया है. 15 मिनट बचे हैं on the clock and CJ still wants to get another goal to his name. किलियन एम्बापे losing the possession, rebound से वापस से सिक्योर जरूर करा. लॉन्ग रेंज रिवेला, आज एक आउटसाइड द बॉक्स रिवेला सीजे स्कोर करना चाहते हैं, बट हर बार डिनाई किया जा रहा है. देखिए ऑलरेडी लीड है, ऐसे अटेम्प्ट्स वो ले सकते हैं अपने फेवर में. एग्जैक्टली वही करने की कोशिश कर रहे हूँ. लिटिल बिट फार अवे. एक अच्छा अटेम्प्ट जरूर देखने को मिला, बट फिर से थोड़ा सा विफल वहाँ पे देखने को मिले इस सिचुएशन को लेके. वर्जिल वैन डाइक पासेस बैक टू लोरेंटे, राइट बैक यहाँ पे देखने को मिलेंगे आगे बढ़ते हुए राइट विंग से. रोनाल्डिनियो को यहाँ पे पास मिल चुका है, बट फिलहाल मिडफील्ड के अंदर ये पूरा इंटरसेप्शन देखने को में प्रॉब्लम मिल सकता है. मेंडी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, एलेक्सिया देखने को मिल रहे हैं, और ये लीजिए फिलहाल एक बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज पास लोरेंटे को. पॉसिबली एक अटेम्प्ट बनता हुआ दिखेगा, बट लेट्स सी ज़िडेन कैन गो फॉर द सेकंड. दैट्स अ पेन. ओह मैन, इट्स अ पेनल्टी. बट यस, फाइनल 10 मिनट्स, अ पेन ऑन योर हैंड्स. टॉप राइट ही मारेंगे. हाँ, टॉप राइट ही जा रहे हैं. यू नो इट. दैट्स गुड. सीजे ने ऑलरेडी गोलकीपर मूवमेंट करके इंडिकेशन दिया था कि मैं राइट जंप करने वाला हूँ. सराज ने बोला कर लीजिए, मैं तो वहीं जा रहा हूँ. वो हल्की हल्की माइंड गेम्स जो चल रही थी
वो बिल्डअप करा जरूर था, लेकिन अब बात वही है कि 7 मिनट में 2 गोल्स और चाहिए अगर एक्स्ट्रा टाइम पे भी ड्रैग करना है, और उसके लिए इस गोल का आना बहुत सारा जरूरी था, बट नो, दैट पास फ्रॉम डीनियो, ये कनेक्ट होना चाहिए था. जिडान ऑल्सो मेकिंग द ओवरलैपिंग रन हैपन. डीनियो इनसाइड द बॉक्स, डांसिंग, स्टेप ओवर्स बैक, एक्स्ट्रा पास टू जिडान, लेकिन नहीं, ये किस्मत भाई आज सारांश से नाराज बैठी है. ये दोनों प्लेयर्स का कोलिजन दिक्कतों में डालता हुआ. विनी ऑल्दो ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो सके, बट इन द एंड इट्स डन. अब यहाँ से कम बैक पॉसिबिलिटी के बाहर जा चुका है. क्लियर एम्बापे जस्ट रनिंग डाउन विद द बॉल. 3 minutes on the clock and this might be it. True man, already 2-0 BO5 की सिचुएशन में, और ये तीसरा मैच. If चरणजोत bags it, he is the winner, he is the champ. And मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उस सीढ़ी के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं. जिन फॉर्मेलिटीज की हम बात कर रहे हैं वो भी खत्म होने वाली है बहुत जल्द. मेंडी आगे बढ़ते हुए दिखेंगे possibly. Fifth goal would be coming in and there you go, finishing in style. He is a champ, but वो goals करके जाएंगे लास्ट तक. आखिरी गोल एक चाहिए होता है सीजे को. मैच खत्म से पहले एक गोल तो ये डिमांड करते हैं. एंड पॉज क्यों हुआ था, बट इट्स वेरी वेरी लेट नाउ. इट्स ऑलरेडी डन. 5-2 ऑन दिस aggregate line. 3-0 in the favor of Charanjot, and there we have it, the winner of Esports Premier Series 2024 FC24 edition, Charanjot. The champ is here. Qualifiers हुए, बहुत सारे रोड़े आए रास्ते में, बहुत सारे मैचेस हुए, बहुत सारे कहीं ना कहीं गलतियां भी हुई, but finally this guy outshined everybody else, and that's how he is now the champ of Esports Premier Series 2024. In the EAFC 24 action, we have CJ Charanjot as our champ. We expected that. We did. हमें पता था कि हाँ ये इनके पक्ष में रहेगा, but ये 3-0 रहेगा, ये नहीं पता था. ये नहीं सोचा था भाई हमने. We kind of expected कि हाँ सारांश भाई के पास एक मैच तो बेयर मिनिमम जाने ही वाला है, but yes, CJ made sure कि एक मैच भी लीक ना हो पाए उनकी तरफ से. I want to ask you one question. जब आपने देखा कि लास्ट में 4-2 होता हुआ देखा स्कोर, एक होप जागी थी ना मन में कि शायद ये मैच चला जाएगा शरंज के पास. अगर वो डीनियो का जो एक्स्ट्रा पास गया था, अगर वो इंटरसेप्ट नहीं होता, डीनियो राइट फुट से वो पास खेल देते अपने लेफ्ट विंगर को, वो पास मिल जाता तो 1v1 होपफुली अ गोल. अ 3-4 इन द 88th मिनट, उम्मीदें जाग जाती एक्स्ट्रा टाइम 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक मौका बनाया जा सकता है. बट द मोमेंट काफू इंटरसेप्टेड दैट पास, मैच वहीं खत्म हो गया था. Man, the action was absolutely amazing. EAFC 24 की जब हम बात करते हैं, ये BO5 का पूरा सीक्वेंस हालांकि खत्म जल्दी हो गया, बट जो दिखा के गया ना इसमें, वो एक्सपीरियंस, वो एजिलिटी, मूव्स, वो स्किल सेट्स, absolutely amazing. But with that, मैंने हमेशा स्पार्टस, we enjoy the whole action. अब फ्री फायर का एक्शन बहुत जल्दी आने वाला है चालू, बट उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. Let's wait to see what happens next.
Favorites, the team, the Titan Elite. गाइस देखिए, काफी समय इंतजार किया है हमारे इन खिलाड़ियों ने, आप सब लोगों ने फॉर द फ्री फायर मैक्स एक्शन एक लैन इवेंट का इंतजार किया काफी समय से। तो यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूंगा गाइस, तालियां तो बजती रहनी चाहिए फॉर एवरी सिंगल गेमर जो यहाँ पे वेट कर रहा है हमारे आज के मैचेस का। एंड नाउ we have the third team of the day, that is Team TSG Army. Go TSG, yes of course, इधर से Go TSG की आवाज सुनती थी, but अब 3 टीम हो चुकी है। The fourth team, they have error in their name. Clearly, they are not gonna make any error in the game. 4 errors. बहुत सारे टीम्स ऐसी हैं जिनके नाम में 4 है। It is about time to welcome team 4 unknowns. Oh. Next team. गेम के अंदर ये लोग कितने हेड को हंट करते हैं? I would like to welcome team Headhunters. क्या बात है? The next team is even interesting. Directly from the jungle, we have the Forest Apes. टीम एक्चुअल में गेम के अंदर रश कर पाएगी? देखते हैं रशर esports को। And now we have the team Hind. क्या बात है? क्या हो गया guys? Finally we're gonna get started. तो please तालियां बजाते रहो यार। And now we have one more team. The creator name is Aura Esports. And now they have battle in their name, and they are here to get the world. We have the world of battle. Last but not the least, we have the return of applause for the last team of the day. आ गई कभी कभार हो जाता है छोटे हल्के फुल्के टेक चेक्स ये सब चलता रहता है. That's all part and parcel of the game. We are all gamers here. सारे यहाँ पे गैदर हुए हैं और जनता आ चुकी है, हमारी टीम्स आ चुकी है. अब I think it is about time हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं हमारे अमेजिंग टैलेंट्स को. गाइस सबसे ज्यादा महंगा टैलेंट इस टाइम पे इंडिया का. We have Fauji Ajay as the caster. We have Rocky Mamu as the caster. We have Gaming Aura. And we have Arrow IB. But this is not it, guys. हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट एनालिस्ट के रूप में भी आए हैं इस बार. We have Duker as well जो आएंगे और हमें अपनी टिप्पणी देंगे. बट फिलहाल के लिए विदाउट फर्दर अडू let's move on to the caster. So caster, please take. First of all, thank you so much, Insane. And चलिए आगाज करते हैं उस पल का जिसका इंतजार हमने सालों से देखा है. और आज यहाँ पे होने वाला है फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का ग्रैंड फिनाले. तो मैचेस भी आज ग्रैंड होने वाले हैं. बट और अगर हम यहाँ पे देखें ना तो ये हमको एक लैंड स्टेज नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली में ये एक रणभूमि है जहाँ पे आने के लिए लाखों योद्धाओं ने यहाँ पे कोशिशें करी. बट जो प्लेयर्स यहाँ पे आ पाए हैं वो सच में डिजर्व करते हैं और अपने आप में एक विनर है. तो ये जो जर्नी है पूरी इस ई स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज की, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है. एंड
डेफिनेटली जो भी डिजर्व करते थे वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और आपके क्या एक्सपीरियंस है इस पूरी जर्नी से? देख के बता ना कि सपना तो नहीं देख रहा मैं। ओके। क्योंकि ओह रियल है। सच में ये ड्रीम हम लोगों ने बहुत लंबे समय से देखा है कि एक लैन हो और जिसमें सभी टीम्स ऑन स्टेज आए। अक्सर हम टीम्स को बोलते हैं कि लैन की वाइब बिल्कुल अलग होगी, आप घबराओगे, बट आज हम घबरा रहे हैं क्योंकि लैन ही कुछ अलग चीज होती है। ये वाइब भी बिल्कुल अलग लेके आती है एंड esports.in इन सभी चीज़ों को एक साथ लेके आया है। ये जो कहते हैं ना कि अलग अलग बटन है, इन सबको एक साथ पिरोया है एंड ये अपने आप में एक बहुत अलग एक्सपीरियंस देगा। सच में बहुत सारी चीज़ें टीम्स लर्न करके जाएंगी, सीख करके जाएंगी एंड कई सारी टीम, ऐसा कुछ नहीं कि कोई टीम लूज करके जाएंगी, क्योंकि एट द एंड लर्न करते हुए हम लोग जाते हैं, सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड देखिए कुछ ही क्षणों में हमारे मैचेस भी स्टार्ट होंगे, पर उससे पहले देखिए हर दूसरी टीम जो यहाँ तक पहुंची है, कमाल का दमदार परफॉर्मेंस, कमाल का फायर पावर, कमाल का अग्रेशन, हंगर, हर चीज़ दिखाई है इन्होंने कि हम कर सकते हैं। एंड ऐसा नहीं था कि कंपटीशन बहुत छोटा था, ईयर लॉन्ग चैंपियनशिप है, अलग अलग फेजेस में, अलग अलग क्वालिफायर्स में ये पूरा सफर जारी रहा, जहाँ पे जा करके कुछ सर्टेन टीम्स ही हमारे साथ पहुंचे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली देखिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे प्रोज अगेंस्ट अंडरडॉग्स आते हैं। आप यहाँ पे ऐसी भी टीम्स को देखेंगे जो अपना परचम पहले भी लहरा चुकी है, उनका नाम यहाँ पे ले लो तो वही काफ़ी है। बट इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी टीम्स आई है जो खुद का नाम बनाने आज यहाँ पे आई है। तो अंडरडॉग्स अगेंस्ट प्रोज टीम्स हमको देखने को मिलता है इस ई स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज में एंड डेफिनेटली मैचेस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। जब आप इन प्लेयर्स को देखते होंगे तो आपको यहाँ पे वो नटखट यहाँ पे मस्ती करते हुए प्लेयर्स नज़र आते होंगे, बट एक अलग जब पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ना, इनका एक अलग भी रूप होता है जहाँ पे ये दिन रात हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन, वो पैशन इनके अंदर जो है ना, वो जुनून इनके अंदर जो है ना, वही उनको यहाँ पे लेकर आया है। एंड डेफिनेटली सल्यूट है इस जुनून को, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आए हैं, हर एक प्लेयर में आपको वो बात नज़र आएगी, कुछ खास नज़र आएगा और वो चीज़ हम गेम में भी ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स आए सब ने मेहनत करी है एंड एक एक करके ऊपर आए हैं। देखिए ऐसा नहीं था कि सफ़र आसान था, बहुत कठिन सफ़र था। टीम्स ने अपना ट्राई हार्ड डाला, नहीं हुआ दोबारा करा, कोशिश करी, बैक आए, वापस आए, रीस्टार्ट किया। वो कहते हैं ना कि रीस्टार्ट, वो रीस्टार्ट करा, वापस से जंप लिया एंड फाइनली यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ा सफ़र है। कई सारी टीम्स ने किल्स के मामले में रिकॉर्ड बनाया, तो कई सारी टीम्स ने स्कोर्स के मामले में रिकॉर्ड बनाया एंड हम लोग ये सारी चीज़ें आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। पर आप लोग चैट में बताइए, तब तक कमेंट कीजिए कि आप कौन सी टीम को रूट कर रहे हैं, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एट द एंड लैन पे आना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड अगर हम बात करेंगे आपका सपोर्ट नहीं आएगा, आप लोग अपनी फेवरेट टीम्स को रूट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो आपका प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्यार देते रहिए, मोहब्बत देते रहिए चैट में। एंड ये आसान नहीं है कि रात के समय आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, इतना लेट आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, पर प्यार बना रहना चाहिए। अभी भाई आपको क्या लगता है कि कौन सी, देखिए जब हम बात कर ही रहे हैं टीम्स के बारे में, देखिए हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, हमारे साथ TSG आर्मी होने वाली है। मुझे याद है ये वो टीम है जिन्होंने 151 किल्स करे थे एंड नंबर 1 पोजीशन निकाली थी एंड कई सारे प्लेयर्स इनके वहाँ पे इस टीम पे हम लोग देखेंगे। बट सिद्धा कमाल के प्लेयर हैं। प्लेन पाथ हमारा काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज रहा, बट नॉर्थन बाउंड्रीज को ज़्यादा फेवर करेगा। बुल्सआई पे ब्लू जोन है, सेंट्रलाइज जोन होने वाला है, टीम्स उतर चुकी हैं, मील खाली मिल रहा है, तो कई सारी टीम्स जा रही है, बट क्लैशेस के चांसेस हैं वहाँ पे भी। बिल्कुल देखिए क्लैशेस यहाँ पे ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि भले ही आप इस मुकाबले के शुरुआती क्षणों में वो क्लैशेस ना देखें, लेकिन जैसे जैसे मैचेस बढ़ते जाएंगे क्लैशेस की भी संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। TSG के ऊपर हमारी नजरें, TSG वन ऑफ द फैन फेवरेट टीम में से एक, वन ऑफ द टीम जिसकी फायर पावर बहुत ज़्यादा है। आयुष की बात करें तो अभी आप देख सकते हैं प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक उनको प्रेजेंस है ना अटैक करने पे मजबूर करें, क्योंकि TSG पीछे नहीं हटते। लेकिन दूसरी तरफ हम देख सकते हैं हिंद को पहले कुछ फ्रैग्स मिल जाएंगे और क्या यहाँ पे पूरी टीम को वाइप किया जाएगा, क्योंकि देखिए जब से रिवाइवल मेटा है आप जानते हैं कि अगर आपने पूरी टीम को खत्म नहीं किया तब तक आपका काम पूरा नहीं हुआ। एक भी प्लेयर बचता है तो वो खुद को बचा सकता है। लेवल अप नॉक हो चुके हैं, आदित्य भी उसके साथ नॉक हो जाएंगे। देखते देखते पूरी यहाँ पे टीम मुसीबत में आ जाएगी। ऐश बिल्कुल अकेले है, क्या वो यहाँ से बच के जा पाएंगे? ये अर्ली एलिमिनेशन उनके लिए बहुत ज्यादा खतरे की घंटी बन सकती है, क्योंकि ये है पहला मुकाबला। अगर आपको हेड स्टार्ट मिलता है तो बहुत हेल्प मिलती है, बट अगर अर्ली एलिमिनेट हो गए तो और ज्यादा प्रॉब्लम। TSG ने पहली टीम को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया है।
जी हाँ, यहाँ पे पहली टीम ऑलरेडी वाइप आउट हो चुकी है। अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत होने वाला है और 40 प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं। इट मींस ऐसा नहीं है कि एक ही टीम एलिमिनेट हुई है, यहाँ पे कई सारी टीम्स हमने प्लेयर्स को लूज भी करा है। यहाँ पे क्षति पहुंचे कई सारी टीम्स में। देखिए यहाँ पे बात करेंगे 4 हेड्स के बारे में। यहाँ पे 2 प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। लास्ट सोलो सर्वाइवर में साहिल नजर आने वाले हैं, जिसमें कि शायद से साहिल के अलावा एक और प्लेयर बच्चों के बट देखते हैं किस तरह के सर्वाइवल वो अपना निकालेंगे। 4 अननोन देखिए अपने प्लेयर्स को संभालते हुए लेके जा रहे हैं और मूव आगे करा जा रहा है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे बात करेंगे शिपयार्ड से मूव होते हुए डायरेक्टली आ चुके हैं वो कुटलिस्टवा की तरफ। एंड ये टेरिटरी छोटी जगह नहीं है, क्योंकि कई सारी टीम्स लेटर ऑन रोटेशन करते हुए इस एरिया को अपना घर बनाती है। और आपको पता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी आपको जरूर मिलेगी, किल जरूर मिलेंगे। बात करते हैं हेड हंटर्स के बारे में। पीक में ऑलरेडी होने वाले हैं एंड आज का एक टाइम था पीक खाली रहता था, बट आज के टाइम पे पीक हमें बड़ा बड़ा मिलता है। टीम्स अक्सर यहाँ पे आती है एंड अर्ली ऑन अगर आप यहाँ पे हैं तो हॉट ड्रॉप होने वाली है और ऑलरेडी लूट चली गई है। एंड बगल में बॉक्सेस भी होने वाले हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट नंबर ऑफ लूट मिलेगी अगर आपका की है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो एलिमिनेशन था फॉरेस्ट एप्स का, वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज ज़रूर देगा। लेकिन हमको एक बात ये भी पता है कि मैचेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है उनके पास। तो पहला मैच उनका ख़राब हो भी गया, बट स्टिल होप्स उनको नहीं हारने हैं। और जी हाँ, 10 मुकाबले जो हैं वो हर एक मुकाबला यहाँ पे वैल्यू ज़रूर रखता है। आपका एक मौका मिस हुआ, बट अगेन यू हैव 9 मोर शॉट्स, तो उसको यहाँ पे बहुत ही सावधानी से यूज़ करना है। बात करेंगे हम रशियन ई स्पोर्ट्स की। हमेशा मैं बोलता हूँ एक ऐसी टीम जिसने हर एक फेज में खुद को इम्प्रूव किया है। इम्प्रूवमेंट की बात करें, इस टीम से बेहतर शायद ही कोई टीम होगी। हमेशा कुछ नया ऐड ऑन करती है। मोकरिया एफएफ, लॉयर, ये टीम हमको पहले अंडरडॉग्स टीम के रूप में नजर आती थी, लेकिन एक अपनी पहचान बनाई है इस टीम ने। एंड डेफिनेटली ये पहचान बनाने में योगदान रहा है esports.in का, बिकॉज esports प्रीमियर सीरीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अंडरडॉग्स को ले आता है एग्जैक्टली बराबर बड़े बड़े T1 टीम्स के। तो ये जो आपको स्पॉटलाइट मिलती है, ये इन तरीके के इन टूर्नामेंट से ही हो सकती है। और इसके साथ अगर आपको मौका मिल रहा है लैन में, देखिए लैन का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। प्लेयर्स थोड़ा नर्वस भी होते हैं, बहुत सारी जो प्लेयर्स हैं वो अपना नेचुरल प्ले नहीं आ पाते हैं, बट उस चीज़ पे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर हम देखें एक टीम हमें नजर आ रही है केरा कोड पे, एंड जी हाँ, एक राउंड से रोटेशन करके पीक पे जाएगी। और अभी पीक अगर आप फाइट रहता ही रहता है, वहाँ पे आपको टीम्स आती नजर आएंगी। जी यहाँ पे हमें नजर आ रही है ओजी और एंगेटान टीम को यहाँ पे लड़ाई चलती हुई, और जिस तरीके से प्रोजेक्टाइल्स का यूज कर रहे हैं ओल्ड मॉन्क काफी चतुराई से। जी उनके पास ट्रोगन गन थी, उसके ग्रेनेड्स यहाँ पे पूरी तरीके से यूज किए जा चुके हैं एंड अटेम्प्ट कर रहे थे एटलीस्ट जो उनके एनिमी उनको डैमेज जरूर से दे सकें। साइबर 420 भी अपनी पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे ओजी अभी इस टाइम पे गेट किप हो सकती है, बट अभी भी चांसेस हैं। जोन ज़्यादा डैमेज नहीं दे रहा है, आप साइड से रोटेशन कर सकते हैं, बट फाइट्स में एंगेजमेंट दिखाई जा रही है। पहाड़ी ऑलरेडी अगर हम बात करेंगे स्नाइपर के साथ नजर आने वाले हैं। M24 का प्रयोग करा जाएगा, साथ में बैक 10 होने वाली है। वेपन ऑफ चॉइस की अगर हम बात करेंगे तो दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे रेट ऑफ फायर के साथ वेपन आते हैं एंड देखते हैं किस तरीके से प्रयोग करा जाता है। बट इस टाइम पे पहाड़ी 3-1 स्प्लिट होने वाले हैं। पूरी टीम आपको नजर आएगी मास लैक्टिक्स पे एंड पहाड़ी इकलौते होने वाले हैं जो फैक्ट्री पर नजर आएंगे। बात करेंगे TSC के बारे में। देखिए एग्रेशन शो करना इस टीम ने इनिशियली स्टार्ट कर दिया है। अभी अगर हम बात करेंगे फॉरेस्ट एप्स को इन्होंने तो लॉबी करा, बट अगर हम बात करेंगे उसके बाद टीम धीरे धीरे करके आगे मूव कर रही है और ऑलरेडी जो लूट का जो सिलसिला वो बढ़ाते हुए जा रहे हैं। जितनी लूट मिल सके उतनी कम है एंड अच्छे से अच्छा रिसोर्स जब आपको मिलेगा तो आपकी परफॉर्मेंस भी और अच्छे से निकल के आएगी। और हम कोई दूसरी टीम की बात नहीं कर रहे, TSC बात करेंगे यहाँ पे 4 एरर्स के बारे में। देखिए किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, देखने वाली बात है। बट इस टाइम पे मूव करा आगे जा रहा है एंड कैपटाउन से निकलते हुए जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि कैपटाउन में टीम्स नजर आ रही हैं, बट अब ऐसा लग रहा है कि अब जो मुलाकातें हैं उनका सिलसिला बढ़ने ही वाला है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोग ऑब्जर्व करें कुछ टीम्स थोड़ा सा आउटर एज पे खेल रही है, लेट रोटेशंस कर रही है। उनको पता है थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, अगर वो सर्वाइव करेंगे किल्स निकल आएगी। लेकिन 4 अननोन देखिए वही अपना नेचुरल जो गेम प्ले है वही सेम पैटर्न पे खेलती नजर आ रही है और स्पॉट यहाँ पे होल्ड किया जा चुका है। हेड हंटर्स एक अच्छी लोकेशन पे नजर आ रही है भीमा शक्ति स्ट्रिप के पास, वहीं पे आगे होल्ड रिवाइव हो जाएंगे। जब भी सर्वाइव कर रहे हैं टीम को वापस से कर सकते हैं। हालांकि आपको वापस गैदर करने में मुसीबतें आ सकती हैं, क्योंकि एक बार आपके हाथ से रिसोर्सेज जाती है तो दिक्कत हो जाती है।
बेहद हमें नजर आ रही है। जी हाँ, टीएससी थोड़े खतरे में होने वाली है। बैक टू बैक लगातार प्लेयर्स लूज करते हुए जा रही है। क्या यहाँ पे आसान होगा सर्वाइवल? क्योंकि देखिए अगर हम बात करेंगे इनिशियली आपने जैसे खुद बोला कि यहाँ पे आप एलिमिनेट होकर रिवाइव हो सकते हैं, बट लूट गैदर करना, सेम रिसोर्सेज को लेके आना एक बहुत बड़ी बात है। थोड़ी देर पहले जंप करते हुए कुटलिस्ट बस वो निकल के गए थे हमारी ऑपोनेंट, एंड देन वहाँ पे जाकर कुछ प्लेयर्स एलिमिनेट हुए। देखने वाली बात है क्या होगी। बट अगर हम बात करेंगे इस समय पहाड़ी थोड़ा सा अगेन अलग नजर आएंगे एंड थोड़ा स्प्लिट प्ले कर रही है ओजी। देखते हैं किस तरीके से इनकी फेवर में ये सिचुएशन जाती है। 4 एरर्स, थोड़ा अर्ली प्लेयर्स को लूज करा था, बट उसके बाद टीम थोड़ा पैसिव खेलने की कोशिश कर रही है। क्या सर्वाइवल आसान होगा? जी नहीं, क्योंकि हर दूसरी टीम आपको हर दूसरी टेरिटरी में नजर आएगी। कोई लैंडमार्क आपको ऐसा खाली नजर नहीं आने वाला है। 4 अननोन जो अक्सर हमारी शिपयार्ड पे उतरती है वो वापस इस शिपयार्ड की तरफ मूव कर रही है। देखिए कोई एमवीपी बने ना बने, बट हर बार मैं एक बात कहता हूँ, आप भी कहते हैं कि यहाँ पे जोन सबसे बड़ा एमवीपी है। वो आपको विवश करता है, वो आपको धकेलता है आगे कि आप आइए फाइट कीजिए। आरटीपी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, एंड इस टाइम पे वो नजर आएंगे ग्रेव यार्ड की रूफटॉप के ऊपर। देखते हैं यहाँ से किस किस की ग्रेव खुदने वाली है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पैसिव खेल रही है टीम से, जिस तरीके से हमको यहाँ पे चाहे या फिर फेजेस में काफी हटके पे नजर आ रहा है। टीम्स अपनी एक लोकेशन पिक कर रही है एंड वहाँ पे होल्ड कर रही है अंटिल अनलेस आपने बोला ही उनको पुश करते हैं वहाँ से निकलने के लिए, बट यहाँ पे स्पॉट किया गया है और एसपीडी यहाँ पे कमाल जरूर करेगी, स्ट्रगल भी साथ में कोशिश करते हुए, बट अगेन कोशिश की जा रही है एक नॉक निकालने के लिए कि जब तक नॉक नहीं निकलेगा तब तक इतना आसान नहीं होने वाला है। और यहाँ पे आरटीपी जो है अभी देखिए अलग अलग जगह पे नजर आ रही, सामने होने वाली है रशियन ईस्पोर्ट्स। तो ये फाइट होने वाली अंडर गॉड वर्सेस अंडर गॉड। एक तरफ है हमारी रशियन ईस्पोर्ट्स, तो दूसरी तरफ है आरटीपी। दोनों ही टीम ने खुद को मौका आने पे प्रूव किया हुआ है। नाउ वी आर एट अ टीम की रुकती नहीं थमती नहीं है, ये है वर्ड ऑफ बैटल। बट अभी मुसीबत में देखिए एक टाइम पे हम कई डायरेक्शन में फाइट्स नजर आ रही है, चाहे हम वर्ड ऑफ बैटल की फाइट की बात करें जहाँ पे सासुके को खो दिया है, अपने स्नाइपर को खोने के बाद बहुत जरूरी है। सासुके को रिवाइव किया जा चुका है, बट शॉन्टी की प्रेजेंस अभी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे रश करना पड़ेगा, देखिए जो रशर्स होते हैं अगर वो थोड़ा पीछे रहेंगे। एक ऐसे प्लेयर जिनके वन टैप हेडशॉट की बात करें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, एंड उसी के साथ इनसेन एक ज़बरदस्त रशर। तो यहाँ पे क्या इस फाइट को जीत पाएंगे? देखिए किल्स निकाली जा चुकी है, 2 किल्स यहाँ पे इनसेन के पास है, हर्ष के पास भी 1 किल होने वाली है। WOB वर्ड ऑफ बैटल जो है बहुत अच्छी लय में नजर आ रही है, मोमेंटम बरकरार है, बट क्या आरटीपी यहाँ पे इस पोजीशन से अच्छा प्लेसमेंट और किल निकाल पाएंगे? देखिए ये होता है प्रेशर। देखिए यहाँ पे टीम्स ना जानती हैं कि ये प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है एंड उस प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, इसीलिए अभी थोड़ा सा पैसिव प्ले कर रही है। वक्त आने पे यहाँ पे कुछ अलग दाव भी खेले जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बैक टू बैक प्लेयर्स लूज करते हुए जा रही है टीम्स। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हेड हंटर्स हमारे साथ होने वाली है। देखिए कुटलिस्ट वहाँ पे नजर आने वाले हैं एंड जल्दी नहीं मूव करेंगे यहाँ से। थोड़ी देर पहले ये टीम हमें पीक पर नजर आएगी इनिशियल मैचेस के इनिशियल फेज के अंदर गेम की, एंड इस टाइम पे बात करेंगे कमाल के प्लेयर होने वाले हैं। इस टाइम पे पूरी की पूरी टीम कुटलिस्ट वापस जोन के एज पे पार्टी तो करेंगे, बट गेट कीप भी कर सकते हैं। एंड हेड हंटर्स अपने के लिए जानी चाहती है, एग्रेशन शो करती है टीम, बट टाइम आ यहाँ पर किस स्ट्रैटेजी का प्रयोग करना है। आरटीपी काफी अच्छे से अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं और साथ दे रहा था, बट आपको आगे धकेलेगा जोन और आपको आगे मूव करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप आगे मूव करेंगे तो मुसीबतें खत्म नहीं होगी। बट देखिए मैं अक्सर इनको शकुनी माहो भी कहता हूँ यूएवी को, पर इस समय यहाँ पे यूएवी आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है, और अगर यूएवी आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है, अगर वो एनिमी यूएवी है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, बट इनका यूएवी हेड हंटर्स की लोकेशन को रिवील आउट कर देगा। जी हाँ, ऑलरेडी प्लेयर मार्क होने वाले हैं। ब्लैक के बारे में बात करेंगे, वो यहाँ पर नजर आएंगे। देखते हैं कि ब्लैक की साइड से क्या प्लेयर आता है, कमाल के प्लेयर होने वाले हैं। रिसेंटली मैं इनका पीओवी देख रहा था, मोबाइल पीओवी, एंड जो इनकी फिंगर्स की मूवमेंट स्पीड थी, मैं एक्चुअली पता चलता है कि टैलेंट और पोटेंशियल प्लेयर्स के अंदर कितना ज्यादा है। और देखिए लैन आपका गन पावर, यहाँ पे टीम वर्क ही नहीं आपका ब्रेन प्ले भी दिखाती है। आप किस तरीके से साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करते हो खुद को, ये चीज भी दर्शाती है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप चोक करते हो तो वो वहां पे पूरा गेम में अभी तक जो आपने एफर्ट्स डाले हैं वो भी निखर सकते हैं। जी हाँ, यहीं अगर हम बात करेंगे रशियन ईस्पोर्ट्स के बारे में, थोड़ी देर पहले ये किसी ने इनकी बाउंड्री ली थी, और देखते हैं कि यहाँ पर सर्वाइवल करने
करने वाले हैं प्लेयर और आगे प्लेयर को स्पॉट कर लिया गया है एंड इस टाइम शायद से वो आरटीपी होने वाली है क्योंकि सामने से मूव कर रहे थे और ग्रेवयार्ड से थोड़ा आगे मूव करते हुए, पर अब समय आ चुका है एग्रेशन को एक लेवल अप करने का। बिल्कुल, देखिए जोन छोटा होता जा रहा है और वक्त के साथ हमको यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूस नजर आने वाला है। शॉन्टे यहाँ पे लॉन्च पैड का यूज करके सीधे आ जाएंगे ऑब्जर्वेटरी में, और क्या वो किसी टीम के आसपास गिरेंगे क्योंकि देखिए जोन बहुत छोटा है, आप कहीं भी यहाँ पे प्लेयर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि प्लेयर्स काफी ज्यादा लाइव है। 27 प्लेयर्स अभी हम देख सकते हैं एंड वर्ड ऑफ बैटल काफी सूझबूझ से खेलती हुई नजर आ रही है। हर्ष एलिमिनेट हो चुके हैं, उनको रिवाइव देना जरूरी है। स्नाइपर से यहाँ पे क्या सोच के शॉट कनेक्ट करेंगे, एक शॉट मिस किया, दूसरा शॉट भी यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश, लेकिन समाउ मिस करके 150 का डैमेज एंड लीजेंड नॉक किया जाएगा। केडी को नॉक कर जा चुका है। टीम हिंद वर्सेस वर्ड ऑफ बैटल हमको देखने को मिल रहा है। आरटीपी दूसरी तरफ किल्स निकालती हुई, सासुके अपनी रफ्तार से खुद को बचाने की कोशिश करेंगे लेकिन ट्रोगन के सामने नहीं टिक पाएंगे एंड आरटीपी किल्स निकालेगी और वर्ड ऑफ बैटल थोड़ा सा यहाँ पे अब पैसिव प्ले पे जाएगी क्योंकि जब एग्रेशन आप तब दिखा जब आपके मैन पावर रहती है। यहाँ पे आपके प्लेयर्स जब लूज होते हैं देन अगेन आपको जो आपका प्ले स्टाइल वो चेंज करना ही पड़ता है। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे प्ले स्टाइल आपको अपना चेंज करना पड़ेगा, बट फाइनली कैमरे में मैंने अभी फर्स्ट टाइम देखा एजी को। जी हाँ, ये टीम अपने पैसिव प्ले के लिए जानी जाती है, ये टीम टाइम पे ही सामने आती है और जी हाँ, इस टाइम पे चारों प्लेयर्स को सर्वाइव करते हुए आगे आ चुका। 23 प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं और अगर हम बात करेंगे LVL 72 के बारे में, कमाल के प्लेयर होने वाले, कमाल का कैलिबर भी इस प्लेयर के अंदर, बट इस टाइम पे देखिए जोन से बाहर निकलना जरूरी है क्योंकि अब समय हो चुका है। जोन में अगर आप लंबा रहेंगे तो जोन आपको डसता हुआ जाएगा, आप पे लगातार डैमेज बढ़ता हुआ जाएगा। जोन का हेडहंटर हमारे सामने होने वाले, देखने वाली बात है किस तरीके से होगा। शंकु आगे जी हाँ, यहाँ पे अर्श भी अपनी साइड से किल लेने का ट्राई करेंगे। शंकु यहाँ पे सर्वाइव करने वाले हैं और डाउन हो चुका है, डिवाइन डाउन हो चुका है। लिखिए एक और प्लेयर को डाउन करेंगे। शंकु गेम के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, तुरंत किल वॉल लगाई जाएगी, प्लेयर्स को रिवाइव किया जाएगा, किल कंफर्म किए जाएंगे। रशिया esports ने अपने लॉयर को लूज कर दिया और इसी के साथ ही साथ रशिया esports अपने एक और प्लेयर को लूज करते हुए पूरी टीम वाइप आउट हो जाएगी। जी हाँ, आरटीपी भी सर्वाइव करने वाली है एंड थोड़ी देर पहले ये भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट इस टाइम में कमाल के स्नाइपर के शॉट आने वाले हैं। यहाँ पे ये पलट सकता है। मन्नू समझ रहे हैं कि उनका रोल क्या है। पूरी टीम यहाँ पे एक नेट की मोहताज है, अगर किसी ने कमाल की नेटिंग करी तो पूरी टीम जा सकती है। पर कौशिक मलिक कमाल के आईजीएल हैं एंड इस टाइम पे पूरी टीम को सर्वाइव करते हुए लास्ट जोन में लेकर गए 10 प्लेयर्स सर्वाइव कर रहे हैं और स्नाइपर है अपने रूल्स बखूबी निभा रहे हैं। कौशिक मलिक विद स्नाइपर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक तरफ है आरटीपी तो दूसरी तरफ है esports एंड यहाँ पे इस मैच को जीतना चाहती हैं, बट क्या उनके यहाँ पे फाइट के बीच में कोई और आएगा या नहीं, क्योंकि हेडहंटर्स के शंकु भी सर्वाइव कर रहे थे, उनको यहाँ पे एलिमिनेट किया जाएगा। क्या हेडहंटर्स पूरी तरीके से एलिमिनेट हुई है या फिर नहीं? देखिए यहाँ पे ब्रेकी पेट है, उसकी वजह से मार्किंग आ गई है। बादल को पता है उस बॉल के पीछे एनिमी होने वाले हैं एंड जिस तरीके से यहाँ पे कोरा गेमिंग खेल रही है, आई थिंक ये भूया जरूर निकाल सकती है, पर इतना आसान नहीं होगा। हर एक टीम अपनी पुरजोर कोशिश करती हुई। आरटीपी के बादल कमाल का प्ले दिखा रहे हैं, इनके पास चार्ज बस्टर होने वाली है एंड वी नो लास्ट जोन में चार्ज बस्टर कितनी ज्यादा घातक साबित हो सकती है, बट नहीं, उनको रोका जाएगा मनीष से एंड एक और नॉक यहाँ पे निकाला जाएगा। मन्नू बिल्कुल अकेले बचे, इज द लास्ट मैन, बट यहाँ पे क्या वो इस किल को कंफर्म करेंगे? जी बिल्कुल, किल कंफर्म की जाएगी। एक एक किल की कितनी वैली है? 1 वर्सेस 1 फाइट। यहाँ पे एक तरफ होने वाली आरटीपी, दूसरी तरफ होने वाली है यहाँ और गेमिंग। कौन जीतने वाला है? जी हाँ, यहाँ पे होने वाले अंशु और दूसरी साइड होने वाले आरटीपी का प्लेयर। देखने वाली बात है लगातार ग्रेनेड्स और यहाँ पे थ्रोवेल्स का प्रयोग करा जा रहा है। जी हाँ, यूटिलिटी प्ले बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, बट अगर टाइम पे यूटिलिटी प्ले हो तो यहाँ पे क्लच और मोमेंट्स भी निकल सकते हैं। अंशु इस टाइम पे फुल हील के साथ होने वाले हैं, फुल एचपी के साथ होने वाले हैं, पीछे से डैमेज दिया जाएगा, आगे मूव करा जाएगा। देखने वाली बात है मन्नू किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, ग्लू लगा कर खुद को पैक किया है और यहाँ पे अंशु अभी भी बने हुए हैं। देखने वाली बात है अंशु क्या यहाँ से गेम में बुया निकाल पाएंगे या फिर गेम पलट जाएगा, आरटीपी के खाते में जाएगा, आगे चार्जिंग करा जाएगा दोबारा से एंड इसी के साथ ही साथ फर्स्ट गेम esports प्रीमियर सीरीज का बुया निकालती है और esports। जी हाँ, कमाल का परफॉर्मेंस अंशु समझते हैं और देखिए 10 लाइक्स प्लेयर्स ने दिया इनको क्योंकि कमाल का प्लेयर और गेमिंग समझती है कि किस तरीके से क्लचेस निकाले जाते हैं। पैसिव प्ले टू अग्रेशन, नंबर्स को बचा के रखा एंड जी हाँ, मैं जैसे कि बोल रहा था कि लैन साइकोलॉजिकली भी आप खेलते हैं, फायर पावर ही नहीं, आपका ब्रेन टाइम पे एक्टिव होना चाहिए और करेक्ट टाइम पे आपकी डिसीजन मेकिंग काफी कुछ चेंज कर सकती है। देखिए आपने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की बात करी है और ऑरा esports अभी एक ऐसी टीम है, मुझे ऐसा लगता है इनकी डिसीजन मेकिंग ना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गई है। आप इनको हमेशा लास्ट जोन में पाओगे सर्वाइव करके, रोटेशन एकदम परफेक्शन के साथ लेते हैं,
बट देखिए यहाँ पे ज़रूर अंशु ने बुया दिलाया है और ई स्पोर्ट्स को, मगर मैं तारीफ करूँगा यहाँ पे आरटीपी की। आरटीपी के बाद मन्नू जैसे स्नाइपर है जिनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे उन्होंने ये 1 वर्सेस 3 सिचुएशन को टैकल आउट कर लिया था। एंड अगर वो एक और किल निकाल लेते, वो 1 वर्सेस 1 फाइट निकाल लेते, तो शायद काइंड ऑफ इम्पॉसिबल चीज़ वो कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है लास्ट जोन में देखिए आप 1 वर्सेस 3 इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो आपके ऊपर जोन का प्रेशर होता है, आपके पास टाइम बहुत कम है, आप उस फाइट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। बट मन्नू बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्ले उनकी तरफ से देखने को मिला। जी हाँ, आरटीपी को हमने शुरू से देखा एक परफेक्ट पोजीशन पे भी थे, लकी भी रहे जहां वो उतरे, ग्रेवयार्ड से ज़्यादा रोटेशन निकाला। बट हाँ, आप जब एक ऐसी जगह पे होते हो ना, एक सेफ पोजीशन पे होते हो, तो कहीं ना कहीं कभी कोई मन करता है, लालच करता है, चलिए किल्स निकालते हैं, और उस बीच में अपने प्लेयर्स को भी लूज कर देते हो। पर हाँ, आरटीपी ने ट्रिगर डिसिप्लिन भी शो करा कि नहीं, हम अपने प्लेयर्स को लास्ट में लेके चलेंगे, और आपको उसका बोनस मिलेगा, प्लेसमेंट पॉइंट्स के अंदर जो आपको बोनस मिलेगा वो अलग है, आपने किल्स निकाले वो अलग है। जरूर एजी ने यहाँ पे और ई स्पोर्ट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, बट हम दूसरी टीम्स को नहीं बोल सकते। हेड हंटर्स काफी अच्छा प्ले डाला, टीएसजी वो पहली टीम थी जिन्होंने यहाँ पे फॉरेस्ट इप्स को यहाँ पे एलिमिनेट करा। बट हाँ, टीएसजी थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट रहती है कि लंबा सर्वाइवल नहीं निकल पाता, बट कमाल का यहाँ पे प्ले नजर आया टीएसजी की तरफ से भी। हर दूसरी टीम अपना ट्राई हार्ड करके गई है। ओजी के बारे में बात करेंगे, कमाल का प्ले डाला। बट देखिए अभी तो पहला गेम हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल, देखिए पिक्चर बाकी है, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे जो लोकेशंस है उनको ऑक्यूपाई किया जा रहा है, और होल्ड प्ले थोड़ा सा हो रहा है, पैसिव खेलना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी टीम ना गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि देखिए 10 मैचेस ज़रूर हैं, एग्रेसिव भी खेल सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव खेलने के चक्कर में यहाँ पे अर्ली एलिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है। एंड फॉरेस्ट एप्स को वो चीज़ यहाँ पे करनी पड़ी भी है, बिकॉज टीएसजी देखिए एक ऐसी टीम है जो काइंड ऑफ बहुत एग्रेसिव खेलती है, वन ऑफ द फैन फेवरेट टीम है, एंड एग्रेशन भी उतना ही रखती है। और थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन देखिए क्लोज रेंज में अगर टीएसजी की फाइट होती है तो उनके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज टीएसजी के पास जो रशर्स है, क्रिश है, देन लेजेंड है, जो कि बहुत हेल्प करते हैं। एंड अगेन सिद्धार्थ के बाद जब डबल स्नाइपर रहती है तो हेल्प ज़रूर मिलती है। बट इस गेम के जो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स रहेंगे वो तो डेफिनेटली आरटीपी मन्नू रहेंगे, बट एक जो टीम सिनर्जी निकल के आई और ई स्पोर्ट्स की तरफ से वो बहुत कमाल की थी। जिस तरीके से यहाँ पे कौशिक मलिक ने टीम को लीड किया है, अमेजिंग। मतलब इस तरीके से प्ले करेंगे तो शायद बाकी टीमों के लिए एक स्टेटमेंट हो जाएगा कि इनको हराना मुश्किल है। देखिए नंबर्स बचा के चलना जरूरी है। देखिए हम आपने ये बात कही थी कि हम रिवाइवल कर सकते हैं, बट अगर जो लूट आपने शुरू से लेकर के शुरू के 5 मिनट 6 मिनट में लूट करी है, वही अगर आप लूज कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डिसएडवांटेज बनेंगे। और ई स्पोर्ट्स समझ रही है इस चीज़ को, एंड बाकी सारी टीम्स भी थोड़ा समय आने दीजिए। देखिए लैन का पहला गेम, ऑलवेज कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये टीम जीत रही है वो टीम हार रही है। आप थोड़ा टाइम दीजिए टीम्स को, अपने यहाँ पे इंजन को चालू करने दीजिए, देन उसके बाद आपको कुछ अलग मंजर में नजर आएगा। और टीएससी की जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे लेजेंड जैसे कमाल के आपको रशर प्लस आईजीएल, जो यहाँ ये क्वेश्चन, एक रशर कैसे आईजीएल हो सकता है और वो कमाल का अग्रेशन भी दिखाएगा आपको। जी हाँ, और अगर हम बात करेंगे तो हर दूसरी टीम अपना अच्छा ट्राई हार्ड डाल दिया। 4-on-1 के बारे में बात करेंगे, देखिए ये टीम हमें नजर आई, शिपयार्ड पे थी, शिपयार्ड से थोड़ा कुटलिस्टिवा आई, कुटलिस्टिवा से वापस से शिपयार्ड गई। बट देखिए जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं छोड़ती हैं। हिंद के बारे में बात करेंगे, टीम हिंद कमाल की टीम होने वाली है। हेड हंटर्स, जी हाँ, हेड हंटर्स के साथ उन्होंने स्पॉट करा, यूएवी टू यूएवी फाइट चल रही थी। कहते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम बात करेंगे फ्री फायर मैक्स जैसे गेम के अंदर, आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। एंड यूएवी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, ड्रेकी जैसे पेट इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, प्लेयर की लोकेशन रिवील करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम देख रहे हैं यूटिलिटी प्ले, मेटा के साथ परफेक्ट यूज, सभी चीज़ें टीम्स टाइम पे एग्जीक्यूट कर रही हैं, सही तरीके से एग्जीक्यूट कर रही हैं। एग्जैक्टली इवन हमने देखा था डायनाकुलर पेट का भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया गया, स्पेशली जो स्नाइपर प्लेयर्स हो, जैसे अगर ओरेंगटान की बात करें तो हम अक्सर देखते हैं पहाड़ी जो है वो पहले ही जो लोकेशंस है वो क्लियर कर देते हैं कहाँ पे कौन टीम है या फिर नहीं है, सो दैट जो उनके रशर्स है वो वहाँ पे जाके वो चीज़ कैप्चर कर सकें, या अगर वहाँ पे प्लेयर का नंबर कम होता है तो ईजी उन पे रश करके ख़त्म कर सके। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकल प्ले हमको देखने को मिला है टीम्स की तरफ से। एंड वो हो भी क्यों ना, देखिए जो भी टीम्स यहाँ पे आई हैं वो बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम्स हैं, ये इंडिया की बेस्ट टीम्स में से है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको उनकी तरफ से जो प्ले होगा वो बहुत यूनिक देखने को मिलेगा। एंड जी हाँ, ये जो पहला मैच था इसने हम लोग को एक चीज़ ज़रूर बता दी कि देखिए लैन जो है ना वो बाकी से बहुत अलग है। आप अगर नॉर्मल प्ले स्टाइल देखो, प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा खुल के खेलते हैं,
बट देखिए यहाँ पे स्टेक पे क्या है, जो प्राइस पूल है आप जानते हैं कितना मैसिव है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट आ जाते हो तो 2.5 लाख जैसा बड़ा प्राइस पूल आपको मिलेगा। एंड देखिए सिर्फ प्राइस पूल की बात नहीं है, प्राइड की बात है, बिकॉज लैंड का जो एक्सपीरियंस है वो लेना ही एक अलग चीज़ है। मेरे पीछे आपको ट्रॉफी नजर आ रही होगी, वो ट्रॉफी सबसे बड़ा प्राइज है। जी हाँ, आप खेलते हैं प्राइज के लिए, और भी चीजें होती हैं, पर ट्रॉफी जब घर आती है ना, उसका मजा अलग होता है, उसका एहसास अलग होता है। आप जितने बार उस ट्रॉफी को देखेंगे ना, आप कहेंगे यार ये लैन हमने खेला, ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज हमने खेली थी एंड हमने इसको निकाला था। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ, ट्रॉफी पे हमारा काम आ चुका है। देखिए किस तरीके से शाइन कर रही है। कौन नहीं चाहता ये ट्रॉफी उनके घर आए, कौन नहीं चाहता ये ट्रॉफी मेरे को मिले। आई भाई आपको मिले, मुझे मिले, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। पर एट दी एंड जितने भी प्लेयर्स हैं, 48 प्लेयर्स यहाँ पे हमारे सामने नजर आने वाले हैं। देखिए अब ना माहौल थोड़ा थोड़ा गरमाने लग गया है, प्लेयर्स को देखिए थोड़ा थोड़ा टेंस होते जा रहे हैं, पर जरूरी नहीं यहाँ पे आप थोड़ा सा टेंशन लें। देखिए इजी फ्री, क्योंकि अभी भी 9 गेम्स आपके पास बचे हुए हैं, आप बाजी पलट सकते हैं। एंड बाजी पलटने के लिए तो एक गेम भी काफी है। बिल्कुल, देखिए बाजी पलटने में यहाँ वक्त नहीं लगता है, और आप अगर ध्यान देंगे ना, यहाँ पे प्लेयर्स अपनी स्ट्रैटेजी पे चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बहुत सारे प्लेयर्स जो अर्ली एलिमिनेट हुए हैं वो स्ट्रैटेजी जरूर चेंज करेंगे, बट अभी यहाँ पे हम बढ़ चुके हैं हमारे दूसरे मैच की तरफ, जो कि है कालाहारी। कालाहारी हमें पता है कि एक अलग एलिमेंट लेके आता है, इसमें वर्टिकैलिटी के रेस्पेक्ट होते काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एंड क्या आप रिफाइनरी की बात करें, देखिए रिफाइनरी की बात करिए तो मे भी हमको रिफाइनरी पे एक क्लैश देखने को मिल सकता है ओरंगेटान और 4 अननोन का, बिकॉज दोनों के ही यहाँ पे जो ड्रॉप लोकेशंस है वो यहाँ रिफाइनरी होने वाले हैं। बट डेफिनेटली देखिए यहाँ पे आपने जैसा बोला ना कि मौके बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो अर्ली क्लैशेस किसी भी टीम के ऊपर महंगा भी साबित हो सकता है कोई टीम यहाँ पे अपना ड्रॉप लोकेशन चेंज भी कर दे। एंड जी हाँ, यहाँ पे फाइट हो चुकी है, कोई भी ड्रॉप लोकेशन चेंज नहीं हुई है। हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओरंगेटान वर्सेस 4 अननोन, वो भी रिफाइनरी पे। कुछ ही पलों में हम विटनेस करने वाले हैं एक लेजेंडरी फाइट। एक तरफ है ओरंगेटान जो कि है रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ ई स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज। पिछले सीजन में जानते हैं कि आप किस तरीके से ओरंगेटान ने ये ट्रॉफी उठाई थी, बट अपनी ट्रॉफी अपने टाइटल को डिफेंड करना है तो आज यहाँ पे उनको हर एक फाइट निकालनी होगी। और सामने एक ऐसी टीम है जो अभी फुल फॉर्म में चल रही है, 4 अननोन, कमाल की टीम। स्पेशली आप देखिए फरहान के एड ऑन के बाद जो फायर पावर इस टीम का है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो देखना होगा किस तरीके से यहाँ पे फाइट कैरी ऑन करते हैं। साइबर 420 को वापस से रिवाइव मिल गया है, ओजी यहाँ पे थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस जरूर आ रही है। ओल्ड मॉन्क की बात करें, एक अलग लोकेशन पे है एंड प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश करें। जी हाँ, अभी फाइट स्टार्ट हुई है और हमें क्लैशेस नजर आ रहे हैं। ओल्ड मॉन्क प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं लॉन्च पैड का प्रयोग करते हुए, एंड लग नहीं रहा कि 4 अननोन को नीचे जाने देंगे। ओल्ड मॉन्क नीचे उतर चुके हैं, फॉल्ट डैमेज पड़ेगा बट इतना ज्यादा नहीं। हीलिंग करेंगे यहाँ पे, हीलिंग को डाउन करा जाएगा और क्या यहाँ पे उनको बचाया जाएगा? जी नहीं, ओल्ड मॉन्क 2 किल निकालते हुए शानदार परफॉर्मेंस। ओल्ड मॉन्क दर्शा रहे हैं कि उनके पास क्या कैलिबर है। आप देखिए यहाँ पे आपके पास जय है, बट ओल्ड मॉन्क वो रिलायबल प्लेयर है जिनके आप रिलाय कर सकते हैं कि हाँ हमारे पास ये प्लेयर है, ये करके दिखाएगा। बात करेंगे लॉयर के बारे में, देखिए किल्स निकाल रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि लॉयर अपनी टीम की तरफ से कमाल दिखाएंगे, दर्शक वहां पे किल निकालेंगे। कहीं ना कहीं सिनर्जी स्पोर्ट्स LLBL 72 के ऊपर TSG हमारी स्क्रीन के सामने होने वाली है। देखते हैं क्या प्लान होगा। द मेज भूल भुलैया नहीं, ये है कालाहारी, और यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि अगल बगल कोई टीम ना हो। अगर अगल बगल कोई टीम हुई तो चांसेस हैं कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जी हाँ, क्रिश हमारे सामने होने वाले हैं, और देखिए मैं जानता हूँ क्रिश को छेड़ा जाता है उनकी टीम में काफ़ी ज़्यादा। मैंने लेजेंड से भी सुना कि लेजेंड काफ़ी परेशान करते हैं उनको, मजाक करते हैं उनसे, मस्ती मजाक चलता रहता है। पर देखिए मस्ती मजाक के साथ ही सारी टीम जानती है कि देखिए क्लोज रेंज में अगर आप आए तो 1-2 प्लेयर नहीं, 3 नहीं, 4 प्लेयर भी लूज कर सकता है आपके सामने। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे धावा बोल दिया गया है। टीम हिंद यहाँ पे अटैक करती नजर आ रही है। प्लेयर को ऑलरेडी पास किया जा चुका है। देखिए पहले यहाँ पे डिफेक्ट का मार्क था, वहाँ पे डिफेक्ट से मार्क है, नॉन स्टॉप मार्किंग होती जा रही है। एंड जी हाँ, यहाँ पे ग्रैप्लिंग गन्स का यूज किया गया है। बादल को भी यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। साहिल कमाल का प्ले दिखाते हुए एक नॉक ऑफ फिनिश दिखाएंगे। एंड जिस तरीके से टीम खेल रही है, आई थिंक RTP esports को मुसीबत में डाल सकती है। साहिल को 2 किल्स मिल जाएगी। RTP थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, बट क्या RTP स्ट्रगल, अनुभव और मनु यहाँ पे
एक अच्छी पोजीशन निकाल पाएंगे, क्योंकि देखिए वो जिस जोन में अभी हैं, जिस पोजीशन पे वो है बे फ्रंट, एंड आपको पता है बे फ्रंट ऐसे ऐसे इलाकों से घिरा हुआ है, वो एक सेंटर बन जाता है जहाँ पे सारी की सारी टीम्स आती है। वेदर हम श्राइन से बात करें, उधर से भी रोटेशन आते हैं, देन कन्फाइनमेंट से, देन काउंसिल हॉल से, तो बहुत ज़्यादा डेंजर टेरिटरी है वो, वहाँ पे आप ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, बट अगर आप रुकते हो तो आपको कोई ना कोई चैलेंजर वहाँ पे मिल ज़रूर जाएगा। अनुभव की बात करें, देखिए अभी इनके पास जो वेपन्स है वो कुछ खास होने वाले नहीं है, एंड क्लोज रेंज का आप यहाँ पे देखेंगे बस उनके पास यूज ही होने वाली है, एंड उतना ज़्यादा खास काम वो करने वाली नहीं है, क्योंकि हमें पता है अभी बाइसन और गोगन के साथ आप प्लेयर को नॉक नहीं कर सकते। ओ लेकिन हेड हंटर्स पिछले गेम में देखिए हमने भले ही हेड हंटर्स की बात नहीं करी थी, बट हेड हंटर्स का वो क्लच हम कैसे भूल सकते हैं, कमाल का वहाँ पे प्ले दिखाया था, 2 टीम्स को वहाँ पे एलिमिनेट किया था, किल्स अच्छी खासी है हेड हंटर्स के पास भी, एंड अगेन वही जो मोमेंटम है, किल्स का हंगर है वो दिखाती हुई, एंड हेड हंटर मैं कहूँगा एक ऐसी टीम नजर आ रही है जो आई थिंक सबसे ज़्यादा एग्रेसिव खेल रही है। नॉर्मली हम देखिए हेड हंटर्स को ना यहाँ पे बहुत ही आईक्यू के साथ खेलता हुआ देखते हैं, उनके रोटेशंस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड होते हैं, एंड अभी यहाँ पे देखिए वो फ़ायदा उठा रही है, टीम कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, एंड जब पता है जब सामने वाले प्लेयर घबराते हैं ना, उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है। अगर आप अपना नेचुरल प्ले करते हो तो फिर कहीं ना कहीं सामने वाले प्लेयर थोड़ा सा ना प्रेशराइज हो जाते हैं। प्रेशर यहाँ पे देखिए डेफिनेटली है सबके ऊपर, क्योंकि दाव पे बहुत कुछ लगा है, दाव पे आपकी पूरी मेहनत लगी है साल की, बिकॉज ई स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज एक ईयर लॉन्ग चैंपियनशिप है, चैंपियनशिप्स आती हैं जाती हैं, बट पूरे साल आपको होती हुई सिर्फ ई स्पोर्ट प्रीमियर सीरीज दिखती है, एंड अगेन एट लास्ट उसका फल जो है वो कितना मीठा है आप जानते हो। ये लैन इवेंट एक्सपीरियंस करने का जिनको ये मौका मिला है वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि क्या वैल्यू है उसकी, बट वर्ड ऑफ बैटल यहाँ पे नजर आ रही है, सास्के अभी डबल स्नाइपर मिल चुकी है तो किल्स निकाल सकते हैं। जी अभी हमें किल फीड में नजर आया है कि यहाँ पे टीएसजी थोड़े खतरे में होने वाली है, देखने वाली बात है कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए किल फीड भरा हुआ है, एंड अगर बात करेंगे फॉरेस्ट सेप्स के बारे में वो भी किल्स निकालने में पिछली गेम के अंदर अर्ली एलिमिनेट होते हैं, बट नहीं ये मैप लक लेके आता है, ये गेम कालाहारी का आपको वर्टिकल एलिमेंट देगा, ग्रैपलिंग गन एक एडिशन होता है इस मैप के अंदर। अगर हम बात करेंगे भीम के बारे में, देखिए कमाल के प्लेयर होने वाले हैं, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इनको लड़कियों की जरूरत नहीं है चार्ज होने के लिए, अगर इनको मौका मिला आपको एलिमिनेट करेंगे एंड आपको परेशान करेंगे। जी हाँ कमाल के प्लेयर होने वाले हैं भीम। ऐश के बारे में बात करेंगे, देखिए कमाल के ये भी प्लेयर है, देखते हैं आज का प्ले आने वाला है, ऑलरेडी 10 सबके ऊपर होने वाले हैं, सबसे ऊंची जगहों में से एक जगह माना जाता है, बट रिफाइनरी से ऊंची कोई भी लोकेशन नहीं है इस पूरे मैप के अंदर, बट ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे आप होने वाले 10 सबके ऊपर तो आप कई सारी रोटेशंस के ऊपर थर्ड पार्टी कर सकते हैं, ईगल आई व्यू मिलता है आपको, अगर मैप आपका साथ देता है तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग टेरिटरी होने वाली है। 10 सब ऑलरेडी प्लेयर्स ग्रैपलिंग का बहुत अच्छे से प्रयोग करें, सामने प्लेयर स्पॉट किया जगह, जी हां टीएसजी डाउन हो चुके हैं, एंड तुरंत यहाँ पे किल फिनिश करना जगह, बैक टू बैक किल्स निकाले जा रहे हैं, 4 रन डाउन को मौका मिला, एक और प्लेयर को डाउन करेंगे, आयुष डाउन हो चुके हैं, यहाँ पे टीएसजी बेयरली सर्वाइविंग, क्या यहाँ पे रिवाइवल मिलेगा, फरहान हीलिंग कंप्लीट करेंगे, आगे मूव करेंगे, कमाल के प्लेयर होने वाले हैं, एक किल ऑलरेडी खाते होने वाला है, पिछला गेम मिस करा था बूया, बट इस बार शायद नहीं लग रहा है, 4 रन डाउन पेशेंस के साथ खेल लिया, इंतजार कर रहे हैं प्लेयर्स, देखें उनके साथ फाइट ली, ओजी से इन्होंने इनिशियल बैटल ली थी, पर वहां से लेकर प्लेयर्स को रिवाइव करना, लूट वापस से दिलाना और उसके बाद खड़े होकर के टीएसजी से फाइट लेना, उनके प्लेयर्स को एलिमिनेट करना, यहाँ पे काफी मुश्किल रहा, बट किल्स निकाले जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि टीएसजी के पास चांस नहीं है, अभी देखिए तुरंत रिवाइव होंगे, दोबारा रेडी होंगे और फाइट बैक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये फाइट में ना मैं बोलूँगा कि ऑफ गार्ड पकड़ लिया, अननोन ने टीएसजी को ऑफ गार्ड पकड़ लिया, एंड पलक झपकते यहाँ पे 3 प्लेयर्स लॉस हो गए थे, लेकिन यहाँ पे लेजेंड ने सिद्धार्थ को वापस से रिवाइव दे दिया है, एंड जी हाँ ये 2 प्लेयर्स अब किस तरीके से खेलेंगे, और आयुष को ऑलरेडी कहा जा चुका है कि यहाँ पे रशिंग पावर उतनी कम है, मैच आउट कम है, बट दूसरी तरफ 4 अननोन स्किल्स हंग्री टीम यहाँ पे डैमेज देने की कोशिश करेंगे, एंड एक अच्छा एंगल निकाल के बैठी हुई है, वहीं पे बात करेंगे फॉरेस्ट टेप की, जी ऐश की बात करें, देखिए इनसे हम लोगों ने जब बात करी थी तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, एंड ये कमाल का नेड यहाँ पे उनकी तरफ से आया है, एक्सप्लोजिव बहुत अच्छी तरीके से यूज किए जा रहे हैं, वहीं पे ऐश यहाँ पे रश भी लगा देंगे, बाइजन होने वाली है उनके पास, और अभी प्लेयर को स्काउट कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे भीम नॉक कर देंगे, नॉक हो जाएंगे, उनको यहाँ पे रिवाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेवल अप को क्या है यहाँ पे रिवाइव किया जाएगा, और काफी अच्छा कवर यहाँ पे आता है, एंड अगेन बहुत बढ़िया तरीके से खेलती नजर आ रही है।
जी हाँ, बट 3 प्लेयर्स डाउन है। हेमू सर्वाइव कर रहे हैं, हेमू स्नाइपर चला रहे हैं। देखने वाली बात है कि यहाँ पे एमिट नहीं साहिल यहाँ पे बने हुए हैं, 4 किल्स खाते में। प्लेयर्स को तुरंत रिवाइव करा। जगह पॉकेट मार्केट एक ऐसी चीज है, आप इसका प्रयोग कीजिए। आपके पास कॉइन है, किसी भी कोने में बैठ करके अपने प्लेयर्स को वापस से गेम में बुला सकते हैं। पर देखिए गेम अब मिड फेज पे आ चुका है एंड इस टाइम पे अगर हम बात करें पड़े में वर्ल्ड बैटल क्या प्ले करने वाली है। देखिए स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा टीम है एंड इस टाइम पहाड़ी किल्स लेते हुए एंड एक किल खाते में होने वाला है। आयुष यहाँ पर नजर आने वाले हैं। टीएस वापस से खड़ी उतर रही है एंड यहाँ पर लूट्स ली जाएगी, वापस से लूट वापस तैयार करी जाएगी। क्रिश के बारे में बात करेंगे तो उनके पास ग्रोजा और साथ ही चार्ज बस्टर होने वाली है। दोनों के दोनों वेपन्स के अंदर आपको मिलता है कमाल का डैमेज एंड यूटिलिटी प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको वापस स्नाइपर मिल चुकी है। देखिए डीएसजी के अंदर ये जो स्नाइपर है ये गेम चेंज कर सकते हैं एंड हमने देखा है कि सिद्धार्थ जो स्नाइपर हैं अपना जलवा बिखेरते हैं। और नजर आएंगे, देखते हैं कि हाइड हंटर्स के पावर हाउस किस तरीके से प्ले करते हैं वाली है। पर मैंने ये भी सुना है प्लेयर से कि कालारी मैप में हमने कुछ ऐसी प्लानिंग कर रखी है हर दूसरी टीम को परेशान करेंगे। तो कौन सी टीम है जिसकी प्लानिंग यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी और रिजल्ट्स भी आएंगे? एग्जैक्टली देखिए प्लानिंग करना एक अलग चीज़ है और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। एंड यहाँ पे टीम्स को करती नजर आ रही है। आयुष यहाँ पे अगेन कमाल का नॉक निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना तो सूजी कैरेक्टर्स का बहुत सारे प्लेयर्स यूज कर रहे हैं। इसका एक खास रीजन भी है। स्पेशली देखिए पहाड़ी को आप देखेंगे तो वो भी सूजी कैरेक्टर ले रहे हैं क्योंकि पूरी टीम ओरंगुटान का एक मकसद रहता है कि पहाड़ी को ना डबल स्नाइपर दिलाना है और उसके लिए आपको सूजी कैरेक्टर की जरूरत है। क्योंकि जो कॉइन मशीन होती है आपको पता है अगर 2 प्लेयर्स भी कॉइन मशीन पे उतर जाएंगे तो 3 लाइक 600 कॉइन्स तो सबको सॉरी जिसके पास सूजी है उसको 300 कॉइन्स मिल जाएंगे एंड इजीली वो यहाँ पे स्नाइपर निकाल सकते हैं। बिकॉज देखिए अर्ली स्नाइपर निकालना वेंडिंग मशीन से इतना आसान नहीं है और इस लॉबी में जहाँ पे हर एक प्लेयर एक से बढ़कर एक है वो जानते हैं कैसे यहाँ पे पहले ही वेंडिंग मशीन खाली करनी है। बट यहाँ पे आगे देखिए पहाड़ी का सिंगल स्नाइपर जरूर है लेकिन सिंगल स्नाइपर भी यहाँ पे कम नहीं होने वाली है। वॉल्स यहाँ पे लगाई गई है एंड अगेन एंगल निकालते हुए यहाँ पे पहाड़ी क्या हमको एक हेडशॉट देखने को मिल सकता है। फिलहाल स्काउट कर रहे हैं, ही इज नॉट श्योर कि वहाँ पे प्लेयर है या नहीं और मे भी उसी के पीछे प्लेयर होने वाले हैं। बट देखना होगा। पहाड़ी के पास देखिए अभी सिंगल वॉल ही है और सामने हो सकते हैं M8 वाले प्लेयर भी हो तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत भी हो सकती है। बट पहाड़ी नोज की किस तरीके से खेलना है एंड देखिए स्किल्स जो है ना तात्सी आपको बुरी सी बुरी सिचुएशन से निकाल सकती है। अभी के लिए जो काइंड ऑफ सिचुएशन आपको बचा सकता है। जी ये आप अगर हम बात करेंगे टीएसजी भी हमारे स्क्रीन के सामने वाले ओह माय गॉड यहाँ पे आसमान से गिरे हैं। एक कहावत है आसमान से है यहाँ पर अटकना नहीं है, फंसना नहीं है, आपको यहाँ पर उतरना और ग्लू लगाने तुरंत। द वर्ल्ड ऑफ बैटल फाइनली आ चुके बट नहीं सस्पेंड यहाँ पे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है क्योंकि इसके बाद रिवाइवल के चांसेस समय के साथ कम होते जा रहे हैं। चाहे आपके पॉइंट्स हो बट वेंडिंग मशीन ही नहीं रहेगी जोन के अंदर तो आप बचाएंगे किसको? तो यहाँ पे तुरंत रिवाइव दीजिए। यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। देखने वाली बात है बचाया जाता नहीं बचाया जाता बट बात करेंगे वो नजर आने वाले हैं। आरटीवी पिछले गेम के अंदर पोडियम फिनिश के ऊपर गई थी एंड इस बार क्या प्लान होने वाला है? 28 प्लेयर्स गेम के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। मनु यहाँ पे नजर आएंगे। पिछले गेम के अंदर बहुत अच्छा प्ले कर रहा था मनु ने पर इस बार क्या मनु दोबारा से एक अच्छे रिसोर्स दोबारा से साबित होंगे? जी हाँ क्योंकि देखिए जो लास्ट सर्वाइवर होता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है टीम की एंड इस टाइम अगर हम बात करेंगे एलवेल 70 बार हम इस प्लेयर को देख रहे हैं क्योंकि ये प्लेयर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है एंड परफॉर्म करेंगे कुछ ही क्षणों के अंदर हमें पता चलेगा। देखिए जा रहा है जगह काफी कम है एंड लगातार जो मार्किंग में नजर आ रही है आपने बात करी थी। देखिए कॉइन्स का मैटर है, आपके पास कॉइन्स है आप गेम पलट सकते हैं एंड इस टाइम पे यूटिलिटी आपको मिलती है, रिवाइवल आपको मिलता है, दुनिया भर की आपको अटैचमेंट्स मिलती है एंड इस समय देखिए ऑलरेडी आपके पास अगर वॉर चेस्ट है और ज्यादा लूट मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि किसी ने इतनी सारी लूट ला करके एक जगह पर रख रखी है और अब ये लूट सेल में होने वाले पर नहीं ये कॉइन्स का जादू है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा होने वाले हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी टीम हमारी ओजी के पास और लेट्स सी यहाँ से बूयास कन्वर्ट होते हैं नहीं। प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे जोन के सेंटर में पर देखिए सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन अगर बन गए तो बहुत मुसीबत हो सकती है। देखिए मुसीबत तो हो सकती है लेकिन आप देखेंगे ना हर एक प्लेयर के पास उनका पसंदीदा वेपन होने वाला है। आप देखें पहाड़ी के पास स्नाइपर है, जय के पास वुडपेकर होने वाली है, वहीं पे साइबर 420 यहाँ पे ट्रोगन के साथ नजर आ रहे हैं।
तो अभी ओरेंगटान को चैलेंज करना थोड़ा सा मुसीबत डाल सकता है किसी भी टीम के लिए, बट यहाँ पे डैमेज जरूर दिया गया है और जय खुद को हील कर लेंगे। सुपर बैटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है आपको जल्दी से वो आपस फाइट रेडी बनाने के लिए। जय वाइटी अभी एक्शन निकाल रहे हैं, यहाँ पे गेट कीप करने की कोशिश की जा रही क्योंकि स्किल्स है वो सबसे ज्यादा गेट कीपिंग पे मिल सकती है। सेंटर पे है भूया, यहाँ पे ओरेंगटान जरूर से निकाल सकती है, बट क्या यहाँ पे बाकी टीम भूया निकालने देंगे? स्नाइपर शॉट यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्या यहाँ नॉक कर पाएंगे डिवाइन? 2 प्लेयर्स को लो करके रखा जरूर था लेकिन समहाउ वो प्लेयर्स बच के आगे चले जाएंगे एंड आगे डिवाइन ने एक अच्छा एंगल निकाला है, पहाड़ी को नॉक किया गया है। अगेन साइबर 420 उसको हील करेंगे, राइफल मिल चुका है। जोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फेवर कर रहा है ओरेंगटान का भी एंड आई थिंक अगर ग्रैपलिंग गन होगी तो नीचे उतरने में भी उतनी दिक्कत होने वाली नहीं है, बट डिवाइन एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं उनके लिए। जी हाँ, यहाँ पर डिवाइन एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। देखिए डिवाइन कमाल की स्नाइपर चलाती है, डिवाइन पनिशमेंट इसको मिलेगी। जिया हो चुका है, चार्जिंग हो चुका है, पोर्टल्स का प्रयोग करेगा एंड ऑलरेडी पूरी टीम आगे जा चुकी है। अगर हम बात करेंगे जो चार्जिंग करेंगे लेकिन वहाँ पे होने वाले हैं देखने वाली बात है हेड हंटर्स या यहाँ से ओजी के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा क्रिएट करेगी। देखिए और ओजी ऑलरेडी काफी ज्यादा मुसीबतें फेस कर रही है, उसको लगातार डाउन कर चुका है, ओल्ड बॉम्ब डाउन हो चुका है, जेवाई डाउन हो चुका है एंड अगर हम बात करेंगे लुइस ओल्ड बॉम्ब पे डाउन करेंगे। दूसरी साइड अगर बात करेंगे हिंद आ चुकी है इस फाइट के अंदर, रशिया एस्पोर्ट्स यहाँ होने वाली है। बात करेंगे प्रतीक के बारे में, नेट्स आगे आगे थ्रो करा जाएगा, यहाँ पे लूट उठाई जाएगी वापस से, ब्रॉन्ज M79 होने वाला है। अगर हम बात करेंगे बादल के बारे में वो नजर आएंगे, बॉल्स लगा देगी। सबसे बढ़िया जगह है इस टाइम पे यहाँ पे टीम के पास, देखते हैं कि उसका किस तरीके से प्रयोग करा जाता है। हिंद यहाँ पे 4 प्लेयर्स से सर्वाइव कर रहे, देखिए अगर हिंद के पास 4 प्लेयर्स है तो वो गेम पलट सकता है, बट विकी के बारे में बात करेंगे सिडाक को डाउन करा जाएगा, प्रतीक को भी डाउन कर देगा। अपने 3 अपने प्लेयर्स को यूज करके जा रही है। हिंद यहाँ पे नजर आने वाली है, लेट्स सी इस तरीके से पेशेंस के साथ यहाँ पे गेम पलटा जाता है। जोन लगातार छोटा होता जा रहा है और अब आपके पास कोई भी वेंडिंग मशीन नहीं है तो रिवाइवल को कोई चांस नहीं है। 16 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, केडी के खाते में 3 किल और टीम हिंद इस टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। बिल्कुल यहाँ पे टीम हिंद स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, लेकिन वो जो कॉन्कर करा है उस प्लेटफॉर्म को ओरेंगटान से उतना आसान नहीं था। यहाँ पे हेड हंटर्स अभी एक अच्छी पोजीशन पे जरूर है, बट आरटीपी की बात करेंगे वो हमें स्कोर के बाद नजर आ रही है। पहाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ओ माय गॉड व्हाट अ प्ले बाय पहाड़ी, यहाँ पे हाई आईक्यू प्ले देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पे हमको कुछ अलग गेम प्ले देखने को मिलेगा? पहाड़ी अभी भी हमें नजर आ रहे हैं, प्लेयर को स्पॉट किए हुए हैं, बट पेशेंस इसे बोलते हैं, ट्रिगर डिसिप्लिन। बिल्कुल ओथो की स्किल्स एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए ये ओथो कैरेक्टर जो है ना यही सबसे बड़ी मुसीबत बना है यहाँ पे ओरेंगटान के लिए, बट ओ ये गलती हो गई, यहाँ पे खुद की पोजीशन एक्सपोज जरूर कर देंगे। पहाड़ी फिलहाल एक कमाल का प्ले दिखा रहे हैं एंड इसको बोलते हैं हाई आईक्यू गेम प्ले। अभी तक यहाँ पे टीम को नहीं पता है पहाड़ी की लोकेशन एंड डेफिनेटली ये जो प्ले है ये अच्छी पोजीशन भी दिलाएगा ओरेंगटान एलीट को एंड किल्स अच्छे खासे उनके पास वैसे भी थे, तो ओवरऑल स्कोर एक बैलेंस वे में वो बना सकते हैं। बट टीम हिंद एक अव्वल दावेदार नजर आ रही है भूया के लिए, कौन भूया निकालेगा? ऊपर होने वाली है हेड हंटर, टीम हिंद या फिर सोलो सर्वाइवल करते हुए पहाड़ी। यहाँ पे सर्वाइव करने वाले 10 प्लेयर हमें लॉबी के अंदर नजर आएंगे, ऑलरेडी 4 गेम होने वाले हैं। पहाड़ी सर्वाइव कर रहे थे। अगर बात करेंगे ब्लैक ला करके किल निकालेंगे अपने खाते में, हिंद के पास अभी भी चांस है कि बुया कन्वर्ट हो सकता है। हेड हंटर यहाँ पे हमें नजर आने वाला है, एंड ऑलरेडी डाउन कर जगह आरटी का बम को डाउन करते हुए वाइप आउट करने का ट्राई कर जगह। दूसरी साइड अगर बात करेंगे लुइस एक और किल निकालेंगे, टीम हिंद अपने फॉर्म में चलिए, देखने वाले बंदे होने वाले साइड डाउन हो जाएंगे। जिया लुइस अभी भी किल करके सर्वाइव करने वाले हैं, जोन लगाना जा रहा है, डैमेज बंदा बच जाएगा। अगर हम बात करें लुइस और प्ले डाउन करेंगे, लुइस को एलिमिनेट कर पाए, यहाँ पे पूरी टीम हिंद एलिमिनेट हो चुकी है। यहाँ पे जहाँ पे हेड हंटर्स के पास मौका था, दस्तूर था और यहाँ पे बुया भी है। बिल्कुल हेड हंटर्स कमाल का प्ले यहाँ पे दिखाया है। ESG ने भी लास्ट मोमेंट पे सरप्राइज जरूर कर दिया था, बट ये बुया हेड हंटर्स को एक जबरदस्त पुश देगा टेबल में, बिकॉज पिछला गेम भी इनका अच्छा गया था एंड इस गेम में ये बुया काबिल तारीफ। और जिस तरीके से मैं बताऊं ओरेंगटान पे वो रश लगाया था, वो जो ओथो की स्किल्स थी, जैसे ही वहाँ पे प्लेयर्स के ऊपर ओथो एक्टिवेट हुआ ना, सारे के सारे प्लेयर्स मार्क हो गए एंड मैंने बोला था डिवाइन की पोजीशन सबसे ज़्यादा वर्नेबल सिचुएशन में डाल देगी ओरेंगटान एलीट को एंड वही हुआ और वहाँ पे रश लगाया गया, पोर्टल्स का अच्छी तरीके से यूज़ किया गया और वो जो कैप्चर किया ना उस प्लेटफॉर्म को, वहीं से इन्होंने बुया भी कैप्चर कर लिया। डेफिनेटली ये बुया ओरेंगटान एलीट के थाली में था और ये वहाँ से छीन के लेके आए हैं। देखिए यहाँ पे जरूर जवाब दिया जाएगा, बट हाँ
हेड हंटर्स एक हेड स्टार्ट के साथ आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ, जब आप जोन के सेंटर में होते हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म होता है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है ना, तब आपके ऊपर हर दूसरी टीम की निगाहें होती हैं। सेंटर ऑफ द जोन की वजह से यहाँ पे ओजी औरंगटान इलीट यहाँ पे फंस गई थोड़ा सा। पर अगर हम बात करेंगे, देखिए प्लेसमेंट पॉइंट है उनके पास, जो पहाड़ी का सर्वाइवल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और उन्होंने वो ट्रिगर डिसिप्लिन शो करा, वेट करा एक एक करके टीम्स को एलिमिनेट होने का। बट ऑफ कोर्स जब आप लास्ट सोलो सर्वाइवर हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, पिछले गेम के अंदर मन्नू के पास चांस था, बट मन्नू लास्ट तक सर्वाइव कर रहे थे, बट वहां पे सिचुएशन ऐसी थी। बट राइट नाउ जो गेम जा रहे हैं वो बियॉन्ड नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं। टीम्स की जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। एंड अगर हम बात करेंगे, देखिए टीम जिस तरीके से प्ले करते हुए जा रही है, लग रहा है कि जो प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक का सफ़र है वो कई सारी टीम्स तय कर रही हैं, पर इतना आसान नहीं होने वाला। जैसे हम लोग बार बार बोल रहे हैं, आसान नहीं होने वाला। एक मैच के अंदर आपने बूया निकाला है, एक गेम के अंदर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा सा अब आराम कर लेंगे, नहीं। अब आपको कमर कसनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं बाकी सारी टीम्स की निगाहें भी आपके ऊपर की आप क्या कर रहे हैं। बट मेरा एक सवाल है, पिछले गेम के अंदर बूया और esports का, इस गेम के अंदर अगेन नजर नहीं आए, कब एलिमिनेट हुए पता भी नहीं चला। बिल्कुल, देखिए यही तो है, यहाँ पे अप्स डाउन्स तो लगे ही रहेंगे एंड वही तो कंपटीशन बिल्डअप होता है। देखिए यहाँ पे हेड हंटर्स की बात करें, दोनों में कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंसी इस देखिए हम हमेशा बोलते हैं, बट यहाँ आप एक चीज़ देखोगे, अगर हम TSG की बात करें तो TSG आर्मी ने एक ज़बरदस्त कमबैक करके दिखाया है। स्टार्टिंग में आपने देखा था 4 अननोन ने उनको ऑफ गार्ड पकड़ के ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया था, देन लेजेंड ने वहाँ पे टीम को बचाया एंड प्लेयर्स रिवाइव हुए और लास्ट में हमें TSG ऑलमोस्ट बूया करती हुई नजर आई थी और काफ़ी अच्छी कोशिश वहाँ पे नजर आई थी क्रिश की तरफ से। बट देखिए नंबर्स एडवांटेज हमेशा यहाँ पे फ़ायदा देता ही है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिली। हेड हंटर्स ने मौका ही नहीं दिया, मैं बोलूँगा बिल्कुल मौका ही नहीं दिया। जो डिसीजंस थे बिल्कुल परफेक्ट थे, अगर वहाँ पे हल्का सा भी कॉन्फिडेंस डाउन होता और वो जो एरिया था औरंगटान के बाद वो कैप्चर नहीं करते तो ये बूया उनके लिए इम्पॉसिबल था। जी हाँ, आज गेम स्टार्ट होने से पहले हमारे एनालिस्ट ड्यूकर भाई से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हेड हंटर्स ना कुछ प्लान कर रही है, कुछ तो कर रहे हैं वो लोग प्लान। पिछले गेम के अंदर भी अच्छी पोजीशंस के साथ गए, ऐसा नहीं है खराब पोजीशंस के साथ गए, किल्स निकाले। इस गेम के अंदर भी एक अलग प्ले। देखिए आपके पास 2 दिन है, आपके पास 10 मैचेस हैं, जिसमें से 2 मैचेस हो चुके हैं, 8 मैचेस बचे हुए हैं। पर देखिए आप हर एक मैच के अंदर कुछ ना कुछ स्कोर बिल्डअप करते हुए जाते हो, जिसका एडवांटेज आपको सेकंड डे में मिलेगा। आज के दिन तो आपको एक लीड क्रिएट करनी है, जिसकी वजह से कल आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर खेल सकते हो। बट ये लैन है, यहाँ रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलेगा। जहां आप रिलैक्स हुए पासा पलट सकता है, टीम्स आ सकती हैं और आपका यहाँ पे पोजीशन खींची नहीं जा सकती है। देखते हैं अगला गेम किस तरीके से हमें नजर आने वाला है, टीम्स का क्या प्ले होगा, प्लेइंग पाथ कहाँ से होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि लूट के लिए कौन सी टीम ब्लू जोन जाएगी। मैंने अभी तक ब्लू जोन की क्लैशेस नहीं देखे हैं। जनरली लैंड में हमें उम्मीदें तो कम है, पर वी नेवर नो कि कभी किसी टेरिटरी के ऊपर ब्लू जोन बन जाए और वो टेरिटरी 2 टीम शेयर कर रही हो, तो ब्लू जोन की जो फाइट्स होती हैं वो ऑलवेज हमें पसंद आती हैं। एंड लेट्स सी कौन सी टीमें ब्लू जोन पे नजर आएंगी अब। आई थिंक ब्लू जोन में एटलीस्ट 5 या 6 मैच तक तो मुझे नहीं लगता कोई टीम जाएगी स्पेसिफिकली टारगेट करके, बिकॉज देखिए जो उनके ड्रॉप पॉइंट्स हैं उस पर उनका जो पैटर्न है, उनके रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा फिक्स है। और आपको पता है ना, जब आप एक जगह पे सबसे ज़्यादा फाइट लिए होते हो तो उस जगह का आपको एक्सपीरियंस होता है, उस जगह के रोटेशंस आपको अच्छे से पता होते हैं। देन आप सडनली अगर लैंड जैसे जहाँ पे लैंड है वहाँ पे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी, कोई भी टीम आपको यहाँ पे मौका नहीं देगी। एंड ये चीज़ें सभी टीम्स जानती है। और डेफिनेटली अभी तक हमने जो देखा ये तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर बाकी है, बिकॉज हमने कालाहारी देखा, हमने बर्मुडा देखा। पर्गेटरी की बात करें, देखिए पर्गेटरी एक ऐसा मैप है जहाँ पे स्नाइपर्स का अगेन बोलबाला रहता है, बिकॉज वहाँ पे आपको लॉन्ग फील्ड्स नज़र आती है। अगेन वहाँ पे आपको जो हाउसेस हैं वो भी काफ़ी नज़र आते हैं। एंड जी हाँ, रशर्स हो, स्नाइपर्स हो, इस पर देखिए पोर्टल्स आने के बाद मैं बोलूँगा अभी ऐसा हो चुका है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जोन के सेंटर में बैठो, आप जोन के बाहर भी हो तो भी आप लास्ट मोमेंट पे आके जोन सेंटर कैप्चर कर सकते हैं। एंड वो एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट ये देखिए यही तो है, मेटा चेंज होता रहता है, बट आपका कॉन्फिडेंस, वो डिसीजन मेकिंग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है।
एक और चीज आपने नोटिस करी कि हम सोच रहे थे कि लैन होगा, टीम्स अपनी जो टेक्स्ट बुक स्ट्रेटजीज हैं, ड्रॉप पॉइंट्स हैं, उसको लीव करेगी, कुछ नया नजर आएगा। बट इन जनरल अगर हम देखें तो कई सारी टीम्स का जो ड्रॉप पॉइंट है वो काफी कॉमन होने वाला है। जैसे हमें उम्मीद थी कि 4 अननोन और ओजी रिफाइनरी पे क्लैश करेंगी और वही हुआ। 4 अननोन को थोड़ा पीछे हटना पड़ा क्योंकि अर्ली प्लेयर्स लूज करे, बट जो टेक्स्ट बुक स्ट्रेटजी से चेंज नहीं करा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चेंज करेंगे हम चेंज करेंगे, आप इंतजार रहेगा और कुछ भी हो सकता है। पर देखिए अगेन हमारे सामने टीम्स आ चुकी हैं, हर एक टीम रेडी है। एंड अगर हम बात करेंगे, देखिए प्रिपरेशन पूरी होने वाली है। हमने देखा इन टीम्स को ग्राइंड करते हुए, हम देख रहे थे कि किस तरीके से टीम्स प्रिपेयर कर रही थी। आज पूरा दिन ये टीम्स प्रिपेयर करती हुई नजर आई हमें एंड मेहनत करती हुई नजर आई है। एंड फाइनली ये इस दिन के इस आर पे जाकर के फिर भी एक्टिवली एनर्जी के साथ प्ले कर रही है। एंड देखिए अगला गेम आ चुका है। जी हाँ, ये कोई और मैप नहीं है, आपका मेरा हम सभी का कहीं ना कहीं दिल में एक छोटी सी जगह रखने वाला प्यारा मैप होने वाला है। देखते हैं कि किस तरीके से परगेटरी की इस भूमि पे, इस रणभूमि पे कौन सी टीम कहां जाने वाली है। प्लेन पाथ थोड़ा सा सदर्न बाउंड्रीज को फेवर करेगा, बट देखिए अगर आप जाने वाले हैं मोट हाउस की तरफ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉस रोड पे टीम उतर चुकी है, लेट्स सी क्या होने वाला है। क्रॉस रोड देखिए अक्सर खाली तो नजर नहीं आता है, पर आज कौन सी टीम वहां जाना पसंद करेंगी देखिए। और साथ ही साथ स्की लॉज की तरफ कोई टीम पहुंच पाएगी, फॉर्ज की तरफ कोई टीम पहुंच पाएगी। देखिए जो हमारा सेंट्रल फायर ब्रिगेड एंड हमारा लैम्बर मिल का इलाका होने वाला है, यहाँ टीम्स में नजर आ सकती हैं। क्वेरी हो सकता है, बट फर्स्ट जोन देखिए किस तरीके से मूव कर रहा है। टीम्स ऑलरेडी उतर रही है। फॉरेस्ट टीम्स, जी हाँ, हम बात कर रहे थे कौन सी टीम जाएगी फॉर्ज, और ये टीम कह रही है हम यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, जो भी आपका ड्रॉप पॉइंट है उसको चैलेंज करने के लिए टीम्स जरूर आ सकती है। भी यहाँ पे शक नहीं है कि आपको कोई चैलेंज मिल जाए, बट यहाँ पे वर्ड ऑफ बैटल को भी चैलेंजर मिल गया है जबरदस्त यहाँ पे इंसेन की तरफ से। एंड ये टीम होने वाली रशिया ई स्पोर्ट्स वर्सेस वर्ड ऑफ बैटल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ साहिल को भी नॉक किया गया है। ये फाइट हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। इंसेन यहाँ पे प्लेयर को चीज करते नज़र आ रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्लेयर ना स्प्लिट बहुत खेल रहे हैं, अपनी टीम से दूर फ्लैंक कर रहे हैं, सो दैट अगर 2 से 3 प्लेयर एलिमिनेट भी हो जाए तो एटलीस्ट कोई सर्वाइव करे। एंड यही चीज़ हमको बहुत सारी टीम से अप्लाई होती नज़र आ रही है। 3 और 1 का स्प्लिट ये हम नॉर्मली देखते ही हैं, बट TSG देखिए ब्राज़ीलिया की बात करें और TSG का नाम ना लिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। TSG लेजेंड यहाँ पे अपनी पोजीशन पे, हर एक पोजीशन पे प्लेयर होने वाले, लेकिन एनिमी UAV हमें नजर आएगा। मतलब TSG को चैलेंजर मिल चुका है। वो टीम कौन सी होने वाली है ये हम लोग जरूर देखने वाले हैं, क्योंकि TSG की फाइट ब्राज़ीलिया में काफी रोमांचक होती है। और इस रोमांच में कौन यहाँ पे चार लगाने आया है ये हम लोग देखेंगे। क्या ये ऑरा स्पोर्ट्स है? अक्सर क्लैशेस हमें नजर आते हैं, वी नेवर नो। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आयुष की पोजीशन काफी खतरनाक होने वाली है, काफी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। देखिए किसी भी फाइट में एंगेज करने से पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग उनमें से एक चीज होने वाली है। आप जितनी यार इन्फॉर्मेशन गैदर करें, देखिए कृष्ण नोटिस करा है वहां पर प्लेयर होने वाले हैं आयुष। देखते हैं कि क्या ऑलरेडी यहाँ पे एंटी मटेरियल जा रहा, थोड़ा डैमेज खुद को भी आएगा, बट 50 का डैमेज भी देंगे। यहाँ पर नीचे उतरा जाएगा, ऑलरेडी ब्लैक हाउस की तरफ मूव करा जा रहा है। लेजेंड जैसे प्लेयर होने वाले हैं, देखने वाले क्या प्लान होगा। देखिए ऑलरेडी प्लेयर्स दूसरी साइड को मूव कर रहे हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। कंपाउंड के अंदर जाएंगे, क्रिश डायरेक्ट ऊपर जाने का ट्राई कर जा रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से इस पोजीशन का फायदा उठाएंगे। प्रेडेटर डाउन, काफी कमाल का हेडशॉट नजर आता है। वॉचमैन को डाउन कर देगा, अंशुल को यहाँ पे डाउन कर देगा। और अगर हम बात करेंगे लेजेंड को डाउन हो जाएंगे, आगे हमें नजर आने वाले हैं। पर यहाँ पे पूरी की पूरी टीम को वाइप आउट करते हुए TSG एक और बार दिखा देगी कि ये टीम क्या कैलिबर रखती है, ये टीम क्या फायर पावर रखती है। और अगर आप उनकी टेरिटरी में आए तो मुंह की खा के जाएंगे और डायरेक्टली बैक टू द लॉबी हो जाएंगे। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे राइवलरी सेट कर देगी। अभी जैसे जैसे मैचेस आगे जाएंगे यहाँ पे और ज़्यादा क्यूस होने वाला है। 4 अननोन यहाँ पे ऑफ गार्ड एक प्लेयर को पकड़ेंगे एंड उनको भी खत्म कर देंगे। माउंट विला में फिलहाल जाती नजर आ रही है एंड चारों के चारों प्लेयर एक साथ हैं, बिकॉज इनको पता है वेदर यहाँ उनके पास टोकन्स है, बट स्टिल कोई भी प्लेयर को अगर वो लूज करते हैं तो यहाँ पे उनको रिवाइव करने में एक तो उनका जो रोटेशन का जो टाइम कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ हो जाएगी एंड इसी के साथ अगेन उसको लूट वापस से मिल नहीं पाएगी। बट हाँ देखिए टीम हिंद काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव प्ले इस बार दिखा रही है। वर्ड ऑफ बैटल की बात करें, मोट हाउस से निकल के जिप लाइन्स का यूज़ करते हुए सीधे जा रहे हैं क्रॉस रोड की तरफ एंड हमें पता है क्रॉस रोड की तरफ यहाँ पे 2 टीम्स थी,
एक यहाँ पे थी हेड हंटर्स आई थिंक, तो वो भी आसपास होने वाली है, तो मे बी हमको हेड हंटर वर्सेस ये वर्ड ऑफ बैटल देखने को मिल सकता है। आरटी पे अलग अलग स्प्लिट होके खेल रहे हैं, 3 मैन स्प्लिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं आपका फायर पावर बहुत ज़्यादा कम कर देगा ये। जी हाँ, यहाँ पे फायर पावर आपका काफी ज्यादा स्प्लिट हो जाएगा। देखिए जब आप एक कंबाइन नंबर में होते हैं ना तो फायर पावर बहुत अलग निकल के आता है, बट अगर आप स्प्लिट हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप किसी भी फाइट को एग्जीक्यूट करने से पहले 2 बार सोचते हैं, यार सामने अगर नंबर ऑफ प्लेयर्स मेरे से ज्यादा हुए, हमसे ज्यादा हुए तो हम पे भारी पड़ सकते हैं। एंड कभी कभी स्प्लिट फेवर भी करता है, जैसे आप एलिमिनेशन, आपके प्लेयर एलिमिनेट हो रहे हो तो आप जल्दी से आके वेंडिंग मशीन पे अपने टीममेट्स को बचा सकते हैं। जी हाँ, मिस्टर जयवाटी कमाल का कैरियर एंड देखिए ऑलरेडी मार्क कर जाएगा, और यहाँ पे कोई और नहीं फॉरेस्ट टाइप्स होने वाले हैं। एक तरफ आपको औरंगटान एलीट नजर आती है, दूसरी साइड फॉरेस्ट मैच ऑफ कमाल का क्लैश होने वाला है। ऑलरेडी शॉट करेगा, चार्जिंग करा चुका है, तरफ बात नजर आ रहा है, यहाँ पे लगातार डैमेज दिया जा रहा है, वहीं बात करेंगे आज को डाउन कर देगा, दूसरी साइड यहाँ पे अपने टीममेट्स को बचाने का ट्राई, साइबर 420 को रिवाइव दिया जाएगा, आई यहाँ पे पड़ा हुआ है, तुरंत यहाँ पे ट्राई करा जाए, एक करके प्लेयर्स को एलिमिनेट करा जाएगा। वहीं अगर हम बात करेंगे पार्टी के खाते में 2 किल हैं, और यहाँ पे पूरी की पूरी टीम थोड़ी क्षतिग्रस्त है, पर देखिए हीलिंग करने के लिए सुपर मेडिकेट होने वाली है पूरी टीम के पास, और ऊपर से पर्सनल बॉक्सेस की लूट होने वाली है। ये जो लूट है ये काफी सॉलिड होती है, और अगर आपको मिल रही है तो उठा लीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे लूट भी है, साथ ही साथ जो पॉकेट वेंडिंग है आपकी उसमें भी बहुत आसानी से आपको लूट मिल जाएगी। इवन यहाँ पे आई थिंक 2 किल पहाड़ी दिख रही है, 800 पूरी टीम हिंद यहाँ पे गाड़ियों का यूज करते हुए सीधे आएगी जोन में, और जोन करना बहुत जरूरी है। और अभी देखिए यहाँ पे हेड हंटर्स पिछला गेम भूया निकाला था, और इस बार भी काफी अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहे हैं, सेंटर में है। बोलते हैं ना जो अपनी मदद करना चाहते हैं उनकी ऊपर वाला भी मदद करता है, तो देखिए यहाँ पे ब्लू जोन भी उनको मिल चुका है, क्रॉस रोड से लूट करके आए थे सीधा, एंड यहाँ पे ब्लू जोन की लूट भी उनको मिल जाएगी। तो हेड हंटर्स के पास एक और मौका है, एक अच्छा गेम निकालने का, बट डेफिनेटली ये इतना आसान है क्योंकि आपके चैलेंजर्स वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं, आप डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टीम हो, बट हाँ आपके सामने जो टीम्स हैं वो भी कोई ऐसी वैसी टीम्स नहीं है, आपको हर एक मोमेंट पे, हर एक मोड़ पे चुनौतियाँ देगी। तो इसकी बात करें, यहाँ पे डबल रश लगाया गया, हेड टोकन होने वाली है उनके पास, क्या एक नॉक निकाल पाएंगे, एंड प्लेयर के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, अगेन आ जाएंगे एक और पे, एंड यहाँ पे का भी साथ ही साथ यूज किया गया, हर एक वेपन का यूज कर रहे हैं। देखा जाए यहाँ पे एंटी मटेरियल लॉन्चर का यूज कर रहे हैं, स्टार का यूज कर रहे हैं, ट्रॉगन का यूज कर रहे हैं, पोर्टल का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एंड एक और लेवल के साथ यहाँ पे मिस्टर जय को नॉक कर देंगे। पाकिस्तान वर्सेस टीम हिंद हमको देखने को मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे टीम नजर आने वाली है, देखिए किस तरीके से होगा, यहाँ पे प्लेयर्स को स्पॉट करने का डैमेज हो जा रहा है, को डाउन कर देगा, दूसरी साइड लुइस के ऊपर भी काफी डैमेज पड़ेगा, बट तुरंत तक यहाँ पे फिनिश करने का ट्राई करा जा रहा है, लेकिन पता किस तरीके से वाइल्ड एक्सक्यूट होती है, और उस साइड को डाउन करा जाएगा, बट बैकअप में होने वाले लुइस एक और प्लेयर को डाउन करा जाएगा, एंड तुरंत अपने टीममेट्स को रिवाइव देने का ट्राई, बट नहीं, यहाँ पे उनके पास होने वाली है, और अपने टीममेट्स को रिवाइव देने का ट्राई करा गया, बट यहाँ पे यहाँ पे बच पाएंगे, यहाँ पे पहाड़ी की डाउन कर देगा, बट पहाड़ी से जाते एक प्लेयर को रिवाइव दे के गए हैं, क्या ओजीबी भी सर्वाइव कर रहे हैं, वी नेवर नो, बट यहाँ पे जो टीम होने वाली हिंद बैक टू बैक किल्स निकाल रही है। एक चीज तो है कि इस स्टेज पे ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज ग्रैंड फाइनल में शेर बब्बर शेर हर एक टीम होने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं, कोई दूसरी टीम आपका इंतजार कर सकती है, आपके लिए वेट कर रही है। इस टाइम पे थोड़ा सा झटका लगेगा ओजी को, पर क्या यहाँ से वो कमबैक करेंगे, ये देखने वाली बात है। सर्वाइव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए दूसरी साइड सिनर्जी है, और कई सारी टीम्स की रणनीति शायद ये टीम बदलेगी, क्योंकि देखिए अंडर गॉड्स को हम लोग कभी कभी कम आंकते हैं, पर ये वो टीम्स हैं जो यहाँ तक पहुंची हैं, एंड एक्चुअल में हर गेम के अंदर हमें दिखा रही हैं कि नहीं, हम आए हैं तो किसी वजह से हम आए हैं, तो कुछ हमने हासिल करा है, और भी ज्यादा हासिल करने की झुबूक है वो बरकरार है। स्ट्रगल को डाउन करा जाएगा, आरटीपी हर दूसरी गेम के अंदर कंसिस्टेंसी देने का ट्राई कर रही है, यानी कि बहुत अच्छी चीज है। आप
हर बॉल पे 6 नहीं मार सकते, कभी कभी आपको रन भी लेने पड़ते हैं, और वो लगातार एक जो आप एवरेज जो बना के चलेंगे बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। डीएसजी हमारी स्क्रीन के सामने है, और दूसरी साइड 4 एरर्स, काफी लंबे टाइम से हमने बात नहीं करी है। आई भाई कोई टिप्पणी आप इस टीम के ऊपर कहना चाहें? 4 एरर्स आई विल से एक ऐसी टीम जिसने थर्ड फेज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इवन इनका प्ले हम लोग ने जब भी देखा था बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेलते थे, बट सम आज यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है, एंड उस प्रेशर की वजह से वो परफॉर्मेंस निकल के आ नहीं रही है। बट स्टिल देखिए अभी भी मौके बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बदल सकते हो, वो प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे डिस्कशंस कर सकते हो। देखिए यही तो है, यही बात है लैन की, जब बात करते हैं ना सब प्लेयर एक साथ बैठे होते हैं तो आप पल भर में अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हो, गलतियाँ हो रही है उनको पॉइंट आउट कर सकते हो। बट यहाँ पे वर्ड ऑफ बैटल, जी हाँ ये टीम अगेन नजर आती हुई है, हर एक गेम में कंसिस्टेंट जरूर है लेकिन बूया नहीं निकाला है। क्या इस बार बूया के लिए जाएंगे? इनसेन को वापस से रिवाइव मिल चुका है, एंड लीजिए यहाँ पे आरटीपी के पास भी मौका है और ड्रॉप भी लूटा जा रहा है, रिसोर्सेज की कमी उनके पास ज्यादा होगी नहीं। जी हाँ, देखिए द वर्ल्ड ऑफ बैटल के बारे में एक चीज है, ये टीम कहती है हम ना अपने इंपॉर्टेंट मैचेस को खेलना जानते हैं, हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट मैचेस को किस तरीके से हमें बूया की तरफ कन्वर्ट करना है, एंड थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि टीम अभी थोड़ा सा रेडी हो रही है। देखिए कहते हैं ना कि बड़ी टीम्स यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजन होती है, चालू होने में मतलब यहाँ पे डीजल इंजन होती है, चालू होने में तो होता है और जब चालू होती है तो रुकती नहीं है। दूसरी साइड बात करेंगे यहाँ पे साइबर 420 के बारे में, हीलिंग करने का ट्राई करा जा रहा है। देखिए मुझे पूरी सर्वाइव करने वाली है, फैंस काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं, बट ओल्ड वॉन्ग को बचाने की जरूरत है। बट अगर कॉइन्स है आप कर सकते हैं इस चीज को। पहाड़ी को वापस से M14 मिल चुकी, लूट अभी ज्यादा नहीं मिली है, जोन आगे धकेलेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पर नीचे टीम्स होने वाली है, सामने हमारी यहाँ पर होने वाली है एयर ड्रॉप वेंडिंग मशीन। क्या वहां पर जाकर के अपने टीममेट्स को रिवाइव दिया जाएगा? क्या ओल्ड वॉन्ग को वापस से गेम में बुलाया जाएगा? जी हाँ, ऑलरेडी पॉकेट मार्केट का प्रयोग को ली जाएगी यहाँ पर, बट फॉर हार्ड डाउन होते हुए एलवेल 72। ओह माय गॉड, क्या कमाल का बैकअप आता है। 4 रन डाउन का अपने टीममेट को बचाने का ट्राई करते हैं, बट जी हाँ यहाँ पर बचा नहीं पाते। पर देखिए यहाँ पर तुरंत बैकअप आता है, एलवेल 72 को फिनिश करा जाता है। और दूसरी साइड अगर हम बात करेंगे 4 रन डाउन के पास अभी भी वेंडिंग मशीन है, टीममेट को बचाने के लिए आनंद जा रहे हैं जोन की बाहर, वेंडिंग मशीन में जा करके फरहान को बचाएंगे। फरहान काफी ज्यादा बढ़िया पावर हाउस होने वाले इस टीम के, एंड वो लास्ट फाइट में होंगे तो एक कमाल का फायर पावर मिलेगा आपको क्लोज रेंज में। बिल्कुल देखिए, बट 4 अननोन की जो लोकेशन थी वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल थी। आप अगर उनको देखोगे अभी उनको वो रिवर क्रॉस करनी है, एंड उसके पार उनके ऊपर जो एनिमीज है वो घात लगाए बैठे होंगे, तो इतना आसान नहीं होगा उनका जोन के अंदर जाना। बट यहाँ पे देखा जाए तो हाँ टोकन से यूज़ किया जा रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे गलती ब्लैक कर रहे हैं, बट दिक्कत होगी नहीं क्योंकि एक तो वो फोटो यूज़ कर रहे हैं, साथ ही ईपी वाला जो हमारा कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा रिड्यूस, बट यार टोकन का क्या यूज़ कर पाएंगे? सास्के का यहाँ पे डैमेज जरूर आया है, कॉन्टी को नॉक किया जा चुका है, सास्के लेवल तक आ चुके हैं, बट उनको भी नॉक किया जाएगा। एंड पहाड़ी जो कि सेवियर थे अभी ओरेंगेटान में एलिमिनेट जरूर हो जाएंगे, लेकिन उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। तीनों के तीनों प्लेयर को बचा लिया है। ओल्ड मॉक की बात करें एक अच्छी पोजीशन पे है, जय भी सर्वाइविंग खेल रहे हैं, एंड साथ ही साथ साइबर 420 भी पोजीशन के लिए खेलेंगे। तीनों प्लेयर्स अलग अलग लोकेशन पे होने वाले हैं, बट हेड हंटर्स दे आर स्टिल यूनाइटेड। फायर पावर अभी काफी ज्यादा दिखा सकती है क्योंकि 4 मैन स्ट्रॉन्ग टीम है एंड एक अच्छी पोजीशन है उनके पास। एंड पोजीशन वाइज मैं बता रहा हूँ हेड हंटर के जीतने के चांसेस इस मैच को भी काफी ज्यादा होने वाले हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छा स्कोप, एक अच्छा एंगल जहाँ पे नीचे वाली टीम से वो खुद को कवर में रख सकते हैं। बट यहाँ पे की बात करेंगे, ओ बहुत ज्यादा एक्यूरेट, ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉक किया गया एंड मेल्टर्स का भी यूज किया जा रहा है। क्या नॉक कर पाएंगे? जी कोशिश जारी है, जोन का भी डैमेज आएगा, रेबल रखा के प्लेयर आगे जरूर आगे हैं, बट शॉटगन यहाँ पे वो निकाले हुए हैं, नॉक किया गया क्रिश, अपना पूरा जोर लगा क्रिश ने, लेकिन फॉरेस्ट एप्स के आगे नहीं टिकने वाले। नंबर्स जरूर यहाँ पे फायदा देंगे, लेकिन वो दिक्कत आएगी, जोन के अंदर इनको भी जाना है। ऐश नॉक हो चुके हैं बट 3 प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव करते हुए। इस तरीके से फाइट
निकाली, बहुत इंपॉर्टेंट इस बार। दूसरी साइड भीम डाउन हो जाएंगे, स्वास्तिक डाउन हो जाएंगे, फरहान पे डैमेज पड़ रहा है लगातार, ही इज बेयरली सर्वाइविंग, बट वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। आनंद लास्ट होप होने वाले हैं 4 अननोन की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पे टावर के ऊपर नजर आएंगे हमें, देखते हैं वॉच टावर से कितना लंबा सर्वाइव करने वाले हैं। 12 प्लेयर्स अभी भी गेम के अंदर नजर आने वाले हैं, 3 किल ऑलरेडी होने वाले हैं प्लेयर के खाते में। हेड हंटर्स अगेन स्ट्रॉन्ग नजर आने वाली है। जी हाँ, टीम समझती है कि प्रेशर किस तरीके से हैंडल करा जाता है, टीम समझती है कि लास्ट में किस तरीके से सर्वाइव करा जाता है। कमाल का शॉट डिवाइन विद हिज डिवाइन पनिशमेंट, यहाँ पे पनिश करा जाएगा एंड तुरंत यहाँ पे मार्किंग नजर आएगी एंड तुरंत यूटिलिटीज रिसोर्सेज यहाँ पे कैरेक्टर्स का हर तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है डिवाइन के द्वारा। अभी तक खाता नहीं खोला, बट देखिए स्नाइपर खाता ना खोले, बट अगर वो डैमेज देता रहेगा आपके रशर्स, आपके असॉल्टर्स, आपके सपोर्टर्स को पूरा सपोर्ट मिलेगा, उनकी किल्स निकलेगा और अल्टीमेटली टीम को बहुत ज्यादा किल मिल सकते हैं। यहाँ पर अर्श भी आपको नजर आने वाली है, यहाँ पे कमाल का प्ले ले रहे हैं, 2 किल खाते होने वाले हैं, लगातार प्लेयर्स को डाउन करते हुए जाएंगे। जिंगा यहाँ पे टीएसडी सर्वाइव कर रही है, बट यहाँ पे 2 ही प्लेयर्स होने वाले हैं, लेजेंड एंड यहाँ पे से देख सकते हैं किस तरीके से वो पीछे हटने वाले हैं। शंकु लगातार हंट मोड में निकल चुके हैं। हेड हंटर्स एक्शन अपने नाम पर सही साबित हो रही है, लगातार हेड हंट कर रही है। नहीं नहीं नहीं, शायद से कास्टर कार्ड लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे आदित्य भी होने वाले हैं और गेम लड़ सकते हैं, गेम जरूर पलट सकते हैं, लेकिन जहाँ पे टीम सिनर्जी निकल के आती है वहाँ पे इतना आसान भी नहीं है। अर्श सही टाइम पे वहाँ पे आएंगे और एक और किल जरूर निकाल देंगे। आप प्लेयर को नॉक जरूर करोगे, बट इन रिटर्न ट्रेड फायर में आपको भी उतना ही नुकसान होगा। ये चीज़ यहाँ पे जरूर ध्यान रखते हैं हेडहंटर्स कि आप आपको मारो चलेगा, बट हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। और क्या हेडहंटर्स ये बुया निकाल पाएगी? सिद्धार्थ को भी खत्म किया है, नंबर्स में ज्यादा होने वाले, एक और बुया निकाल सकती। फॉरेस्ट टीम के पास भी मौका है, उसके पास भी 2 प्लेयर्स होने वाले हैं, बट क्या यहाँ पे टीएसजी लेजेंड द सोलो सर्वाइवर इस मैच को बुया में कन्वर्ट कर पाएंगे? अर्श यहाँ पे रश लगाने की कोशिश करते हुए, बट शंकु एक अच्छी पोजीशन पे, लिकी यहाँ पे टॉप पे है एंड लिकी की पोजीशन सबसे ज्यादा खतरनाक है बाकी सारी टीम्स के लिए। लेजेंड यहाँ पे अकेले आगे बढ़ते हुए, ट्रोगन होने वाली है उनके पास, बॉल्स का जिस तरीके से यूज किया है, रश लगाया जा चुका है, क्या प्ले को नॉक कर दिया है। अर्श की किल कन्फर्म की जाएगी वर्ल्ड वर्सेस तरीके से स्पेशल लेजेंड के लिए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। एक और नॉक, बट नहीं, ये बुया जाएगा हेडहंटर्स को। ओ माय गॉड, एफर्ट्स यहाँ पे टॉप नॉच निकल के आए लेजेंड के, बट अगेन हम देख रहे हैं बुया वही सेम टीम हेड हंटर आज तो सीधे हेड हंट करती चली जा रही है। कमाल का प्ले यहाँ पे देखने को मिला। अगर आप गौर करोगे पिछले मैच में भी लास्ट में जो फाइट चली थी वो टीएसजी वर्सेस हेड हंटर ही चली थी एंड अगेन वही चीज हमको रेप्लिका होती नजर आई है। जी हाँ, हिस्ट्री रिपीट हो रही है एंड हिस्ट्री भी ज्यादा पुरानी नहीं है। पिछले मैच की फाइट्स हमें एंड जोन की नजर आती है, पर लेजेंड कमाल का प्ले, कसम से यहाँ पे देखा जाए तो लेजेंड वो प्ले करके दिखा रहे हैं कि देखिए आप मुझे आईजीएल समझिए, बट देखिए जब मैं खुल के खेलूंगा मैं अपना कैलिबर दिखाना जानता हूँ, मैं अपना फायर पावर दिखाना जानता हूँ, मैं अपना हंगर दिखाना जानता हूँ कि मैं किस तरीके का प्लेयर हूँ। वो आए बैक टू बैक प्लेयर्स को डाउन करते हुए चले गए, बट हेड हंटर्स क्या सिनर्जी के साथ प्ले कर रही है, किस तरीके से फाइट्स को एग्जीक्यूट कर रही है, बैक टू बैक किल्स निकालते हुए जा रही है। और जैसा हमने बोला था कि यहाँ पे हेड हंटर्स अपने नाम पे बिल्कुल सही साबित हो रही है, हेड हंट करना, हेड नहीं तो यहाँ पे प्लेयर्स एलिमिनेट। पर देखिए 3 गेम खत्म हो चुके हैं, अभी भी गेम 2 बचे हुए हैं, पर देखिए हेड हंटर्स जो आज एक लीड क्रिएट करेगी उसका कल पूरा का पूरा उनको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि देखिए ये 2 दिन की बैटल है, आज 5 कल 5, और ये 50-50 का जो जोड़ है वो आपको 100 की तरफ लेके जाएगा, और 100% तो हर कोई दे रहा है, पर देखिए 100 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली मुश्किल है। देखिए हेड हंटर्स की मैं जितनी तारीफ करूँ कम होगा, बिकॉज आप पहला मैच देखोगे उस मैच में भी वो काइंड ऑफ लास्ट सर्किल नहीं सेकेंड लास्ट सर्किल तक सर्वाइव करते नजर आए थे एंड उसमें भी किल्स उन्होंने अच्छी खासी निकाली थी। देन अगेन हमने देखा बुया निकाला बैक टू बैक और एक हैट्रिक की तरफ बढ़ चुके हैं। देखिए लैन में बुया की हैट्रिक करना अपने में एक यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि 2 बुया ऑलरेडी निकाल चुके हैं बैक टू बैक, तो नजरें हमारी अगले मैच में जरूर रहेंगी हेड हंटर्स के ऊपर, क्या वो हैट्रिक यहाँ पे मार पाएंगे या नहीं। बट अगेन हम जाएंगे टीएसजी लेजेंड के ऊपर, 1 वर्सेस 3 का वो ऑलमोस्ट क्लच डन कर दिया था, बट देखिए हेड हंटर्स एक ऐसी टीम है जो इतनी आसानी से क्लच नहीं करने देगी, बट हाँ लेजेंड कमाल का प्ले उनकी तरफ से।
लेजेंड आपके इलाके में, हमारे इलाके में उनको लेजेंड ही बोलते हैं क्योंकि कमाल का प्ले है इनका। एंड जब ये खुल के खेलते हैं ना, देखिए एक आईजीएल जब भी प्ले करता है थोड़ा बच जाता है, उसकी कॉल्स देनी है, उसको काफी कुछ करना है, बट लेजेंड वो सभी चीजें करके दिखा रहे हैं कि मैं कॉल्स भी दे सकता हूँ, चाहे कॉल फिल्टर कोई भी कर रहा, बट मेरी कॉल्स हो सकते हैं, मैं आईजीलिंग कर सकता हूँ, बट जब मुझे मौका मिलेगा मैं क्लचेस भी कर सकता हूँ, कैलिबर शो कर सकता हूँ। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड बाकी सारी टीम्स की साइड से भी काफी अच्छा प्ले है। अगर हम बात करेंगे किस तरीके से ओजी ने बार बार यहाँ पर रिवाइव दिया, जहाँ पे अगर हम बात करेंगे टीम हिंद के साथ बैटल हुई थी, लगभग सभी को लूज कर दिया था, बट जाते जाते प्लेयर्स को रिवाइव देके जाते हैं पहाड़ी, फिर पहाड़ी दोबारा से जीवन दाता बनते हैं, दोबारा से रिवाइव देते हैं। आज पहाड़ी का रोल एक तरीके से जीवन दाता का बन चुका है। डेफिनेटली सेवियर का रोल है। और उस चीज़ में मैं कहूँ पहले में तो वो ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया, क्योंकि एक तो इतनी वॉल्स लगी हुई थी जिस वजह से वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सर्वाइव कर रहे थे, पूरी की पूरी हेड हंटर वहीं पे थी, बट उन्होंने ऐसा दिखाया कि वहाँ पे वो है ही नहीं और बहुत अच्छा प्ले निकाला, वहाँ पे प्लेसमेंट निकाले। देन अगेन देखिए उनके पास, अगेन मैं बोल रहा हूँ सूजी कैरेक्टर हर तरीके से उनका काम कर रहा है, चाहे वो बाद में क्योंकि वो टीम से अलग खेलते हैं तो टीम को रिवाइव करने की बात आएगी तो उसमें भी कर लेंगे, क्योंकि वो अगर किल्स निकालेंगे तो उनके पास मैसिव जो टोकन्स है वो हो ही जाएंगे। एंड वही चीज़ यहाँ पे हुआ, उन्होंने जल्दी जल्दी टोकन मशीन से टोकन्स कलेक्ट किए, पूरी की पूरी टीम को रिवाइव दिया एंड पूरी टीम भी नजर आई। बट प्रॉब्लम यही होती है, देखिए रिवाइव होना काफ़ी नहीं होता है, पूरी टीम उतरी बट सब के सब अलग जगह पे, और सोलो देखिए वही है ना कि एक जो हम लोग का एक लकड़ी होती है ना, उसको अगर सिंगल रखो तो इजीली ब्रेक हो जाती है, बट अगर वही एक बंडल होता है उसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ हम जानते हैं, और ओरंगेटान एक ऐसी टीम अगर एक साथ एकजुट लड़ती है तो इनको बहुत मुश्किल है रोकना। बट टीम हिंद देखिए ओरंगेटान को रोकने की बात जैसे मैंने कहा, टीम हिंद ने जो प्ले दिखाया था, स्पेशली आई थिंक फील्ड पे वो फाइट हुई थी और वहाँ पे जो एग्रेशन के साथ रश किया था, वहाँ पे साहिल ने, लुइस ने, काबिल तारीफ है, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेम को उस टाइम कैप्चर किया था। जी हाँ, और मैं इतना कहना चाहूँगा आज यहाँ से गेम खत्म होने के बाद ना कुछ टीम जाने वाली हेड हंटर्स के पास, भाई ऐसा क्या खा रहे हो तुम लोग जो बार बार बूयर्स निकालने में, मतलब हमें भी बताओ, थोड़े सीक्रेट हमारे साथ भी शेयर करो। बट देखिए सीक्रेट बस यही है कि यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ पे, देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उस फाइट में अगल बगल क्या हो रहा है, एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए आपके आसपास काफ़ी सारी हलचल होती है और आपको नहीं पता होता कि क्या क्या हो रहा है अगल बगल, तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे एक चीज़ मैंने नोटिस करी इस पूरी टीम के अंदर कि यूनाइट होकर के जो प्ले कर रहे हैं ना, तुरंत रिवाइव दे रहे हैं, एलिमिनेट नहीं होने दे रहे प्लेयर्स को। आप देखेंगे तो कोई प्लेयर एलिमिनेट ही नहीं हो रहा, तुरंत रिवाइव देने को जा रहे हैं, ग्लू वॉल लगा रहे हैं, जितने रिसोर्स लग जाए लगाएंगे बट उनको बचाएंगे। देखिए अगेन इस गेम के अंदर कुछ टीम्स के साथ हिस्ट्री रिपीट हुई, और esports यहाँ पे टीएससी के साथ फाइट हुई, अर्ली एलिमिनेट हुई। अगर हम बात करेंगे दूसरी साइड आरटीपी, आप सोच रहे हैं हेड हंटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट आरटीपी को मत भूलिए, ये चुपके जो है थोड़ी बढ़त बनाते जा रहे हैं ना, ये कल के दिन काफी मददगार साबित होगी। एक दिन में ही ये सफर खत्म नहीं होने वाला है। अगर हम बात करेंगे TWOB, इस बार भी काफी अच्छा ट्राई डाला इस टीम ने, एंड जी हाँ कभी कभी चीजें एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते। देखिए प्लान आप, हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं, प्लान आप सबसे अच्छा बना सकते हैं, बट अगर उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पा रहा है तो वो प्लान फेल ही है। तो कोशिश कीजिए यहाँ पे आने वाले गेम्स के अंदर थोड़े अलग प्लान्स बनाइए, जो चीज़ें वर्क नहीं करी उनको सुधारिए। पर आईबी भाई मेरे आपसे सवाल है, अभी तक की 3 गेम्स में कौन सी हेड हंटर्स के अलावा आपको टीम लग रही है जो चुपके से ऊपर आ रही है? कौन सी टीम लग रही है? आई थिंक जो चुपके से ऊपर आ रही है, तो ऐसे में आप आरटीपी को डेफिनेटली बोल सकते हो। देखिए कंसिस्टेंट टीम की बात करेंगे तो टीएसजी एक टीम जो हमको कंसिस्टेंसी दिखा रही है। देखिए हेड हंटर्स, टीएसजी, ये दो टीम मैं बोलूँगा ऐसी है ना जो अपने नेचुरल प्ले पे आ चुकी है, जिनका हाथ यहाँ पे गर्म हो चुका है, वार्म अप कर चुकी है एंड अब अपना नेचुरल प्ले दिखा रही है। बाकी आप अगर टीम्स की बात करोगे ना तो अपने फुल पोटेंशियल पे अभी नजर नहीं आ रही है। सो यहाँ पे देखना होगा किस तरीके से ये टीम्स यहाँ पे कम बैक करेंगी, क्योंकि नेचुरल प्ले दिखाना होगा, प्रेशर आप नहीं ले सकते। प्लेटफॉर्म डेफिनेटली बहुत बड़ा है, यहाँ पे दाव पे भी लगा है 6 लाख रुपए का प्राइस पूल, स्टेडियम में जाती हुई नजर आ रही है टीम। देखिए अल्पाइन के मैप की हम बात करते हैं ना, तो मुझे मिलिशिया पे क्लैशेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट फिलहाल स्टेडियम में कौन सी टीम
यहाँ पे शेयर करने वाली है इस लोकेशन को, ये भी हम लोग देखेंगे। हेड हंटर्स के ऊपर अभी हमारा कैमरा बार बार जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये टीम ने ना खुद को दिखाया है, खुद को प्रूव किया है कि आज हम हैं यहाँ के प्रथम दावेदार उस ट्रॉफी को उठाने के। एंड वो जो ट्रॉफी हम लोग के पीछे आप लोग देख रहे हो, ये ट्रॉफी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक स्टेटमेंट है कि वी आर द बेस्ट इन द कंट्री। और डेफिनेटली उस टाइटल के लिए हर एक टीम अपना पूरा जोर लगा देगी। आईबी भाई, अगर मैं ये ट्रॉफी चुपचाप जाके चुरा लूं तो क्या मैं भी बन जाऊंगा क्या बेस्ट? मुझे तो लग रहा है कि ये ट्रॉफी जिसके हाथ में आएगी वो यहाँ पे अलग 7वें आसमान पे होगा। एंड देखिए 7वें आसमान में होना जरूरी है, बट देखिए कदम धरती पे होने चाहिए, निगाहें आसमान की तरफ, कदम धरती पे होने चाहिए। और उसी के साथ हर दूसरी टीम, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप कितनी बड़ी टीम हो, आपको वही जो प्लान्स है, प्लान्स बहुत सिंपल है। देखिए बूया का प्लान बहुत सिंपल है, बट उसके एग्जीक्यूशन के तरीके थोड़े अलग अलग हैं। हर टीम का अपना अलग फंडा है। एंड अगर आप एग्जीक्यूट करते हो और अगर आपका थोड़ी किस्मत, थोड़ी आपकी मेहनत और यहाँ पे थोड़े फैंस का प्यार, जी हाँ फैंस जितने भी हैं चैट में, मैं जानता हूँ इस टाइम पे रात के 12 बजे जो आप लोग प्यार दे रहे हो ई स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को, बहुत बड़ी बात है। हम देख रहे हैं लगातार चैट पे, मानना पड़ेगा आप इन टीम्स की ना वो बैकबोन हो जो ये टीम्स मांगती हैं। तो प्लीज अपना सपोर्ट हर दूसरी टीम को दीजिए। जी हाँ, हर दूसरी टीम जो यहाँ तक पहुंची है वो यहाँ पे बूया के ट्रॉफी के प्रथम दावेदार हैं। एजी और ई स्पोर्ट्स हमारे सामने होने वाली है। देखिए लगातार जो कुछ टीम्स हैं वो सही नहीं गई, एक बूया के बाद जो गच्चा पड़ा है, जो यहाँ पे डाउनफॉल है, वो टीम्स को थोड़ा मुसीबत में डाल रहा है। पर देखिए कुछ भी हो सकता है, ये टीम कभी भी गेम चेंज कर सकती है, ये टीम जानती है। ये मैप भी बिल्कुल नया है। एंड अगर हम बात करेंगे अल्पाइन, एक ऐसा मैप है जिसमें टीम्स ने काफी देर प्रिपरेशन करी है, बट देखिए लैन में इसको खेलने का मजा ही अलग है। हर दूसरे मैप को खेलने का मजा अलग है, चाहे आप इस मैप को 1000 बार खेल लीजिए, बट जब लैन में खेलेंगे तो वो हाथ कांपना, डर, वो जो कहते ना कि बगल वाली टीम कहाँ होगी, अगल बगल कौन है, वो सारी चीजें आपके मन में आ रही होंगी। एंड अल्पाइन किसकी परीक्षा लेगा और कौन सी टीम इस परीक्षा में पास होगी, ये देखते हैं हम। देखिए वो बात आपने बिल्कुल सही करी। देखिए जब भी लैन में यहाँ पे टीम्स एक दूसरे को क्लच करती है तो ऐसा एक पलट के वो जो एक लुक होता है ना, वो जरूर देती है कि देखो हमने तुमको एलिमिनेट कर दिया। एंड वो चीज़ें एक अलग यहाँ पे वैल्यू ऐड करता है। डेफिनेटली एक हेल्दी राइवलरी हमको देखने को मिलती है। बट आपने जो बोला था ना कि उस ट्रॉफी को वो हम लोग जरूर करेंगे, बट क्रूज यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। ओ माय गॉड, अकेले बचे हैं सिनर्जी ई स्पोर्ट्स से इरेन, क्या वो बच पाएंगे? ओ LVL 72 यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे। एंड जी हाँ, अभी ये टीम पूरी तरीके से एलिमिनेट तो नहीं हुई और एंगेटान के ऊपर नजरें हैं हमारी। एंड फिलहाल 4 के 4 प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। इरेन की पोजीशन यहाँ पे स्पॉट की जा चुकी है, रन लगाया जा रहा है, अकेले क्या कर पाएंगे ये देखना होगा। नॉक यहाँ पे 165 का हेडशॉट भी दिया, बट वो इनफ नहीं होगा, उनको यहाँ पे टेक डाउन किया जा चुका है। सिनर्जी ई स्पोर्ट्स भारी मुसीबत में, ओरेंगेटान लीड जोन के अंदर जा रही है। वही टीम हिंद की बात करें, दे आर आल्सो एट द कॉर्नर, वो भी कॉर्नर रोटेशंस को ही प्रेफर कर रहे हैं। देखिए और अगेन हम उस ट्रॉफी की बात करते हैं। देखिए उस ट्रॉफी को चुराने के लिए ना आप चुरा सकते हो, लेकिन आपको ना अपने रातों की नींद उड़ानी पड़ेगी ग्राइंड करके जो इन टीम्स ने किया है। एंड डेफिनेटली ये रात भर गेम्स खेल के जो मेहनत जो है ना, वही उस ट्रॉफी को चुराने की एक चाबी है। और डेफिनेटली कौन उसको चुराएगा ये तो हम लोग को भी देखना है। अभी भाई आप जस्ट एक इमेजिन कीजिए कि जितने भी ये टीम्स हैं, 48 प्लेयर्स हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी हैं, यहाँ पे 6 मैन लाइनअप भी हैं, तो इनकी फैमिली किस तरीके से फील कर रही होगी, क्या फीलिंग रही होगी। मतलब एक फोन पे देखना, एक लैन पे देखना, फैमिली, मैं बता रहा हूँ अगर मेरी फैमिली देख रही होगी मुझे कास्ट करते हुए, वो कह रहे होंगे भाई ये क्या हो रहा है, मतलब एक गेम आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। एंड एक्चुअल में आज इन टीम्स के, मैं इतना बता रहा हूँ, पापा तो होते ही ऐसे हैं, आज पक्का इन टीम्स के जो पापा होंगे ना, जितने प्लेयर्स हैं, उन्होंने पक्का किसी न किसी रिलेटिव को फोन करा होगा, कहा होगा आज आप esports.in पे जाइए और देखिए इन्हें, ये आज मेरा जो बेटा है, बेटी है, जो भी है, ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। एंड वो सबसे बड़ी बात होती है। एंड उससे बड़ी प्राइड कुछ नहीं हो सकती, उससे बड़ी ट्रॉफी कुछ नहीं हो सकती, जब आपकी फैमिली आपके लिए गर्व महसूस करे। एंड अगर हम बात करेंगे हेड हंटर्स, मुझे लग रहा है कि अर्श, डिवाइन, लिखी, शंकु,
इन सभी के फैमिली वालों ने रिलेटिव्स को पक्का फोन कर दिया होगा। देखिए हमारे जो बच्चे हैं ना किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये नजर आ रहा है esports.in पे। अगेन जो फाइट है, जो कश्मकश वो जारी है, बट देखिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ये जो मॉडर्न वॉरफेयर है ना, ये इंफॉर्मेशन पे खेली जाती है। एंड अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे आप गेम पे लड़ सकते हैं। दोनों टीम्स ने यूएवीज का प्रयोग करा, इंफॉर्मेशन गैदर करी। संकु डाउन है, बचाने का पूरा ट्राई, बट यहाँ पर नहीं, डाउन कर दिया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसे ही रिवाइव हुए अगेन वहाँ पे टूगन के एक्सप्लोसिव्स आए, उनको फिर से डाउन कर दिया गया। शंकु को एलिमिनेट किया जा चुका है। हेड हंटर थोड़ी मुसीबत में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग एंगल बना रहे हैं। डिवाइन को आप अगर ध्यान से देखेंगे पीछे हटाया है, अपने कदम पीछे हटाए, लेकिन बोलते हैं ना शेर अपने कदम पीछे हटाता है वार करने के लिए, और वो वार शुरू हो गया है डिवाइन की तरफ से। जी हाँ, उनके पास होने वाली डबल स्नाइपर एंड एक होने वाली है कार 98, तो दूसरी M82 भी यहाँ पे बढ़िया प्ले निकालते हुए। डिवाइन अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं कर सकता, बट यहाँ पे देखिए ये जो सैक्रिफाइस होता है ना, यहाँ पे राफेल की जगह जो चीज़ें लगाने वाला, कहीं ना कहीं वो जो पोजीशन है वो आपकी रिवील हो जाती है। इस पोजीशन पे अगर राफेल होता तो और ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ पे वो हेल्प कर सकते हैं। पार्टी हेल्प तो पूरी तरीके से करेंगे, लेकिन ने वहाँ पे नॉक कर दिया। हेड हंटर्स रोकना ही नहीं है, अर्श को यहाँ पे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्श को रिवाइव करना होगा, क्या यहाँ पे अर्श को रिवाइव मिल पाएगा? आई थिंक बिल्कुल उनको भी रिवाइव किया जाएगा, बट डिवाइन यहाँ पे आगे बढ़ते हुए। हेमू की बात करें, एक जबरदस्त स्नाइपर है, डबल M82 भी उनके पास होने वाली है और जोन कैप्चर कर चुके हैं वो। जी हाँ, आपने बोला शेर अपने कदम पीछे हटाता है एक लंबी छलांग मारने के लिए, यहाँ शेर अपने कदम पीछे हटा रहा है स्नाइपर चलाने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे गेम पलटते हुए जरूर नजर आएगा। कमाल की स्नाइपर, कमाल का सपोर्ट मिलता है। एंड अगर हम बात करेंगे और esports हमारे सामने होने वाली, थोड़ी देर पहले इन्होंने भी काफी सारी टीम्स को परेशान किया, पर देखिए जो अप्रोच है अगेन थोड़ा सा जो प्रेजेंस है उसको लो रख रखा है। बात करेंगे दूसरी साइड, द वर्ल्ड ऑफ बैटल, देखिए नाम में ही बैटल है, एंड ये टीम अपने आप में एक वर्ल्ड है बैटल के लिए। टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप गलती कीजिए तो एक छोटी सी गलती कीजिए, ये टीम आपको पनिश करेगी, आपको बैकडोर लॉबी करेगी, एंड यहाँ पे गेम के अंदर अपना परचम लहराएगी। बात करेंगे 4 अननोन के बारे में। देखिए बार बार जो हर एक फाइट होती है ना, कुछ टीम्स बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करती है, फाइट्स को बहुत अच्छे से निकालती हैं। ये वो टीम है जो यहाँ पे बहुत अच्छे से फाइट्स को निकालती है। बात करेंगे और esports के बारे में। अगेन कैमरा इनके ऊपर होने वाला है, थोड़ा सा पैसिव खेलने हैं, प्रेजेंस थोड़ी लो रख रखी है, एंड यही चीज इनका टेक्स्ट बुक स्टाइल है, यही इसी तरीके से प्ले करती है। कई लोग कहते हैं कि ये कैंपिंग है, नहीं, ये एक प्ले है कि आप लास्ट में अपने प्लेयर्स को लेके जाएंगे, उनको यूटिलिटी दिलवा रहे हैं, आप उनको रिसोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, लास्ट में जाके गेम पलटेंगे। वेपन ऑफ चॉइस के बारे में बात करेंगे। प्रेडेटर के कंधे पे 2 M82 भी होने वाली है, और जिस प्लेयर के कंधे पे 2 M82 भी हो, वो गेम में बहुत तगड़ा गेम चेंज कर सकता है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे सकता है। द वर्ल्ड ऑफ बैटल हम बात करते हैं अभी भाई। शॉन्टी डाउन हो चुके हैं, बचाने का जोर से ट्राई करा जाएगा, बट क्या सफलता मिलेगी? फॉरेस्ट रेड पे, नाम फॉरेस्ट रेड है, बट लग सकता है यहाँ पे ब्लड बात होगा। आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल ब्लडबाथ हो सकता है। हीमो अभी भी उसी पोजीशन पे नजर आ रहे हैं। वर्ड ऑफ बैटल अभी उनके पास सिंगल स्नाइपर है, लेकिन असॉल्ट करना भी उतना ही अच्छे से जानते हैं। ओ यहाँ पे जबरदस्त प्ले दिखा रहे हैं। बैटल मुसीबत में आ सकती है। हेड हंटर्स के अर्श को एक और बार एलिमिनेट किया जाएगा, एंड फिलहाल देखिए जोन के एज से रोटेशन जो होता है ना, ये ऐसा होता है या तो आप अंदर जाओगे या हम जाएंगे, दोनों में से एक टीम को अपने प्लेयर्स खोने ही पड़ते हैं, क्योंकि एक तो जोन का वार, ऊपर से सामने वाले आपके प्रतिद्वंदी का वार, ये झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वर्ड ऑफ बैटल के इंसेन ये बात अच्छे से जानते हैं, टीम को जोन के अंदर जाना है, और हर एक टीम यहाँ पे पोर्टल्स का अच्छी तरीके से यूज़ कर रही है। ये जो छोटा सा डिस्टेंस था ना, ये डिस्टेंस पार करना कितना महत्वपूर्ण है, ये चीज़ ये टीम जानती है। वहाँ पे आपको किया जा सकता है, बीच में ही आपको नॉक किया जा सकता है, एंड पूरा गेम खराब हो सकता है। इसीलिए देखिए रिसोर्स है तो उसका यूज करिए, बाद में पछता के बिल्कुल फायदा नहीं होता है, एंड वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। एक कहावत है हिंदी में, अब पछताए तो का हो जब चिड़िया चुगेगी। ठीक है, वेट करने से ज़्यादा बढ़िया है कि उसको एग्जीक्यूट कीजिए, एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे टाइम पर अपनी यूटिलिटीज को यूज करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे आप परफेक्ट एग्जीक्यूशन करेंगे। दूसरी साइड अगर हम बात करेंगे और esports होने
वाली है। फाइनली फाइट्स में एंगेजमेंट शो कर रही है, सामने प्लेयर्स नजर आ रहे हैं तो उनको शॉट जरूर लेंगे, बट अगेन थोड़ा छुप के थोड़ा सा पीछे हट करके नहीं चाहते हैं कि डायरेक्ट एंगेजमेंट ले। थर्ड पार्टी सबसे अच्छा अल्टरनेट है, अगर आप थोड़ा वेट कर सकें, अगर आप सब्र कर सकते हैं तो यहाँ पे सब्र का फल आपको जरूर और मीठा मिलेगा। सामने प्लेयर होने वाले हैं द वर्ल्ड ऑफ बैक, ओपन में होने वाली है और कंटिन्यूअसली बैक फाइट तुरंत यहाँ पे बैक टू बैक प्लेयर्स को रिवाइव भी दिया जा रहा है, यहाँ पे एलिमिनेट भी करा जा रहा है सिनर्जी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को। अनुभव को यहाँ पे तुरंत रिवाइव दिया जाएगा, बट उनको हीलिंग प्रोवाइड करा जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे कौशिक मलिक एक के बाद एक नॉक निकालते चले गए, 2 किल्स उन्होंने पलक झपकते अपने खाते में डाल लिया। एंड यहाँ पे स्नाइपर शॉट, जबरदस्त शॉट, मन्नू की यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर, केडी को वहाँ पे नॉक एंड फिनिश जरूर कर दिया है। दूसरी तरफ और esports के सामने टीम होने वाली है मनीष के साथ है, वॉल्स लगी हुई है, वॉल्स का क्लस्टर बना हुआ है। एंड जी हाँ, इनहेलर्स का यूज किया जाएगा। एंड ये लीजिए प्ले ऑलरेडी मार्क्ड है, ट्रोगन यहाँ पे यूज की जाएगी, एक्सप्लोसिव यूज किए जा रहे हैं, नॉक भी किया जाएगा। कमाल का प्ले यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड जी हाँ, क्या प्ले दिखा रही है यहाँ पे और esports। यहाँ पे पहले मैच में भूया निकाला था, दूसरे और तीसरे मैच में दिक्कत में जरूर आए थे, बट जी हाँ इस बार वापसी करती नजर आ रही है। प्रीडेटर डबल स्नाइपर उनके पास, साथ ही साथ आयरन आइस की स्किल ओपन में भी जाएंगे, वॉल लगा के कोई दिक्कत नहीं होने वाली उनको। ब्लैक और लुइस 2 प्लेयर्स बचे हैं, लुइस मुसीबत में है एंड उनके ऊपर दावा हो चुका है। और जी हाँ 4 अननोन 4 मैन स्ट्रॉन्ग इस टाइम पे। अगर 4 अननोन 4 मैन स्ट्रॉन्ग है तो गेम पलट सकता है, किसी भी टीम के खाते से गेम उछल सकता है। एंड अगर हम बात करेंगे अनुभव डाउन होते हैं, उनको यहाँ पर रिवाइव नहीं मिलता, बट वो आगे जाएंगे यहाँ पर यहाँ पर रिवाइव। बट अगर हम बात करें तो दूसरी साइड एबिलिटीज का किस तरह जो अगर हम बात करेंगे बट यही अगर हम बात करेंगे किस तरीके से उसी का प्रयोग करेगा, आगे मनु जाएंगे कहीं ना कहीं वॉल के आसपास कॉन्सेंट्रेट रहा है और डैमेज किया गया। मनु यहाँ पे सर्वाइव करना चाहते थे, बस सर्वाइवल नहीं मिला। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे टीम के बारे में, सर्वाइव करने वाले हैं 2 प्लेयर्स, बट नहीं जोन आज का डैमेज बनेगा। और अगर वो कैंप से बाहर निकल पाएंगे, क्या ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो निकल पाएंगे इस मौके से। अगर हम बात करेंगे समझदार कैप्टन एक आईजीएल होने वाले हैं कौशिक मलिक, डैमेज आ चुका है पर सर्वाइव करें नहीं। द वर्ल्ड ऑफ बैटल इंसेन आते हैं और किल निकालते हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे द वर्ल्ड ऑफ बैटल एक्शन में। और अगर ये टीम एक्शन में तो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़े पावर की पड़ेगी, क्योंकि अगर ये टीम फॉर्म में है तो थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेटजीज में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कवर का जो एसेट था वर्ल्ड ऑफ बैटल का, उसको पहले यहाँ पे रिमूव कर दिया गया, सास के उनको जोन के बाहर एलिमिनेट कर दिया गया। अभी वर्ल्ड ऑफ बैटल भी मुसीबत में आ जाएगी, बट और बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वहीं पे टीएसजी आर्मी देखिए कंसिस्टेंसी हर गेम में नजर आई है टीएसजी आर्मी की तरफ से। ओह माय गॉड व्हाट अ प्ले, यहाँ पे M79 का बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है। एंड जी हाँ, किल पे किल निकालेंगे, वर्ल्ड ऑफ बैटल को यहाँ पे भारी मुसीबत में डाल दिया है। टीएसजी किल्स निकालती जा रही है, दूसरी तरफ 4 अननोन भी एक अव्वल दावेदार होने वाली है इस मैच को बुया करने की। टीएसजी 4 अननोन, हर एक टीम अपना बेस्ट देना चाहती है। इंसेन को भी खत्म किया गया है, खुद को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो जोन का डैमेज है वो कहीं ना कहीं उनको वो करने से रोकेगा। 4 अननोन जोन में जाती हुई टीएसजी का रास्ता रोकने की पूरी कोशिश, नेट्स भेजे जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल से यूज किया जा रहा है। क्या नेट्स कनेक्ट होंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे आई थिंक कनेक्ट हो सकते हैं। ओह नाइस, यहाँ पे पोर्टल्स लगाए गए, लेकिन फिलहाल आयुष नॉक हो जाएंगे। क्या उनकी किल की जाएगी? टीएसजी ने अपनी पूरी कोशिश करी जोन से निकलने की, जो मुमकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी उनको भी यहाँ पे यूज किया गया, लेकिन 4 अननोन के पावर के सामने क्या मुसीबत में आ जाएगी। उनके अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है, पूरी तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है। एंड जी हाँ, कौशिक मलिक अभी जोन में जा चुके हैं और esports ऑलरेडी होने वाले, बट जोन के अंदर अभी तक उन्होंने एंट्री नहीं करी है। सामने से आने वाले देखते हैं कि किस तरीके से नेट काम करते हैं। कौशिक मलिक काफी शानदार नेटर है, एक और बार नेट थ्रो करेंगे, क्या नेट काम करेगा देखने वाली बात है। सामने प्लेयर्स होने वाले हैं और यहाँ पे कौशिक मलिक का नेट जाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। और डाउन उनका यहाँ पे किल कंफर्म कर ले चुका है। लेजेंड एलिमिनेट हो चुका है। जी हाँ, पिछले टाइम पे हमने देखा था कि लेजेंड किस तरीके से क्लच आउट सिचुएशन में नजर आए थे, बट आयुष भी डाउन हो जाएगा। दूसरी साइड उनका भी यहाँ पे किल कंफर्म करने का ट्राई कर रहा है। 4 अननोन एक साइड नजर आएगी और esports एक साइड होने वाली है। टीएसजी बहुत बुरी मुसीबत में होने वाली है, बैक टू बैक गेम कोशिश कर रही है, बट फाइनली 4 अननोन ने अपना रुख चेंज करा। अब ये और esports को फोकस कर रहे हैं, देखने वाली बात है।
हम बात करेंगे। ओह माय गॉड, यहाँ पर स्वास्थ्य डाउन हो चुका है, बड़ी कॉल प्ले को डाउन कर देंगे। यहाँ पे स्वास्थ्य को बचाने की जरूरत है, स्वास्थ्य का किल कंफर्म होगा और बीम डाउन हो चुके हैं और Esportz पूरी मुसीबत में होने वाली है। बट सामने एक कॉल बनते को स्पॉट कर चुका है आनंद, यहाँ पे लगा स्नाइपर का स्पोर्ट्स इन एफर्ट, यहाँ पे वॉल के अंदर प्लेयर है, टॉवर पाएंगे देखने वाली बात है। आज बाहर निकलेंगे, यहाँ पे बियरली सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं मौका नहीं मिलेगा, सिद्धार्थ सर्वाइव कर रहे हैं। ये प्लेयर चाहे स्नाइपर हो या ना हो बट गेम संभालना जानता है। जी हाँ, यहाँ पे 1v2 की सिचुएशन, सिद्धार्थ क्या से क्लच कर पाएंगे। M249 कमाल का वेपन है, क्राउच करके बहुत ज्यादा डैमेज देता है बट अभी भी जो लोकेशन है नहीं पता है, यहाँ पे गेम पलट सकता है। क्या होगा, क्या नेड है, क्या थ्रोवेल्स है। जी हाँ, फाइनल स्पॉट कर लेगा, जी हाँ, सामने प्लेयर होने वाले पे डैमेज देने का ट्राई कर रहे हैं। फरहान ने अपने टीममेट आनंद के साथ मिशन शेयर करती होगी कि सामने प्लेयर होने वाले आनंद के ऊपर डैमेज देने का ट्राई करें। ग्लू वॉल पेनिट्रेट करी जा रही है, यहाँ पे मूविंग करा जगह, यहाँ पे चार्ज करके डायमेंट करेंगे। जी हाँ, यहाँ पे 4 अननोन हमारे 4th गेम अल्पाइन को बूया करते हुए। बिल्कुल, यहाँ पे 4 अननोन करे कि एक जबरदस्त बूया। देखिए इस बूया की ज़रूरत थी 4 अननोन को उनका इंजन स्टार्ट करने के लिए। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, एक बार वार्म अप हो गया ना, एक बार अपने मोमेंटम पे आ गए तो फिर वो मोमेंटम ब्रेक नहीं होता है। एंड जिस तरीके से प्ले किया है 4 अननोन ने, काबिले तारीफ है। और Esportz की बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से जोन के अंदर भी आ गए थे। अंशु लास्ट सर्वाइव बचे थे, पूरी कोशिश करी कि सर्वाइव करें, किल्स निकालें, बट समहाउ उन सिचुएशन उनके फेवर में नहीं गई। लेकिन 4 अननोन ने जो फायर पावर दिखाई, TSG आर्मी के सारे रास्ते बंद कर दिए। TSG आर्मी अपने फायर पावर से बहुत मुसीबत करके, बहुत स्ट्रगल करके जोन के अंदर आ रही थी एंड सबको यहाँ पे बाईपास कर रही थी। बट देखिए 4 अननोन एक ऐसी टीम, जब आपको एकजुट होके आप पे अटैक करती है ना, तो फिर उनका फायर पावर यहाँ पे काउंटर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छा है वहाँ पे पोर्टल्स का यूज किया गया था। जैसे ही वहाँ पे उन्होंने देखा कि बचना मुश्किल है, पोर्टल्स लगाए गए, इंस्टेंट वहाँ निकलने की कोशिश करी गई, लेकिन आयुष को वहाँ पे नॉक कर दिया गया। ओवरऑल एक बहुत ओवर पावर गेम हमको देखने को मिला है यहाँ पे काफ़ी टीम्स की तरफ से। एंड जी हाँ, एक तरफ टीम्स पैसिव भी खेल रही है, लेकिन जब मौका आ रहा है तो एग्रेशन दिखाना भी यहाँ पे नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, यहाँ पे कमाल का एग्रेशन। मुझे एक पर्टिकुलर सीन बहुत अच्छा लगा, मैं उस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगा। अभी होली आने वाली कुछ दिनों में, आप हम लोग गुब्बारे मारते हैं, तो जैसे TSC बाहर आ रही थी, TSC ने नेड मारा और सामने से भी नेड उड़ करके आ रहा था। आपने हमें नेड मारा है, ये लीजिए, थोड़ा डैमेज पड़ता है उससे, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता उस नेड से, बट वो सीन बहुत अच्छा था कि दोनों साइड से नेडिंग हो रही है। बट TSC एक ऐसे छोर पे थी जहाँ से जोन को धकेल रहा था। और Esportz ने भी डैमेज दिया, 4 अननोन ने भी डैमेज दिया। जो दोनों ने डैमेज दिया, उसके साथ सिद्धार्थ जिस तरीके से सर्वाइव करे, हैट्स ऑफ टू सिद्धार्थ, कमाल के तरीके से उन्होंने सर्वाइव करा। और Esportz के बस नंबर थे, बस सिद्धार्थ कमाल के प्लेयर हैं। स्नाइपर हो या ना हो, ये प्लेयर जानता है कि किस टाइम पे क्या करना सही रहेगा, किस तरीके से टीम्स को और पॉइंट दे सकते हैं। बट हम नहीं भूल सकते, जिस टीम ने बूया करा है वो है 4 अननोन। ये टीम लास्ट में अगर सर्वाइव कर रही है ना, हम बोल रहे थे, हम बात भी कर रहे थे, आपको एक बार अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना पड़ेगा और आपको अपनी स्ट्रैटेजी शायद थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मौका था, दस्तूर था, बूया निकलता है, बट द वर्ल्ड ऑफ बैटल को हम नहीं भूल सकते। जी हाँ, बैक टू बैक किल्स निकालने का ट्राई करते हैं। एंड जी हाँ, यहाँ पे हमें बहुत कमाल की फाइट नजर आती है। कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल, एक बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए, आपने आज जो देखा है ये तो एक्शन पैकेज था। यहाँ पे आपने 4 मैचेस देखे, लेकिन 6 मैचेस हमको कल के दिन देखने को मिलेंगे। एंड टोटल 10 मैच का ये मुकाबला है। और देखिए, जो अंतिम पल होंगे ना, वो एक्साइटमेंट को और अलग लेवल पे लेके जाएंगे। एंड और आप देखिए, एक्शन पैकेज बहुत हो गया। अभी हम लोग सीधे चलते हैं हमारे होस्ट के पास। थैंक यू सो मच एरो, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा नरेशन आज के दिन पे आपने सभी मैचेस का किया। लेकिन गाइस, आप लोगों को मजा आया कि नहीं? एवरीवन, मोर लाइक इट। जो भी कह लीजिए, स्टार्टिंग विद ऑरा Esportz, क्या बात है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। लेकिन आज के दिन पे 4 अननोन ने काफी अच्छी तरीके से रैप अप किया दिन को। बट हेड हंटर्स, they were fierce, they were fearless and they were fearlessly ferocious. इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस। बट that's not it guys, आज का दिन अंत होने वाला है। लेकिन आज 4 मैचेस, कल बचे हुए होंगे 6 मैचेस और कल के दिन पे हमें CS2 एक्शन भी देखने को मिलेगा। So we must be having Counter Strike 2 fans as well. On that note guys, आज का दिन समाप्त करने का समय आ चुका है। आप सब लोग जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े थे, थैंक यू सो मच। अ लॉट ऑफ लव एंड अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन टू एवरी सिंगल वन। एंड ऑफ कोर्स
to the entire audience जो हमारे साथ इस अरीना में जुड़ी है. कल के दिन दोबारा आइएगा, same time, same place, and keep supporting, keep loving. Good night, have fun, guys.